Hello, everyone. I hope everyone is doing good. Am I audible? Say yes on chat. Okay, so I'm audible, right? Thank you, Aniket. All right. So today we will be starting our new session for Sophos XG. We'll continue with our module. The first module we will cover. We also have a quick recap for the last session that we have covered. जो हमने last session में cover किया था वो हम discuss करेंगे, and we will continue to the next topics, as well as we will cover some of the lab session today. So you will get much more idea about the Sophos XG firewall, how to configure, how to deploy, how to, yeah. Am I audible now? Yes, sir. Okay. Let me start by sharing my screen. All right. If you find me, if I'm not audible properly, you can just let me know. I will be sharing my screen. All right. All right. So I hope my screen is visible. You can see, welcome to NetGUI Technologies, Sophos Training Firewall. All right. So today we will discuss about some theory part, and mostly I will drive you through the lab as well, what we have covered last. So last time we have covered the topics which we'll be covering in upcoming slides. So there will be quick recap that we have covered till now. So yes, let me just begin with the next slide here. So before starting this course, yes, of course, अगर ये आप Sophos course start करते हैं, that's definitely yes, of course, if you have worked with network security devices like a router or switches, then it is very easy for you to understand this course. So yes, there is no prerequisite for this course. However, it is recommended that you should know the following knowledge like networking, which includes subnetting, routing, static routing, dynamic routings, concept of VLANs, and some VPN technologies. All right. So because we will be implementing those the same thing on Sophos Firewall. Sophos Firewall में भी हम पूरा जैसे सिस्को का राउटर कॉन्फ़िगर करता है या फिर कोई सा भी फायरवॉल कॉन्फ़िगर करता है, सेम वे हम Sophos XG firewall कॉन्फ़िगर करेंगे, where it has all the practical knowledge of networking. जो भी हमने routing switching में किया है, same thing हम Sophos XG firewall के साथ करेंगे, including different type of subnet and most important segmentation, which help us for networking purpose, as well as अगर आपके पास static, if you have already worked with static routing and dynamic protocols for routing, it is much easier to configure on Sophos Firewall. जिन्होंने नहीं किया है, no worries, we will configure from step 1 so that you will understand what is routing. So आप firewall से भी, those who are new to firewall, you can start learning the routing from Sophos XG firewall. All right. We will discuss the doubt. Just allow me some time. We will discuss something, and I will take your questions one by one. All right. So yes, you also if you have experience with the network security device, then it is very easy for you to configure Sophos XG firewall and maintain. So you should also have some fundamental knowledge of encryption and hashing algorithm, and few knowledge about this, how CA authority works for the certificate. All right. So
let's be, so last time, as if you have watched our previous videos, we have covered that what are the modules that we'll be covering up in this batch. So we have around 12 modules. So we will be starting with Sophos XG overview. The second module will be starting with the getting start with Sophos XG Firewall. Third module would be, again, it would be network protection. Fourth would be site-to-site connection. Fifth would be authentication. Sixth and seventh would be controlling your network traffic for web and application control. Eighth would be email protection. Ninth would be remote access for granting access to the users from outside. Also, we will configure wireless network and its protection. We will see the logging and reporting through Sophos XG Firewall, and we will manage multiple firewalls, not only one firewall, but more than multiple firewall also in our lab from central management, that is from Sophos Central, how we can push the configuration, how we can update the firewall at once, and so on. So we'll configure, we will see in the 12th module. So these are the modules we'll be covering up, but today we will cover, we will start with the module number 1 and module number 2. As this is the live session, it would be a mixture of both. So we will start with the module 1 and module 2, and we will do some practical lab work in this session. All right, so next would be the course objectives. I hope I am audible and the screen is visible to you. Can you see the next slide? Say yes on chat if it is there. Yeah, it's clear going on. Okay, sounds great. So the course objectives would be, once you complete this course, you will be able to explain how Sophos Firewall protect against these security threats. We will configure firewall rules, the policies, and user authentication. We will also demonstrate threat protection and commonly used features. We will perform initial setup of Sophos Firewall and configure the required settings. So जब भी हमारा एक course खत्म हो गया, तब तक you will be completely aware about how to protect your network against any type of latest malware and security threats. You will learn how to configure firewall rules, policies, and user authentication. All right, and we will demonstrate how threat protections help us to protect any type of attack or any type of malware attack, and commonly used features. And initially, we have already, in the last session, we have already performed the setup of Sophos XG Firewall and configure the basic network configuration settings. So we will do that thing. We will deploy the firewall today with the same setting again today. And anyone has, if anyone has doubt, there's of course, we will discuss those things in the end of this session. Okay, so let me just put on the next slide. So getting started with Sophos Firewall. So we will see, let me just wait for a while. I believe I'm audible, everyone. Say on chat, yes, if I'm audible right now. So the next would be getting started with Sophos XG Firewall. So we will discuss the common deployment scenarios. We will configure Sophos Firewall as a gateway mode. We will configure firewall in the bridge mode, also in the mixed mode. तो जो हमारा पहला सेशन होगा वहाँ पे हमने already Sophos Firewall as a gateway configure किया है. So we'll see what is the difference between gateway mode, bridge mode, and what is mixed mode, how we can together configure everything in one Sophos Firewall in our lab. Also, we will discuss in the real life scenario. We will see web protection.
We will see deployment and setup. What options we have? कहाँ पे हम Sophos Firewall को deploy कर सकते हैं? All right. What are the options available? Then we will take the console access of the Sophos XG Firewall, and also we will take the web admin access of the Sophos XG Firewall to start our initial setup for the Sophos Firewall. All right. We will also navigate to the objects, how we can manage those objects, how we can put those objects into the profile or into the firewall rule, and we can configure the as per our network topology. All right. So yes, of course, we will start with the interface and routing. So जब भी हम lab कर रहे हैं, then we will start configuring first interface zone, and then we will see with the static routing, and we will also see with the dynamic routing how we can deploy in our network topology. We will configure DNS on Sophos XG Firewall, also DHCP, and how traffic flows for DNS, DHCP, and the rest of the traffic on through the Sophos XG Firewall. We will also look into the device access, how we can securely access the firewall, how we can securely administrate the Sophos XG Firewall with help of device access and certificate. All right. I think we'll have some lag. Okay. Okay. So in the network protection module, in this module, we'll configure firewall rule and net, which we have discussed in the last session. So we'll configure firewall rule and what are net rules. We will configure multiple firewall rules to understand how firewall and the firewall rule and net rules works. Also, we will encrypt and decrypt the traffic with help of TLS description profile. So we'll create TLS and TLS inception rules and policies will apply on the rules to scan the traffic for any type of malware, and we will see how we can troubleshoot in case of any issue while accessing any website while applying the policy. अगर आपने कोई policy apply की हुई है, अगर उसके बाद कोई issue आ रहा है, then we will troubleshoot how we can find out what is the exact policy causing the issue. All right, we will discuss this, of course, in the batch. We will also discuss about the fast part and the slow part later on, but that would be in the upcoming module. So we'll also see the web protection. All right, so let's say हम port forwarding करते हैं, right? तो जैसे हम port forwarding करते हैं, अगर कोई server है, if you want to access from outside, okay, that can be done with the help of firewall rule and net rule. But we will also secure the web server or any services that are hosted behind the firewall, जो भी Sophos firewall के साथ connected है, उसको हम protect करेंगे with help of WAF. Okay, so we have WAF license. We will see how WAF works. We also see intrusion IPS policy, that is intrusion prevention system. So we will use the default policies, and we will also use the custom policies to protect the network from any type of attack or scanning any traffic. We will enable the spoof prevention and what are DOS protection on Sophos Firewall in much more detail. We have another feature called security heartbeat. So security heartbeat will help you. We will enable actually this security heartbeat and configure security heartbeat. This help us for the synchronized security. So we will discuss a lot of things. What is synchronized security with help of Sophos Central, Sophos Endpoints Intercept X, and Sophos Firewall. So यहाँ पे हमें 3 products चाहिए होंगे. So to understand the security heartbeat here and to use this feature. All right. So we'll discuss that. We'll see in the lab in action what is security heartbeat. All right. And also at last, advanced protection, we will enable and configure ATPs, and we will do alerts and what are different type of reports that we are getting from advanced threat protection in this module. So next module will be site-to-site connection. So in this module, we will discuss site-to-site connection. So we will, what are site-to-site connection? Let's say we want to connect our main branch office to the head office and multiple branch office to our network.
So we will use site-to-site connections. We will use IPsec site-to-site connection. What are route-based? What is difference between route-based policy and policy-based routing on IPsec VPN? Uh, those who are completely new with the Sophos Firewall, you don't have to worry about. We will do from the scratch, so you will understand this technology. Those who are already working with Sophos Firewall, you will learn more about what type of connection you should establish to meet your business need. If you have new requirement come ups, so what type of changes you like to check it, or will it require the downtime or not? So we will look into the configuration, we will audit those things, and we will go ahead and we'll understand. So similarly, we will understand here the type of connections, site-to-site connections, what are the different type of options available here. What are VPNs, what are VPN zone here. So we have zone-based firewall, right? So again, we have VPN here, we have LAN, we have VPN zone, DMZ zone, WAN zone. So we'll understand each of these zones in the firewall and understand the working, how it works. So it will clear all the doubts regarding your LAN, what is DMZ, what is VPN, and what is WAN zone. All right. Then we will configure, review and configure SSL VPN. This is generally for accessing, connecting a particular user from outside of your organization. The remote users, बाहर से अगर किसी users को हमें connect करना है to access the internal resource of the firewall, then we will use the SSL VPN here. We will connect this option. We will use this option. Also, we'll see what is difference between IPsec VPN and SSL VPN. Which other these two options available? You can both you can configure to connect the remote users, but what are the difference between these? We will discuss in much more details. So with the SSL VPN, yes, of course, we can create different profile. Let's say particular user, एक particular user है, उसको particular server ही का ही access देना है बाहर से. Then we will use SSL VPN. If you want to give full access, then you can use the IPsec. What is not only that, there are multiple options available in each of these VPN options. So we'll see which options is suitable to meet your existing requirement. Last would be remote Ethernet device, that is RAD. So RAD are the particular devices, small devices, छोटे से devices which are used to connect your head office, your branch office towards your head office. Right, so we'll see the deployment modes. What are the models available here? Yes, of course. We will clear all the doubts. Allow me some time, and we will discuss each and every doubts or query you have for all the participants available here. All right. So yes, we will discuss about the suggestions, and yes, of course, regarding to cybersecurity step by step. Okay. Now we will this authentication. This is the next module that we will cover up. On the authentication, we will use you will authenticate the user with the help of captive portal and AD server in our lab. So we'll see what are the how we can authenticate user with captive portal page, CA client, the local authentication. Also, we will use the AD server for the authentication for STARS, how it works. So we'll have authentication overview, local authentication, that is the local captive portal we can say, or CA client, that where आपको एक client install करना है user के PC पे, वहाँ पे वो username password लिखेगा तो उसको internet access मिलेगा. All right. Similarly, there is a captive portal page. If you have enable authentication on firewall, आपने firewall पे authentication enable किया है, तो user के browser पे captive portal page आएगा जहाँ पे username और password डालना है. उसके बाद user को internet access मिलेगा. But we will see how it works, how we can configure. It is very simple, and we will see what are the challenges it might come on your existing topology. अगर किसी के पास already काम कर रहा है, then we will see how we can fine tune those settings and meet your requirement. And those who are जो भी नया deployment हो रहा है, then it is very easy for you to deploy once you learn this course for the authentication and all the rest of the modules as well. Okay, so we'll see authentication, what type of authentication server we can integrate with the firewall. We can integrate TACAS, Radius server, AD server, and much. You can authenticate all the servers with the Sophos XG firewall for authentication purpose. All right, so we'll see that.
we'll also create users. हम लोकली यूजर्स क्रिएट करेंगे, यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करेंगे, ऑलराइट। और अब अगर हमारे पास कोई सर्वर है, लेट्स से एडी सर्वर है, तो वहां से यूजर ग्रुप को इंपोर्ट करेंगे फावल पे, सो दैट वी डोंट हैव टू क्रिएट दोस यूजर एंड विल ऑथेंटिकेट दोस यूजर्स, right, through the, so we'll cover up all these modules, user and group, what are different type of users, or administrative users, normal users, clientless users, guest users. All right, so we'll discuss those. We will configure each and every parameter one by one, तो आप उसको डिफरेंशिएट कर पाओगे कि कौन से गेस्ट यूजर्स है, कौन से एम्प्लॉइज है, ऑलराइट, कौन से आपके एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर्स है, कौन से क्लाइंट यूजर्स है, एंड सो ऑन. So we will also use some of the method like synchronous user identity, web authentication and STAS, and agent for Chromebook authentication. Using authentication, where we can use this authentication, yes, जो firewall rules है, policies है, VPN routing, जहाँ पे भी हम ऑथेंटिकेशन जब भी हमने एनेबल किया हुआ है, सो यहाँ पे हम ऑथेंटिकेशन एनेबल करेंगे. सो वी विल यूज आवर टोपोलॉजी विद एंड विदाउट ऑथेंटिकेशन. वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंसेस एंड सो ऑन. अगर हमने ऑथेंटिकेशन एनेबल किया, यस ऑफ कोर्स वी विल लुक इनटू द मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन विद वन टाइम पासवर्ड. Now next would be the web protection. We'll see what would be covering in the web protection. So you can see here, we will look into the web protection overview. What is web protection? तो web protection में generally आपका web browser, web traffic आपका secure करेंगे. So to protect any type of malware or detecting malware, scanning the virus and drop the connection. All right. So we'll see what is difference between transparent and explicit proxy in much more detail in this module. We will see the global settings, जो firewall पे global settings होती है, उसके global settings कौन-कौन से है, protection settings, advanced settings और user settings. We will mainly we will configure web filter policies, जहाँ पे हम web filter policies create करेंगे, clone करेंगे. डिफॉल्ट पॉलिसीज भी होती है, मैं आपको लैब पे बताऊंगा अभी थोड़ी देर में. तो डिफॉल्ट पॉलिसीज होती है. पॉलिसीज क्या है यहाँ पे, लेट्स से आपको कुछ ब्लॉक करना है या कुछ अलाउ करना है, या फिर कोई पर्टिकुलर टाइम पे अलाउ करना है और पर्टिकुलर टाइम पे उसको स्टॉप करना है, ब्लॉक करना है, अलाउ करना है. ऑलराइट, सो that is the policies. So we will create those, we will edit those policies multiple times. You will see the logs, कौन-कौन से challenges आते हैं, all right, how we can fix in day-to-day life. We will see with help of web protection policies. We will see quotas, we will apply traffic shapings. तो ये suppose वहाँ पे bandwidth apply करेंगे, quotas bandwidth 100 MB देना है, 1 GB देना है, all right, we will create this type of policies. तो जहाँ पे भी policies है, so these are the policies particular to that module. Let's say यहाँ पे web filter है, right, so web protection है, तो web filter में web policies, web filter categories आती है, okay. Then we have quotas policies, surfing schedules, schedule डाल सकते हैं, and so on. So we'll see in the lab, जब ये वाले मॉड्यूल पे आएंगे, then we will configure each of this policy one by one to see the effect. कैसे हम उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. जैसे रिक्वायरमेंट आती है कि लंच ब्रेक में फेसबुक ओपन होना चाहिए और लंच ब्रेक के बाद फेसबुक ओपन नहीं होना चाहिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल, राइट. सो वी विल सी दैट. Similar to web protection, we have application control. So again, we will look into the application control, the overview, what are the application list available here, what are the live connections on the application control. All right, so I think, yeah, now it is visible. All right, so similar to web protection, we have application control. So यहाँ पे भी हम policies जो existing default policies है, जो firewall पे predefined है, वो उसको हम review करेंगे. We will create our own policies to allow or block any of the category. Category क्या होता है, जैसे social networking है, right? So file transfer है. So we have multiple websites. So we can allow or block the category as per our choice. So that is the application and web filter protection or control. So we'll see the existing policies, we'll create our own, we'll see what are the challenges that comes with the Sophos XG firewalls. All right, we'll see the application list that is available on Sophos XG firewall, and you can then take the action accordingly. So we'll discuss a lot of things on these modules. Synchronized app control क्या होगा यहाँ पे?
जहाँ पे लेट्स से यू हैव Sophos इंटरसेप्ट X, Sophos के एंड पॉइंट्स होने चाहिए, तब आप ये फीचर यूज कर पाओगे. Alright, so we will use this feature in our lab to see how synchronized app control works. So हम intercept X install करेंगे, that is generally antivirus provided by Sophos endpoints. So we will install this. जहाँ पे ऐसी application है जो categorized नहीं है, we will those application are get detected by your endpoints. वो फिर भेजेगा अपने firewall को, and then we can categorize those install application, और उसके हिसाब से हम action ले सकते हैं whether we have to allow that application or block the application. So with the help of application control, we have another feature called cloud application. We can also see the wizard for the what are the control center for this. वहाँ पे कौन सी application listed है वहाँ पे. Let's say you have cloud application, Azure है, cloud any cloud application that will get detected on the control central wizard. और उसके बाद हम उसको क्लासीफाई करेंगे, एंड उस पर अगर कोई बैंडविड्थ पॉलिसी अप्लाई करना है, देन वी अप्लाई पर्टिकुलर बैंडविड्थ सो दैट उसको डेडिकेटेड स्पीड मिले, राइट, एज इट इज होस्टेड ऑन द क्लाउड. लेट्स से फॉर एग्जांपल फेसबुक है, राइट, और एनी अदर एप्लीकेशन विच आर होस्टेड ऑन द क्लाउड. राइट, सो अगेन यस, ट्रैफिक शेपिंग हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बैंडविड्थ पॉलिसी हम वेब फिल्टर पे भी लगा सकते हैं और एप्लीकेशन फिल्टर पे भी लगा सकते हैं. सो विल सी, किसी को हम 1 Mbps देंगे, किसी को 2 Mbps देंगे, किसी को 5 Mbps स्पीड देंगे. ऑलराइट, एंड विल सी वेदर इट इज वर्किंग और नॉट, और इफ इट इज नॉट वर्किंग व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी हैव टू टेक. नेक्स्ट वुड बी योर ईमेल प्रोटेक्शन. तो इफ यू हैव in-house email server, all right, so we will अगर आपके पास in-house mail server है या फिर बाहर पे भी, so how we can protect the email. So we will see the configuration. We will see the modes. What are the modes available? कौन से mode है यहाँ पे? Legacy mode and the MTA mode है यहाँ पे, ठीक है. So we'll see. We don't have to worry about, but we will go through those modes one by one. Which अगर दोनों को हमने switch किया, okay, so what firewall will act, all right. So कैसे firewall act करेगा MTA mode में और आपका legacy mode में, all right. So we'll see that mode. If you are not clear about this, no worries. Module पे हम much discuss करेंगे. We will discuss in this module. We will implement in our lab to see this working. All right. So we'll see all the smart holes. Again यहाँ पे भी policies create होती है. सब जगह पे हम policy create करते हैं, जहाँ पे हम पर्टिकुलर पॉलिसी क्रिएट करते कि हमें क्या स्कैन करना है, क्या एक्शन लेने हैं, उसके एक्शन लेना है, राइट. एक्शन वुड बी लाइक अलाउड, ड्रॉप, रिजेक्ट एंड सो ऑन. So we'll see the email policies, what is SMTP route and scan, legacy SMTP, how we can use data control and encryption, how we can use the quarantine management and the KMI. Right, so next module will be remote access. So जैसे मैंने आपको बताया था, if you want to access if you want to give access to your internal resource, अगर आपके in house, अगर कंपनी में कोई सर्वर है फॉर एग्जांपल, उसको बाहर से एक्सेस देना है, then we use the SSL VPN and IPsec VPN. Okay, so we'll go through the overview of both the VPNs, configuration and the deployment option that is available on the firewall. All right, we will discuss about the clientless access portal. That is the one of the features, mobile access, how we can give access to the internal resource to the outside. All right, so next would be wireless protection. So आप Sophos XG सारे wireless API को एक controller तो चाहिए होता है, right? So how we can use Sophos XG firewall as a controller. So we'll see here with the help of this module. That is wireless protection. So we'll look into the wireless overview. We will look into the wireless networks. What are the deployment options available while doing the while implementing the wireless network and its protection, and what are hotspot. So hotspot एक feature है, all right. So we'll use that hotspot. पहले हम overview देखेंगे, फिर हम wireless network configure करेंगे, different wireless network, जहाँ पे Sophos के ही API होंगे, all right. फिर deployment option देखेंगे, what is mesh technology and the simple way, how we can deploy the access points और hotspot जो vouchers होते हैं, अगर कोई
किसी को voucher देना है username password like guest users, you can use these features for the hotspot available. All right. So this would be completely on Sophos XG, Sophos ecosystem. जहाँ पे अगर हम आपके थर्ड पार्टी एपी के जितने भी होंगे अगर जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं Sophos Firewall में, अगर उनको प्रोटेक्ट करना है तो कर सकते हैं ये Sophos, बट दिस वुड बी कंप्लीटली डेडिकेटेड मॉड्यूल फॉर Sophos एपी. Sophos के भी Sir, एपीज आते हैं तो we उसके have some एपीज को questions. Can you कॉन्फ़िगर take करना है it? Sophos Firewall से, ये हम ये मॉड्यूल पे देखेंगे. ऑलराइट, सो यू डोंट Sir, हैव टू. we have some questions. Can you take it? Because pending since long in chat. Hello. Yeah, we have some questions in chat. Can you take it? Yeah. Yes. Okay. So, Ketan, firewall will support virtual domain function. Yes, these firewall will support virtual domain functions as well. All right. Ketan. Ketan, yes, you can deploy the firewall. We will see the deployment options. जो भी कहाँ पे हम firewall deploy कर सकते हैं, जितने भी deployment options है, हम discuss करेंगे lab theory पे और lab पे भी. All right, so we'll see that options. Another question was, yes, you will definitely get the security. You will get the suggestion for cyber security step by step. Yes. So So yes, I have one more question also, sir. yes, yes, please. Regarding that, you told that everything, all this one box is supporting everything like firewall, then wireless, then WAF and everything. What about the license? We need to purchase separate license, or it will combine in one box all the license? License would be in different modules. It depends on your requirement. Let's say if you require WAF or email protection, then you can purchase those license. If those things are not required, then it's fine. You don't have to purchase those license. But to make it work, अगर आपको if you want to make it run all the features, then yes, of course, license is required. We'll discuss about the license as well in much more detail, which are the necessary license you can purchase as per your business topologies and requirements. Let's say if you have some in-house server to be protected, then in that case, yes, of course, WAF, if you want to run through Sophos Firewall, then you require the license. If you required, if you have in-house email server, then yes, of course, you require the license. And we will discuss about the license bundles in much more detail, yes, of course, in the upcoming modules. In labs, you will have 30 days of free trial, means you will have full license on the firewall for next 30 days. So you can use all the features. You don't have to purchase the license here, where while working, when we are working on this batch, you will see how this module works with the license and without license. And accordingly, if you have production environment, you can buy those license accordingly. Am I clear? Yes, sir. Great. Okay, next question was the you need the suggestion for cyber security step by step. I will help you regarding the auditing of the Sophos XG firewall. That will help you to take the action for cyber security purpose. All right, so we'll see that. And okay, so our last module will be the second last would be logging and reporting. So we'll at the last, जब हमने सब कुछ configure कर लिया होगा, if we have configured everything, it is properly placed on the firewall rules, the policy are properly placed, properly हमने configure किया है, the best part would be to get the reports from the firewall so that we can take the action. So we will take the action accordingly to the reports that we are getting from the firewall. We will discuss about the key challenges, what type of reports we will get, how to troubleshoot the reports and how we can fix it. And we will discuss a lot of things about logging and reporting on this module. So we'll see reports, what are the different type of reports available on Sophos Firewall, the bookmarks, what are bookmarks here,
what are application risk and UTQ, threat intelligence reports, and much more. We also set up some notifications from firewall. Let's say if you have some connectivity, all right, those are already working with Sophos XG firewall. Let's say if you have some ISP down, you will get the notification. So we will see the notification by email setting, SNMP configuration, and what are the notification lists that are available on Sophos Firewall to get those notification on our email to notify us if anything goes wrong. Let's say, for example, firewalls gets down or IPsec goes down and so on. We also get reports on the email. जो भी हमें reports जो format में हमें चाहिए, तो we will not save those reports on the firewall. We will save it, or we will just export. We will get automatic reports on our email, and yes, we will discuss a lot of things about this, how we can manage and maintain logging and reporting from the firewall. Throughout this lab, we will see if something is not working, we will fix it with help of logging and log viewer and syslog server and log configuration in this firewall. So जब हम Sophos firewall configure करते हैं, all right, steps are easy, let's say, but in case it is not working, we can fix it. How? We can see the logs and we can see what is the root cause, and we can take the action and we can fix as per the logs, right? So we'll see that what are the different scenarios. Lab पे जब different scenarios आएंगे जहाँ पे हम logs देखेंगे, and we will see what is happening with the traffic and how we can route it properly, how we can fix it. We'll discuss about the firmware versions also. We will discuss about the HA. और हम यहाँ पे जो हमारा topology होगा, we will have two MPLS link. Those who are already working with Sophos XG, they might know the failover. So हम failover करेंगे with let's say there is a head office and branch office. So we'll configure the failover between MPLS. We'll configure the failover between IPsec VPN. We will configure HA, high availability, in each of the office in our lab, and we'll see the zero downtime in our network. The last would be the central management. Yes, of course, सारी जितनी भी firewall होगी हम cloud से access करेंगे. If we, let's say, if you want to access from outside, we will access all the firewall. जितनी lab की firewalls होगी, all right, वो हम बाहर से access करेंगे securely. जो भी हम lab पे सीखेंगे वो आपके real life scenario पे implement रहेगा. All right. So let's say if you have multiple firewalls, जैसे हमारे lab पे multiple firewalls होगी, so सबके पास access होगा. If you want to access from outside, we will access to Sophos central management. We will also see how we can upgrade the firmware version of firewalls. बाहर से means cloud से, जैसे जितनी भी firewall से cloud से manage होती है, right? If you some are might be aware or some might not be aware. So those who are not aware, no worries. Those who know, they might know much more in this central management course module. You will learn about what are the backups options available, how we can push the configuration, कैसे हम एक साथ सारी firewall से configuration cloud से push करेंगे, all right, and we'll see zero touch deployment option available here. Also, we have central firewall reporting, जो हमारे firewall पे reports store होते हैं, all right, that we will not store on the firewall, but instead हम cloud पे store करेंगे, all right. Okay, if anyone has any doubts or query till now, you can let me know. These are the modules that we will cover and topics. So till now, anyone has any doubts or query? Sir, just the raise your Palo hand Alto, so I can ask you. in the Palo Alto, there's All the right. one option is that Let's if go you ahead. want to. So yes, of course, the course objective, once you complete this course, you will able to explain how Sophos protects against the security threats, configure how you can configure firewall rules, policies, and user authentication. You will demonstrate the threat protection and the commonly used features, and perform initial setup of Sophos XG firewall and configure network settings.
All right. So today, let's, yeah. Hello, can you hear me, Ketan? Yes, I can hear you. Yes, Ketan, can you can ask me if you have any doubt. Yes, in the Palo Alto, there is a one option is that ECM's equal cost multipath. This functionality is there in Sophos or no? Hello. Hello, you can hear me? Yes, now I can. Ketan, can you please repeat your question again? Yeah, in the Palo Alto, there's an option is that ECMP equal cost multipath means two ISP we can do the load balancing. This functionality is there in Sophos. Ketan, I'm so sorry. Your voice was breaking. Just give me a moment. Okay. Can you hear me? Yes, I can hear you. I think I know I am not. Just give me a moment. I think issue is from my end. Your voice is not audible. Ketan, I think mine is audible, but not yours. Just give me a moment. Okay, just put on the chat as of now. Yes, I did that, sir. Okay, put your question on the chat. I will read it and I will say, all right, because I think there is issue. Okay. So meanwhile, let me just go ahead. Yes. We will discuss about the load balancing. If you have, let's say you have multiple ISPs. Okay, so yes, of course, we will route the traffic for particular service or application to particular ISPs. Also, we will have the failovers with the MPLS and IPsec and your internet traffic. Or if you have any particular voice application, let's say you have running voice applications, then we will route those traffic with the particular ISP. So we will use the SD-WAN feature here to meet your requirement. Yes, Ketan, am I clear? Are you there? Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. Yes, the feature is available. We will configure it with the SD-WAN. All right, we will configure multiple SD-WAN policies to route particular traffic to understand the SD-WAN technology. All right. So yes, of course. Okay, I'm so sorry. Actually, you are not audible. Maybe the issue me with my mic, so I will just fix it. But yes, of course, your requirement can be met with the help of SD-WAN technology. We will understand those things in much more detail. All right. Okay, great. Okay, so what is Sophos Firewall? We will look into the first module, that is overview of the Sophos Firewall. What are the deployment options available on Sophos Firewall? The anatomy of attack and the zero trust. All right. So we will understand everything in much more detail. So this module, the first module, the Sophos Firewall include the deployment option that is available to you. So we will guide you through the the anatomy of attack and to introduce the key security technologies in Sophos technology. जैसे कि कोई attack होता है, right? तो attack करने के लिए जो भी चेन होगा, राइट, उसको सोफोस कैसे ब्रेक करेगा विद हेल्प ऑफ दिस मॉड्यूल्स, जितने भी हमारे पास मॉड्यूल्स हैं. Okay, let's say we have web protection, we have email protection, we have application control, we have zero-day protection, we have synchronized security, and much more security features are available.
तो जो एनाटॉमी जो अटैक होता है, अटैक करता है यूजर, तो उसको पहले ही फेस पे कैसे ब्लॉक करेगा, या फिर ऑलरेडी आपके पास लेट्स से सिस्को का राउटर है अभी, कोई आप सिस्को का राउटर है, उसको आपने सोफोस से रिप्लेस किया, तो ऑलरेडी अटैक शायद चल रहा होगा, तो उसको वो कैसे वो ब्रेक करेगा विद हेल्प ऑफ दिस modules, web protection, email protection, and so on. So we'll see this key security technology with Sophos Firewall, how to protect against the common threats. And yes, we will also discuss about the zero trust, explaining what are to trust no one and allow the secure connection. Okay, so next. All right, so what is Sophos Firewall? We will discuss that in much more detail. So we will have the Sophos Firewall as a next generation firewall, the which is very visible and protect and responsive firewall. While in all protection, as you have said, it's cover all the modules. If you are using this, of course, if you have license, then you can use all in protection for consolidate and simplify and save. And we'll see all the features: SD-WAN, branch, endpoint integration, what has the cloud, public cloud, and how this screw protection, affordable, simple compliance and control can be achieved. So we know that Sophos Firewall is a network security device, and yes, of course, it is a zone-based firewall and identity policy at its core. The Sophos Firewall is generally identity-based. You can say layer 8. Also, it again is as a zone-based firewall, LAN, WAN, DMZ, or we will discuss about the VPN zones in much more detail. We will create our own custom zone, let's say Wi-Fi zone, or we have HA zone, or we have printer zone, and so on. So we can configure those zones and we can implement those zones on the interfaces. So we'll look into the scratch. यहाँ पे हम पूरा स्क्रैच से ही कॉन्फ़िगर करेंगे. Yes, of course, we will see जो हमारा लैब टोपोलॉजी होगा, लैब पे होगा, यहाँ पे हमारे पास 5-6 ISPs होंगी. वहाँ पे हमारे पास मल्टीपल MPLS होंगे, and we will configure the failovers. We will see the how failover works and so on once it is configured. So Sophos Firewall does not only protect your wire network, but also yes, acts as a wireless controller for Sophos access point that can be provide secure wireless networking functionalities. All right, so protection is provided through single cloud-based platform, making day-to-day management for your all the Sophos products, including Sophos Firewall, easy and scalable. All right. So what we'll do, let's say we will begin with the modes. So in this, yes, in this module, you will learn about how to connect the firewall, how to configure Sophos Firewall with basic step necessary to setting up and running. You will begin with the managing the Sophos Firewall and with the web admin and learn about its core concept and objects ready to configure the rules and policies in the later all the modules. तो यहाँ पे जब हम Sophos Firewall configure करेंगे, all right, so we'll connect with the internet, one of the internet ISPs. हम lab पे भी start ऐसे ही करेंगे, पहले एक ISP configure करेंगे, then another ISP, then multiple जितनी ISPs हम configure करनी इतनी कर सकते हैं. All right, let's say I believe 4 is enough, right? You can configure 4 for testing purpose. You can configure 2 MPLS as a WAN zone, all right, so that you can meet your requirement for the load balancing. But we will do from the scratch. We will configure पहले ISP connect करेंगे. We will get the access of the firewall, CLI का access लेंगे, GUI का access लेंगे, all right. Then we will configure objects. So objects create करेंगे so that हम firewall rule पे हम use करेंगे, all right. So क्या firewall पे क्या होता है? Generally objects create करते हैं, right? Like addresses, services, and so on. We will use those services on the firewall rules so that we can apply the policies and secure the network.
Okay. So in this module, जो भी हमारा ये module होगा, हम वो gateway mode पे काम करेंगे, right? So you can see the diagram. I think just give a moment. Hello, am I audible now? Okay, thank you, Alok. Okay, so let me just discuss back what. So this is the you can see on the diagram. This is the gateway mode. So gateway mode क्या है? All right. So what is gateway mode? Those who don't know, don't worry. This is for only for those who doesn't know what is gateway mode right now. But yes, of course, जिनको पता है, then you can enhance the knowledge. Yes, and what we'll see what is gateway mode here. Can we configure bridge mode? Can we configure mixed mode? Everything on one firewall or not? We will see that. We will see in the lab also. We will configure it, whether it is working or not. So first deployment would be the gateway mode. So deployment mode हमारा होगा gateway mode पे जो हमारा पहला topic है, right? So whenever you deploy the firewall, तो firewall आप कहाँ पे deploy कर सकते हैं, all right? So physical box भी होता है, right? You get the box, you unbox it, all right, and you configure it. You have virtual firewalls and you have multiple other ways you can deploy the firewalls, all right? So यहाँ पे हम virtually देखेंगे, all right? We will discuss about the physical firewall as well in much more detail. So whenever you have new firewall, all right, so first make sure you have you registered the firewall. All right, so first you have to connect the internet connection. जो आपका internet connection आ रहा है, all right, वो आपको port B पे connect करना है हमेशा. Port B पे आपके Sophos firewall पे connect करना है, port A पे आपके laptop connect करना है जब आप सबसे पहले deployment करते हो. All right, so whenever you access Sophos firewall, the default IP would be here is 172.16.16.16. Okay, so sorry for this. So it is 16.16.16/24. This is your network. All right. So you can configure. हमने last अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने यहाँ पे Sophos Firewall का initial setup हमने किया था last video पे. All right. So we will have access of the Sophos Firewall in 172.16.16.16.16/24. तो जो लैपटॉप है, ठीक है, ऑटोमेटिक आईपी मिल जाएगा. अगर नहीं मिलता है तो आप मैन्युअली कॉन्फ़िगर करो, गेटवे डालना है 172.16.16.16 और आपको फायरवॉल का एक्सेस मिल जाएगा. ऑलराइट, और आईपी दे दो 172.16.16.16 लेट्स से 100. ओके, 100 दे दो और गेटवे क्या देना है 172 जो फायरवॉल का आईपी है जो 172.16.16.16 and you will get the access here, right, /24. So subnetting, we will discuss subnetting, those who want to discuss the subnetting but not here but later.
Okay, those who want to know, we will discuss it later. All right, so we'll use different networks here. All right, so let me just put the another one. All right, so we'll discuss about this. Okay, so let me just share the lab that we will be working on. Let me share the labs. All right. So we'll discuss about the gateway mode. All right. So gateway mode क्या है वो discuss करेंगे lab पे आज, and then we will continue tomorrow, and we will discuss about the doubts. All right. So we will be working on the multiple topologies. Both सारी हम topologies यहाँ पे create करेंगे so that we understand how we can configure the firewall. So in this topology, what I configure here is that this is the simple one. So we have some lag configuration, we have some bridge configuration, we have some static routes चल रहे हैं यहाँ पे, all right, between the firewall and the L3. I'm running OSPF between this. We will जो lab होगा हमारा, ठीक है, lab पे हम करेंगे static routing करेंगे यहाँ पे दोनों के बीच पे with the firewall and the L3. We will configure the dynamic routing. All the dynamic protocols we will configure one by one. First, we will start with the static. Then we will configure RIP. We will go. Then we will configure OSPF and BGP between the firewall and the switch, L3 switch. Okay, we'll configure L3 switch. We will configure multiple network, and we will have access. All right, and we will also see what we can do in this topology. All right, so we'll configure this one. If I just let me just what I can do, let me show you the another topology that we'll be working on. जो हम दूसरी एक और एक topology पे काम करने वाले हैं, उसको भी मैं let me just show you guys. Okay, let me stop all the nodes first. Okay, and let me just go to the first tab. Okay, this might not look good, but yes, let me just show you. Yeah, so I think I can move and show you. Just move this. Okay, so this would be our lab. All right, so this would be the another lab we will configure. जो हम यहाँ पे लैब पे ये पूरा टोपोलॉजी ये भी कॉन्फ़िगर करेंगे कैसे. तो यहाँ पे हमारा जो फायरवॉल होगा वो HA में होगा. ऑलराइट, सो अगर कोई भी फायरवॉल डाउन होता है, राइट, एक्टिव पे करेंगे, एक्टिव एंड एक्टिव पैसिव HA. We'll configure active passive. We will see how failover works. All right, in the live session. We will also configure active passive और कैसे हम ट्रैफिक को यहाँ पे लोड बैलेंस करेंगे. All right. Then we have multiple ISPs that are connected here. You can see. So हम यहाँ पे SD-WAN use करेंगे. We will use SD-WAN settings to route the particular traffic. We will use STARS for authentication. Captive portal भी करेंगे और we'll use STARS. We have AD server here. We also configure the switch, L3 switch, right? And this would be your topology. We have MPLS, 2 MPLS connection, and we have branch office. So this is our head office, and this is our branch office. We will also configure the IPsec side to side failover. If one ISP fails, then traffic will pass from another IPsec tunnel. There would be 2 tunnels between the head office and the branch. This is your branch office. All right, this firewall is your branch office. So we'll see that. Okay, this branch office is connected with 2 MPLS link here. Okay, let me just position it properly.
All right, so yeah, and HA. All right, we will configure another HA active passive and active here, and we will configure the failover between the MPLS so that this PC, okay, let's say this PC can ping this PC. So hello everyone. I hope everyone is doing good. Let me know if I'm audible on chat. Okay. So seems I'm audible, right? Great. Okay, so let's begin. We will continue from the last session where we have left. So I will share my screen to you guys first. So we will discussing about the topology. From the session we have left from the last session. Tomorrow we have discussed about the topics, the modules that will be covering up. And in the end, we have discussed the topologies that we will be working on. So there, one of the topology that we are going through, that would be on your screen. I will explain this topology so that you understand what we will configure to meet this business requirement. Let's say we have head office on the left hand side, and we have a branch office on the left hand side. So this firewall, so we can see Sophos Firewall on the head office. We have multiple ISPs so that we can load balance the traffic between those ISPs. We'll configure through Sophos Firewall. So yes, again, we have two ISPs connected with Sophos XG, or you can say XGS devices. Here we will use virtual. We also have two MPLS link, as you can see here. This is the scenario where we have created MPLS connections. So we will discuss, we will configure MPLS as well on the firewall, and we'll see the working, and we will see the failovers. So we have failovers. We will test. Main task is to check that we have a good failovers. We have zero downtime in our network, right? So we have, let's begin with the firewall. So we have firewall also in HA, high availability. So if any of the firewalls fails in any of the reasons, due to hardware reasons or any of the reasons, the traffic will get moved to the active one, the active firewall. If let's say we can configure this firewall in activity to load balance the traffic of LAN users. We will also configure the HA in active and active passive both. So we have failovers, right? So internet failover we have multiple ISPs. Let's say we will also configure two more ISPs. So 4 ISPs, 2 MPLS and HA. Then we have L3 switches, LAN network here, and we will expand this network later on. But for test purpose, we have one AD server and a Windows server. So we will just walk through the existing configurations, and we will see some settings, and I will also guide you. So we will go through some theory part, and then later on we will start this lab from scratch. All right, so if I just click on I hope everyone is clear with the topology. Okay, so this is the head office again, and this is our branch office. We have one PC here. So we have network running here and here. So the task is to the head office and branch office towards the head office. They should communicate each other, all right, without any
delays or without any interruptions. So that we have to configure. So we will configure those things in our lab. So what we'll do, we'll look into this configuration. We'll look into the MPLS configuration, then we'll look into the branch office configuration one by one. All right, so just let me just log into the access this PC. Right, let me just zoom it. I will zoom it for you. So the default IP, I'm just accessing the firewall. Let me just zoom it more so that you can see. Okay, so we have access to the head office firewall. All right, so let me just click on the administration first and show you the current license. We will go with the license as Ketan is there, right? Yeah. So we will the doubt will be clear here. Yeah. So yes, we will be using all the licenses. So if I just zoom the license, right? Let me zoom the license for this device. What we have here, we have base license, correct, for 1 month. We can use this firewall for 1 month, stateful license, VPN license, wireless license. We have network protection license, correct. हमने जो कॉल मॉड्यूल्स डिस्कस किए थे, सारे मॉड्यूल्स के लाइसेंस हमारे पास यहाँ पे है और सारे लाइसेंस हम यूज कर सकते हैं. अगर रियल लाइफ सिनेरियो में अगर कोई पर्टिकुलर लाइसेंस या पर्टिकुलर फीचर नहीं चाहते, इट्स ओके, यू डोंट हैव टू बाय दोज लाइसेंस. बट इफ यू रिक्वायर्ड, अगर आपको सारे फीचर्स यूज करने या फिर जो भी डिफाइन फीचर्स यूज करने, देन आपको उसके लाइसेंस लेने पड़ेंगे. बट हम यहाँ पे लैब पे सारे लाइसेंस यूज करेंगे और सारे फीचर्स एक साथ हम यहाँ पे यूज करेंगे. ऑलराइट, you can similarly you can use all the features on your, those who are working with firewall, they can use all the features and the license so that you can use आपके जो बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से आप उसको ले सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे अगर स्क्रॉल करूं मैं, सो वी हैव वेब प्रोटेक्शन लाइसेंस ऑल्सो, हमें यहाँ पे फ्री ट्रायल है. ओके, सो इफ यू आर यूजिंग वेब, ओके, वेब जो फीचर है, ठीक है, सोफोस प्रोवाइड करेगा आपको, एंड वी विल सी व्हाट इज वेब लेटर ऑन इन मच मोर डिटेल. बट लेट्स टॉक अबाउट द लाइसेंस. अगर आपको वेब यूज नहीं करना है, अगर आपको अपना सर्वर फायरवॉल से नहीं प्रोटेक्ट करना है, देन डोंट वरी, यू डोंट हैव टू बाय द लाइसेंस फॉर वेब. Or if you don't want to protect your emails, you don't have to buy the license for your email. But if you, yes, if you want to protect your emails, the license is required. Then we have this is the free license, so we will not be getting enhanced plus support from Sophos. But yes, if you want anything to be done from the Sophos Firewall end or kuch issue aa raha hai, then we can just take the help from Sophos. They might help. All right, so let me scroll back. So what license we have? So the license come in different bundles for 1 year, 2 year, 3 years, depends which depend on your requirements. So you can buy as per your, we'll discuss those license for 1 year, 2 year in next class. So here we will be using network protection license, web protection license, 0-day protection. Also, this web protection will have the license for application control, malware control, everything. We will be using SD-WAN features, so we have license for that as well. All right, so on lab, yes, of course, you will get all the license. You don't have to worry about to purchase the license. It is a free trial, so we can use it. All right, so this would be the license of the device. You can see under system, administration, and licensing, and your license. All right, आप सारे लाइसेंस एक साथ भी यूज कर सकते हो, नो वरीज. और पर्टिकुलर सिर्फ वेब प्रोटेक्शन ही करना है, सिर्फ वेब प्रोटेक्शन का लाइसेंस लो तो आपको वेब प्रोटेक्शन मिल जाएगा. लेट्स से इफ यू वांट टू ब्लॉक फेसबुक, यूट्यूब, देन यू हैव टू बाय web protection license. Rest maybe rest email protection, web protection might not require. All right. So this is the license. All right, so we apart from license, let me just go through the settings of this firewall, what we have here. So we can see HA है, right? तो हमारा सबसे पहले HA का सेटिंग एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम कॉन्फ़िगर भी करेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप. जस्ट हैव अ लुक फर्स्ट एंड देन वी विल सी कॉन्फ़िगर the same settings one by one.
So HA, so we have active. तो हम एक्टिव कॉन्फ़िगर करेंगे, एक्टिव पैसिव कॉन्फ़िगर करेंगे, एक फायरवॉल उसको शट डाउन करेंगे और देखेंगे हमारा यहाँ से कंटिन्यूस पिंग लग रहा है कि नहीं। और सो हम एक बार एक सिस्टम की सेटिंग्स एक बार देख लेते हैं. So what system configuration we have here? If I can zoom it, let me see. I think I did that. Let me check. Okay. Properties. Let me zoom it this much. It's fine. Okay. So ये सिस्टम का IP क्या है यहाँ पे वो देख लेते हैं. So it is 172.16.16.100. All right. You can see here. Let me mark it for you. And what is the gateway? That is the firewall. Okay, तो firewall हमारा gateway. तो जैसे हमने कल पढ़ा था गेटवे स्टार्ट किया था राइट थियोरी में. सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द गेटवे और सारे जितने भी मॉड्यूल्स हम गेटवे मोड पे ही पढ़ेंगे. बट यस ऑफ कोर्स वी विल सी अदर मोड्स लाइक ब्रिज मोड क्या है और एंड मिक्स मोड क्या है, डिस्कवर मोड क्या है. यहाँ पे डिस्कवर जैसे सिस्को में स्पैन होता है उस पे से सिमिलरली डिस्कवर मोड होता है. वी विल डिस्कस दैट लेटर. सो लेट्स जस्ट वेरीफाई द फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन. सो वी हैव गेटवे सोफोस and the IP address of this system is 16.16.100. All right. So let me just show you now the high availability active. हाई एबिलिटी जनरली क्या होगा हमारे यहाँ पे जीरो डाउन टाइम होगा. यहाँ पे अगर कोई भी फायरवॉल, अगर हमारे पास एक फायरवॉल है जैसे कि यहाँ पे हमारा ब्रांच ऑफिस में एक फायरवॉल है, अगर एक वो फेल हो जाता है तो वो चीज क्या होगा, मीन्स राइट वी हैव डाउन टाइम देयर. But if you don't want downtime, we should place another firewall in active or active passive mode so that वहाँ पे हमारा full network coverage रहे, right? So we don't have the downtime for that. So we'll see how we can meet this requirement. We will configure this. So we have configured HA here. You can see the existing setup of this HA. We are monitoring the port. If this port is getting failed, then HA will take over. We'll see the logs, कैसे HA form होता है, all right? कैसे sync होता है, कैसे configuration sync होगी, कैसे traffic load balance होगा एक्टिव में और एक्टिव पैसिव में. जब आप एक्टिव करते हैं तो दोनों में लाइसेंस चाहिए होता है. यानी अगर आप जो ऑन प्रीमाइसेस फायरवॉल्स होते हैं, ठीक है, फिजिकल फायरवॉल्स होते हैं, उस पे हमें दोनों पे लाइसेंस लेना पड़ेगा. ऑलराइट, दोनों अगर एक्टिव चलाना है तो. अगर एक्टिव पैसिव चलाना है इट्स फाइन, यू कैन परचेज वन लाइसेंस फॉर वन डिवाइस, ऑटोमेटिक दूसरा उसको सिंक कर लेगा. ऑलराइट, सो विल सी दोस थिंग्स इन मच मोर डिटेल इन दी पर्टिकुलर मॉड्यूल होगा हमारे इसके पास. बट यू कैन सी वी हैव HA सेटिंग्स. अगर एक फायरवॉल फेल होगा तो दूसरा, तो जो दूसरा फायरवॉल है वो उसका IP क्या है 170.16.16.17. चलो उसको एक्सेस कर लेते हैं. तो जब भी आप HA कॉन्फ़िगर करो दोनों फायरवॉल का एक्सेस GUI पे आ जाना चाहिए. ऑलराइट, so it works on 4444. So let me just log in or take the GUI. Okay, so this is the another firewall, secondary firewall, right? Okay, those who have any doubt, just raise the hand. I will just see if anyone has any doubt. Right, so we have access to the secondary firewall here. Right, we will not log in, it's fine. So this is the HA configuration here. All right, what we'll now we will look into the network configuration. So go to configure and network. All right, so what we have here, so we have HA link here on this port. अभी port 8 port A है जो हमारा, ठीक है, वो हमारा कौन सा LAN port है. Okay, so we will configure this one by one. Not to worry, just have a look on the existing settings. So we have LAN, all right, और उसका नेटवर्क हमारा है 172.16.16.16. पोर्ट B is WAN, एक इंटरनेट कनेक्शन है हमारा. all right, so you can assume any IP. So here it is 192.168.98.2. all right, we will use this port C as DMZ zone later on. Then we have port D और एक इंटरनेट कनेक्शन है हमारे पास. all right, so it's 192.168.99.2. this is 98.2. all right, then we have port G again. This is my MPLS link 1,
and another I have MPLS link to on port H. Right, so this is my configuration. We have 8 ports here. 2 ports यहाँ पे है जो मैंने HA के लिए use किए. Right, so there are 2 other ports. Total I have 8 ports on this firewall. जो फिजिकल फायरवॉल्स आती है उस पे पोर्ट्स डिपेंड करेंगे आपके हार्डवेयर, कौन सा हार्डवेयर ले रहे हो, ऑर्गेनाइजेशंस कौन सा है. सो विल डिस्कस अबाउट द साइजिंग, आपको कौन सी फायरवॉल लेनी चाहिए एज पर योर ऑर्गेनाइजेशन, जैसा आपका नेटवर्क है उस हिसाब से. सो विल डिस्कस दैट लेटर ऑन. वी कैन एक्सपांड, लैब पे तो हम एक्सपांड करके पूरा टेस्ट करके हम डिप्लॉय कर सकते हैं, लाइव जा सकते हैं. ऑलराइट, सो दिस इज द सेटिंग्स टिल नाउ. So we have some zones. Let's see what is zone here. Anything. So there are default zone, LAN zone, WAN zone, DMZ zone, VPN zones and Wi-Fi zone. हम उसको edit नहीं कर सकते, but अगर हमने कोई custom zone create किया है, then we can edit and we can enable the settings which are required. We will see these settings one by one later on. Now, Vent Link Manager. यहाँ पे आपका जितना भी इंटरनेट जो WAN कनेक्शंस होंगे, ऑलराइट. सो वी विल सी हियर these are the WAN, all the internet, there is internet and this is the MPLS link, as I said, 1 and 2. So we have internet on port B, port D, or MPLS 1 and MPLS on G and H. All right. So we'll also troubleshoot अगर कुछ इश्यू आता है, जैसे कि ISP डाउन है. ऑलराइट, ISP डाउन नहीं है क्योंकि मेरा तो राउटर अभी अप ही है. सो विल सी दैट, troubleshoot भी करेंगे, उसको फिक्स भी करेंगे. ऑलराइट, सो यस ऑफ कोर्स वी हैव सम DNS. यू कैन सेट योर DNS इफ यू वांट, बट अभी के लिए मैंने एडिट किया हुआ है. ऑलराइट, we can configure DSCP on firewall, but may L3 पे DSCP, I will run DSCP on that. All right, so these are the configuration for under network. All right, and then let's move to IPsec site to site. So we have site to site connections. So we have failover. If one ISP gets failed, then another will take it over. All right, let me just ping wipe. So branch office का जो नेटवर्क है वो मेरा 172.16.16 sorry 17.0 है. So IP is the firewall का जो IP है उसका 16 है. Okay, so let me just ping. So I can ping that IP. तो ping तो हो रहा है. So I will see where the traffic is passing. Traffic कहाँ से जा रहा है. So what I will do, I will go to monitor and analyze, diagnostic, packet capture, and click on configure. And let me just put the destination IP 172.16.17.16. Okay, and proto ICMP. Okay, click on save and turn on the packet capture. So let's see traffic कहाँ से जा रहा है. All right. Okay, currently it is going through MPLS. Should not be, right, actually. Okay, we'll fix this. Yes, now I can see the traffic. So I can see traffic कहाँ से जा रहा है, मेरा IPsec से जा रहा है. All right, क्योंकि अभी मेरा MPLS जो है वो मैंने डाउन किया हुआ है. तो मैंने फेलोवर कैसे रखा हुआ है, पहले 2 MPLS है. अगर कोई भी MPLS फेल होता है तो पहला वाला प्रायोरिटी पे रखा है, दूसरा वाला मैंने सेकेंडरी पे रखा है. सो पहला, इफ फर्स्ट इज गेटिंग फेल, इट विल मूव टू second MPLS. Let's say both are getting failed, then the traffic will pass from first IPsec VPN. अगर वो भी fail होता है तो fourth IPsec VPN से मेरा traffic जाएगा. So I have 4 redundant link. I can see traffic is moving. That's the reason I can ping the opposite firewall. Okay, so ये मेरा branch office है. You can see this is the branch office. उसको थोड़ा refresh कर देते हैं. Okay, so here it is. So this is my branch office firewall. It is 172.16.16.16 17.16. All right, so I'm pinging from head office. तो जो PC है मेरा वो head office में, मैं head office से कहाँ ping कर रहा हूँ, branch office में ping कर रहा हूँ. All right, traffic कहाँ से जा रहा है, फिलहाल मेरा अभी IPsec से. रीजन है क्योंकि मेरा अभी MPLS डाउन है, मैंने MPLS डाउन करके रखा है. So we'll see this type of failovers. हम failover करेंगे, देखेंगे इंटरनेट हमारा चलना चाहिए अगर मेरा कोई एक firewall डाउन हो जाता है हेड ऑफिस पे. ओके, क्योंकि मेरा HMA, राइट. सो इफ आई मेक a continuous ping, okay, so this is the continuous ping. So what I will do, I can just turn off the firewall. यहाँ से मैं सिर्फ सिंपल लैब पे जो firewall है, ठीक है, इसको मैं टर्न ऑफ कर दूंगा यहाँ से. स्टॉप.
तो ट्रैफिक कहाँ से जाएगा मेरा, यहाँ से लोड बैलेंस। जैसे मैं इसको स्टार्ट करूंगा वापस से, तो ट्रैफिक वापस यहाँ से जाएगा। ऑलराइट, क्योंकि मैंने इसको सेट किया है प्राइमरी। So we'll see that one by one. Let me just go to that PC again. PC पे जाते हैं और सेटिंग्स देखते हैं IPsec का कैसे हुआ. So let's go to routing now. So I have done with the routing with the SD-WAN. All right. So currently, let me just go to gateways. What I have. So again, I have internet connections. I can see जो मैं अभी मैंने आपको दिखाया नेटवर्क में जाके, right? क्या दिखाया मैंने? WAN लिंक मैनेजर। ये है ग्लोबल, आपका यहाँ से आपको ग्लोबल मिलेगा, ये ग्लोबल सेटिंग्स है यहाँ पे। राइट, सिमिलरली अगर हमें यहाँ पे देखना है गेटवेज कौन कौन से हैं, ऑलराइट, सो वी कैन सी इट फ्रॉम राउटिंग एंड गेटवेज। तो वी शुड नो द गेटवे कहाँ से उसको ट्रैफिक भेजना है, राइट? जैसे इंटरनेट का ट्रैफिक है, एमपीएलएस का ट्रैफिक है, एंड सो ऑन। So we have these two internet, all right? So ISP1, ISP2, MPLS1, MPLS2. Currently MPLS is down. So let us do one thing, just a bit turn on kar dete hain, right? So right now you can see it is down. So let me just go and turn on the MPLS1. Okay, एक MPLS on कर देते हैं अभी के लिए, और दूसरा बाद में on करते हैं. So we'll see what is happening here. So let me just go back to that PC and see the settings. कौन से हमने configuration किए इसको. So we have SD-WAN profile. तो प्रोफाइल मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे. So you can see दो प्रोफाइल बनाई है for internet and MPLS connection. अगर मेरा ट्रैफिक MPLS पे, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, if I click on this profile, so what I have defined, first available gateway. अगर जो भी मेरा इंटरनेट का अवेलेबल गेटवे है उससे इंटरनेट मेरा जाना चाहिए. जैसे कि अभी ये ISP डाउन है तो ट्रैफिक मेरा ISP2 से जा रहा है, राइट? अगर मैंने इसको फर्स्ट अवेलेबल यहाँ पे अगर वापस रिस्टोर हो जाता है तो ट्रैफिक फिर यहाँ से जाएगा. ऑलराइट, सो यू कैन डिफाइन द पॉलिसी. वी विल डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी पैरामीटर्स ऑफ SD-WAN प्रोफाइल, but today just look into the profile that I have configured. Right, similarly we will configure and we will discuss much more detail in the modules. तो मेरे पास और एक MPLS की भी प्रोफाइल है, जो मैंने MPLS का प्रोफाइल बनाया है यहाँ पे. ये ट्रैफिक MPLS 1 से जाना चाहिए और 2 से, अगर 1 डाउन है तो 2 से जाना चाहिए, अगर 2 डाउन है, 2 तो डाउन होगा तो फिर यहाँ पे MPLS 1 से जाएगा, राइट? अगर वो अवेलेबल है तो. सो दिस विल बी दी फेल ओवर कंडीशन, राइट? सो वी कैन सेट, अगर MPLS 3 भी है, 4 भी है, देन वी कैन सेट ऑल द, और इसको हम प्रायोरिटी भी कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप से. सो यू कैन जस्ट सिलेक्ट एंड drag and drop it. Okay, so this is the policy, MPLS1 and MPLS2. Let me just click here. So अभी मेरा ट्रैफिक इंटरनेट का कहाँ से जा रहा है? ISP2 से जा रहा है. अगर मेरा ISP2 अप आ जाता है तो टिक मार्क यहाँ पे मेरा हो जाएगा. ऑलराइट, एंड वी कैन गेट दी सम स्टेटस एंड हियर एवरीथिंग. So let me just check from where the traffic is passing right now. ठीक है, ट्रैफिक पहला मेरा गेटवे अप आया कि नहीं वो देख लेते हैं. सो लेट्स सी इफ माय गेटवे इज अप. सो MPLS is 1 is up. Okay, I can see my MPLS gateway is up. Let me see the profile so I can see ट्रैफिक अभी कहाँ से जा रहा है मेरा? MPLS 1 से जा रहा है, राइट? पहले कहाँ से जा रहा था? IPsec से. तो मैंने प्रायोरिटी कैसे रखी हुई है? MPLS 1 से जाना चाहिए, MPLS 2, देन IPsec 1, देन IPsec 2. तो IPsec का कॉन्फ़िगरेशन मैंने कहाँ पे किया? It's here. Okay, so we have failover with this. दो ISP के साथ हमने failover यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है. So we'll see this. Don't worry. Let's come back to SD. So we have profile and we have rules. So this is the MPLS rule. So traffic कौन सा है? Source and destination. All right. So let me open this rule, SD-WAN rule. So what we have, source and destination. All right. So अगर कोई भी ट्रैफिक आ रहा है यहाँ से, और डेस्टिनेशन 170, 16, 16, 17 है, तो कहाँ से जाना है? मेरा प्रोफाइल से जाना चाहिए. MPLS फेल ओवर जो मैंने यहाँ पे बनाया है, राइट? हियर it is passing from this. So let's check again. If I go to diagnostic and packet capture and turn off, clear the logs. Okay, whenever you are yes, make sure that whenever you are turning the packet capture on, जब उसको नहीं चाहिए, you just turned it off. Okay, so let's check the ping.
So now you can see traffic is passing from MPLS, right? So MPLS मैंने आपको बताया था मेरा MPLS connection कहाँ पे, port G और H पे, right? If I go back to again network, and this is my H and G, that is MPLS. All right. So now traffic is moved to MPLS, right? So ट्रेसट करते हैं. Okay, so ट्रेसट 172.16.17.16. Okay, let's trace it. So I think I will get my MPLS router IP here. अभी traffic मेरा MPLS से जा रहा है तो, all right. I can see it is passing from IPsec now. That's the reason it is coming timeout, right? But still, if you see, I can ping the gateway. Okay, so abhi IPsec se ja raha hai, all right. No worries, we will wait for some time. It might take some few minutes because फेलोवर कब होगा जब आपका आईएसपी डाउन है या फिर कोई आपका लेटेंसी है in that case. Okay, so it will take some time. No worries. So as of now, I am able to ping. So I don't have to worry about the trace route, but yes, of course, we will see. जब हम failover करेंगे तब हम trace route करके देखेंगे ट्रैफिक कहाँ से जा रहा है, कौन से MPLS से जा रहा है. All right, so let me just try again if I get the exact trace route. So I will do 16, that is my firewall IP. Okay, it's passing from IPsec only right now. No worries, let's wait for a while. Meanwhile, let's go to diagnostic packet capture and see if the traffic is going on IPsec. So no, we'll wait. Okay, let me clear the packet capture and turn the packet capture back. Okay, we will go इसको slow करेंगे, no worries. And batch में हम सब में आपको packet capture कैसे लेना है और कैसे traffic देखना है, we will see that in case of an issue. So right now I can see traffic is passing from MPLS connection. All right, let me just verify again if I can see. Okay, now let me just see where is the issue. कहाँ पे issue है? So if I scroll, let me turn on this one. Okay, I will turn on this one. And one more thing I will do, I will go back to that PC. Trace route दिखा देता है, ठीक है, trace route. So we'll fix this. ऐसे ही हम fix करेंगे सारी labs. वैसे इसमें कोई issue नहीं है, but ये suppose it as it is software based, so we will fix it. Let me just go to routing. Let's fix why the traffic is, I'm not able to see the next hop. So let me just go to gateway. Yes, my MPLS is on. So traffic should pass from this, right? So let me just copy this IP and ping from firewall. So we have tools. So I have on port G. Let me just ping the next hop IP, that is 2 actually. That is my router IP. We'll see that. So my MPLS router is reachable. Let me ping the another one, 55.2 on port H. Ping. Let's see, okay, so I'm reachable. So MPLS to reachable here. Again, let's go to packet capture and see, turn off, turn on, and let me try back if I can trace route. No, it's going from IPsec still. I can see it is directly, the trace route is getting completed. So what we'll do, let's wait. Let me check the configuration now, because what I have did, if I go to routing, I have configured RIP here. So let me see if all the routes are available. So if I go to RIP,
Okay, so reconfigure karte, right? So if I show you the topology, let me show you the topology what we have. तो यहाँ पे क्या है कि Sophos Firewall के साथ मेरा यहाँ पे MPLS पे RIP and EIGRP चला रहा हूँ, right? So we are distributing the networks. Okay, this way I have created the MPLS connection for test purpose. So we'll see. We have all the routes first. All right, so let's check the routes. Okay, so आज fix भी करते जाते हैं and go through भी करते हैं कैसे करना है. So let me just check all the routes are available. Scroll down. Okay, so मैंने यहाँ पे routes डाले हैं in the RIP configuration. ये मेरा RIP configuration है यहाँ पे firewall पे. Let me scroll down. So मैंने यहाँ पे अपना network डाला हुआ है. Alright. सामने वाला network डाला है दोनों MPLS का and जो port पे connected है. Alright. So this is the RIP configuration. And if I just go to system administration, device access, here I have enabled dynamic routing on WAN zone. All right, because मैं RIP चला रहा हूँ. That's the reason. अगर आप कोई भी dynamic protocols चला रहे हो, then you have to enable this on that zone. अगर VPN में चला रहे हो, then you have to enable on the VPN. But we'll see. Let's first see this one. के सारे routes है क्या नहीं. So go to routing again and let's see the information. Let me just click on RIP. All right, now let me just scroll and I have added the interfaces. Let me check if I get the route. So click on information. यहाँ पे आपको information करके मिलेगा. All right, if it is not there, just click on this 3 dot and you will get the information. तो RIP के जितने भी routes होंगे अगर आप OSPF चला रहे हो, then you will get all the details here. So it's BGP, all the routing protocols details you will see here. So as we are running RIP, we'll see here. Yes, so I can see the routes are available, right? तो मेरा जो MPLS का routes है वो एक MPLS का routes ये है. All right, this is the one MPLS, this is the another one. Let me now troubleshoot if I can. Okay, no worries. Let me just check it back. All right. Now let me just check what is going on here. Okay, let me just check with CLI. Let me log into the CLI. I will restart the session. So yes, let me just show you how I took this as well. So we will have putty session. 132.16.16.16, right? So जब भी आप जब CLI access लो तो क्या करो आपको जब just a minute, let me just mute guys. Okay, so let me just log into the CLI to fix this issue. Let's see if we can. So change the settings और logs हमेशा सेव करो. और क्या तो कैसे log सेव करना है अगर हमने CLI लिया है तो यहाँ पे so just second click and go to change settings, click on login, all session output, browse and save it on one location. That is fine. So I can just type sophos.logs. Okay, the extension would be Sophos, then dot and log. You can give the name and dot log. Click on save. Apply it and let it make this large what I'm doing here. So you get the idea. Appearance. So I'll just make it large so that you can see. Apply. Okay, so now I will log in with the admin user. Okay. So this is my CLI.
All right, I can see the details of my firewall, the firmware version running. If you have virtual, then you will see virtual model name. If you have hardware like XG 120 or 105, you will see the model number here. You will see the host name. You will see HA. It is HA primary or secondary, or I have given the name as node 1, node 2. So this will show you this is a primary. You are on the primary device right now. Okay, so we have these options: network configuration, system configuration, route configuration, device console. सबसे ज़्यादा user में इसका करेंगे. All right, these two. We have VPN management. We'll see these options later on one by one. So let's begin with the option number first 4. I'm going to the console access. So I'm just checking my route precedence actually. If you check what are your route precedence, you have to execute this command: system route precedent show. So I can see it is VPN static. Okay. So what I will do, I will change this for troubleshoot purpose. All right, set to static SD-WAN and VPN. I hope this will help me. So let me just test root. Okay, so you can see now my traffic is passing from 65.1, that is my MPLS right now. पहले कहाँ से जा रहा था? मेरा IP6 से जा रहा था, right, traffic. But now the traffic is passing from my MPLS. So this way we'll troubleshoot the issues that will come up in the lab. We'll fix it, how we can make it work. All right. So let me just revert these changes. Go to CLI, system route precedent, set. Let me set VPN. That should be completed, right? It should get completed. So let me just try again: VPN, SD-WAN, and then static. Okay, so it got completed. I will keep the routing same again. Okay, you have to perform this only on first lap. All right. So let me see the existing settings: system routing precedent show. So currently it is static, VPN and SD-WAN, and आपका ये जनरली इसका मतलब क्या है यहाँ पे टॉप टू बॉटम काम करेगा. All right, so static route पहले follow करेगा, then SD routes, and then lastly VPN routes. So let me just try again. Traffic कहाँ से जा रहा है? Okay, so it is going from my MPLS only. All right, so this is my MPLS links. All right, so it is the trace route is getting completed. The traffic is passing from MPLS. So if I make a ping, it should work. Let me try 117, 16, 16, 17. That is the firewall network 16. Yep. So it got stopped, right? Let me just revert the changes: system route precedence, set, VPN, SD-WAN, static. Yeah, so now it's working actually. So we'll see what are the exact issues that we will cover up. If we have this type of issues, we will fix it. All right, so now I can see traffic is passing. Let me just trace route back. So now it is passing from VPN. All right. Now let me just check the settings. Click on information, check the routes. Let me just go to the gateway. So now I can see my MPLS 1 and 2 is up. The traffic is passing from MPLS 1, ISP 2.
Okay, now let me just re-verify everything is working. The default is static SD-WAN VPN. Okay, this is the default settings on the firewall. So let me just check it back. As of now, I will make the reachability. Okay, from other side it's getting dropped, so no worries. Let me just do a ping. Oh, I set up the same. So let me try back system route, then VPN, SD-WAN. Yeah, SD-WAN and set VPN static. Okay, this should be fine. Okay, we'll see that. I think we have issue with the MPLS might be. So let me just log into one of the VPN routers. It's the MPLS router here. So what I have here, let me just look on the running config. Okay, so I will try from here 172.16.17.16. Yeah, it's reachable from here. And 172.16.16, that is my head office firewall. That is also reachable. Great, then it should work, right? Okay. So what I will do, let me just check where the traffic is passing right away, right now. So let me just go to the CLI and TCP dump, then apostrophe host 172.16.17.16 and proto ICM. So we will take some dump. Let's see where the traffic is passing. So I can see the traffic is passing from, yeah, let me just make it zoom. And again, let me start the, so I can see my traffic is going from MPLS only. Right, let me just stop it. So I can see traffic is coming from port A, right? That is my system IP 172.16.16.100. And where I'm doing the ping, that is 172.16.17.17.16, right? The request is coming from port A, and the request is going out from port H. All right, that is my another MPLS link. Here it is. Request is going back. All right, then I'm getting the request reply back from port G. All right, no worries, because it is load balance here. So yes, of course, I'm getting reply packet back from 172.16. That is the branch office firewall and towards my system. So I'm getting request reply packets here. So it is passing from MPLS. Let's try if the test should works. It should work actually. Test should D, then the destination IP 172.16.17.16.
Okay. Yeah, the reason is the IPsec. So let me just set the another route precision. So it would be system route set SD-WAN, then static, and then VPN. Let's see this one. So yeah, ping stop. Otherwise. So we'll move to the, because it is issue with the IPsec equipment, we will fix that. We will currently it is configured on policy base. That's the reason it might not work. We have to configure on the route base. So let me set VPN back, static, and SD. Yeah, now it's working. So this way, let's see, test route, it is passing from VPN. Yeah, it's passing from VPN. Set route precedent. System route precedent, sorry, and set, we will see with the static. Yeah, we'll keep this. Okay, so it depends on our scenario. Yes, so this will not work. Set. Let me see if I can test it. No worries, let me just check where is the issue here. We will do one thing. Let me just stop. I will stop this router. Now we wait for some time. Let me see the ping come up or not. So let me set the routing precedent again. Set static. The default one, I will keep it. Let me check the status of the routers. Yeah, here. So it is up. Now let's verify. Okay, so traffic is passing. I'm getting the reply, as you can see here, but yeah, still.
Maybe let me fix it if we can do something else. Yeah, so it's passing from MPLS, but yes, the MPLS is causing the issue. No worries. The 69, right? Test route is getting completed, but we will fix that on the other side. From head office, yes, we are moving the traffic. So let me just turn on the ISPs. Okay, let me do one thing. I will turn off this MPLS. This might be the issue. So we'll fix the MPLS later on. Let's check with the other MPLS we have. Click on SD-WAN profile. So we will wait the MPLS link to come up. Let me just go to diagnostic and make a ping. Yeah, it's reachable, right? So let's see. The configuration is fine. Okay, so don't worry, you can use this configuration, but still it is not behaving. So no worries, we will fix this. Yeah, I've tested a lot of things on this lab, so that's the reason. So let's see the traffic. I can see the move, it is moving on MPLS. The port G and H are my MPLS. I'm getting the request reply. Yeah, so might be, let me set it back. Static SD and now let me just check ping if I can have a ping. .16. Nope. 172.16, 17.16. Okay, so VPN is not up. So right now traffic will not pass from VPN. So let's wait. Yeah, now I can see now traffic is moving right towards the MPLS. So it's taking some time actually. So it's fine. Now let me check the connectivity if I'm getting the ping or not. I think it will take some time. 55, 56, yeah, 57. Yeah, now it's working. Right? So issue is with the MPLS 1, right? So we'll fix it. No worries. MPLS 2 is working right now. So we'll see where is the exact issue. Not from the firewall. It is not this. We can confirm where it is the issue. It is from ISP side or the MPLS side, or it is from the MPLS side. All right, just give me a moment.
All right, so I can see now trace route is completed. So पता चला हमें कि कहाँ पे इशू है, MPLS से इशू है, राइट? हमारे कॉन्फ़िगरेशन तो परफेक्ट, सो विल fix it. So let's ping 172.16.17.16, right? So I can see the ping. अगर मैं पैकेट्स देखूं यहाँ पे अपने CLI पे, all right, so I can see traffic is going from MPLS. H and G is my MPLS. All right, so ping is working, so I can let me make a continuous ping. So here it is. All right. Okay, so now trace route is completed. So ये भी जो मेरा ट्रैफिक जा रहा है कहाँ से जा रहा है, MPLS से जा रहा है. अब देखते हैं इंटरनेट का ट्रैफिक कहाँ से जा रहा है. ओके, तो ISP तो डाउन है तो इंटरनेट नहीं चलेगा. सो लेट मी जस्ट टर्न ऑन द राउटर अगेन. राइट, तो पहले हमारे जो भी पिंग नहीं लग रहा था, ठीक है, ट्रेस रूट नहीं हो रहा था, राइट? तो कहाँ पे हमारा इशू था, यहाँ पे MPLS पे, वो हम फिक्स करेंगे राउटर की साइड पे. ओके, नॉट फ्रॉम द फाइल. सो दैट्स द रीजन आई एम एबल टू रीच. अभी हम जाएंगे नेक्स्ट लैब पे, टोपोलॉजी पे. लेट मी जस्ट गो टू द लैब टोपोलॉजी, और जो हमारा ISP, ठीक है, उसको स्टार्ट कर देते हैं. ऑलराइट, सो दिस इज आवर टोपोलॉजी एंड कॉन्फ़िगरेशन. सेम चीज हमारा है यहाँ पे. Let me just put this PC and everything here. All right. Okay, let me just move it more. राइट, तो मेरा ये हेड ऑफिस है और ये स्विच भी हो गया यहाँ पे मेरा. या राइट अगेन. So I hope I am audible, everyone. Say yes on chat. Okay, so we have, yeah, who has raised the hand? Yes, hello. Let me ask you to unmute. Yes, sir. Hello, yeah. Hello. हाँ बोलिए सर. Can you hear me? Yes. 1 minute. I think there is some issue. Just give me a minute. We can hear you, sir. Yeah, I can hear you now. Can you repeat your question? Yeah, my question is regarding this out of band port is available on appliances on the hardware. Just give me a minute. Your name is Ketan. Ketan. Hi Ketan. Yeah, tell me your, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? जो बॉक्स जो रहता है हार्डवेयर जो बॉक्स, there is a management out of band management port is available on the box. Yes, management port is available for higher end device. तो अगर आपके पास, yeah, tell me. Yeah, go ahead, sir. Go ahead. Yeah, management port will be available on the firewall. You can What access about the and HA port? You can use any port for HA. आप कोई भी port There use is कर no there is no no dedicated there is no dedicated port on no high we don't devices. have we don't have dedicated, but yes, of course we can use any of the port for HA configuration. Because in the So Palo Alto and the Fortinet firewall, they have the dedicated HA port on that. yeah, the higher end device will have the dedicated HA port, but it depends on the model. Are you on, may I know on which model you are working on right now?
And the Palo Alto you're talking about, or Sophos you're talking about? Sophos. No, suppose I seeing first time. So it depends on the model. Though, if you bring the smaller device, you can make any port as HA. So it's very simple. You will see that we can configure to any of these interface and make those port as HA. Yeah. Okay. So this is firewall configuration. Yeah, this is this firewall configuration. The head office firewall. This you can see the GUI. This is the hardware. Okay, this is the example. Okay. All right, so you will learn about the configuration from scratch. I'm just showing you the working and the existing configuration on the firewall. Okay. Hello, sir. You can speak if you want to speak in Hindi, or if you have doubt in Hindi as well, you can speak in Hindi, English, anything will do. सर Yes. प्रोजेक्ट में भी सेम रिलेटेड ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन करते क्या सर फायरवॉल? Yes, we will do same configuration होती है, डिपेंड करेगा टोपोलॉजी भी कौन सी है आपके पास. अगर if you are working then you can, तो आप यही सेम फायरवॉल आप वहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं विद द सेम configuration. क्या है Same. तो हमारा SD-WAN मेराकी है, उसमें मैं नहीं करती, मेरे टीम्स लोग करते थे फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन, जो मैं यही फर्स्ट टाइम देखती. जो प्रोजेक्ट जो SD-WAN मेराकी फायरवॉल में भी ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन करते क्या? जितने भी अलग अलग जितने भी वेंडर्स हैं, ठीक है, सब में अलग होता है. जैसे कि यहाँ पे SD-WAN यू कैन सी हियर. अगर आपको SD-WAN सोफोस में कैसे करना है तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ आपको कैसे कॉन्फ़िगर करना है. जैसे कि यहाँ पे प्रोफाइल है, राइट. तीन चीजें हैं यहाँ पे. गेटवे है, यस यू कैन सी दिस आर दी WAN गेटवेज, और उसकी प्रोफाइल है SD-WAN. सो यू कैन कॉन्फ़िगर profiles and you can route those traffic through those profile SD-WAN. Let's say अगर आपको वॉइस का ट्रैफिक एक पर्टिकुलर आपके पास 4 ISP है, एयरटेल है, टाटा है, ऑलराइट, रिलायंस है एंड सो ऑन. सो अब अगर आपको वॉइस का ट्रैफिक एक पर्टिकुलर ISP से जाने देना है और पर्टिकुलर डेडिकेटेड स्पीड देना है, देन यू कैन डू विद हेल्प ऑफ SD-WAN राउट्स हियर. यहाँ पे जो रूट्स दिख रहे हैं, राउट्स दिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे बहुत सारे रूल्स कॉन्फ़िगर करेंगे. अभी तो 2 ही हैं. सो विल कॉन्फ़िगर ऐड मोर राउट्स. जैसे कि अभी मैंने बताया जो एग्जांपल, अगर आपको कोई पर्टिकुलर वॉइस ट्रैफिक कोई पर्टिकुलर ISP से भेजना है, देन यू कैन सेंड इट. या फिर कोई 2 ISP से भेजना है, लोड बैलेंस करवाना है, या फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व करना है, कैसे भी जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा इस हिसाब से हम यहाँ पे SD-WAN राउट्स एंड पॉलिसीज कॉन्फ़िगर करेंगे यहाँ पे. सो सी जो दूसरे वेंडर्स होते हैं, ये ऑफ कोर्स जो FortiGate में अलग से, वहाँ पे भी आप सेम चीजें कर सकते हो, बट हम यहाँ पे सोफोस फायरवॉल पे कैसे करते हैं वो हम कंप्लीटली डेडिकेटेड देखेंगे यहाँ पे. ये सपोज दूसरे डिवाइस में भी कर सकते हैं, मेराकी में भी होता है और रेस्ट ऑफ द वेंडर्स में भी अवेलेबल है. यू कैन ऑल्सो कॉन्फ़िगर ऑन पालो अल्टो एंड ऑल द फायरवॉल्स. जो भी फायरवॉल्स आपने अभी तक उसके ऊपर जिसके ऊपर काम किया, यू कैन डेफिनेटली कॉन्फ़िगर SD-WAN. बट हियर सोफोस पे कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे. सो मैंने अभी एग्जांपल बताया आपको, जैसे 2 हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है, 3 इंटरनेट कनेक्शन है, 2 MPLS कनेक्शन है. हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस को हमने IPsec VPN से कनेक्ट किया हुआ है. अगर कोई IPsec VPN 2 है, अगर कोई फेल होता है तो दूसरे जो एक्टिव होगा वहां से ट्रैफिक जाएगा, वहां पे भी फेल हो, यानी हमें 0 डाउन टाइम मिलेगा. एज वेल एज MPLS में भी हमने SD-WAN से उसको फेल ओवर कराया. अगर कोई MPLS फेल होता है तो दूसरे MPLS से जाएगा, अगर दोनों MPLS फेल होता है तो IPsec से जाएगा. सो दिस वे वी कैन डिफाइन दैट राउट्स. रनबुक के हिसाब से करते हैं सारे दूसरे वो राउटर्स लोग भी करते हैं वैसे ही. हाँ. या सॉरी, नहीं, रनबुक के हिसाब से करते हैं हमारे प्रोजेक्ट में. आई एम सॉरी, आई डिड नॉट गेट यू. LLD रनबुक बोलते हैं ना? हेलो. हाँ, मेरी आवाज सुना रही? ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. हेलो सर. या टेल मी. हेलो. यस प्लीज टेल मी. तो हमारे प्रोजेक्ट में LLD रनबुक के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं सर. ओके, सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर आपको सोफोस फायरवॉल डिप्लॉय करना है, सो विद SD-WAN अगर आपके नेटवर्क पे करना है या फिर कोई ब्रांच ऑफिस भी सेटअप करना है, देन यू कैन डू इट हियर एज वेल.
Thank you, sir. हेलो सर। Yes, Pranab. Yeah, tell me. सर एक क्वेश्चन है। Yep. Yes. सर अगर फायरवॉल में हम जो पॉलिसी अप्लाई करते हैं तो प्रॉपर्ली काम कर रहा है, लेकिन अगर फायरवॉल लगाने के बाद वो नेट मतलब जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा स्लो हो रहा है, थोड़ा सा मतलब बहुत स्लो हो रहा है, इसका पॉसिबल कॉज क्या हो सकता है सर? मतलब पॉलिसी जो है वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है, जैसे कि आईपी भी काम कर रहा है, जो ब्राउजिंग पॉलिसी वो भी काम कर रहा है, तो वो सब काम सब कर रहा है, लेकिन जो डेटा थ्रूपुट है वो बहुत कम हो गया है। इसका पॉसिबल कॉज क्या हो सकता है, कैसे हम चेक कर सकते हैं? देखो, रूट कोज पहले हम देखेंगे कि पहले एनालाइज करना पड़ेगा एक्चुअली आपको इशू एग्जैक्टली क्या रहा है, उसको डिफाइन करना पड़ेगा। लेट्स से इंटरनेट स्लो चल रहा है, तो इट डिपेंड्स, ऐसा नहीं कि फायरवॉल से ही इशू, इट कैन बी मल्टीपल रीजंस। सो ट्रबल शूट कैसे करेंगे हम फायरवॉल से? हम कर सकते हैं, लेट्स से एक डायरेक्ट कोई पोर्ट अवेलेबल है फायरवॉल पे, तो वहाँ पे एक डायरेक्ट लैपटॉप लगा के हम चेक कर सकते हैं वेदर हमने अगर लैपटॉप डायरेक्ट कनेक्ट किया है तो इशू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है देन डेफिनेटली हमें टोपोलॉजी पे ट्रेस रूट करना पड़ेगा कि कहाँ पे एग्जैक्टली वो इशू क्रिएट हो रहा है। सो दिस इज द वन ऑफ द वे यू कैन चेक इट। अदर थिंग, अगर आपने सोफोस की पॉलिसी लगाते उसके बाद इशू आ रहा है, देन वी कैन फिक्स दैट पॉलिसीज विद हेल्प ऑफ लॉग व्यूअर्स, लॉग्स चेक करेंगे और उसमें से जैसे कुछ ट्रैफिक ड्रॉप हो रहा है जो हमें अलाउड करना है, वी कैन अलाउड ऑन दोस पॉलिसी। सो दिस वे यू कैन फिगर इट आउट फ्रॉम द फायरवॉल फर्स्ट। सो पहले तो पहला स्टेप क्या होगा, अगर पॉसिबल है तो डायरेक्ट एक अगर कोई पोर्ट खाली है तो वहाँ पे लैपटॉप लगा के connect karo and see whether everything is working fine or not. If it is working fine, then we might have to look into the next hops that we have on your topology. So troubleshoot करेंगे, we will see as you can see ना। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, आप अपना सेम सिनेरियो यहाँ पे भी लैब परचेज करके सेम क्रिएट करो यहाँ पे एंड सी वेयर यू कैन फाइंड दैट सेम एग्जैक्ट इशू। अगर आप लाइव एनवायरनमेंट में अगर आपके पास एडमिन राइट्स नहीं है इन ईच एंड एवरी होप्स या फिर डिवाइस जितने भी उसके पास एक्सेस कभी कभी नहीं होता, सो सेम चीज आप यहाँ पे वेरीफाई करके कर सकते हो कहाँ पे इशू है। बट अगर आपको फायरवॉल से चेक करने के नहीं, सोफोस से हमें पहले वेरीफाई करने के वहाँ पे इशू है कि नहीं, देन यू कैन सिंपली डू टू थिंग्स, यू कैन बाईपास वन पर्टिकुलर सिस्टम और यू कैन कनेक्ट दैट पर्टिकुलर सिस्टम एंड वेरीफाई वेदर एवरीथिंग इज वर्किंग और नॉट। ओके सर अगर फायरवॉल का पॉलिसी अप्लाई करने के बाद ही इशू हो रहा है, मतलब पॉलिसी सब काम कर रहा है और ये हमने चेक कर लिया, हाँ वो फायरवॉल से जब कनेक्टेड है तब ये इशू हो रहा है, ठीक है, फायरवॉल कनेक्ट करने के इशू आता है। ओके, तो आप मुझे थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे, जैसे कि आप जब फायरवॉल से इशू क्या आता है जब आप लैपटॉप के यूजर के लैपटॉप में आप होते हैं, लाइक इंटरनेट नहीं चलता है या फिर कोई ड्रॉप्स? नहीं सर, इंटरनेट बहुत स्लो हो जाता है, काम सब कुछ होता है, जैसे कि आपका ब्राउजिंग पॉलिसी प्रॉपर्ली काम करता है, आईपी प्रॉपर्ली काम, सब कुछ काम करता है सर, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है स्लो हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या करो, एक जब भी सबसे पहले तो क्या कर सकते हैं, ट्रबल शूट के लिए स्टेप्स ले सकते हैं। लेट्स से इफ आई गो टू डायग्नोस्टिक्स, ओके, सबसे पहले आपका तो बहुत सारे रूल्स होंगे फॉर एग्जांपल। सो व्हाट यू कैन डू, फर्स्ट चेक कहाँ से कौन से रूल से ट्रैफिक जा रहा है, जो आपने रूल कॉन्फ़िगर किया है उसी रूल से ट्रैफिक जा रहा है कि नहीं। ओके, लेट्स से आई एम डूइंग अ पिंग टुवर्ड्स इंटरनेट, लेट मी जस्ट start the packet capture first. तो packet capture start करते हैं and let me just make a ping towards 8.8. Let me just start 8.8.8. All right, so I can ping 8.8. I can see, let me refresh the packet capture. So I can see traffic आ रहा है मेरा पोर्ट A से। All right, I can see मेरा सिस्टम का IP क्या है 162.16.1600 और उसने पोर्ट बी से आउट कर दिया, वो मेरा ISP है, राइट। सो यहाँ से मेरा आउट हो गया एंड आई कैन सी नेट ID 2 एंड रूल ID 5। तो मेरा ट्रैफिक कहाँ से जा रहा है, रूल ID 5 से जा रहा है, यहाँ से आप देख सकते हो। ओके, नेट ID और रूल ID देखना है कहाँ से जा रहा है। सो लेट मी गो टू रूल्स एंड पॉलिसी देन। ओके, so let me check that rule. Where is that rule ID 5? So here it is. So here is the rule 5. तो ट्रैफिक मेरा अभी कहाँ इंटरनेट से जा रहा है, ये वाले रूल से जा रहा है, ये मेरा डिफॉल्ट रूल है।
तो अभी तो मेरे फायरवॉल पे तो कोई पॉलिसी लगी नहीं, मेरे को तो कुछ इशू नहीं आ रहा है। सो दैट्स द रीजन। ये क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो ये प्लेन फायरवॉल रूल है। प्लेन फायरवॉल यानी सब कुछ बाईपास है। यहाँ पे मैंने कोई सिक्योरिटी पॉलिसीज नहीं लगाई, ना ही मैंने वेब फिल्टर पॉलिसीज लगाई है, ना ही मैंने कोई एप्लीकेशन कंट्रोल लगाया हुआ है यहाँ पे। नो ट्रैफिक शेपिंग। तो अगर आपने ट्रैफिक शेपिंग लगाया तो यू कैन चेक। सो विदाउट डिस्टर्बिंग कैसे हम चेक करेंगे, ऑलराइट, कि एग्जिस्टिंग को कुछ चेंज नहीं करना है। तो एक टेस्ट रूल बनाओ हमेशा। अगर इसमें कोई सेटिंग्स लगी हुई है, लेट्स से मेरा रूट ट्रैफिक 5 से जा रहा था और उस पर मैंने वेब फिल्टर, इसमें कोई पॉलिसीज लगी हुई है, ऑलराइट, एंड यू डोंट वांट टू हैम्पर द नेटवर्क, जस्ट गो टू अगेन द फायरवॉल रूल, क्लिक ऑन ऐड फायरवॉल, न्यू फायरवॉल रूल, और इसको क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। हम एक टेस्ट रूल सिर्फ करेंगे, इसको हम टॉप पे रखेंगे ये रूल को, ओके, फॉर टेस्टिंग पर्पस। रूल ग्रुप नन करना है, ऑलराइट। ये क्यों करना है, टेस्टिंग के लिए। यानी हम क्या करेंगे, जो ये मेरा सिस्टम है उसमें इंटरनेट स्लो चल रहा है मेरा, तो चेक करने के लिए कि फायरवॉल की पॉलिसी में इशू तो है, वो तो पता चल गया कि इशू में पॉलिसी हटा दे रहा हूँ तो मेरा चल रहा है, तो ये नहीं चल रहा है, ठीक है। मीन्स पॉलिसी लगाता हूँ तो इशू आ रहा है, अगर पॉलिसी नहीं रखा हूँ तो चल रहा है। सो लेट मी जस्ट select the LAN zone and WAN zone. Okay, so LAN zone and source जो डिवाइस होगा वो मेरा सिस्टम का आईपी होगा। सो लेट मी जस्ट ऐड इट। ओके, क्लिक ऑन आईपी डालते हैं डेट से, और मैं अपना एक जो सिस्टम पे टेस्ट कर रहा हूँ उस सिस्टम का मैं आईपी डालूंगा यहाँ पे। ओके, सो लेट मी जस्ट पुट एंड क्लिक ऑन सेव। तो मेरा यहाँ पे आ गया, सोर्स पे लैन सिलेक्ट किया, आईपी डाला यहाँ पे मैंने, एंड वैन, एंड सिंपली सेव करना है। यानी मैं कोई पॉलिसी अभी नहीं लगा रहा हूँ। तो ये रूल क्या होगा, टॉप पे आएगा। ओके, टॉप पे मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो फायरवॉल होते हैं, रूल्स जो होते हैं वो टॉप टू बॉटम काम करता है। यानी सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगा, टॉप वाले रूल, जस्ट लाइक केसीएल, राइट। सो दिस इज द टेस्ट रूल। यानी अगर ट्रैफिक 100 से आ रहा है, 172 16 1600 जो मेरा ये सिस्टम है वहां से आ रहा है, तो हमेशा ये ट्रैफिक यहाँ से जाएगा। रूल आईडी कौन सा क्रिएट हुआ, 10, राइट। सो वेरीफाई करते हैं अगेन, गो टू पैकेट कैप्चर, सिर्फ वेरीफाई करना है। सो लेट मी जस्ट टर्न ऑन एंड क्लियर द पैकेट एंड टर्न दिस पैकेट कैप्चर ऑन, और एक बार पिंग मारते हैं, राइट। सो लेट मी जस्ट पिंग 8.8.8। ओके, सो रिफ्रेश, सो आई कैन सी द ट्रैफिक, राइट। कौन से रूल पे जा रहा है अभी, 10 पे जा रहा है, राइट, जो मैंने अभी क्रिएट किया। तो अभी मेरा कोई इशू नहीं आ रहा है, दैट मीन्स इशू फायरवॉल्स की पॉलिसी में। अगर आपने पॉलिसी लगाई हुई है, लेट्स से कोई पॉलिसी लगाई है, जस्ट गिव मोमेंट, लेट्स से यहाँ पे वेब फिल्टर लगाया हुआ है, इफ आई अप्लाई वेब अलाउ, और डिफॉल्ट पॉलिसीज है ये, तो मैं डिफॉल्ट पॉलिसी लगा के सेव कर रहा हूँ। अगर इशू आता है तो यहाँ पे हो सकता है आपका वेब फिल्टर में इशू। अगर आपने वेब फिल्टर पॉलिसी कोई लगाई है तो भी इशू नहीं आ रहा है, देन अप्लाई वेब एप्लीकेशन कंट्रोल पॉलिसी, जो आपके एग्जिस्टिंग रूल पे, पहले आपने जो रूल चेक किया था, राइट, पहले रूल 5 से जा रहा था, उसमें पॉलिसीज लगी थी, राइट, तो वही पॉलिसी अप्लाई करो 1 by 1। पहले वेब फिल्टर लगा के देखो कि हो रहा है कि नहीं, चल रहा है, इट्स ओके, देन गो विद दी एप्लीकेशन फिल्टर पॉलिसी, वो लगा के देखो जो आपकी एग्जिस्टिंग रूल पे था, टेस्ट रूल पे लगाना है, और यहाँ पे वो लगाओ, एक एक करके देखो कि कौन सी पॉलिसी लगाने के बाद वो इशू क्रिएट हो रहा है। अगर वो है तो आपका फील्ड पॉलिसीज में इशू है, देन डेफिनेटली आप लॉग्स देख के उसको अलाउ कर सकते हैं, यू कैन फिक्स इट। ओके, और डिपेंड करेगा कि और क्या आपने सेटिंग्स एनेबल की है। लेट्स से इफ आई गो टू इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम हियर, अगर आपने यहाँ पे डोस, यहाँ पे सब में यस है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ देखो, यहाँ पे ड्रॉप्स हो रहे हैं सिंक, या फिर मेनली अगर किसी ने गलती से टीसीपी फ्लड एनेबल कर दिया है, ऑलराइट, but so just disable it. You can go to DOS and spoof prevention, and you can, अगर यहाँ पे ये tick mark है, alright, then it will drop the traffic after this amount of packets. अगर ये हम DOS के बारे में पढ़ेंगे, so कौन सी पॉलिसी कैसे हम DOS अप्लाई करेंगे, बट अगर यहाँ पे पैकेट पर मिनट ज्यादा और ये एनेबल किया हुआ है तो हो सकता है इसकी वजह से भी आपका इंटरनेट ट्रैफिक ड्रॉप हो। और क्या चेक कर सकते हैं, लेट्स से ड्रॉप पैकेट्स चेक करना है, सो कमांड्स ऑप्शन नंबर CLI पे जाना है, ऑप्शन नंबर 4 पे जाना है, ऑलराइट, एंड यू कैन सी, यू कैन चेक एंड ड्रॉप पैकेट। ओके, और जो होस्ट है, लेट्स से होस्ट 172.16.1600 था, राइट,
एंड सी कि आपको यहाँ पे कोई ड्रॉप्स मिल रहा है कि नहीं। सो ये आपको हेल्प करेगा कि या फिर राइट डायरेक्शन में आपको ले जाएगा कहाँ पे आपको एग्जैक्टली चेक करना है किसकी वजह से ड्रॉप हो रहा है। सो देखो ड्रॉप आ रहा है कि नहीं, अगर नहीं आ रहा है देन माइट बी द अदर इश्यूज एज वेल। सो दिस आर द मल्टीपल स्टेप्स यू कैन चेक। ओके प्रणब, और भी Yes, चेक sir. करेंगे आपका ऐप का जो इशू है, वो हो सकता है कि मैं लाइव भी देखना पड़े क्योंकि आपका नेटवर्क शायद बड़ा भी हो सकता है। इफ यू आर स्टिल वर्किंग, इफ यू आर वर्किंग देन यू माइट हैव मल्टीपल होप्स। सो आपको सोफोस में अगर इशू नहीं है तो डायरेक्शन भी बताएगा कौन से नेक्स्ट होप पे चेक करना है, कहाँ पे इशू। जैसे अभी एमपीएलएस चेक किया, राइट? राइट सर, स्टेप बाय स्टेप वो देखना पड़ेगा। यस दैट्स करेक्ट। यस, सो हम फर्मवेयर भी देखेंगे, जैसे कि आपने कौन कौन से फर्मवेयर पे काम किया है प्रणब? नहीं, हमने एक्चुअली दूसरा सॉरी जस्ट गिव अ मिनट। या हेलो। हाँ, एक्चुअली मैंने दूसरा एक फायरवॉल पे काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भी ऐसा इशू आ रहा है। और सोफोस में मैं थोड़ा सा पढ़ाई कर रहा हूँ, तो ये चीज़ है। ठीक है, अगर आप सोफोस मीन्स मेरे साथ यहाँ पे अभी बैच कंप्लीट करेंगे, डेफिनेटली आपको एक सोफोस से अगर इशू है तो फिक्स करना डेफिनेटली आ जाएगा। अगर लेट्स से फायरवॉल से भी इशू नहीं तो फायरवॉल से हम कैसे राइट डायरेक्शन में कौन से नोड पे चेक करना है वो भी हमें फायरवॉल से पता चल सकता है। यहाँ पे हम जब लैब्स करेंगे तब आपको और आइडिया आएगा कि जब हम नेक्स्ट होप कौन सा देखना है, जैसे स्विच साइड इशू है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है स्विच में भी इशू होता है, राइट? अगर हमने कुछ लेट्स से हाँ सर। वीलैन कॉन्फ़िगर की या फिर कोई हमने लैग कॉन्फ़िगर किया है और कोई भी कुछ भी कॉन्फ़िगर किया है, सो वी कैन चेक फ्रॉम वेयर द एग्जैक्ट द इशू इज, क्योंकि हम यहाँ से लॉग्स देखेंगे, टीसी डंप्स देखे, कभी मैंने आपको ट्रैफिक देखा है कैसे इन आउट होता है, राइट? हम उसको और भी हर एक लैब में पैकेट कैप्चर और ये CLI तो ओपन करके ही रखेंगे और टीसीपी डंप चेक करेंगे। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कमांड टीसीपी डंप होस्ट, लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट दिस कमांड। जैसे कि मैं पिंग कनेक्टिविटी देख रहा हूँ तो मुझे इसमें पता चलता है कि कहाँ से मेरा ट्रैफिक आ रहा है और जा रहा है, इसके हिसाब से मैं स्टेप्स लेके उसको फिक्स कर सकता हूँ। Alright, so let's say I'm taking some TCP dump on port 8080, so I can see some traffic is going in and out, right? Ingress and outgress. So we'll discuss about ingress, outgress for fast path, slow path, definitely. But हमें यहाँ से पता चलेगा कि कहाँ पे इशू है, फाउल से इशू है या फिर कोई उसका नेबर डिवाइस है वहां से इशू है। राइट, सो विल सी इन द लैब, उसको ही क्रिएट करेंगे, लैब पे ही क्रिएट करेंगे शायद, तो आपको और आइडिया आएगा। ऑलराइट, सो लेट्स से इफ यू आर गोइंग टू अनदर कंपनी तो आप उसका नेटवर्क स्टडी कर सकते हो, यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो पूरा का पूरा। ओके, मल्टी वेंडर्स होते हैं, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि सोफोस का ही इकोसिस्टम, सोफोस के ही आप स्विच यूज करोगे या फिर एपी यूज करेंगे, कंपनीज अलग अलग वेंडर्स भी यूज करती है, तो वो भी आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो, एंड बिफोर गोइंग टू दैट कंपनी यू कैन फिगर इट आउट व्हाट इश्यूज कैन बी हैपन और एग्जिस्टिंग क्या है उसको फिक्स कैसे करना है एंड सो ऑन। और जो एग्जिस्टिंग में भी काम कर रहे हो उस यहाँ पे भी सेम डिप्लॉय करके चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ऑलराइट सर, एक क्वेश्चन है, जस्ट मुझे चाहिए। आप क्या सर पालो अल्टो की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो आप? या वी प्रोवाइड पालो अल्टो ट्रेनिंग एज वेल। तो पालो अल्टो भी करेंगे, जैसे कि यहाँ से एक ऑफिस में आपका पालो अल्टो है और दूसरे ऑफिस में सोफोस है, तो आईपी से कनेक्शन जनरली कनेक्टिविटी होती है, राइट? So we can make those connectivity from the other firewall. But yes, of course, if you want to learn about Palo Alto, you can enroll it. You can contact the team and you can enroll for that. But this session is dedicated for Sophos XGS firewall. हाँ सर, वो तो देख रहा हूँ। Yeah, you can मैं contact. जस्ट एक क्वेश्चन, जस्ट आप पालो अल्टो प्रोवाइड करते हो कि नहीं करते हो? Yeah, we provide. Yes, Done, yes, sir. of course. Yes, we provide. Okay, sir. All right, so those who are already working with Sophos, so we will next configuration जो होगा, जैसे कि we will learn about the security, we will secure, as you can see there is icon here, so we'll see what is difference between non-secure and secure connection with the Sophos firewall. हम Sophos को as a certificate authority use करेंगे, all right, and we will make our secure connections. So let me just go and verify some other things. So yeah, this would be connect, जो अभी तक हमने देखा वो हमने देखा कनेक्टिविटी। ऑलराइट, अभी तक हमने कनेक्टिविटी देखा हमारा हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस के बीच में। ऑलराइट, देन वी हैव लुक इनटू द HA एक्टिव
we'll deploy active passive in the next batch. और सारे जितने भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम उसका CLI एंड GUI दोनों पे पैकेट कैप्चर्स कमांड्स एंड सारे वेरीफाई करेंगे हाउ टू फिक्स अगर कोई इशू और आ रहा है कि नहीं एंड ऑल द थिंग्स. And last time we have done Sophos Central, right? So you can manage your firewalls from here. Means bar से access करना lab का ही firewall है. So we can access that firewall from here. So you can see active, passive, all connections. And here, once you click here, तो firewall पे आपको access मिल जाएगा, alright? From outside. ये हमारा lab का ही firewall है, alright? तो आप उसको इसको yes integrate कर सकते हो. So let me show you that setting. If I go to Sophos Central here. Let me just go there. And मैंने उसको यहाँ पे register किया firewall को. So I have registered all the firewalls on Sophos Central, as you can see here. Alright, so we will see कौन सी limitation है. Let's say active में आपका एक limitation आ जाएगा. Synchronized app control आप use कर सकते हैं, but you can use in active passive. तो active passive deploy करते हैं, best है. Alright, and we will manage the firewall from the cloud also. अगर आपको कोई configuration rule configure करना है, alright, securely bars access करना है, and आपको कोई configuration push करनी है multiple firewall पे, या फिर firmware update करना है, backup लेना है, reports आपको देखना है, then you will see. So report session में भी मैंने आपको जो module था, right, different type of report होंगे. तो ये different type of report है, traffic, okay, executive reports, and we have the user quota, UTQ reports, and so on. So we'll see these reports in detail. और इस हिसाब से हम उसका action लेंगे. All right. So currently, let's see. Diagnostic पे जाते हैं. थोड़ा सा packet capture देखते हैं क्या है. So let's go to packet capture and let me type host sophos.com. Okay. अब कोई भी website का नाम लिख सकते हैं. Click on save. And let me just clear the packet capture. Turn the packet capture on. Okay, और यहाँ पे भी कर देते हैं. Let me just type TCP dump and sophos.com. तो let's see 3-way handshake right now. 3-way handshake देखते हैं कैसे 3-way handshake file से देख सकते हैं. तो stateful stateless clear हो जाएगा. All right. So let me open the file sophos.com. So let me just go to GUI. CLI, so I can see the traffic, right? Let me just press Ctrl+C so I can see packet has been captured. Okay, so these are the packets. Okay, let me just do one thing, minimize, and I can see the website is open. And if I click on refresh, I can see the traffic, right? Here it is. So मेरा ये दो packets हैं. So port A से मेरा traffic आ रहा है. Let's say I'm picking up this packet. So मेरा पोर्ट A से ट्रैफिक आ रहा है, मेरा सिस्टम का IP तो पता है 172.16.1600 और ये रिजोल्व हो क्या IP है sophos.com. ओके, DNS रिजोल्व हुआ है. We will see that. And उसने फॉरवर्ड कर दिया पोर्ट B को. Alright. और if you just check, it is a TCP connection. Packet type is TCP connection. In and out, and 0 source and destination IP. Source port. Destination port 443. फैन बंद करके मुझे हंसना को माना नहीं बोल ज्यादा करना. Okay, so the source port is the random port. Destination is 443. Okay, as it is on HTTPS. Net rule कौन सा use कर रहा है? 2. So net rules देखेंगे, बहुत important है. So we'll see net rules. So as of now, it is passing from net rule ID 2. We'll see what is net ID, rule ID 2 here. Okay, तो जब भी आप Sophos deploy करते हो, सबसे पहले तो है ना, आपको you don't have to worry about the net rules or the firewall rules. Okay, क्योंकि जैसे आप जो लास्ट सेशन में आपको मैंने डिप्लॉय करके बताया था, राइट, रजिस्टर किया था, टर्न ऑन किया था, देन सिंपली हमने इंटरनेट दिया था, इंटरनेट हमें मिल चुका था, दैट्स इट. तो वही रूल है, डिफॉल्ट रूल है ये वाला नेट रूल 2. सो विल सी दैट विल कॉन्फ़िगर आवर ओन नेट रूल्स. अगर कोई पर्टिकुलर आईएसपी ने आपको आईपी पूल दिया है, उसके थ्रू से आपको जब आप व्हाट इज माय आईपी करते हो, राइट, अगर आपने व्हाट इज माय आईपी किया, आपका इंटरनेट का आईपी आ रहा है और कोई आईपी पूल है और उससे आपको व्हाट इज माय आईपी करे, अगर वो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट आती है, सो वी विल डू विद द हेल्प ऑफ नेट रूल. सो विल सी दैट, डोंट वरी. Then we have
firewall rule ID 10 जो मैंने create किया था, right? Test वाला rule. So let me delete that rule. चलो delete कर देते हैं. So उसके बाद traffic कहाँ से जाएगा? 5 से. So traffic will always pass from जो rules कैसे follow होते हैं, top to bottom. तो हमारा जो rules होंगे वो top to bottom सब काम करेंगे. Okay, when we have some folders, we will configure the rules as per these folders. So this is LAN to WAN rule. Okay, so this is rule ID 10. Let me just delete the rule ID 10. Once it is deleted, okay, those who have doubt, just raise your hands. Okay. So rule ID 10 has been deleted. तो ट्रैफिक अभी कहाँ से जाएगा? 5 से जाएगा, राइट? क्योंकि एक ही रूल है LAN to WAN. अगर मैं देखूं LAN to WAN रूल कितने मेरे पास? ओके, तो एक ही है. So if I go to diagnostic packet capture, and if I just turn on this, let me clear and refresh this page. Okay, click on refresh. Okay, so I can see traffic is passing from rule ID 5. अभी 5 पे जा रहा है, right? So we can troubleshoot the issue. अगर इससे पता चलेगा कि मेरा जो ट्रैफिक है वो जो मैंने रूल क्रिएट किया है जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए वहां से ही जा रहा है, भले वो MPLS के लिए हो या फिर आपके IPsec के लिए हो, इंटरनेट के लिए हो, एंड सो यू कैन वेरीफाई यहाँ से कि वो ट्रैफिक अभी मैंने रूल क्रिएट किया है जो मैंने डेफिनेशंस डिफाइन की है उससे ही ट्रैफिक जा रहा है कि नहीं. ऑलराइट, एंड वी कैन आल्सो फाइंड आउट what are the rules if the configuration is not working causing the issue. आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे कि वायलेशन भी आ रहा है, राइट? यहाँ पे, so we can see accordingly. So let me just check what is net ID 2. So these are the default net. Okay, so default net है यहाँ पे. So this is the rule ID 2. You can see here. Okay, तो ID यहाँ पे और ये rule number है. So don't get confused here and here. So these are the rule ID. तो सारा इंटरनेट का ट्रैफिक मेरा कहाँ से जाएगा? rule net ID 2 से जाएगा. If I click, so this is the way it looks. तो ऐसे लिखेगा net rule. All right, we will configure that and we will understand each of this parameter one by one in the module. जो हमारा थर्ड मॉड्यूल है नेटवर्क प्रोटेक्शन, जो आपने अगर लास्ट सेशन अटेंड किया है तो उसमें नेटवर्क प्रोटेक्शन में जब हमारा मॉड्यूल आएगा तो आपको एक एक जो यहाँ पे सेटिंग्स है, ठीक है, हम उसको एक एक को अंडरस्टैंड करेंगे सो दैट आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते. ऑलराइट, सो एक लास्ट चीज करते हैं, पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हैं. ऑलराइट, लेट्स से पोर्ट फॉरवर्डिंग. सो फॉर दैट व्हाट कैन आई डू? लेट मी check whether any service is running or not. कोई सर्विस रन हो रही है यहाँ पे. 172.16.16.1600 जो है वो मेरा सिस्टम का IP है. या सो आई थिंक इट इज वर्किंग, राइट? ये मेरा लोकल IP है, ठीक है, यानी मेरा ये जो सिस्टम है उस पर एक वेबसाइट चल रही है. सो लेट्स पब्लिश इट आउटसाइड, ओके, विद हेल्प ऑफ रूल. सो पोर्ट फॉरवर्डिंग करेंगे. ऑलराइट, सो व्हाट विल डू, क्लिक ऑन ऐड रूल्स, सर्वर असिस्टेंट DNet रूल पे क्लिक करना है. ऑलराइट, ऑटोमेटिक रूल हो जाएगा, ठीक है, तो यू डोंट हैव टू वरी. तो ये पॉपअप आएगा. लेट मी जस्ट जूम इट इफ आई कैन. या ओके. ऑलराइट, सो इंटरनल IP एड्रेस जो आपका सर्वर का IP है उसको सिलेक्ट करो. लेट मी सी इफ आई हैव. या आई हैव. ओके, 100. सिंपल. क्लिक ऑन नेक्स्ट. नाउ सिलेक्ट द पब्लिक IP जहाँ से आपको होस्ट करना है बाहर से. सो यू कैन सिलेक्ट दैट IP. लेट्स से पोर्ट B पे से करूँगा मैं. क्लिक ऑन नेक्स्ट. कौन सी सर्विस है? तो यू कैन सिलेक्ट द सर्विस दैट यू वांट टू होस्ट फ्रॉम आउटसाइड. ऑलराइट, let me check port 80 for test purpose. Click on apply. Click on next. ओके, तो हम क्या कर रहे हैं? पोर्ट फॉरवर्डिंग कर रहे हैं, बाहर से मेरे को एक्सेस करना है. ऑलराइट, यानी इंटरनेट से एक्सेस करना है. एंड कौन एक्सेस कर सकता है? एनीवन. ओके, जस्ट कीप एनी हियर. ओके, सो दिस इज द समरी ऑफ दैट DNet रूल पोर्ट फॉरवर्डिंग. ठीक है, सो विल अंडरस्टैंड व्हाट इज नेट एंड पैट पोर्ट
पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, नेट एड्रेस ट्रांसलेशन, अभी नेट एड्रेस ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ऑलराइट, यानी पोर्ट टू पोर्ट ही कर रहे हैं, बट पैट क्या है, नेट क्या है, आपको इधर से ही पता चल जाएगा, बहुत ईजी। देन क्लिक ऑन सेव एंड फिनिश, ऑटोमेटिक रूल क्रिएट हो जाएंगे, ऑलराइट। सो अभी मेरा जो एक्सेस है कौन से आईपी से आना चाहिए, पोर्ट बी के आईपी से एक्सेस आना चाहिए, राइट, जो मेरा ये सिस्टम है। सो आई कैन सी I can access with help of 172.16.1600, but इंटरनेट जो मेरा पब्लिक आईपी है उससे मेरा एक्सेस आना चाहिए, राइट। सो लेट्स वेट फॉर टू गेट इट सेव। Let me take the doubts meanwhile. Anyone has any doubt? Ketan, do you have any doubt? You have raised your hand. Okay, I think no one has right now. Okay, let's look into that DNet rule. Okay, no worries. जैसे ही मॉड्यूल्स आएंगे, डाउट्स आएंगे, no worries. Okay, no worries. We are ending the session for today. Tomorrow we will join. All right. So आज हमने जो कॉन्फ़िगर किया, पोर्ट फॉरवर्डिंग किया, all right, DNet tool. So we'll see ट्रैफिक यहाँ से जा रहा है, all right, and I can see some net tool are created. Okay, तो ये net tool automatic create हो चुके हैं यहाँ पे, so we don't have to worry. So let's check जो पोर्ट B है उसका IP क्या है, 192.168.98.2. ओके, तो उससे आना चाहिए, राइट। सो 192.168.98.2. So it's not working. So what you have to do next, packet capture. Okay, so always check the packet capture, you will get the idea what is happening. So host 192.168.98.2 and port port 80. Okay, so this is the command. Just put it and execute, turn on the packet capture. Let's see why it is not working. So I can see violation, right? उसको rule नहीं मिल रहा है, देखो यहाँ पे. Let me refresh it then. Refresh करते हैं इसको. Okay, so let me refresh. Okay, so I can see it is not getting the rule. Okay, clear करो इसको and let me refresh it again. Yeah, I can see the violation, right? If you just scroll, तो देखो उसको कोई रूल नहीं मिल रहा है. That is the reason. तो रूल बनाते हैं क्योंकि ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, पोर्ट ए से आ रहा है, राइट. सो व्हाट विल डू, लेट मी जस्ट क्रिएट वन रूल, क्योंकि मैं लैन से कर रहा हूँ, राइट. सो विल क्रिएट दैट रूल, लैन टू लैन रूल. ओके, सो लेट मी जस्ट क्लिक ऑन सेव, टॉप पे रखते हैं, ऑलराइट. ऑटोमेटिक लैन, select LAN zone, source zone any, LAN. Okay, don't worry about that because I will be much faster, but you will, after this course, you must be more faster than me after learning all these things. All right, so let's just configure this rule. So I will select port B is my destination now. Okay, I will just tell you why this happens, because as per the packet capture वो उसको रूल ही नहीं मिल रहा है, राइट. क्योंकि मैं लैंड से कर रहा हूँ, बाहर से तो कर नहीं रहा हूँ, लैंड से कर रहा हूँ और मैं आईपी से कर रहा हूँ, पब्लिक आईपी. सो विल सी इफ it works or not. Okay, so in this case we will understand whether it is issue from the firewall end, तो या फिर आईएसपी में पोर्ट फॉरवर्डिंग नहीं किया हुआ है ना. यहाँ से तो कर दिया मैंने पोर्ट फॉरवर्डिंग, बट आईएसपी से नहीं पता है. सो हाउ विल चेक दैट. So TCP dump, let's say TCP dump also, let's take drop.
ओके फायरवॉल ड्रॉप कर रहा है कि नहीं वो देखना है मुझे. सो लेट्स सी 98 डॉट आई थिंक इट इज 2. Okay, so let me just go to and refresh the page if I get any drops. अगर drops नहीं मिल रहा है, so if I'm not getting drop, that means the issue is not from the firewall. तो हमें fix करना है, right? कहाँ पे है? तो ISP router ये है मेरा. चलो इसका जरा settings देख लेते हैं. What is the settings here? Okay, so show run. Let me see. Okay, so I can see 98.1, right? ये मेरा gateway firewall के लिए. And this is my ISP. And yeah, यहाँ से port forwarding करना पड़ेगा. Okay, let me just do it. If I can IP net. Okay, no worries if you don't know this. We will discuss everything. But as of now, सिर्फ commands देख लो कि मेरा पर्पस क्या है, बाहर से एक्सेस करना है वेबसाइट. ओके, तो मेरा जो फायरवॉल है, ठीक है, उसके ऊपर एक नेटेड डिवाइस है, यहाँ पे भी और एक नेट डिवाइस है. तो मुझे नेटिंग करना पड़ेगा ना, यहाँ से भी पोर्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा. अगर फायरवॉल से नेट फॉरवर्ड कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरा नेट डिवाइस है, यानी गेटवे डिवाइस है, ये भी गेटवे है, राइट? सोफोस भी गेटवे, सिस्को भी गेटवे. तो अगर गेटवे तो पोर्ट फॉरवर्डिंग मेरे को करना ही पड़ेगा, राइट? सो वी कैन कॉन्फ़िगर दैट. लेट्स सी स्टैटिक व्हाट इज नेक्स्ट. That is the TCP 192.168.98.2 port, I think port number, yeah, port number 80, and interface, I think it is Ethernet 0/1 port 80. Okay, let me just go to that PC now. और यहाँ पे मैं TCP dump चालू करता हूँ. TCP dump host 192.168.98. या देखो अभी शायद ट्रैफिक तो आ रहा है. लेट्स सी नाउ पोर्ट. लेट मी चेक फॉर पोर्ट 80. Okay, let me just refresh it if I can get the access. Go back to diagnostic, packet capture, and let's see where we are wrong right now. So let me just remove port 80. Clear the logs. What we can do is that, just give a moment. Yeah, go to network. Let me just verify the IP address. It's 98.2. Yeah, that is fine. So I have forwarded on 98.2. Yeah, this is correct. And if I just click on exit and show IP net translation, let me verify the request is coming or not. So it's not coming. Okay, so what we'll do, let me just verify whether it is working or not. I think I can check on this PC. Log in with the password. Open the browser. Okay, let's see. Let me type that IP here. It's 192.168.98.2.
ping 8.8.8.8. Okay, so that is not working. Let's find the reason. IP config. So I should able to ping my firewall first 116.17.16. This is in branch office. Okay, so I'm in the branch office right now. So now let me just try to access my IP. Here it is. So still not working. Wait. So internet is working or not? Let's verify that. So I will ping 8.8.8. Destination host unreachable. Yep. So let me just access the firewall. Why internet is not working? Okay, so I got the access. Okay. Everyone can see my screen, right? Right now I am in the branch office Sophos Firewall. Are you with me? Say yes on chat. Yes. Okay. Okay, so just I will verify the internet, why internet is not working, and we will finish this session for today and we will continue tomorrow. Don't worry. So let me just verify this back. Why my internet is not working. So host 8.8.8 and proto ICMP. Okay, I will share these commands with you, so don't worry. Let me just ping. So port D, traffic is passing from port D, so it should not pass from port D, right? That is my MPLS actually on the branch side. So let me just verify my event link manager. Yeah, okay, port B internet is up. Let me just add it and put IP as 8.8.8. Okay, so why I did this? Actually, this is the rule to check whether the internet is working or not. Okay, let me just open the PC back. Okay, so let me save the settings. So these settings will check, it will probe towards internet, okay, whether the internet is available on this or not. So it was green because it was probing the gateway IP, and gateway IP is always available. So for internet, so we will discuss about these settings also. So let me just go to diagnostic and ping 8.8.8 from port B. That is my ISP. Internet is working or not. So if internet is working, then we will check. Okay, so internet is available here. Now go to packet capture, and if I turned off, clear the logs, turn it on, make a ping again, and refresh it. So the traffic is passing from rule ID 5. Okay, so what is rule ID 5 and 3? Let's check. So yeah, it is from LAN to WAN. This is fine. It seems we have issue with the net, maybe. So let's verify that. So what is rule ID 3? Yeah, so traffic is passing from this rule. All right, so do one thing. Let me just disable it. I don't need this rule as of now. I will pass from the default net rule. Still, it is taking some other rule. Let me verify back.
Yeah, so it's rule ID. So it's not taking the net. Okay. No worries. What we'll do, let me just go with the net. Let's play with the net then. So ऐसे ही हम fix करेंगे. Yes, of course. जो हमारी labs भी होगी. Let me just move this rule on top as of now. Still no? Strange. Okay. No worries. Let me just go to device settings and we'll see by internet got stopped. Reset 82888. Yeah, it is going from MPLS. That's the reason. Okay, what we'll do, I will just take the CLI and disable it something. Okay, so T. Okay, the MPLS से जा रहा है traffic. That is the reason. So हमने find out कर लिया कि issue कहाँ पे, right? So हमें route करने कहाँ पे, port B पे करना है, not from on the MPLS. So let me just check the system route. This didn't show. Yeah. So what I will do, I will just change to system route set VPN, SD-WAN, and static. No, it's still not going there. Let me check the SD-WAN. Okay, so I think I lose the connection. So let me just revert that change. Sophos. Okay, I think this should work. ओके तो ये ऑफ कोर्स ये भी हम देखेंगे कैसे हम लास्ट चेंज यहाँ पे देख सकते हैं. सो लेट मी चेक. या स्टिल पासिंग फ्रॉम दैट. Okay, so let's do one thing. Let me just configure the rule, internet rule, internet. Okay, and port A. Okay, right now let me just configure one SD-WAN profile. So incoming is my port A and primary. Let me select the gateway instead. Would be my port B. Let me just click on save. This will help me. Okay, now I think it will work. Yeah, okay, so I got the internet. So SD-WAN, right? Okay, so this way we'll fix it. Again, let me just ping 8.8.8. All right, now let me just come to the original issue. Let me just refresh it. So here,
I believe there is a issue is from other net from this router. Okay, we will fix that. Not from the Sophos, but let's check the packet capture. So let me just change the IP 192.168.98.2. Okay, and I will remove the rest of the command, and type npord port 80. Turn the packet capture on. Let's see यहाँ पे क्या हो रहा है. Okay, तो यहाँ से तो ट्रैफिक फॉरवर्ड हो रहा है, राइट? देखो, but still not working. So what could be the issue? So let me just go to the PC जहाँ पे मेरा ये है. Just let me verify because everything seems to be working. If still not working, then we have to check on the router side. Yeah, so we have to check on the router side. All right, no worries, we will fix it from here, but show run. Okay, let me just verify I did the port forwarding from here or not. Yeah, it's there. Set source TCP 8080. Okay. Okay, let's check the packet capture from here on the head of this file. Okay, let's see the traffic is coming from the upstream router or not. Okay. So yeah, go to this and refresh. Okay, so I can see the traffic is coming from port B, but not going out. But we have the rules, right? Let me just verify that rule. It should pass from net ID 6. Okay, let me just do that. ये तो होना ही चाहिए. But as we have figured it out, कि हमें पता होना चाहिए कहाँ पे इशू है. फायरवॉल पे भी है तो फायरवॉल पे फिक्स करना है. अगर जो नेबरिंग डिवाइस है तो नेबरिंग डिवाइस से भी करना है. Alright, so let me just try again. We'll change the port and check. Let me put the system IP. So 172.16.1600. Okay, it will get full because we have a lot of traffic. Let me just filter for 80, port 80. Okay, so let me turn it off, turn on. You can also clear it if you see the logs and then refresh it. So it is not reaching here. Let's find out where is the issue then. सर पॉलिसी रूल्स के अंदर डेस्टिनेशन नेट के अंदर डेस्टिनेशन का आईपी नहीं आएगा. Sorry. डेस्टिनेशन नेट आपने डेस्टिनेशन नेट बनाया ना, डी नेट. Yes. तो जो पॉलिसी रूल्स बनाई है आपने उधर डेस्टिनेशन का आईपी नहीं आएगा, डेस्टिनेशन नेट का आईपी. It is there. Let me show you वो है वहाँ पे. Let me show you there. So ये destination है मेरा, right?
Yes. 9. Okay, so I think I have selected wrong IP, maybe. Let me just verify. 98.2. Oh, that is correct. Okay, so original would be, looks good. ये जनरली मेरा अपस्ट्रीम राउटर का इशू है, कॉन्फ़िगरेशन तो यहाँ पे ठीक है, राइट, क्योंकि आई कैन सी द ट्रैफिक. ओके, लेट्स से फायरवॉल कुछ ड्रॉप कर रहा है कि नहीं. लेट्स बी चेक. फर्स्ट वील चेक टीसीपी डंप on 172.16.16.16, sorry, 100 and port 80. Okay, so after 5 minutes, we might have to drop. Okay, fine. Okay, no worries. Let's continue tomorrow because our time has been up. No worries. We will continue from here only. We'll not do anything here, but we'll see where is the exact issue. Okay, what change we did and we resolve the issue. All right, on the next class. All right. So anyone has any doubt till here? Anyone? The traffic is not coming. Okay, we will delete the rule and we'll check it again tomorrow. Okay, sir. No issue. Okay, no one is. We will continue from here. We will find out. But till now, anyone has any doubt, apart from Ketan, Manish, Naresh, Hitesh, Jitendra? No, I don't have any doubt, sir. Okay. Okay, tomorrow we will continue from here only. All right. We'll see the DNet and we will see, we will configure each and everything from scratch. All right. We'll deploy first firewall, first router, first switch from there. So this will be our topology. So we are fixing this. We will fix this. It is fixed only, but we will troubleshoot it and we'll fix the traffic. No worries. Okay. All right. So Thank you. let's end the session for today. All right. And we will meet tomorrow. Thank you, Okay. guys. Thank you, sir. guys, for Thank you. listening and have a nice day. Thank you. See you. Bye-bye. So, Varas sir, you can start the class. Okay, let's start. So good evening, everyone. I hope everyone is doing good. Good evening, sir. Okay, so we'll begin the class for today. Let me share the screen. Okay, I hope everyone can see my screen. All right, so last time we have walked through the lab and we have configured a firewall in gateway mode. All right, so
As per the module 1, we are seeing the type of deployment that we can do with Sophos XG Firewall. All right, so first is the most common one. Let me start. Right, if anyone has any doubt, just raise your hand. I will answer that. All right. Yes, sure. Okay. All right, so we have seen the gateway mode where Sophos Firewall is configured as gateway mode. जो हमने लैब भी किया था उस पे हम थ्रू आउट फायरवॉल हम गेटवे मोड पे कॉन्फ़िगर करेंगे. All right, so as per this simple scenario you can see on the screen, we have LAN zone and WAN zone and we have DMZ zone. So we'll configure the firewall in gateway mode here. Okay, we'll look into other modes. There are bridge mode and mixed mode and also Discord mode later on this module. All right, so we'll have a look into most common way where we can deploy Sophos Firewall. The most common scenario is where you are looking to replace the aging firewall and need to protect your internal network. So Sophos Firewall is deployed to handle both core routing as the first line of defense against the network threat. So let's say if you have those are already working and need to replace the aging or the old traditional firewalls or old routers, you can deploy Sophos Firewall in the migration process. So it already had the core routing and the first line of defense against your network threats if those features are not available on your traditional firewall. All right. So this is shown here. Sophos Firewall is in gateway mode in the previous diagram. So the port A is configured for LAN zone and port B was configured on WAN zone, that is your internet. And port C is also configured one of the secure zone, DMZ zone. Any network thread trying to go through the LAN zone or DMZ zone will be stopped by the firewall and its policy. So this type of deployment, we will be focusing on this throughout this course. All right, so what is bridge mode here? Let's say you have existing firewall in your and you don't want to replace it, and without changing the internal IP address or topology, you can deploy and protect your network through bridge mode configuration. So जो Sophos firewall होगा, let's say you have one Cisco router and those Cisco router doesn't have any security features such as synchronized security, intrusion prevention system, advanced threat protection. All right, this can be protected with the help of Sophos Firewall as bridging the LAN and DMZ zone with your existing firewall as per this diagram. So we can use all the features of Sophos Firewall to protect against any type of latest threat with the Sophos Firewall. So another common deployment type of deployment is where there is an existing firewall that handles the WAN connectivity, but it's not going to be replaced. This is often done to add additional protection capabilities not offered by your existing firewall, so that you do not need to change your IP address schema or of the network. Sophos Firewall can be deployed in bridge mode and is also known as the transparent mode or inline mode. So this would be the question about the bridge mode if you once you apply for the Sophos exams as well. So you have to remember, you can note down these points so that it helps to answer your questions. So in this mode, yes, the client on the network are unaware of Sophos Firewall and traffic passes through without IP address being changed, but still allowing Sophos Firewall to scan for and protect against the threat. All right, so next would be for deploying Sophos as a WAF. You can also deploy Sophos Firewall as a WAF, web application control. So without changing the IP schema, you can protect your internal servers with the help of web protection features that is available on Sophos XG Firewall.
So we look into that in more detail here. Sophos Firewall may also have been added to your network to protect your web applications. There are often many components that makes up the web application, including web servers, database, file servers, and so forth. But this means that there are also a wide range of attack can be launched at them. In this example, Sophos Firewall can be protect the web application from common type of attack, including the buffer overflow and SQL injections. So we will deploy in our lab also. We will deploy one web server, and we will configure the security policies under the web application control, and we will see all the features that help us to protect the web server from any type of attack, such as buffer overload or SQL injection. Now we have discover mode also, as we have gateway mode, bridge mode, right, and mix mode. We'll talk about the mix mode in our upcoming slide, but also we have discover mode. So in discover mode, you can just, if you, let's say as per this diagram, you have a switch, and you can just control, you can monitor the traffic that is going through your switch through Sophos Firewall as a port mirroring. All right, so you can use, we can consider as port mirroring. This is used for generally for security auditing the report. So without any changes, we are, let's say we are just connecting to any of the switch and monitoring the traffic through Sophos Firewall for security audit purpose. So we can use Sophos Firewall as a discover mode here. So the last type of deployment that we are looking in generally used for evaluating the capabilities of Sophos Firewall without the need of making any change to the rest of the network. So in this example, Sophos Firewall is connected to the port on the switch that has port mirroring enabled, so that a copy of all the traffic is sent to the Sophos Firewall. So as we know that port mirroring, once it is enabled with the help of discover mode, whatever the traffic is passing from the switch will be sent to the Sophos Firewall for the auditing purpose. So while the Sophos Firewall cannot influence the live traffic on the network, it can log and report what we see. And from this, you can take additional protection it can add to the network. This is called the discover mode here. So deployment and setup, we look into the how we can deploy Sophos Firewall, and we can set up. So when you have a box, you can see there are ports available. There are some management port available, console port available. We look into this USB ports, and first type of development where the first port is always your default LAN port. जो आपका सबसे पहला जो port होगा, port 1 or port A, whatever it is. So 1 or A, B, C, D, that would be the port number given to the firewall. The port first is always your LAN port that you have to connect your laptop PC on that port to configure the Sophos Firewall. The default LAN port to connect the initial configuration. This is generally used for initial configuration. You can change it later. You can make first port as a LAN port and second port as WAN port. But by default, when you deploy the firewall for very first time, the first port is LAN and second is the WAN. The default WAN port, the second port would be the default WAN port. That is where you have to connect your internet connection. Different port can be selected in initial set. All right, for you, definitely you can change the port zone as per your requirement once the firewall is already being deployed. So connecting Sophos Firewall to the network. To set up the Sophos Firewall, you need to start by connecting, yes, of course, you have to power on the firewall, then connecting a port, a LAN port and the WAN port. So you have to give the internet connection on the port 2, and you have to connect your laptop or your PC on port A, that is your LAN port. On hardware, XGS series and XG firewall series firewall, the default LAN and WAN port are already marked there. So on software and virtual, there will be first and second network card. So yes, of course, if you have hardware devices, it is already, everything is marked on the port. So you can use the default port settings. If you are using virtual softwares, which you will be using in the labs, so first port is always your LAN network, and the second port is always your WAN network.
So you will have the option to modify this port either during the initial setup or once the setup is completed. Now, next would be the command line interface, that is CLI. So how we will get SSH and the console access of the firewall. So the console access, if you have the hardware device, you always get the console cable along with the box. So you have to connect the console cable with your console port on the PC, which has the port available, which you can connect to the PC or laptop, and you can get the access of the PC. All right, as you can connect the console to your PC and the firewall, and you get the console access of the firewall. That is the one of the access. Another is SSH. So you have SSH through, you can take any of the application like PuTTY, and you get the SSH access with the help of PuTTY. Let's say you have connected on the LAN side with the default IP address. You can just type the default IP 172.16.16.16 and you get the console access, the CLI access with that. So default credential is admin. When you first deploy the firewall with the admin, these credentials are changed as the part of the initial setup. So once you start the initial setup, you will ask to reset your password. All right. Yeah. Hi, Bharat sir. I'm Gaurav here. Hello. So command line interface CLI throughout the Sophos firewall is managed through web interface. It is also has the command line interface CLI that is accessible through SSH, a console connection, or you could use monitor or a keyboard to physically connect the terminal. You may also use the CLI to change the IP address of the management port to be used as your LAN IP range so that you can connect your web admin to complete the initial setup. To log into CLI, use password built-in admin user, and default password is admin. You can change this as a part of the initial setup wizard here. So if you want to change the settings of the console connection, this next slide will show you the console parameters that you have to set up, such as baud rate. The default speed is 38400 that you have to set it up. The data bit you can set up 8, stop bit 1, priority and flow control to none and 0. So once you connect the PC to your to the Sophos Firewall LAN port, you will automatically get the IP address. Okay, Gaurav, you have the question. Yeah, just 1 minute. Yes, I need a one question. When you share the screen of the Sophos firewall, so I need to know how it's look like in the original way and how it's marked with the LAN, WAN, and the other management port and HA ports. How I need to understand with the original firewall Sophos. Could you just share me the just something in the original way? Then I can understand very well. Definitely, throughout this course, if you have looked into the previous video, you will look in that how we have set up the firewall. But if you have physical firewall right now, we will be working on completely software based. So we will, yes, of course, we will get all the details which port is connected where, so that would be marked already on the software side as well. So if you look into my previous video, you will get the more clear idea about the initial setup wizard. So Okay, understood. yes, but definitely what we will do, we are doing from sketch, as it is a one demo class again. So we will be just walk through whatever we have covered till now. So definitely, yes, of course, I will show you which will be your LAN port, WAN port, what would be your management port, which model supports the management port, or the HA port you can configure as per your requirement, which you have to use there. And one thing, no more here. What is the gateway mode? Actually, I have just joined the today class, and before that, I haven't joined.
So I need to know like discover mode and the bridge mode. Bridge mode is like when there is a VX line is used also in the VX line is used for that mirroring of the port. In the gateway mode, generally firewall acts as the gateway for all your devices. All right, let's say you have LAN network, so all the traffic will pass from your Sophos firewall as it is acting as a gateway. But in bridge mode, let's say you have existing firewall, so you can just bridge the firewall between your router and a switch. In between, you will have the Sophos firewall, where it will act as a bridge, like a switch, and it will scan the traffic there. But yes, Pranav. Okay. Let me unmute you. Okay. Yeah. So on the bridge mode, yes, it will act as a bridge between your existing router or firewall, between your switch, and in discover mode, it is connected to your existing switch. Let's say you have core switch, and the traffic which is passing, it will scan all the traffic, and it will provide you all the security reports required. So this is the difference here. But in lab, what we'll do, we will configure gateway mode and see the working, how gateway mode works. We will have one traditional router, and a switch, and we'll place the firewall in between these two devices, and we'll see what is bridge mode. We also see the discover mode, where we have traditional router, a switch, and we will configure firewall to connect to switch to monitor the traffic that is hitting the switch here. So these are the different modes available on the firewall. Yes, of course, and the labs, I will guide you from scratch. Again, on the next pages, we'll do it from the scratch configuration, but you can watch my previous videos where we have already gone through the first deployment in the gateway mode, and we also gone through the topology that would be working on. But yes, of course, we will we'll make another session as well, which I will explain. We'll continue some of the topology which we have done. Let's say last we have stopped with port forwarding, so we'll continue from port forwarding. But we have already done the MPLS failover, the HA failover, and the IPsec failover. But we will walk through again. We will configure from step by step. We will configure each and every part of the network, and we'll see the failover with the Sophos firewall with multiple WAN connections, and also with the HA and so on. Okay, okay. Hello, sir. Hello. Yes, Raj. Yes, I'm sorry for asking this question. This is my first time. So can you tell me what is the main difference this Sophos firewall than Palo Alto or ASA? Any particular difference, or just vendor is different? Sophos Firewall provides many security advanced feature might not be having in other firewalls, but yes, of course, you can go through. We will discuss about the better the key features that is provided by Sophos XG firewall. We have, you can say, we can have the scanning, we have security, we have web integrated with the firewall, we have simpler free management from the cloud, and so on. So we have the same features that other firewall, apart from this, the features which is provided by Sophos firewall deploy, and will check how it is compared with the rest of the firewall. Okay. Okay, thank you. Right, just give me a moment. Yeah, tell me. No, that's it. So it's look like better than Palo Alto?
It depends what type of features that you want to implement. Let's say we have Sophos have synchronous securities. So let me just discuss about one of the feature it has that has Sophos synchronous security. It has Sophos endpoints if there are some unwanted application that are installed on your NPC. So we have lateral movement that protected by synchronous security. We have some other features. Let's say there are some applications which are not categorized that can be categorized with help of that feature. Also, we have HTTPS scanning from the firewall. It scans for each whatever the traffic is passing from web through HTTPS. So that is the another feature we have. We have web integrated with firewall. Also, you can freely manage the firewall from the clouds without needing the license. So we will discuss about a lot of features that are available on Sophos Firewall as compared to rest of the firewalls. We will compare FortiGate. We will also compare the firepower. We will compare the FortiGate and so on with the Sophos Firewall. And as per that the battle card, we will see which firewall would be better for deployment purpose. Got it. Thank you. Okay. All right. So if you look into the previous video, you will get more idea that I already posted. So that will give you the better idea. But definitely throughout the course, we have discussed about each and every point that has to be covered that Sophos Firewall provides. So we have already covered up the some of the parts. As you can see on the screen, we have deployed the Sophos Firewall in the gateway mode here. All right, so whenever we are accessing Sophos Firewall for the first time, the default IP address is 172.16.16.16 with /24, and it works on port 4444. So whenever you are accessing the firewall, with the web admin URL would be device IP 4444. Okay, anyone has any doubt, just raise your hand so that I can ask you. Anyone has any doubt till here? No. sir. Okay. So Sophos Firewall is configured and managed through web interface. By default, the device IP address will be 172.16.16.16, and web admin on Sophos Firewall runs on port 444444. That will be the port number on which Sophos XG GUI will listen. So to connect the web admin interface, you need to connect on https://172.16.16.16:4444 on your for the brand new device. All right, so you will receive certificate error when connecting to Sophos Firewall. That is, yes, of course, untrusted by self-sign. So we will resolve that issue. We will make this connection secure while accessing the websites. But when you first access the firewall, you will get the HTTPS not secure error message on your web browser. So what we will do, we will be using Sophos as a CA certificate authority. We will sign the certificate. We will generate the certificate. We'll sign it, and we will make the connection secure. Okay. So I'm just walking through the initial setup wizard that we already covered up in our last session. So those who are new here, I would recommend you to just go through that video once, but definitely once we start with the batch, we will do this configuration again from the scratch. Yes, Kevin, I'm here. Sir, regarding this software, how we can get it? We can download from the website or something, some required username and password, or maybe vendor can give us this software. You can download the. Okay, let me share the screen if I can.
No worry. So we'll set up a very close Zoom meetings from next class onward, right? I believe this kind of people are very annoying. Okay, Bharat, you can continue. Okay. I hope everyone can see my screen. Yes, sir. Okay. Okay, so we will start again. So whenever we are accessing the firewall for the very first time, we have to just type the 172.16.16.16 slash it has slash 24 subnet mask, so colon 4444. So when you just connect your PC on port 1 on the firewall, it will directly automatically takes the IP address as the DSCP is already running on the firewall on port LAN port A. Yeah, sometime it sometimes it doesn't pick up the IP, then just try putting static IP from this range 172.16.16, any of the IP. Default gateway IP would be 172.16.16.16. All right. So apart from this IP, you can use any of the IP on your system. And the gateway set the network mask as 255.255.255.0. And yes, of course, the gateway on the system would be 172.16.16.16. Just give a ping. If it is reachable, you can go to the browser and access the firewall with port 4444. All right, as you can see on the screen, this would be your web admin console. So this would be your initial setup wizard. So in this batch, we will even the batch, someone would be very new or to the firewall, and some would be already working with the firewall, right? So they those who are already working with the firewall, they might be aware of the initial setups and how to set up the firewall, how to even troubleshoot if in case of an issue. But on our class, we will go from basic configuration as per the step which I have shown on the screen from the advanced level. All right, so you'll be expert in Sophos Firewall as compared to rest of the firewall. All right. So as we know that it's work on 172.72, but when you access the firewall with the IP address, it gives you unsecure connection, right? So once we receive the certificate, we will see on the lab how we can securely access the firewall with the certificate authority with Sophos Firewall. So initial setup wizard, when you just tick mark on the condition I accept, it will just click on start setup, and it will give you the basic configuration setup wizard here. So you have to give the password. You have to you can, if you want to install the latest firmware, you can tick mark and you can just agree on the license and agreement and click on continue. If you have those who are already working, as I said, if they have received new device, you can restore the backup from here. Bharat sir and everyone, hello. Yes, hello. I just wanted to understand, like, how is it possible? You are the host, then how this guy share his screen on Zoom? Anyone know? Is it possible he can share the screen? Because the host only can share the screen. It's showing disable actually. Eh? So Disable it's how showing. that guys share the screen on the live class? Because if the Bharat sir is the host, then nobody can able to share the screen. Yes, sir. We might have to look into we have to investigate this, how this happened. Yeah, okay, continue. Anyone, if you have any idea, so just let us know, okay? Probably I'll be away. Bharat sir, There are many options to crack the Zoom actually, I think, in the YouTube and Google. So he can just check and say doing the same. okay. So that means he hacked the session, right? Yes, yes. Okay, Bharat sir, continue. Thank you. Okay.
All right, so we are going with the basic configuration first today. All right, and as it is our first class, so we will continue from here and we will continue all the modules likewise only. All right, and we will perform the basic, we will mostly work on the labs, and we will also look into the theory part. The last session was we have done with the lab. All right, so let's begin with some of the theory part that we'll be covering up here. So here next would be setting up our new admin password, upgrading the firmware version, agreeing the license while deploying the Sophos Firewall as a gateway. So optionally, yes, of course, you have, apart from if you are doing first time, then this step is required. But if you have got a new device or replaced device, as you can say, RMA device, you can restore the backup from this initial setup wizard. For yes, of course, if you have HA, we will discuss about HA, how you can restore the backup through initial setup wizard through HA here in the next session. But let's begin from the first. So we will walk through the initial setup of the Sophos Firewall. On this page, you will see new admin password and set the terms and conditions here. Note that if you are configuring on behalf of someone else, then you should accept the terms and conditions. By default, the Sophos Firewall will download and install the latest firmware as the part of initial setup. However, you can deselect this, postpone it later. So we will also discuss about the 17, we have versions, firmware versions. So we have 17, we have 18 version, 19 version. We will see the maintenance and maintenance release of each of this firmware version in details. That would not be part of this module, but yes, of course, we will discuss what would be the behavior while doing the migration, those who are already in the migration process. So you will also have the option to restore the configuration backup or connect the firewall with the auxiliary device on a high availability pair. Both of these options will be available on a different initial setup. To full one are going on this shown here. So if you have HA, so I will show you how you can restore your backup on your new HA device here. If so, high availability, that means a zero downtime. So initial setup wizard, you can see there is a port A, port B. You can see here we will see the configuration to connect the internet. How we can connect the internet here. So this step you can skip, yes, of course, if you want to skip, but if you skip, you will not able to register the firewall. But if you have internet connection later on as well, you can register firewall anyhow. So yes, let's say if you give the internet connection, you can do, it will automatically get the internet if you have DHCP server running on your upstream device where you are getting the internet. It will automatically get the DHCP IP and it will get the internet access on the firewall. Or you can just give the static IP. You can select here static IP and you can give the IP address and you can give internet access to the firewall. So Sophos Firewall requires an internet connection for registration, and if selected, downloading the latest firmware, you can choose which port to be configured as when connection on, and you need to specify the IP address, subnet, DNS server, and gateway. When you save the settings, the Sophos Firewall will test connectivity, then allows you to continue with the initial setups. Note that if the WAN port is connected to the network that provide the DHCP set, this step would be skipped here. All right, next page would be like name. You have to give the name of the firewall and you have to provide the time zone. So yes, of course, we'll give the name. We have already in the last session, if you have checked, we have give the name, we have provided time zone, and so on. Click on continue. So next step, to register the Sophos Firewall, if you have serial number, you can enter the serial number to register your firewall. Now on the labs, we will not be having serial number, but we will get the free trial for 1 month. So we can use all the feature at once on the firewall. So you, if I remember, or if I remember as far as I can, we required licenses for each of the modules, or any of the features has to be worked. Let's say web protection, if you want to scan for viruses, or if you want to control the application, let's say you want to block YouTube or allow YouTube
or allow YouTube on specific particular time, or you want to protect your emails, or you want to use your web server to be protected, that is hosted outside on your internet, to be protected with the help of WAF, and so on. If you want to use SD-WAN configurations, all right, and so on. So all the features require license, but on labs sometimes it is very difficult for us to use these licenses for rest of the firewall. But with Sophos, Sophos give free trial for 30 days. So we will use all the features at once on one particular firewall. All right, so we don't have to worry about the license. It will be free for 30 days while we're working on the firewall. Let's say it's got expired, we will renew it. We will also manage all these firewalls to Sophos Central. It is like a cloud-based platform where you can access the firewall. You can push the configuration, you can take the backup, you can update the firmware version, and so on. That would be also free. That doesn't require any license. So we'll see in the lab how we can integrate the Sophos Central and the firewall, and also the endpoint for the features that has to be used, which is not provided by rest of the firewall. All right. So yes, if you have physical firewalls, let's say you have hardware firewalls, XGS or XG series, and you need to register those firewall, the serial number is required. Okay, you will provide by your partners, you will get the license details, and you just have to sync the license. Yes, Ketan? Sir, can I restore the configuration from hardware device to the virtual device? It is possible? We will see the hardware compatibilities, or I will show you later on. That can be done, but we have to check what will be the compatibility metrics. If it is compatible, then yes, of course, we can migrate the configuration. So we have some other tools as well where you can, if some part of the migration is possible, we can take those configuration from the hardware to software and software to hardware. That is possible. Yes. Oh, okay, sir. Are you working with any of the firewall right now? Sophos Firewall? No, I'm working on Palo Alto and Fortinet firewall. I have a good experience in both this firewall for Okay. Palo Alto and Fortinets. Okay, all right. So if you the Sophos provides the free license, as you can see, if you have already attended my previous session, right? So in that case, we are already providing you the license to verify that how the Sophos firewall and each of the features works. So are those features are compatible with the rest of the firewall? Have you just compared as per your experience? Yes, that's why I'm asking questions because, and one more thing also, that's why I told you that regarding this Fortinet and Palo Alto, if I want to download the software and a license, I want to get it from the vendor, not from the individual cannot do this thing. Yeah, but here, each and every individual can do this setup. You can download the software. I will show you how you can download the software as per the platform you have, the available platform you have, whether it is hypervisor or it is VMware and so on. And also the license, you don't have to worry, you don't have to contact the partner. You can simply just use and you're good to go. If you find the firewall feasible, then you can make it live then. That's good. One more question, sir. Regarding the licensing, the price wise, did you compare with the Palo Alto, Fortinet and the Sophos? No, it will be it would be vary because it depends on the company's it depends on the company. So but here yes, of course, I will be completely focusing on the free license and the free trials. No, I'm asking about in suppose I'm a sales guy and I want to compare with this the three firewall like Palo Alto firewall, Fortinet firewall, as well as Cisco firewall and Sophos. So if I want to tell to customer, so which one is the cheapest? Because nowadays people are going for the cheapest one. We got to be based the hardware as well as the licenses. Yes, I understand, but you might find the license. It depends on the actually features and the technology provided by. So
like if we go for the cheapest, yes, of course, some of the features won't be available. In that case, we can just adjust the pricing. But yes, of course, I will be, let me just go through the license for rest of the firewalls and compare, and I will make some sheet and I will just present to you. Okay, sir. Thank you, sir. But here, yes, of course, we will be using free trial for 30 days each. For if, let's say your license expires also, here we will renew it and make it a free version. Okay. So next would be a segment. Yeah. So yeah, on the hardware, you can fill the license key. You also option of migrating migrating an existing UTM license as a trial or defer the registration for 30 days here. So deferring the registration can be useful if you are preparing a Sophos firewall prior to taking on site, right? So note that when the registration is deferred, there are several features that you are unable to use. To complete this registration, you need to log into your Sophos Firewall ID, and then Sophos Firewall will synchronize the license there. So if let's say if it doesn't synchronize, there is a button. If you just click on there, it will sync the license from the cloud. So last time we have created Sophos ID as well. You will get all the details for your license on the Sophos ID account. So let's begin with the next step. That would be that is the LAN. All right. So configuring LAN network, select the port that you have to work as a bridge to create the LAN, or you can select the gateway, configure the IP address, and if you want to enable DHCP, you can enable the DHCP here. So you can see the next page that will come up, it will ask you that you want to configure the firewall as a route mode, that is a gateway mode, or the bridge mode. So you choose, by default, it will be route mode, that is the gateway mode, and the IP address of the firewall, subnet mask. And if you want DHCP to be run on this firewall, you make the default setting as it is. If you don't want to run DHCP, untick mark and click on continue. That would be your so this would be your LAN settings. If you already, those who have already joined my last session, this is the similar steps that we have followed on the lab practicals. The same steps are there, so you don't have to worry. You can just watch the previous video. You can deploy the firewall. All right, you can also deploy the firewall on your laptop. So I will not only you will be working on the lab, but personally, yes, of course, as Catherine said, you can deploy the firewall. You can download the images. You can use individually. Anyone can download the images as per the versions, the latest version, or the whatever version they are already working on, and they can use the free trial version. They don't have to worry about the license. It will automatically get free trials for next 30 days. So you have option to configure the local network configuration, which is different depending on whatever, whenever you are. Okay. So yeah, whenever you are deploying the hardware or virtual or Sophos firewall. So we will start by looking at hardware device, where you can select which port can be used for LAN, and all the port will be used to create a single bridge LAN interface. So here we will use as a mixed mode, and once we use the rest of, let's say you have 8 ports on the firewall, and you are already using one port as a LAN and another port as a WAN, but you can use the rest of the port as a bridge port. Okay, so we'll use bridge port. We'll see what are the difference between lag and bridge on Sophos Firewall. How can we set up the mixed mode here? So once you have already configured on the gateway mode, once you use the unused port as a bridge port, that would make your firewall as a mixed mode firewall, right? So we'll see that in marking. So if any of the link fails, all right, so you know that we have redundant links now as once we use the rest of the port as the bridge port. So we have redundant links, or we can configure lag port between the firewall and switch, so that we have zero downtime. If any link fails, it will take over. So here you can select which port can use as LAN, and all
port selected would be used as a single bridge as a LAN interface. You can select the gateway for the LAN network to either to be Sophos Firewall or existing gateway, in which case the LAN will be bridged to the WAN side. So you can configure the IP address for Sophos Firewall, and optionally you can enable the DSCP. Note that DSCP cannot be enabled if Sophos Firewall is in bridge the LAN and WAN. Yes, Ketan? Sir, we can define sub interface also. Suppose in the LAN, I have a trunk port from firewall to my switch, and I have different VLAN, XYZ VLAN. I can define as a LAN as a sub interface also. Yes, that Like is one, possible. Yeah, that is yes. possible. Yeah. You can Okay. we will create that scenario. Each and every scenario would be created. Let's say router on stick, you can say, right? So we can configure VLAN, we can configure lag, we can configure bridge. The options which are already available in Sophos Firewall will configure in our topology one by one to see the working. So yes, of course, your question is that we can configure VLAN on the interface. That is possible. Yes. Okay. So let's say in a simple terms, we can consider the Sophos Firewall which will be working on that will have all the functionalities of a router or any of the firewall that is you are being means you have worked till now, that will have all the routing functionalities. Apart from that, which other features are provided by Sophos Firewall, we will go with one by one. Let's say WAF we have, okay, email protection. MTA mode we have. We will discuss what is MTA mode for email protection, what WAF is already integrated with Sophos Firewall. So we'll see WAF, we will see the failovers, we will see SD-WANs and so on. Yes, of course, it would included the virtual VLANs that if any topology has. So if you have existing firewall, you can replace this, you can replace with Sophos Firewall as well. Hello, yeah, Ketan, come again. Okay, all right, let me just continue. Okay, so for virtual and software devices, the configuration is very similar. Instead of selecting port to create bridge interface, you can select a single LAN port there. So next page that will be coming is to enable the security features. All right, but if you have attended my previous video, we have not enabled these settings. Okay, these are the settings on the firewall that will be looking. We will enable it. Okay, once the firewall is already being deployed. Because if you see, we have this feature for scanning and the network threats. We have protect the user from suspicious and malicious websites, and we are doing the tick mark to scan the files where download from any website that has malware and sends suspicious file to Sophos Sandstorm. So we look into this 0-day protection Sandstorm. If you enable this, yes, of course, the only thing is that you will get the error message for the website is not secure. So we are using Sophos Firewall as a man in the middle. All right, so as a man in the middle, Sophos would be serving all the requests from the firewall. So we will be installing Sophos certificate. Okay, we will see how TLS works mainly. We generally learn the technologies, but here we will see the action. Let's say how TLS work, how HTTPS works. All right, so we can scan the traffic and we can take the actions accordingly. But here, if you yes, of course, if you have watched my previous video, we have not enabled, but if you want to enable, you can enable it. But yes, of course, whenever you visit any website, you will get the certificate error. Okay, but we will avoid this. We will see what steps you have to take to remove all the errors for HTTPS on the address bar. You can see. So here also you can see one error is there, right? The reason is that
the IP address is not trusted by the browser. So we'll use Sophos as a certificate authority. We'll create the certificate, we'll sign it, and we will import the certificate to each and every system so that the IP address or the host name is trusted by your browsers. Okay. Also, when we are scanning from firewall, it will show you this error. If you, those who have already worked, they might be aware of the error, but those who are not working, they have not worked with Sophos Firewall. We will see how we can scan HTTPS traffic. So generally, yes, of course, nowadays all the website works on HTTPS. So Google, Facebook, whatever we say, we have to scan HTTPS traffic as well. So we will use Sophos as a man in the middle, and we'll see how it works. So next would be notification and backup. So you have to just enter your email address there, and if you want to encrypt the backup, you can put the password and click on continue. So you have to enter the email address for notification optionally. Specify your internal mail server for notifications. So optionally enable automatic backups and for with the encrypted password if enabled. All right. So if you set these settings, you will get the notification not only you will get the backups of the firewall on your email, but yes, of course, we will go through the notification list that is available on the firewall. That will help us to get notified whether the ISP is down, whether firewall itself is down, or IPsec is down. The HA is down. All right, so we have a lot of notification there. We will set it up and we'll see in action. All right. So the last piece of configuration in this notification is the notification and the backup. Here you will configure the recipient and the sender email addresses for notifications. You can optionally choose to configure an internal email server to use sending this. You can also enable automatic backups and use this. You need to set up if you need to set the encryption for the backup, you can set by ticking the mark. Next would be secure storage master. All right, that is the feature that is coming here. So this will encrypt your backup. So you have to set this. You will, whenever you're deploying the firewall, you will get the dialog box to set up this secure storage master key. So this helps when you are restoring the backup. When you are restoring the backup, it will ask you for password. So make it safe. Okay, so you have to set this password, and yes, make sure you save this password in your password manager and keep it in another safe where it is completely isolated. Right? You can store this. We'll look into this secure storage master. What type of issues comes when we don't set the secure storage masters, or when the migration or handover comes with the Sophos XG firewall. We'll see the key challenges, what we can do with the secure storage key while restoring the backup as a network engineer. So when you log into this Sophos Firewall for the very first time after installing, you will be prompted to create a secure storage master key. The secure storage master key is used to provide additional protection for accounts and password details stored in the device and in configuration backups. So once you have set up secure master, you cannot recover it, right? So yes, of course, if you forgot, then you might lose you will not able to restore the backup. In that case, the reconfiguration is the only option will be left. All right, so make sure you set the secure storage master and you remember it or save it in a secure place. So once you have set the security, you cannot recover it. Yes, of course. And why the configuration asks you to confirm that you have stored it in a secure master or other safe place. If you do lose the secure storage master key, you will not be able to restore the backup or configuration created with that key. All right. So how you can set, if you get if you are new to the Sophos Firewall, or if you are deploying, then it is you don't have to worry. You can set the secure storage master, but those who, let's say, have got the handover, let's say, and you don't know the secure storage master, or if you just log into the GUI of the firewall and you get the alert for this to set the secure storage master, you can immediately
set the secure storage key there. Okay, yes, of course, if you want to reset, if you know the secure storage master and if you want to reset it, you can do with the help of console access, not with the SSH. So you have to get the console cable, you have to connect to the firewall, you have to connect to the PC that support the console slot, get the console access. All right, and you have to go to these options here. The option number is 5, and then it is you can see system. You have to go to system setting, that is option number 2, and then you have to go to option number 5, reset secure storage master key. Once you enter 5, yes, of course, you have to enter the default admin password, and then you can just reset the secure storage key there. So while restoring master key, you cannot recover, it can be reset. So this is done via control line using the default super administrator account. It is the admin user password. Logging to your console of the Sophos Firewall as admin, and option 2 for system configuration, then option 5 to reset the secure storage master key. All right, so generally always we will be working on mainly the walk through the auditing the firewall, viewing the reports, and yeah. Okay, some people are still there. I need to delete those. Oh, hell no. Let me remove some of the peoples which are not required here. Yeah. Okay. So yeah. So next would be navigation and management. Let's see what is the navigation and management. So we'll look into the each and every parameters, each and every navigation where we can find the option to configure or to troubleshoot the issue mainly. All right, let's say we have deployed the firewall. We have the control center, or we can say the dashboard of the firewall here. So how we can manage all these options available here? We should be aware about each and every parameters, what are the options available to configure here. So you can see on the left hand side, we have the main menu, and you can see the control center. You will see if you are using hardware, picture is not clear. Just give me a minute, Ritesh. Okay, Ritesh. Oh, no worries. Yeah, this picture would not be more clear. Okay, no worries. But let's say we have the firewall here. We see the firmware version, and yes, of course, you will not able to see in more clear way, but we will go through the firewall. Okay, no worries. We will see that again. So yes, of course, what you will see here, you will see the model number that you are using on the firewall. If you are using the hardware or you're using the software. Okay, let me just stop the screen. Okay, let me continue now. All right. So web admin, the GUI, okay, GUI, we can say we have GUI, we can say GUI, or we will throughout this course, we will use the word as web admin console.
So this is the web admin console here. All right. So with the control center information. So what you will see, the model number of the firewall, the firmware version that is running on the firewall, and the appliance key number that you have got, all right, from the vendor. So you'll see a lot of details on the dashboard where you can take the action accordingly. So you can see system and services, the interface status, VPN status there. We can also see some red devices if you have. Let's say there are some branch office connected with the remote Ethernet device. They are very small devices. Those who are new to red, they are the small device used to connect the branch office. So it will show you how many are connected and how many devices or how many branch office are disconnected with the help of red device. You will see wireless APs which are connected and how many are disconnected here. This would be applicable only for Sophos APs. All right, and we have the users that are connected from outside. How many users are connected here? You will see the count here, and the live users that are the users which are authenticated, right? And you will see much. We will walk through all the details. What is the status of the CPU, memory, bandwidth, session, and so on. Whether the device is configured on high availability or not, whether it is managed through Sophos Central, that is cloud. This firewall is managed from the cloud or not, whether we have HA, high availability or not. We will see the status here. It is not configured as of now as per this snapshot, and since how many days or hours the firewall is running. All right, you will see the traffic insight on the firewall. Let me do one thing. I will just log into some demo firewall because currently the left firewall is not working. Yes, Pranab, tell me. Pranab, do you have any doubt? Gaurav? Okay, let me just continue. So we have other information like traffic insights. So what are the web category, web traffic is going on, which cloud applications are running, going through the firewall, how we can classify, we can take action accordingly, which are the application traffic is allowed, application traffic is, the traffic is going here with the category web, and what type of network attack has been hit. Of course, you will get much more detail in the reports to analyze those reports and take the action accordingly. You will see active user active firewall rules. So which firewall you, let's say you have WEF license. Okay, you have purchased the WEF license, you are using WEF. So how many WEF you have, how many users are authenticated through firewall. So yes, of course, we will use captive portal or CA client and STARS to authenticate the user in our upcoming labs. How many networks are configured, how many are scanned, how many rules are unused, unchanged, and so on. You will get all the details here. You will get summary of the reports, user apps, how many risky application has been seen. You can take action, you can download the reports, how many objectable website are seen, and you can download the reports and so on. You can take the action used by top report that you want for top 10 users. All right, intrusions, how many intrusions has been detected by the firewall. You will get the report and you can take the action. Okay, I believe those who have any doubt, just raise your hand, raise your hands. I will definitely, I will ask, come back to you. Okay, you can raise the hand now if you have any doubt. Okay. So users and device insight, this part will explain you the security heartbeat. Okay, the feature that is available on Sophos Firewall. For this, you should have Sophos endpoint, that is Intercept X. This will help you from protecting any type of ransomware attack or latest malware attack, and latest any type of attack. It will protect you with the help of synchronized heartbeat. So let's say if you have some application that are installed in the endpoints which are not categorized, so we'll see how the endpoints sends all the information to Sophos Central to get categorized through Sophos Firewall, and you can take action whether you have to
drop or take the drop or allow that application, or you want to reject it, and so on. Right, so we'll use the feature called synchronized application control. We will scan each and every file that being downloaded from the internet with the help of zero-day protection. That will be scanned and sent to Sophos lab. If it is fine, then it will get downloaded. If it's suspicious, we can take the action whether we have to allow it or block it. So we'll see what is ATP UTQ reports that has been generated by Sophos Firewall, TLS, and SSL connections. All right. Most of the time we will log into log viewers. We'll see the logs each and every time whether our configuration is working or not working. So always we look into the log viewer and we'll see how the traffic is getting processed and passed to Sophos Firewall. Okay, when you first log into Sophos Web Admin, you are presented with the control center, which provides a live view of what is happening on the Sophos Firewall, allowing you to quickly identify anything that is required your attention. So control center is broken into 6 main areas: system, which shows the health of the firewall and services. Each item can be clicked and you can get the more detailed information for that. Traffic insight, that provides a glance overview of what is happening on the network and the traffic being processed. The user and the device, and insight for the status of the users and device being protected by Sophos Firewall. These sessions includes the user threat quotas, which is the risk assessment for users based on their behavior. So yes, of course, you will get the top 10 users if the malicious, if there is in those websites which are most malicious, and we can take action. We can just stop the connection so that it doesn't initiate any type of attack. All right, so let's go to the main menu. We have main menu on the left hand side, right? Monitor and analyze. We have control center, which we already looked. Now we have current activities. We'll see each and every tab of which are the options available under the current activities. We'll see reports, zero-day protection, and diagnostics. So most of the part, yes, of course, we'll use the diagnostic, packet captures. We'll see packet captures whether our configuration is working or not working. If it is working, we'll see the packet capture. If it is not working, obviously we have to check through the packet capture how the traffic is flowing, and we can allow it as per the inflow and outflow. All right. So information on the current activity, reports, and diagnostics can be viewed under monitor and analyze. So down the left hand side, yes, in the main menu for navigation Sophos Firewall, this is the divided into 4 sessions. Control and analyze provides the access to information including the current activities of the Sophos Firewalls and reports and diagnostic tool. All right, then we have protect. Under protect, we have firewall rules and policies. So we most of the, yes, of course, to understand what are firewall rules on firewall, we will always go to protect and firewall rule and policies. So we'll configure a lot of firewalls to understand the firewall parameters that has been described, the net rules and the policies. Then we have intrusion prevention. So we have default policies for intrusion prevention. We will use the default one, or we can create our own custom policies under intrusion prevention. Similarly, we have web protection. So, and the web protection, there are default policies are available. Let's say to block the websites, to allow the website, or you can provide the schedules. You can scan for virus and so on. So we will be using the default one. Also, we'll be creating our own custom policies for web as per the user requirement or the group requirement. Similarly, we have application protection, and that is called application. We will walk through the default policies. We will create our own policies, the application list available, the traffic shaping, and so on. Under application, we have wireless, so we can use Sophos as a wireless controller. So if you have Sophos APs,
then we can use this option available to configure those APs or to configure control through Sophos Firewall for the Sophos AP. So we'll walk through the Sophos AP models, how we can configure wireless network with help of Sophos ecosystem. Then we have email protection. We will again look into the transparent mode and the MTA mode, how firewall acts as a MTA mode, what is the difference between these two modes, how we can scan the email for spamming, and how we can protect from coming, and how we can manage those if the mail has been quarantined. Then we have web protection. If you have web server, even though we can do port forwarding with help of firewall rules, we will protect the internal web servers or the service which are running behind the Sophos firewall with help of web protection under web server option that is available under email. And then we have advanced threat protection that we have to enable for if any type of latest ransomware or malware attack has been detected by firewall, it will log and report, and we can take action accordingly. Then we have Sophos Central instead of Sophos Synchronization, where we can access the Sophos firewall from outside. All right. To access from outside, we can configure the Sophos firewall, we can take the backup, we can update the firmware version, and we can do the maintenance work through secure connection. All right, so we'll look into that. So protect from configuring the rules, policies, and setting related security features. Now we have configure option that has VPN network routing, authentication, and system services. So we will configure site-to-site configuration. Okay, we will connect the head office and multiple branch office with the hub and spoke scenario. We will look into the policy-based routing, and we will configure tunnel-based routing both. All right, so we'll understand what is difference between the tunnel mode and the policy-based IPsec VPN. We will also configure site-to-site IPsec SSL site-to-site. That is the feature available on Sophos Firewall to connect your head office and your branch office. And we will see what are the limitation in each and every technology, what is the next step we have to take, and so on. We have routing session, we have network. Yes, of course, we can configure the interface, we can configure zone, and so on. So we will configure that with the routing, static routing. All the dynamic routing can be configured on Sophos XG Firewall. So yes, of course, we will be working on SD-WAN. We will route the traffic with the particular ISPs or particular MPLS and so on, or IPsec. We will integrate AD server with our Sophos Firewall for automatic authentication for our Windows server. So whenever, let's say, user is asking to access any resources, it will automatically log in without captive portal. Yes, of course, we will do authentication with help of captive portal. Means the user has to put their username and password to get the access to the network. All right, and then we will get the reports for the same, which user is accessing which resource in much more detail. We look into the system services where we configure HA and so on. All right, so configure whenever you set up the connectivity, routing, authentication, and the global settings. We will look into that. So yes, of course, it will work. It will provide all the functionality of a router. The firewall will work as a route. It will support all the routings, which all the routers and firewall supports, yes, of course, but with the additional properties. We look into the system settings, profiles, host, and services, administration, backup, and firmware and certificate there. So as you can see, we will create profiles. Let's say we have schedule policy, quota policy, traffic shaping, TLS description, encryption, do not decrypt and decrypt policy under profiles. We'll create host, single host network, and you will use services. Let's say we can say 3389. Okay, so we'll create those services. We will be using those host and services on the firewall rules and rest of the configuration. All right, so we will manage with the help of host and services. We will administrate the device, and yes, of course, we will
take the backup, and we will restore the backup in single mode. If you have single firewall, how we can take the backup from the HA, how we can restore the backup on the HA, take and restore it. All right, so we'll take the backup and we'll restore, and we'll see if any challenges come, then what step we have to take, and so on. We look into the different type of firmware version. When we have to update the firmware version, we will go through the release note. All right, if we have any type of issue or performance issue with the hardware, we'll look into the release note as well. We'll use Sophos as a CA authority. So we will sign the certificate to trust the website or particular any type of service running on the firewall through firewall with such a certificate here. So we will use Sophos as a certificate authority. So system which house all the devices access settings as well as objects and profile that are used within the rules and policies, right? So let's say we just walk through the sub tabs here. If we click on web, we can see the default policies here. So this is the default policies comes with the firewall. You can directly use the policies to block any categories or particular website and so on. लैब में तो हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे इसमें कि कैसे हम इसको we can play with these policies, how we can troubleshoot this issue, troubleshoot and allow and block the categories. Okay, give me a moment. So you can see policy quotas. So we'll look into each and every options available. What are policy quotas, user activities, what are categories, how you can see which website is categorized on which category available here. So if you have website URL, you can see that website is categorization here. Similarly, you can create some URL groups, whether you want to allow that URL or you want to block the URLs. You put in exceptions. Exceptions are bypassing from scanning. Okay, let's say if you have some website that you trust that website and you want to bypass that website, you can put it under exceptions. We'll see that. We will see the global settings, the general settings, of course. If you want to talk file types, let's say if you want to block exe files, then we will block exe files, or whatever the extension file we have to block, the options available will block with the file types here. Okay, surfing quota. But in the web protection module, that is 6th module, this will be covering in much more detail as compared to just navigating to this tab. Okay, right now we are just navigating to the options that are available here. All right, so let's check the next one, and if you have any doubts, do let me know. So each session that is accessible from main menu is further broken down into tabs for accessing each area of configuration. On some screen, additional less or frequently used tab can be used for accessing using ellipse on the right hand side. So let's say yes, there are more options here. Once you click here, you'll get what are the rest of the options available here. If you have, let's say your browser is small, so you might get till here. Okay, so you click here, you will get the rest of the options on the tab. All right, let me just go to, we will continue from here, but let me just open a demo firewall, or I have one topology with me. I hope you can see my screen. Yeah, okay. So this is the topology that we'll be working on. All right, so again, on the last session, we have checked this topology, right? So we have HA here. We have multiple WAN connection for MPLS and internet connection. So we'll do SD-WAN configuration. We will route the traffic through SD-WAN. And we will use all the features that is available here. We have authentication server. We will integrate the AD server with firewall. We have IPsec site to site. So we have head office and the branch office. Right, so we have head office, branch office. We'll connect the head office with the IPsec tunnel
we will connect the failover here also. We will test the failover if that means if let's say the head office and the branch office are connected with IPsec VPN, we will failover. We'll see the working, and same thing we can deploy in your real life environment, right? So yeah, we'll be taking the questions. I will be taking some questions now. Just give a minute. Okay. Anyone has any doubt till here in this session? Okay, raise your hands so that I can ask. I know. Okay, no one. Anyone has any doubt, you can let me know. No, sir, we don't have a doubt. Okay, so we will be just stopping here. All right, and I will be come on the next session, and we will do another lab session so that the idea would be more clear about the deploying Sophos XG firewall. Okay, if no one has any doubt, we will drop the session after 1 minute. Regarding this firewall, sir, is handling everything WAF, then wireless controller. How the performance is there? Because it's one device is handling each and everything. So how the traffic will be there and how the performance will be there? What types of hardware they are using? Hello, Ketan, can you please repeat your question again? Yeah, regarding this one box is handling multiple features like WAV applications, then wireless controller and the firewall. So it will whatever the performance will be there. Yeah, Sophos XG firewall generally it is using one of the if you look into our documentation, I will provide you some documentation where it's has extreme architecture that is actually protecting the networks through the acceleration part. So it's protect with help of extreme architecture. It has you can say extreme fast path. With the help of that technology, it accelerate if you are using, let's say, SD-WAN, it tunnel for through the fast path. It also has good performance routing base according to optimizing and rerouting through WAN link performance here. So it use extreme architecture here. So if you look into the XGS series,
the traffic is it has a very good performance through the extreme architecture. So we'll look into that architecture in more detail, how it is powered by extremes and how the traffic get accelerated or offloaded for important traffic, such as, yes, of course, like WAF or any SD-WAN traffic, cloud traffic, hardware level traffic. Okay, so we'll look into that in more details, how it is integrated with the extreme flow processors, how they have dedicated processors to process those traffic, like MTU and so on. So we'll discuss about that hardware architecture in much more detail. Yes. So it handles everything. So you won't be finding any performance issue if you are using all the features. So to test this, yes, of course, we will look into the labs and we'll see how the performance going on. So this way, it performs it support all the features because of this extreme architecture. So same performance, I will get it in virtual also? Virtual, yes, we can get, but yeah, the hardware requirement, if we just meet the hardware requirement as per the documentation, yes, of course we can meet those requirement and we can test it first in the lab and then you can deploy it. Yes, of course we can do that. Performance will be you can see whatever performance you will see in the lab, that can you can deploy in the real life scenarios as well. Yes. Okay, okay, sir. Ritesh, analyzer is not available on the firewall, but yes, of course, we have a report session, so we can look into the reports. We will take reports accounts and we can take the action. So it acts as an analyzer, but yes, you can integrate the analyzer with Sophos XG Firewall. Okay. Yeah. All right. So yes, of course, if you have a hardware device, Gaurav, then you won't be the performance issue. Ketan, yeah. All right. So yes, of course, we will look into the extreme architecture, which has all the hardware requirement. It has dual processor architecture, multi-core CPUs, and we have also the dedicated extreme flow processor. So we look into that architecture in details also, how the traffic is offloaded and how fast pass, slow pass take place on Sophos XG Firewall to provide you all the features you can run at once. So we look into the architecture also in next labs. Okay, we'll see that. Sir, suppose I want to put this firewall on EVNG. It's it will be available, right? The software. Yes, that is available. You can do one thing. You can you can use the URL download.sophos.com. Okay, so you can download the. Yeah. Can you share me on a chat, sir, please? Yeah, I'm sharing that. Yeah. So there are multiple ways you can download the firmware. Let me just put this link on chat. You can download the firmware from here. Let me just go to the website. If I go to the website,
Those who want the free trial, you can download from sophos.com. You can go to products. All right, and you can see Sophos Firewall here. All right, let me just click there. Scroll down. So yes, of course, you can see extreme protection right here. So that's the reason it will have very good performance if you're running all the features. If you just scroll down, you can take a demo here. Okay, put the name and you will get the link. The link which I provided you, you can download directly from here. These are the versions available, so you can download any. So for VM, okay, so here are the format. You can use any. Okay, what Right, for free. after registration? If you don't after want that, regis- you can simply go to Sophos website and you can go to product and Sophos Firewall and just scroll down. You will get free trial and you just give these details. That's it. All right, now. Okay. Yes, Ketan, tell me. Did you get the link? I got the link. Just download it, and I went to the website also. They're giving this the cloud access, cloud firewall access, and I'm searching now. Download the files Okay. for EVMG. Let me just search it. Can do one thing. Simply type download. Okay. Or you can get the direct link which I have provided you. That will be fine. Okay, you will yes, you will get a free trial here. You click on free trial. This is the cloud version. This is the cloud version, sir. This is the cloud version. You can see that. I already did that also. They given me the cloud access. Okay, give me a minute. Let me just share that link. Okay, let me just fill the form and see that if I'm getting the same thing. Okay. If you scroll down, are you getting the option? Yeah. Can you see this one? So you did this right? You got this, Ketan? No, sir, I did not get it. Where exactly you went? You went to that products, then? Yeah, let me show you. It's on service and product. And Sophos XG Firewall. Yes. And you free trial. click Okay. on free trial. Once you fill up that form, okay, you will get yeah, just let me check it back. If I click on submit, I think I will get it here.
Okay, you get this page. I'm doing now. Wait a minute, sir. Sophos product. Yeah. So you will get installer for your virtual environment here. So it supports on VMware, Hyper-V, KVM, Citrix, and Okay. Online demo. This is a cloud. you, Okay, no problem. I will check it, sir. If I have any you have doubts, to click on next. free trial. Okay, let me. Okay. Okay, let me just do it again for you. Once you fill this form, okay, click on submit. Okay, you will get this message. Thank you. Check your email for evaluation for service number. And if you scroll down here, or let me just share this link, this might help you. Okay, here it is. Can you click that link? Ketan, can you hear me? Yes, sir. I got it. I got it. Yes. Okay, so can you see the screen? My screen now. I can see your screen, and I went to the same screen as your screen. Yes. So here VM. you can download the version, the firmware for the platforms available here. Okay. Okay, you can use on the VM. Just simply click on download. It will download Yes. the zip file, maybe. Yes. And Yes. no worries. Actually, I will. If I get this error, you might not get the error if you download that. All right. Yeah. I will share in the group. This. Okay. Do one thing. Follow this. Okay. You will get it. Okay. I share the link on chat. Ketan, you can also follow Yes. that. Yes, So I will do that, sir. you can click here again. It will redirect to the same page only, which I have. You have to fill that name, address, and phone number, email address. Make sure you enter your company's email address. All right. Then only it will help you to download. Then you can download the file. Oh, okay. And I have shared this link. You can follow this link to install the. Okay, next I will make one video how to how to download and move to your VM environment. VMware environment. No problem, sir. No problem. Okay, Ritesh, did you get it? Did you get the link? Okay. Okay. Anyone has any doubt apart? Yes, till now. No worries. As we complete the modules, complete the modules, or when we complete one by one module, you will be able to ask the doubts. Yes, Ritesh, tell me if you have any doubt. Okay. Okay, so if no one has, so for today's we will end the session. But yes, of course, those who have any doubt, you can if before the class begin, you can ask me. In between, we can stop me, and first we will discuss the doubts, and then we will continue the modules. After the module, yes, of course, you will ask me a lot of doubts once you are aware about the Sophos XG Firewall. Those who are completely new, all the videos are available on NetGUI channel, so you can search that. You will get the videos if you you will get the videos. Yes. What about your documentation, sir? You prepare that you're showing in the training that we can get that the presentations, Yes, or no? yes, you will get on the class. Yes, you will get it. It will be uploaded on the portal. You can download from there. All right. So you'll get the document part as well. Okay, sir. No problem, sir.
All right. So those who yes, of course, like those who are completely new, you will be learning about Sophos Firewall. Not only the firewall, yes, of course, the routing functionality on the firewall and also firewall features from scratch. So you can start with your career. If anyone has any doubt, then we will wait for 1 minute and then we'll take it. Otherwise, we'll drop the session for today. Thank you guys for listening. So our next batch will from Monday onwards, right, sir? Yes, that will be from 6 p.m. to 9. Okay. From problem, on the sir. lab, we will start the same thing which we have covered till now. Again, we will start it from scratch. All right. So the theory part and also for the lab also. We'll deploy the lab. And also, let's say you are a salesperson, right? So we will deploy your topology in the lab. We will test it so that not only you, but rest of the students or the professional knows what are the different type of topologies and networks each company has. So we can meet all the security features requirements, cyber security features. All right. Okay. So it seems rest of the guys is not having doubt as of now. No worries. Once you complete along with this course, once you complete this course, you will have a lot of doubts, and also you will able to solve yourself as well. I will also help you. So let's end the session for today and meet on Monday. Okay, sir. See you. Good night, sir. Good night, everyone.
Hello, everyone. I hope everyone is doing good. Am I audible? Yes, sir. Okay, so we'll start the session for today. Let me share the screen. So I will start from where we have left, but yes, of course, we will have the quick recap, what we have done last. All right, so I hope everyone can see the screen. Okay. All right, so last time, if I just scroll back to some of these slides, we will have the quick recap that we have done, right? So we have discussed about the deployment mode, right? What are the deployment options we have while deploying the Sophos XG firewall? All right. तो कौन-कौन से डिप्लॉयमेंट ऑप्शन है, कौन-कौन से हम सिनेरियोस पे Sophos XG डिप्लॉय कर सकते हैं? जो मोस्ट कॉमन सिनेरियो है वो हमारा है गेटवे मोड, राइट? कोई भी अगर अभी तक हमने जो सिस्को का राउटर जो कॉन्फ़िगर किया है, right? So always we have configured in gateway mode. Yes, of course, we have also configured the router in bridge mode, and option might be available for mixed mode. Same चीज़ है हम Sophos XG firewall में भी deploy कर सकते हैं. All right. So जो हमारा gateway mode है, right? वो throughout the जो हमारा कोर्स होगा हम उस पे ही का ऑलमोस्ट वर्क करेंगे. So that would be in gateway mode. Firewall will be completely on gateway mode. Also, we'll use bridge interface. We will use जो भी हमारे interface जो use में नहीं है, we will use those interface as a bridge mode, so that we can see how mixed mode can be deployed on Sophos XG firewall. So this would we are on this page right now, right? So जो हमारा last session था, हमने बहुत कुछ हमने theory discuss किया था. Let's see. We will have one quick recap, and we'll go through some of the practicals. We'll see how it works. If anyone has any doubt, just stop me in between. I will be happy to just answer that. Let's begin with the next one. So let's have a quick recap. We have deployment options, right? So we have discussed about the gateway mode, where our firewall is in the gateway mode here, right? So port B is our WAN zone here in the gateway mode. Port A is our LAN zone. So we have C port as our DMZ zone. We have discussed about the gateway mode. We have discussed about the bridge mode, where Sophos Firewall would be in between your switch, L3 switch or L2 switch, and without replacing your existing firewall or router. So here, the firewall will act as a bridge mode, and it will scan the traffic for any type of intrusion or advanced threat protection. It will bridge your LAN and DMZ zone with your existing firewall. All right. So yes, of course, it will support synchronized security. So we'll look into the synchronized security in upcoming modules in much more details. Simply, we will install Sophos and Intercept X and XG firewall and Sophos Central. With help of these three products, we will achieve what is synchronized security to protect our topology, network, or premises. All right. So we have discussed about the bridge mode. We have discussed about the application WAF, that is inbuilt feature of Sophos XG firewall. So you can, whether it is in gateway mode or whether it is in bridge mode, you can use this feature of WAF. Yes, of course, license would be required if you are protecting your web servers that to be protected from outside. So we will deploy this topology. Those who are already working, those who already have existing firewall and don't want to disturb any network schema,
they can use the breach, and yes, of course, they can use the WAF feature to protect the internal web servers or application server from outside. So we have discussed about the web server, but yes, of course, in more detail, we will see in upcoming modules about WAF. It has dedicated modules for each of these sessions. So we have discover mode, where the firewall will act as port mirroring, where it is connected to a switch. Okay, so directly switch पे ही connected है firewall, और यहाँ पे सिर्फ हम कर रहे हैं port mirroring. We are not using the firewall as a breach or gateway mode. Port mirror करेंगे, all right, so that यहाँ का जो भी traffic होगा हमारा switch का, all right, a copy of that will be sent to the Sophos XG firewall for security audit purpose. All right, so जो भी traffic आ रहा है, it will be get copied on the Sophos XG firewall, and it get used for auditing purpose. All right, so yes, of course, we will configure one of the port as discover mode. We will enable the ports on both the side, on the switch side, also from the firewall side, and we will get a copy. The traffic is whatever the traffic is parting in and out from the switch. It will generate the report what traffic it has been detected. Might this your existing firewall or router might not have the functionality to generate those reports. So the Sophos XG firewall will help us to get those audit reports, and then we can take the action accordingly. So that is the discovered mode we'll use. So we will go with the gateway mode. So most deployment, and we will see the deployment and setup. So whenever you have the firewall, physical firewall, we have discussed that your first port is your LAN port, second port is your WAN port by default. जो आपके default ports होंगे जब भी firewall आपके पास, if you have new firewall, always consider the first port as a LAN port and the second port as the WAN port. Yes, of course, when once the initial setup is done, where you can change, or you can use any of these port as per your wish. You can use first port as your WAN port or MPLS port, second port as your HA port or LAN port or WAN port, and whatever port that you have to define on your topology, you can define once the initial configuration has been done. But when the box is, when you get the new firewall, we have to always give the internet on port 2, so that the firewall can be registered, and the LAN port is to access the firewall. That is your LAN port. You can connect the laptop directly and configure before you move to the live connection. All right, so we have discussed about that in the last session. We have discussed about the SSH and console access of the Sophos Firewall. लैब पे तो जैसे ही कंसोल एक्सेस की जरूरत, कंसोल केबल का हमें जरूरत नहीं पड़ेगा. Okay, so we have, if you look into the diagram, we have the console ports that can be connected to your PC that supports the console port, and you can have the console access. Okay, both are means of taking the access of your CLI. So जो हमारा firewall का CLI होगा, we will use both. In the lab, we have to just click on the firewall, we will get the console access. But in the real life scenarios, yes, of course, you need the console cable. अगर console cable आपके पास available नहीं है, all right, so you can look into that box which was जो आपने unbox किया था, right, उसी के साथ ही console cable तो आता ही है, all right. So what you can do, you can use that. If you don't find those console cables or necessary network tools, you might have to purchase it. Okay, so before you require the console access, make sure you have the tools that are required to access any of the device. All right, so you should always have the console access. In time of any calamities, disasters, we cannot go and find the console access, right, if it is not available. So as a network engineer, we should always have a good access to the device through console access, also via SSH. Okay, so SSH and console both access would required. As an engineer, you should have access to all the device with the admin rights.
you should have all the access on SSH and console, so that whenever you are moving from one device to another device, you required the access, right? So that then only you can perform some action like troubleshooting, or you can do some configuration changes and so on. So we will discuss about those good practices in more details in upcoming along with these modules. So we look into the command line interface on the labs. As I said, just click on the node. All right, that is on the firewall, and you will get the console access on the next tab. But the real life scenario would be different. So we will overcome this, so we don't have to struggle to get the access of the devices. All right. We look into the secure access of the SSH also. In upcoming slides, we have SSH, how we can administrate the Sophos XG firewall with secure connection. कौन से engineer को हमें SSH access देना है secure connection से, we will use public key authentication. So what is public key authentication? Live में देखेंगे तो idea आएगा. So we will use those features available on Sophos XG firewall. सारे network security device में feature होता ही, alright, but we will make most of the use of the security features available on the firewall. Alright, so have the console access. When you are accessing Sophos Firewall for very first time, the default username password is admin, and these credentials are changed as a part of initial setup wizard. So you will be asked to change the password when you are doing the initial setup wizard. So if you have gone through my previous video, yes, of course, you have noted that we have already completed the initial setup wizard, that is deploying Sophos Firewall, right? So what we have did last time, we have deployed the firewall, we have registered the firewall, right? We have changed the password and so on. So we will do that again. I will show you that part, those who have missed. So we will walk through the CLI. We will see if you are not getting, what are the default port rate, okay, when you have physical firewall and you are trying to access the CLI, right? So this would be, if you look into the last paragraph, you will find the parameters for the console that you have to set it up to get the console access. So the baud rate, whenever you are accessing Sophos XG firewall with the console cable, not with the SSH, all right, we have to take the access. We should have access via SSH, web admin, and console. So currently, let's talk about the console, which is done with the help of console cable. The settings, the parameters, the baud rate should be 38400. That should the speed. So you should set on the PuTTY. I will show you that setting. Yeah, those who are not aware, but those who are aware, yes, of course, they will set it 38400. Data bit, they can set it to 8, stop bit to 1, and priority, they can set it to none or 0. All right, so this will help you to get the console, right? Console access of the firewall. All right, so when you use the console access, when what happened if we don't have the console access? All right, so let's say if you are failed to arrange a cable or the device with support consoles, console port, all right, you might not get the console access via the console serial cable. All right. Let's say you are working on, you are getting the console access via SSH, that is fine, but few days you lose the access of the firewall due to, let's say, hardware failure. So you will not able to take the SSH access, right? So in this case, the console cable will help you to get the CLI access of the firewall. Yeah. At that time, yes, of course, a physical connectivity will be required. So with the console cable, we will see what are the different type of console cable are available in the market for different type of security devices. That is not a part of this courses, of course, but to discuss at the time of any disasters, or when you're doing some troubleshoot to fix the issue, you might require the access of the device on which you are working on. If you don't have the access of the device properly, you might not able to fix and may cause issues. So we will work on this. We will see, we will make sure that console access is always available via the console serial cable as well as from SSH on the firewalls. In case of any issue again, if you lose the access of the firewall, we can get it back.
So yes, of course, if you are working with the physical firewalls, yes, you will get the console cable along with the box. Not only for Sophos firewall, yes, any type of network security devices, the cable comes along with the box. So with the Sophos firewall, it is provided, so you don't have to worry about that. We have discussed about the initial setup wizard in the last session. So when you plug the firewall port A and a laptop, it will automatically get the IP address from the DHCP server already running on the Sophos XG firewall. All right, so once you get the IP address, you can go to CMD command on the same laptop. Yes, of course, you can type IP config/all. You will get the details, the IP that has been allocated to the laptop. In case you don't find, you can statically put it. So that is a part of troubleshoot. But yes, of course, in case you didn't receive the IP address from the firewall, you can statically apply 172.16.16, let's say 100 or whatever you want to put the IP, the number in the end. But gateway should be 172.16.16.16. That is the default IP address of the Sophos XG firewalls. Okay, any of the firewall, if you want to access for a very first time, if you're accessing, the default IP is that. If that is for the new device, if let's say the firewall is already being deployed, but you don't know the IP address of the firewall, you can, yes, of course, go to the console access again. Right, you don't know, right? You don't know the IP address. Not with the help of SSH, you can go to the console and you can find out the IP address that is configured. Okay, I will show you later and after some slides how whatever we have discussed till now. So yes, of course, let's say if you receive the IP address, you will note that you have received some 172.16.16.17. Subnet mask would be /24, that is 255.255.255.0, and the gateway IP you have received might be 172.16.16.16. Okay, that is for sure. All right, so once you get the IP address on the laptop, you can ping to 172.16.16.16. If you receive the ping, that means the firewall is reachable. Then you can do a telnet on port 4444. If you are in, that means the GUI is ready. So this way you can verify whether the firewall is ready for next step for the initial setup wizard. Or if you have already set up the firewall, and if you, let's say, rebooted the firewall, or the firewall was shut down due to power failure and come up, you can check with the ping connectivity and telnet. If the ping is working, do telnet. That means the firewall is up and running. So we'll see that in working. So you have to go to the browser, yes, of course, and you have to type HTTPS and the device IP that you have set, and 4444. That is the port number on which the firewall GUI listens. So that is the GUI of the firewall. All right. So device IP means if you have configured any IP from the console, or you can use the default IP, that is HTTPS 172.16.16.4444, and you will get the page. All right, so we already walked through this initial setup wizard, where we have first enter. The next page was to just tick mark and set up the wizard, and next step was to set up the admin password, and we have click on continue. Then we have next page was to set up the internet connection. So if you already getting the if you have connected the internet connection from your upstream router and it has the DHCP running, then automatically Sophos Firewall will get the IP address from that router for the internet access. If your router is not set up with the DHCP, you can manually configure the settings here. You have to select the port B, that is for our internet access. Interface type would be static IP address and dynamic type there. You have to select static IP if you are doing static, if the DHCP is not available on upstream router. Put the free IP and subnet mask that is configured on your ISP router. You can give the name of the router and the DNS and gateway. All right, and click on apply.
and you will see the green marks there. If everything is green, then that means the gateway means your upstream route is reachable, the DNS is reachable, and the IP address is reachable, and you are good to go to configure the next step. All right. You can skip also, no worries. You can configure the IP internet on a firewall later on, but it will not register the device, and you might face some routing issues. So better to register the device. All right. So yeah. All right, so we will talk about the firmware. So once you configure the internet, the next page is to configure name and time zone. We have configured the name and the time zone. So we have given the name of the firewall and we have selected the region, automatically took the IP, and we have clicked on continue. Then we have moved to another page called register your firewall, where we have selected the new option. All right, the second option, that I don't have a serial number, the second one. All right, and start a trial. Yeah, we will be using trial versions on this lab. Throughout the lab, we will be using trial version only, but it will give you the same functionality which you will purchase after the license. So those who are willing to purchase license, we will talk about the license. It is not part of the module, yes, of course, but definitely we got the queries. So we will discuss about what type of license available for 1 year, 2 year, and what type of bundle you should buy it. Let's say if you don't want to protect your web server instance, let's say you don't have to purchase the license. If you want to use SD-WAN, you can purchase the license. If you want to scan the virus for web traffic, yes, of course, you have to purchase the license. So if you, in case if you are not using Sophos Firewall as a WAF, then it's fine. You don't have to purchase the license. All right. So throughout the course, yes, of course, we will use all the features one by one, as all the license would be available. So we can test it, and then we can deploy it, and we can go live. And then on the next page, we have defined the mode for the firewall as a gateway mode, the IP address. All right, that is already comes with the firewall. If you want to change the network here, you can change it. If you don't want to run DHCP, you can untick mark the DHCP and change the network, or you can keep the default and just click on next. Later on, yes, of course, you can change the same network as per your requirement and choice. Everything is you can edit it and save it. If new requirements come, if you need to change the network or subnet mask, that can be done after the initial, after registering your Sophos XG firewall. All right, so you can first follow these steps, and then you can configure the firewall once you get the access. All right, so access is most important. All right, so next will come the network protection. So you can tick mark those features. So we'll discuss about the features which you see while doing the initial setups. So just by default, it is untick mark. All right, so don't worry about the tick mark on this slide. But when you will do the when you register the firewall in the lab also, or also in the real life scenario, if you are deploying new firewall, okay, by default it would be unticked. So you don't have to worry about, but we will discuss about each and every parameters here. That is in the sixth module. Everything is available. So whether you configure now or later, it doesn't make any difference. So better to make the configuration after you register the firewall for the initial setup visa. All right. Next page will we have discussed about the notification and backup, where we have set the email address, an encryption password, and click on continue. We have set the secure storage master. All right, this is used to for, let's say if you are restoring the backup at that time, yes, of course, for security purpose, we are setting the master storage secure master key, where we have to use while restoring the backup or taking the backup. All right, so you can use this. We'll discuss about the secure storage master, what would be the challenges if you forgot it, what if you want to change it. Okay, we'll change it right away, but let's say if you forgot it, what we have to do next, we'll see that. So if you want to change it, yes, of course, you can go to console. जैसे मैंने आपको बताया था console access चाहिए होगा हमें, तो console access, we'll take the console access and we'll reset with the option number 5. Okay, so you have to go to, first you have to go to option number 2.
then you do select option number 5 from system settings. All right, you can see system settings here. That system settings comes with the 7 options. First, when you get the console access, once you put the admin user password, you will get the option 7 options. You have to select second option for system settings, and then you can see option number 5, reset secure storage master key. So those who are already working with Sophos Firewall and they don't know what is the secure storage master key, I would recommend to reset the key so that you don't face any issue. All right, so you will have your secure backup. All right, so those who have any doubt till now, just raise your hands. Ritesh, do you have any doubt? Give a moment. Hello, Ritesh. Yeah. Okay, no worries. Okay, those who have just raised your hand, I will come back to you. All right, just raise your hands and I will ask. Let me continue then. Okay. Then we have discussed about we have discussed about the navigation and management. तो हमारे जितने भी options होंगे configuration के, all right. So we should know where we can configure IPsec VPN, where we can configure interface, where we have to configure the zones. So throughout this course, once we configure everything, we will know where rules and policies are configured, where our net rules are configured, where our TLS rules are configured, all right, where we have VPN setup, where we have SD-WAN setups, where the host and services are created, where our system services are running, where do we have HA configuration, authentication server are integrated, and many much more. Right. So these are the examples. We have a lot of things to discuss in each and every module. All right. So we have access to the firewall. Once we register the firewall, we have the control center. That is, let's say, that is the dashboard, which will give you the insight of the traffic, what is going on the network, right? So you will see on the dashboard, you will see many sections like system details, whether the services are running, whether the interfaces are running properly or not, whether VPN services or VPN are running or not. All right, we will see on the system. We have read their remote Ethernet devices, where remote internet devices. If you have these are the particular, we will discuss about what are RAID devices. They are small devices, all right, which is used at the branch office. So we will discuss about what are the different models are available. Like we have Sophos firewall models. Similarly, we have RAID models. We have switch models. So similarly, we have RAID models to connect your branch office towards your head office. So if let's say you have multiple branch office, so the count will show here whether which branch, how many branches are connected with the RAID. If any of the branches is not connected, disconnected, or you will get the alerts and reports and the number counts here. Similarly with the APs also. So if you have Sophos APs, we will discuss about Sophos AP models, what type of APs you can use in your organization. If you have small scale organization, or if you have large scale or medium scale organization, which type of AP and RAID you can use. And here you can use Sophos Firewall as a controller, wireless controller as well, where you can configure wireless AP from Sophos
Sophos, and you can manage it through Sophos XG Firewall. Not only the Sophos XG Firewall, you can also manage from Sophos Central. So we will use Sophos XG as a controller here in our course. Throughout the course we'll use. So it will we can push the configuration on the APs, and we can make wireless network, and we can of course we will secure those wireless networks. So here also you will find how many AP are connected, how many got disconnected, all the alerts you will get it from the control center dashboard. So we can investigate the issue. We have live users, we have concurrent remote users. If the user is connected from outside, that will be shown here, the count and the live users. If you click on any of this blue count, it will redirect to your settings. Okay, it will redirect to some of the settings where you can check the status. So we'll see from the firewall, this is only the snapshot available. So this is the first page which will, once you log into the Sophos Firewall, what action you can take immediately after looking into the controls center. So this will help you to take the immediate action in case of any security has been breached, or if you see any type of connectivity is getting failed, or user is not connecting, and so on. We have other information like CPU usage, memory usage, all right, all the details here. But if you want more insight, we will look into, we can click that and we can get more details. We will go to the firewall and we'll see that in more details. If you have configured high availability, okay, HA. So those who are not aware about the HA, for them, HA, let's say we have another device which standbys in case of any hardware failure or any type of link failure. So we will configure our active and active passive. So this feature is also available as compared to rest of the vendors. We have active to load balance the traffic between the firewalls, or you can use the firewall active passive as a standby, and you can, in case of any failover, it will do the failover as on the HA. Right, so you don't have the downtime there. You have the zero downtime on your network. All right, so we'll discuss about the HA. We will manage all the firewalls through Sophos Central. We will access the firewall from outside. We will push the configuration from Sophos Central and use the features available for the backup and restoration process and firmware upgrade. So we'll discuss about a different type of firmware as well on this module. All right, so this will give you the insight. It has much more to discuss. So this will be the first page we have discussed. For the control session, control center, we have multiple areas that are mainly divided into 6 areas that we have discussed last, right? So one is system, which shows the health of the firewall and services. Each of these items, yes, you can click, you will get the more detailed information. You will get the traffic insight that provides at a glance overview what is happening to the network and the traffic being processed. You will get user and device insight for the status of the users and the device that being protected by Sophos Firewall. So yes, of course, this session will include the user threat quota, which help you for the risk management of the user based on their behavior. All right, so we discussed about the main menu in the last session, why this one is important. So when you are managing the firewall, all right, when you log in the first time or whenever you log in, you should be aware which part we have to first look up. All right, so let's say in case of troubleshoot, you can first go to monitor and analyze, right? So we'll see what are the options available. But we have control center, which we saw the first time. We will see the current activities, what are the live current activities are going on the firewall. That will be seen under live current activities. Let's say how many live users are connected, how many users are connected, how many applications are being connected, how many remote users are connected there. We will see all the data. What are the IPsec connectivities are currently working there. All right, so we'll see that. We'll look into the reports. All right, so what are the reports available on the firewall? We'll see the 0-day protection. We will see all the reports regarding the file that being scanned, the status of those file, and we can also take the action for those file
which was downloaded. If some file has been detected as suspicious or malware, we will take the action accordingly. Then we have diagnostics, where we have some tools to ping, trace route. All right, we have multiple options that we can check while doing some connectivity, test connectivity, troubleshooting, which we will see packet captures and so on. So today we will see that part, packet capture as well. We will secure fast connection today. Then we have protect. So we should be aware where we have to configure the firewall rules. That would be under rules and policies. So if I say where we can configure net rules, that would be under rules and policies. All right, so we'll discuss about that. We'll discuss about intrusion prevention. We'll apply the default policies, and we'll see what type of traffic being detected and get what action has been taken by the intrusion prevention policies. Similarly, we have WEF, right? You can configure web traffic, that is your browser traffic. You can scan your browser traffic in case of any virus or malware. So we'll see how HTTPS decryption works here. Okay, it's quite simple. We'll see that. What are the challenges will come, what step we have to take to fix those issues within no time. All right. Then in the web, we'll see, of course, we'll create our own policies, web filter policy. We will apply, we will block YouTube, allow Facebook. Okay, let's say we will block EXEs and so on. We will do same thing with the application. We will block some proxy applications like Thor application. All right, we will block all the proxies which are not needed. We will yes, if you want to use Sophos Firewall as a controller, as I said, that settings are available under protect. We will configure email protection. So we will see what is the MTM mode and the legacy mode. We will protect the web server under web server. All right. So if you are no, if we have already done the port forwarding and the pad forwarding, right? Port address translation, net address translation. So with the WEF and you can do with the help of DNet here. So if if we have traditional routers, we do port forwarding. Here we will call DNet. So we'll do the port forwarding. We will access those ports from outside with the help of rules and net policies here. If we have web server, if you don't have the if you have the web server and don't have the web license, still you can access your the server from outside with help of rules. So we'll configure those rules and net rules to access your server from outside. But if you have if you want to protect it from any type of attack which works on HTTP or HTTPS, we will use WEF here. So that is web server here. Okay, we will enable the advanced type of features that is available on the firewall. We will log and report those threats and we'll take the action accordingly. We have central synchronization. So we will integrate the firewall with the cloud so that we can access the firewall from outside securely without enabling the WAN zone, all right, which is not secure, or without ACL rules. So we can manage it from the cloud, and that would be free. You don't have to purchase the license. If you are already working with the Sophos XG firewall, you don't have to purchase the license for Sophos Central to manage the Sophos firewall. All right, so you can use this as an advantage. So next is our networking part, the connectivity part that would be covering up on the configure. So in our lab, we will configure IPsec failover, we will test it. We will configure site-to-site IPsec VPN and the failover. We will also use, if we have Sophos XG firewall on our head office and the branch office, in that case, we will use SSL site-to-site connection. I will show you those settings, so you don't have to worry. As you move to the modules, your doubt would be much more clear. You might have a lot of doubts while I speak. So once we move the module and the day one by day, your old doubts will be clear, as we will do this configuration on the lab also. We'll see the testing.
So we will configure the IPsec failover. The options available here. Let's say if you have multiple vendors, let's say other office has the third-party router or the firewall. Let's say you have Sonic Wall, Palo Alto, or any firewall with support IPsec. We will connect that branch to our branch with help of IPsec VPN. But if we have Sophos XG in both the location, we can also use SSL site-to-site options available on the Sophos XG firewall. We will see the failover so that we don't have zero downtime. Failover we will do with help of two ISPs. So if one ISP fails, the traffic will move from the other ISPs, and if that ISP comes up, then traffic will move to the first ISP, or we will keep the settings as per the requirement depending upon the topology. So we'll see everything how we can achieve those things. We will configure MPLS connectivity. So we will have one MPLS connection and one IPsec connection. So if let's say if the MPLS getting failed, we will move the traffic automatically will move to the IPsec VPN, all right, for your branch office. So this way we'll have zero downtime for this. So you'll use SD-WAN. So we'll use SD-WAN technology on Sophos Firewall. We do have the license, so we will first deploy it, we will test it, and then we will go live in our production environment. Right, we will first test it and then we'll go ahead. So this is the connectivity that we will do under a VPN. We will connect the remote user, particular users from outside to access the web servers from outside under VPN. We will use what is IPsec VPN for remote user, remote access, and the SSL for remote user for accessing particular resources. So what would be the difference? We will configure both and we will see which one is more feasible for us to configure, which we will use it, all right? Whether we will use the policy-based routing, whether we will use route-based routing, that we will decide. We will configure, we will test it, and we will see which one of these are meeting our requirement. Then we will deploy it in the production environment. All right. So in future, let's say if you are handing over to some other users or the engineer, he might not face any issue, right? So you have the very good configuration there. Okay. Then we have network. We'll configure the interface, the zones. What are the zones? So we have WAN zone, LAN zone, Wi-Fi zone, printer zone. We will configure different type of zone. That zone we will use in the different interface available on the firewall. So we will, on the lab, we will have two WAN zones. That is for two internet, three internet connection, two MPLS zone. That would be your MPLS connection. You will have LAN zone. You will have lag, you have bridge mode, all right. So you don't have to worry, but once we will do that, you will get more idea to configure and to meet those requirements, and you will know about those technology in much more detail when you implement after this course. All right, so we'll discuss once, let's say we set up the IPsec connection, we will also discuss the key technology that is taking part in the VPN session. All right, so we'll see that. We will authenticate the users with the help of captive portal. So today we will do captive portal also. We will authenticate the users to have access to the resources. All right. We have system services. So we look into where we can configure HA. What are those? Yes, Ketan, do you have any doubt? No, sir. It was by mistake. All right, so next would be your system services that we have discussed. We will configure the HA here and we'll test it. We'll fail over those HA and we'll see whether we have, how many drops we have. All right. So when we do fail over, the minimal of 4 to 5 packet will get dropped. That means you don't have the downtime. All right. So 2-3 packet is fine if it is getting dropped, but we will have the full connectivity. All right. So moving to next. So the last part was the system where we will configure the profiles, device settings, the objects, and the profile that are being used in the roles and the policies. All right. So this was the quick review of whatever we have discussed in the last session. All right.
So once you click on protection WAF or any on the module, you will get the tab navigation. All right, so we will discuss each and every tab that options available on the Sophos firewall. So you can see the policies. All right, well, you will see surfing quota status, user activities, categories, URL, exceptions, general settings, file types, surfing quota, and we have much more that is available once you click here. All right, so we'll see that. So we will go through each and every tab so that you know which part of the settings you have to look while you are doing the first time configuration, or you are troubleshooting the issue, all right, or you are deploying new setting, new requirement on your topology. Let's say we have user activities. What are categories here? Okay, what are categories? What are URL groups? What are exceptions here? What is general settings? So we'll discuss each and every tabs in upcoming 6th module that we have in depth. Each of these modules, you can say, are being detailed. I have detail we will discuss it. All right, so let's say general settings are the global settings, all right, of this web protection. Exceptions are, let's say you are scanning the traffic. Okay, you are scanning HTTPS traffic. Most of the websites works on same protocol, right, on 443. So let's say if you want to bypass, how we can do it under exceptions. What are URL groups? How we can collect some URLs and bypass on the category. You can see this is the default policy of web protection, comes with the Sophos XG firewall. So you can bypass the URL groups, or you can block it, or you can allow it as per your choice. All right, so we'll see the categories. What are the categories available on the firewall, and what are the user activities defined on Sophos XG firewall, which user activities you can define and you can take the action. So you just have to apply it and take the action. You can see the action here, right? We'll apply the constraints also. Let's say you want to allow some particular website at a particular interval of time. So we'll use the profiles. All right, so profiles, objects that will help us to configure our requirements. All right, so we'll see that. So tab navigations, each session is accessible from the main menu, is further broken down into tabs for accessing each area of the configuration. Some on same screen, additional or less frequently used tab can be accessed using Eclipse on the right hand side of the tab. So once you get that Eclipse, you can click and you can see what other the options available. All right, now on the firewall, you have advanced settings here. Okay, advanced settings, you can see. So where are those advanced settings are available, where we can use it? So you can during the troubleshoot, you can find it to troubleshoot the issue. Let's say under VPN, you have show VPN settings. All right, so right now I think this has been moved here. This is the firmware version will depend now. So I will discuss about the 17 version. What is version 17, 18 and 19? What are the differences on those versions? So, but yes, of course, you have to look into the additional settings on the firewall for reports and VPN. All right, so only for reports and VPNs, you will find the additional settings. They will be look like show VPN settings. So you will able to, it will flip the page and you will see the setting. All right, on the lab, we will go through one by one. So you will understand, we will configure it, we will check it in each and every module, then you will get what is the most of the use of these settings. All right, you can see so additional properties. So this is also option when you are doing some troubleshooting. Let's say those who are new, don't worry, but those who are already working, let's say if you want to see what configuration has been done on this tunnel, this is the IPsec VPN tunnel example. If you click, you will get the details like which IPsec VPN policy is configured, what are the remote and local subnet are configured,
what are the preset configured, what are the local subnets are configured, remote subnets, remote gateway is configured, and so on. What are the settings that has been done? But here we cannot find it. Without clicking, without opening the firewall, how can we use these low additional properties? We will see that. So these are the additional hidden settings that we'll also go through one by one, so that whenever you are managing the firewall, you know which part you have to look on to may to configure or may to troubleshoot and fix the issue. Right? Let's say the tunnel is not coming up in this case. All right, we have a lot of things. So next would be in the report and VPN session. So there are 2 sessions again, and modules also. Yes, of course. The 4th module was the VPN, and I think 10th was the logging and reporting, right? So that module, each part has this in much more in detail. So in the report session, also in the VPN session, there are additional report settings are there, and show VPN settings options are there that will allow you to access some or less often used options related to reports and VPNs. So let's say again, settings. Let's say if you click on show report settings on the firewall, so you will get what are other options available for the report session. So you can set some, let's say you want to schedule report, you want this report, you have looked some report, okay, and you like that report, that okay, I need this report every day or every week. So you can schedule on your email. If you have multiple email, then you can schedule on multiple email, you can schedule it, and so on. So that type of settings are you can do on the report settings tab. Okay. Similarly, show VPN settings. If you want to see your VPN settings there, if you want to make a change, or let's say in real life scenarios, if you want to put some DDNS updation there, all right, to access the VPN remote gateway, then you can use those settings here. So we'll see that. Then only you will get much more idea. So when I will do the practical, I will remind about this session that I have discussed, and this is what I am showing you right away. So when we will use this, we will see this. So when the settings are accessed, the screen will flip. So whenever you click this, it will be from blue to yellow, and it will flip the screen, and you will get those options. So you can identify when you are on this screen by the yellow title bar or on the top page. All right. So on the right hand side, you will find the admin options. You will get support, the product which you are working on, about the product. All right. Let's say if you're working on the physical hardware device, you will get the details here. If you want console access from on the GUI, yes, of course, you can get the console access on the, once you click here, you will get the access. Better to have the separate console access with the physical connection, which we have discussed, all right, today in this session. If you want to reboot the device, if you want to shut down the device, you can use this option. If you want to log out, log the device, you can use the options available. Clearly, you can see what options and the action they will do. All right, so found on the top right in the admin menu, there are reboot, shutdown, log, and logout options on the Sophos XG Firewall. This menu also provides link to support website and the Sophos Firewall licensing page and the web-based access console. So yes, you will get the support. Once you click on support, you will go to support.sophos.com, where you find all the necessary articles, the issues that comes up, people post it, all right, and they get resolved. You will see everything on the support page, and you can get the administrative help as well. So we'll see that. Yeah, so it's here. So once you click on help on the firewall, all right, all the firewall or the security device have the help session. Similarly, Sophos Firewall also has the
similar help session. Once you click on help, it will redirect to docs.sophos.com. So it will have all the modules and options that you will go through. It will have all the options available here. All right, so you can go through this and you get the more details. Let's say if you want to create a web filter policy, so you can click on add a policy on the web. So you'll get the steps how you can configure the web filter policy. All right, so how you can configure, how you get the assistant for doing the configuration. You can get the steps from here. If you, let's say, if you want to just recall you already know the steps, but let's say you can recall it, or you can, if some document has some notes, okay, so we have to take care of these notes and we can configure accordingly. All right, so we'll see that. Let's say for Yahoo search, select as HTTPS connection. All right, so if you want to, yes, if you want to enable safe search, all right, when user is accessing Google, Yahoo, or any search engine, and if the user is typing some inappropriate words, that we have to scan it or block it by the firewall. Okay, so what steps we have to take during the creation of the web filter policy, that has been mentioned under the description, let's say. All right, so we'll do on the lab, which is quite easy, though you don't have to follow the documents, but yes, of course, in future, you can use this for help purpose. So found on every session of the Sophos Firewall in a context sensitive link or with the online help. When clicked, it opened a separate windows, and online version of help is fully interactive and can be browsed by selecting the various menu items and left-hand side menu. So if you can search for keywords, and when search result is selected, it will load the appropriate action within the helpline. All right. So that will be the help. Now on the web admin, you have log viewer. So we will see all the logs on the Sophos Firewall, live logs, what is जो हम lab करेंगे, all right, whether it is working or not working. हम दोनों पे देखेंगे ट्रैफिक कैसे यहाँ पे फ्लो हो रहा है, right? So how logs are getting logged under logged viewer. We will also see TCP dump on CLI. We also see the TCP dumps on packet capture to check how the traffic flows. All right, and this will help us in future to fix the issues. All right, and we'll see how ingrays outgrays work. How fast plus slow path and fast path. Definitely we will go with the architecture later on. That is not part of this module, but definitely will cover so you understand the traffic flow on the firewall to fix any issue that comes in future while managing the Sophos XG firewall. So next, to help link in the log viewer, which opens in the new window to provide access to all log files. In the log viewer, you can filter logs and perform context sensitive actions. So we will explore this in more details throughout this course. All right, so yes, of course, Sophos provides the video library, so you can search the configuration on the video format, and you can configure, let's say, if you want to connect the head office and branch office, and if for that we use IPsec VPN. Search, you can get help from the library here, and you can follow the same steps to accomplish the task. All right, so they provides us the guides. The last item in the top right is how to guides. This link gives you the library of videos on your the website that demonstrate how to perform the common task on the Sophos XG firewall. All right, so you'll get all the basic common tasks that you need to perform on the Sophos firewall with help of the videos. All right, now that was the quick review till now. All right, so now we will moving ahead with the another topic, that is objects. So those who are already working with the firewalls, not only the Sophos firewall, but any of the firewalls or routers, they might have created the object. All right,
Those who have not created the object till now, or they are new to, no worries. We will start with the objects in our lab. We'll start with the objects only. So we will see how those objects can be used. Okay, so they are generally, let's say, if you are doing IPsec configuration, and there are the hosts or the networks that you have to communicate. All right, so source network and the destination network we will create with the help of objects. Let's say you want to allow only voice traffic, or you want to allow only the RDP traffic or ping traffic, SSH traffic. Some of the objects that are called service objects, which are already available on the firewall, you can directly use it. If those services are not available, we will create those service objects and will use in our configuration, all right, mostly in the firewall rules and rest of the modules. So what are objects here? So in terms of theory, the objects are the building blocks for the rules and policies. So we'll use those objects in our rules and policies. So we'll define host. All right, we'll define host. Let's say we have one system, IP is 172.16.1600. So we'll create that particular host. All right, we can use those objects under rules and policy. Similarly, we can create network objects. So we'll make sure. So in the firewall, whenever we are creating that network host, we have to select appropriate type. So we'll discuss the pop-up that comes while creating the objects on the firewall. Similarly, we have service. We can create services. Service, let's say HTTP, HTTPS, okay, SMTP, SMTPS. Those are the services running to provide the application services, right? So we can create those objects and we can apply on the particular rule and policies. So only those particular services will be allowed and rest of the service will get blocked. All right, so we'll use this, we'll use groups. So we'll group the host, networks and services. All right, let's say if you have voice server in-house, all right, those who are having the voice server in-house, we will create the service group there. All right, so we have service, particular service and service group. So we'll create all the services, all the ports actually. Let's say SIPs works on 5060, okay, it works on some port. So all the necessary ports which are required to communication between your SIP server and SIP phones, we'll create those services group and we'll use on the firewall rules and policies, right, and profiles. So we will discuss about profiles in upcoming slides. So it can be created inline when configuring the rule policies. So you can create these objects and you can use on the rules and policies. The Sophos firewalls use objects, yes. If you work with multiple firewalls, the same way the objects are used in Sophos XG firewall as they are building blocks for the configurations for rules and policies. So they by defining reusable objects, once for the things such as host, service and network, it can speed up the configuration and simplify future changes by having a single place of making changes. तो objects का use कहाँ पे रहेगा? Okay, जब आप object create करेंगे, alright, let's say आपको IPsec में भी use करना है और MPLS में भी use करना है. Okay, तो आप सिर्फ आपको name से you have to just type the name and you will get that object and you can use it. You can reuse those objects. कहीं पे भी आप अगर future में requirement आती है तो आप उसको use कर सकते हैं. आपको वहाँ पे define करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने already define किया हुआ है. Alright, so ये क्या करेगा? ये आपको help करेगा just to speed up the configuration as much as it can. जितना well objects define किया होगा as per your topology, तो आपके टोपोलॉजी के हिसाब से आपको पता होगा कौन सा नेटवर्क है, कौन कौन से होस्ट है. सो यू कैन क्रिएट दोज नेटवर्क होस्ट एंड सर्विसेज विच विल बी यूज ऑन योर टोपोलॉजी और उसको यूज कर सकते हैं और उसको रीयूज भी कर सकते हैं. ओके, और लेट्स से आपने वो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आपने अप्लाई किया हुआ है और फ्यूचर में आपको चेंज करना है, तो आप ऑब्जेक्ट्स में ही जाके चेंज करोगे तो फायरवॉल रूल्स में ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएगा
all right, and we can use those as the object. Hello. Yes, Ritesh. Sir, just a minute. Ritesh, just give a moment. Sir, can you speak in Hindi, sir? Okay, yeah, I will try my Okay. best. If everybody is not to Hindi, so can you speak to Hindi? Okay, yes, sure. This batch is in Hindi only, but as it is a one demo session, so that's the reason I'm going with the English. But yes, of course, that would be, I will add some Hindi, okay, so you will understand more in detail, okay? So objects. Okay, okay. Because the Hindi is better for me. I'm just telling you. नो वरीज, जो हमारा बैच होगा, ठीक है, वो कम्प्लीटली हिंदी में होगा, बट जैसे कि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, ऑलराइट, सो ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट्स क्या होगा यहाँ पे, हमारे होस्ट और सर्विसेज, ऑलराइट, सो सर्विसेज हमारा जो पोर्ट होगा, पोर्ट and the networks, all right, that will create with help of objects. Okay, I will try my best for this session. I will try as much as I can, but जो बैच हमारा होगा वो completely हम हिंदी में ही डिस्कशन करेंगे। जितना भी डिस्कशन होगा हम हिंदी पे करने वाले हैं, so आपको आइडिया आएगा, all right? Yeah. So नेक्स्ट वुड बी लाइक, या सो अगर कोई फ्यूचर में हम चेंज कर रहे हैं, तो अगर एक जगह पे हमने ऑब्जेक्ट पे चेंज किया, लेट्स से कोई नेटवर्क हमें अपडेट करना है, ऑलराइट, आज हमने कोई 172 अपडेट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, जो हमारा वहाँ पे एक नेटवर्क का ऑब्जेक्ट है 172.16.16.0/24। अगर फ्यूचर में हमें वो अपडेट करना है और हमने ऑलरेडी फायरवॉल रूल्स पे अप्लाई किया हुआ है, तो हमें ऑब्जेक्ट्स पे हम अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली फायरवॉल रूल्स पे भी अपडेट हो जाएंगे। सो दैट इज द यूज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स व्हाइल यूजिंग इन द फायरवॉल, ऑलराइट, सो या जस्ट नाउ yes, object can be created and edited ahead of time, so आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो और एडिट कर सकते हो एज पर द टाइम, एंड दे कैन ऑल्सो बी यूज इन लाइन व्हेन कॉन्फ़िगरिंग द प्रोटेक्शन फीचर्स। सो अगर आप फ्यूचर में एडिट भी कर सकते हो ऑफ कोर्स टाइम के हिसाब से, अगर कोई रिक्वायरमेंट रहता है तो वो फायरवॉल रूल्स पे जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी क्रिएटेड है, अप्लाइड है, या फिर वहाँ पे भी चेंज करना है तो वहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। So this we will see in action in more detail in lab पे और आइडिया आएगा जो हम अभी थियरी go through कर रहे हैं। So this means that you do not have to navigate away from what you are configuring to create the objects. You will also have option to create it when you need it, and there are two type of objects. तो दो टाइप के objects यहाँ पे बनेंगे, host and services. Okay, तो दो ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करेंगे अभी फायरवॉल पे, एक होगा होस्ट और सर्विसेज, और हम दोनों यूज करेंगे हमने फायरवॉल रूल्स पे, राइट, एंड द प्रोफाइल, एंड दिस कैन बी फाउंड अंडर सिस्टम। तो आपको ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, अंडर सिस्टम, सिस्टम में जाना है, नीचे ऑब्जेक्ट्स एंड होस्ट लिखा है, वहाँ पे क्लिक करना है, यू कैन क्लिक ऑन ऐड। अगर होस्ट क्लिक करना है तो वहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, वो क्लिक करना है। अगर सर्विस क्रिएट करनी तो सर्विस के टैब पे क्लिक करना है, एंड देन यू टू क्लिक ऑन add. Alright, so we'll see that. तो ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करेंगे, ऑलराइट, सो फायरवॉल पे जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, होस्ट आईपी क्रिएट करना है। ओके, सो कौन कौन से होस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ऑलराइट, लेट्स से आईपी क्रिएट करना है, आईपी से एक होस्ट क्रिएट करना है, या फिर कोई मैक बेस्ड होस्ट क्रिएट करना है, या फिर फुली क्वालिफाइड नेम लाइक netgui.com। ओके, सो वो हमें क्रिएट करना है, so that हम उसको आगे जाके फायरवॉल पे यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो we'll create the host। ओके, सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आईपी होस्ट से। सो हाउ वी कैन क्रिएट आईपी होस्ट, सो या यस केतन सर, ये एलडेप इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसमें? 1 मिनट, या एलडेप इंटीग्रेशन कर सकते हैं? एलडेप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पस, यस दैट इज पॉसिबल। ऑथेंटिकेशन और इसके लिए भी, होस्ट के लिए भी कर सकते हैं ना, कि नहीं? रिगार्डिंग आप मुझे डिटेल में बताएंगे कैसे? जैसे एलडेप, जैसे पॉलिसी के अंदर है, yes, केतन yes, को खाली यूट्यूब लाना है और भरत को यूट्यूब नहीं जाना है, तो मेरा एलडेप इंटीग्रेशन के अंदर आईडी रहेगी केतन पी, ठीक है, और उसको खाली यूट्यूब जाना है,
तो LDAP इंटीग्रेशन से मेरा अकाउंट आएगा और वो होस्ट का आईपी उसमें मिलेगा LDAP DNS रिजोल्यूशंस के आईपी से कर सकते हैं, यस दैट कर इज सकते हैं। पॉसिबल। जनरली क्या होता है जब आप LDAP भी फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करते हो तो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, राइट? फिर उसको हम इंटीग्रेट करने में भी हम यूज करते हैं, फायरवॉल रूल में हम यूज करते हैं। उसके बाद आप जो यूजर होगा केतन, उसको हम फायरवॉल रूल पे अप्लाई करेंगे। ओके, लेट्स से आप पर्टिकुलर यूजर है या फिर पर्टिकुलर ग्रुप है, कोई भी हो, उसको टिक करना है फायरवॉल रूल पे, उसको सिलेक्ट करना है एंड उसका जो ट्रैफिक है उस यूजर का, वो यूजर का उसी रूल से जो आपने रूल क्रिएट किया होगा उस यूजर के लिए या फिर यूजर ग्रुप के लिए, ट्रैफिक पहले वहां से जाएगा, उस यूजर को हिट करेगा और उसमें आपने जो भी वेब फिल्टर या फिर एप्लीकेशन फिल्टर पॉलिसी अप्लाई किया होगा वो एप्लीकेबल रहेगा। ओके, 1 मिनट केतन। यस केतन, there. बराबर, ये आप Clear? बताओ, वो ठीक है जी, ठीक है। Alright, so if that is not working तो आप कैसे चेक कर सकते हैं सबसे पहले कि ये क्यों काम नहीं कर रहा है? अगर लेट से नहीं कर रहा है तो जस्ट वेरीफाई द पैकेट फ्लो, कि ट्रैफिक उसी रूल से जा रहा है जिस रूल से जाना चाहिए जो आपने डिफाइन किया है। ऑलराइट, एंड यू कैन fix it by creating the new one or moving the rules, or might you require the new firewall, अगर आपको शायद नया firewall आपको firewall rule create करना भी हो सकता है। So it depends on your existing configuration and you can, yes of course, you can meet your requirement. Let's say आपने अभी जैसे बताया कि इस यूजर का इसी रूल से ट्रैफिक जाना चाहिए कि ये यूजर है उसको यूट्यूब अलाउड है, इस यूजर को या इस यूजर ग्रुप को अलाउड नहीं है, कर सकते हैं। ओके, now let's begin with the creating the objects. So we have created IP objects. कैसे करेंगे? Let's say London DC है, alright, so we have one AD server है, ठीक है? तो हम AD server का एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और इसको हम कहीं पे भी फिर कॉन्फ़िगरेशन में यूज कर सकते हैं। तो मेरा AD सर्वर का IP क्या है? 10.172.16.16.10 है, ऑलराइट। सो मैंने जो IP वर्जन है वो सिलेक्ट करना है, whether you are working on, if you are selecting IP, if you are working on IP6, select IP6. Yes, of course, in this course mainly we will be working on IPv4 to understand the network in more simpler way. Those who have specific requirement, उसको हम IP6 हमारा end of this course रखेंगे, all right? So this will be the course objective. We will be completely focusing on IPv4. So हमने IPv4 पे ही एक IP create किया है, all right? Yeah. So we have selected the version. टाइप क्या है? IP एड्रेस, यानी मुझे एक जो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर IP एड्रेस के लिए कर रहा हूँ। सिमिलरली नेटवर्क के लिए कर सकते हैं, IP रेंज के लिए कर सकते हैं और IP एक लिस्ट भी कर सकते हैं। सो यू हैव टू सिलेक्ट दी ऑप्शन जो हम कर रहे हैं। जैसे IP लिस्ट कर रहे हैं तो IP लिस्ट ही सिलेक्ट करना है। अगर हमने नेटवर्क कर रहे हो और हमने IP यहाँ पे रखा तो दैट will not work. Okay, so it might take, but it will not work because it is IP. So make sure you select network here or the network IP range and IP list. Okay, don't sometime default P ले लेता है. Okay, so this you can take care of. So IP address डालो उसका, and yes of course if you want to group, जैसे हम host के group बना सकते हैं, हम group बनाएंगे. All right. Then we have MAC. So IP version host type cannot be changed once it is created. Yes. So एक बार आपने ये object बना लिया तो आप उसको सिर्फ रीनेम नहीं कर सकते. Alright, you cannot change the version. तो क्या कर सकते हैं? You can delete it or you can create another one. Okay, एक बार जो create हो गया उसको आप कुछ changes नहीं कर सकते इसमें host में. So क्या करना है? Either you can create the new one or and delete this one. That would be the option available. All right. So IP host groups can be used to group IP host objects for IP addresses, networks, and IP ranges, but not IP lists. Yes. So अगर group बनाना है तो IP list के लिए सिर्फ नहीं बनेगा, but IP range और network के लिए बनेगा. Okay, तो हम टेस्ट भी करेंगे लैब पे कि हाँ ये वर्क करता है कि नहीं करता है. ऑलराइट, सो वी विल क्रिएट दोस ऑब्जेक्ट, ईच एंड एवरीथिंग वी विल टेस्ट इट, सो दैट विल मेक श्योर दैट एवरी फंक्शनलिटी ऑफ द फायरवॉल इज वर्किंग. और अगर आप फ्यूचर में भी कोई डिप्लॉयमेंट कर रहे हो तो आपको पता रहेगा कि what are the limitations, what should things that we should take care of. All right. Okay, so next would be, I think, Mac host.
before that. So IP host object can be represented in a single IP address, subject, a range of IP address, or a list of IP address. Either it can be IPv4 or IPv6. The object can be named and must be configured by IP version, whether it is IPv4 or IPv6, and a type. So type पे ध्यान रखना है when you are doing the creating the host for the IP addresses. So note that the IP version and the type cannot be modified after the object has been created. You can provide a data for the type of object you have selected. So note that the IP address list are comma separated. You can when you are जब आप IP list बनाते हो, ठीक है, जैसे ये वाला था IP list select किया और यहाँ पे दूसरा एक IP डालना है, कोमा करना है, and you have to put the another IP address and so on. अगर more than 2 IP है, just put the comma and go on. So IP host group can be used in group IP host object for IP addresses, network range, IP address, but not IP list. तो आप ग्रुप सबके बना सकते हो, IP के ग्रुप्स बना सकते हो, नेटवर्क के ग्रुप बना सकते हो. मीन्स आपने लेट्स से एक DC बनाया, DC 1 2 3 ऐसे अलग अलग IP है, तो उसको ग्रुप कर सकते हैं इन शॉर्ट. ऑलराइट, नेटवर्क बनाया है, 2-3 नेटवर्क्स बनाए और आप उसको भी ग्रुप कर सकते हो. सिमिलरली IP रेंज को कर सकते हैं, एक IP लिस्ट को हम नहीं कर पाएंगे यहाँ पे. ऑलराइट, सो यू कैन नॉट डू दैट. You have to find alternate ways from these 3 options available. All right, no worries. This session is a demo one, so we will speak in Hindi. Most of the time we will discuss everything in Hindi. Some of the part would be in English, some of the definitions would be in English, but it would be very easy for you to understand. In case you don't understand, no worries, stop me right there. आप मुझे वहाँ पे रोक दो, वहाँ पे मैं अगर आपको जो समझ में आ रहा है वो definitely I will help to make it more clear. All right. Yeah. So next would be host. अब दूसरा जो होस्ट बना देंगे, मैक बेस होस्ट बनाएंगे. पहले हमने आईपी बेस बनाया था, राइट? सो अभी बनाएंगे मैक बेस. सो यू कैन क्रिएट द नेम. So yes, of course, ये जो सेशन होगा, some of you are already aware how to create the basic configuration, सबको आता होगा, right? But we begin from the scratch. Okay, कौन सी limitations है, कहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कौन कौन से challenges आएंगे यहाँ पे. This would be जो those who are completely new to the firewall. अगर आपको firewall यहाँ पे सीखना है तो दोनों को हम सिंक में लेके जाएंगे. ये ऑफ कोर्स हम बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द ऑब्जेक्ट्स देन. ओके, आज पढ़ लिया ऑब्जेक्ट्स, दैट इज फाइन. फिर आपको तो ऑब्जेक्ट्स तो सबको क्लियर हो गया. जिसको आता है ऑलरेडी उनको शायद that would be like revision and the add-ons. Okay, so you might have to, as we are working on the batch, so you have to just work in the team and we will understand each and every part of the firewall parameters. We will configure it and we will go till troubleshoot how fixing the issue. रात को भी अगर हम एक कुछ issue आता है, we will able to fix it within no time, within the SLA time. All right, so we will learn this firewall in that manner. So next is our creating host with the MAC address. Okay, तो MAC address से host बनाएंगे. पहले हमने IP address से बनाया था. Objects बनाएंगे. Let's say objects, हम वापस में बताता हूँ, objects ये वाले हम यूज करेंगे configurations में जब हम firewall rules बनाएंगे. Let's say अगर मुझे एक सिस्टम को इंटरनेट एक्सेस देना है मैक बेस से, IP से नहीं देना है. ओके, तो मैं ये वाला ऑब्जेक्ट यूज कर सकता हूँ, राइट? सोर्स पे, यानी ये जो ऑब्जेक्ट होगा, लेट्स से दिस इज माय कंप्यूटर, ओके, एंड दिस इज माय मैक एड्रेस और लिस्ट ऑफ मैक एड्रेसेस. तो मैं एक रूल बनाऊंगा, वो मैक एड्रेस में अप्लाई करूंगा फायरवॉल रूल पे. ओके, मैं भी लाइव दिखाता हूँ कैसे हम वो देख सकते हैं ऑब्जेक्ट्स. सो विल सी दैट those who are new to the firewall, all right? But this of course, again, those who know, हम ये object use कर सकते हैं, right? So we can use this object any part of the configuration if we want make base. अभी make base, let's say as a network engineer, okay, so हो सकता है make base ना चले, right? क्योंकि maybe you will have L3 device between your system and your firewall. तो make base object शायद काम ना करे. Okay, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैक चेंज हो जाएगा वहां पे. सो इन दैट केस यू कैन यूज द आईपी होस्ट. ओके, सो दिस वे यू कैन यूज, लेट्स से अगर सिंपल नेटवर्क है, छोटा सा नेटवर्क है, इफ यू वांट टू गिव मैक बेस, राइट, देन यू कैन गिव इंटरनेट एक्सेस.
If you have Wi-Fi router at your home, you will find this option. You can create MAC based rules right there. वहाँ पे आप define करते हो कि इसी MAC को internet मिलना चाहिए, rest it will get dropped. So you can use this feature. Okay, so again जब ये object create करते हैं, you cannot change after it's been created. आप उसका नाम ये कुछ change नहीं कर सकते. अगर आप MAC एड्रेस तो एक ही एड्रेस डाल सकते हो. अगर आपने MAC लिस्ट सिलेक्ट किया हुआ है, दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे, तो आप मल्टीपल MAC एड्रेस यहाँ पे डाल के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो. Alright, and you can use in the firewall rules. You can while creating MAC list, you can use you can do separation. जब आप separate करोगे MAC एड्रेस को, उसको कोमा डाल के separate करना है. Okay, give the name and that would be done. So mostly in big topologies. Okay, so I think in the small topology use तो कर सकते हैं, but in large environment sometime we have to see in which scenario this object will be mostly used. Okay, we'll see that. Next is the FQDN, but MAC based objects are being created for individual MAC addresses. For MAC address list, the MAC host object can be named and must be configured for specific type, MAC address or MAC address list. This cannot be changed once the object has been saved, and MAC address lists are done with by creating by just putting the commas. Okay, you have to put commas between the MAC address and you will create the MAC address host. Okay, last is the FQDN host. कैसे हम create कर सकते हैं? FQDN fully qualified domain name, let's say google.com or let's say Office 365. Okay, so office365.com जितने भी Office 365 के URLs हैं, ठीक है, तो आप एक उसका FQDN भी बना सकते हो. ओके, तो FQDN कैसे बनेगा? You have to go to FQDN, firewall पे FQDN का टैब होगा, वहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन ऐड. तो जैसे ही हम ऐड करते हैं, देन यू विल गेट दिस ऑप्शंस. ओके, जो हमने मैक में दिया, वंस यू क्लिक ऑन मैक एड्रेस, मैक होस्ट एंड क्लिक ऑन ऐड ऑन द फायरवॉल रूल, आप ऐड के बटन पे क्लिक करोगे तो आपको मैक एड्रेस का ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा और इट विल कम अप लाइक दिस. ओके, वो जो पॉपअप होगा वो ऐसे होगा. ओके, मैक एड्रेस के लिए, आईपी एड्रेस के लिए भी सेम होगा. आपको क्लिक करना है एंड इट विल शो यू दिस template and you have to configure it. Now FQDN, तो FQDN में भी ये भी यूज होगा. लेट्स से हमें कुछ डेस्टिनेशन बेस्ड रूल बनाना है, ठीक है, तो ये one of the use. Okay, we will use FQDN use in the firewall rule to, let's say I can bypass Office 365. Okay, so I can create FQDN based rule. Once I click on FQDN host, I can go and click on FQDN add and then I can give name. Okay, तो पहला तो name देंगे. You can give any name, let's say Office 365, और जो FQDN होगा वो मेरा वेबसाइट का URL होगा, वो डालना है मुझे यहाँ पे. ओके, सो FQDN जो सेकेंड ऑप्शन होगा, यहाँ पे मुझे वेबसाइट का URL डालना है. अगर आपको ग्रुप करना है उसको, मीन्स किसी के ग्रुप में डालना है, यू कैन एड इट ऑन द ग्रुप. ओके, सो सपोर्ट, अगर कोई वाइल्ड कार्ड है, supports wildcard suffix to resolve the subdomains. Okay, so it will resolve it. You will see the FQDNs and can be grouped with the FQDN host and host groups. Okay, तो आप ग्रुप भी कर सकते हो, यानी 2-3 ऐसे बनाए हैं, ठीक है, उसको ग्रुप कर सकते हो और उसको फिर हम आगे जाके यूज कर सकते हैं firewall rule पे and so on. We'll see कहाँ पे हम FQDN यूज कर सकते हैं. So let's say one of the example मैंने आपको बताया, जैसे Office 365 है, ठीक है, bypass करना है, let's say. Okay, that is not a good idea, but just to verify our hosts are working. Okay, the objects, जो building blocks है, वो कैसे काम करते हैं, अभी तक हमने पढ़ा, right? What are the objects? So objects are the building blocks of building your security policies. So we will use this. Okay, अगर आपने already, जिन लोगों ने already firewall पे काम किया है, they might have used all these features on their firewall. Okay, तो Sophos में भी सब कुछ अवेलेबल है. जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ये अपना कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, लेट्स से वेरी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, तो अगर हमने पहले से ऑब्जेक्ट डिफाइन करके रखे हैं, तो जस्ट यू हैव टू सिलेक्ट व्हाइल डूइंग द कॉन्फ़िगरेशन, तो आपका टाइम वहाँ पे सेव रहेगा. राइट, फ्यूचर में भी आप इसको एडिट और सेव कर सकते हैं और सब जगह पे अपडेट हो जाएगा ऑब्जेक्ट से. So FQDN hosts are used to define fully qualified domain names. So FQDN's host objects can include a wildcard prefix to resolve subdomains. For example,
star.sophos.com. So wildcard जैसे होता है, right? You can use the star like in the star.google.com and so on. The wildcard भी support करेगा. You can use that and you can it will help you to resolve their subdomains, and you can use the FQDN host in the firewall rules. Okay, let's say Office 365, okay, Outlook.com and so on. So FQDN host groups allows you to create a collection of FQDN host objects to further simplify using objects in the rules and the policies. अब rules policy में आप group means जो जितने भी FQDNs बनाए उसका group बना के भी आप firewall rule पे यूज कर सकते हो और उसकी पॉलिसी भी यूज कर सकते हो. अभी हमने किया आईपी, राइट, देन हमने किया मैक होस्ट, देन हमने किया एफक्यूडीएन. नाउ नेक्स्ट इज सर्विस. ओके, सो सर्विस रूल कैसे बनेंगे, जैसे कि सबको पता है दी आरडीपी पोर्ट नंबर क्या है 3389. ओके, लेट्स से so how we can create those service in firewall rules. Okay, so let's say you have voice server in house, तो आप ये वाला फीचर यूज कर सकते हैं. You can create those objects, service objects, जहाँ पे आपका सिप सर्वर यानी वॉइस सर्वर काम कर रहा है. ओके, जैसे कोई पोर्ट पे काम कर रहा है, लिस्ट ऑफ आपको लेट्स से वॉइस सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर है, is providing you the port number आपको प्रोवाइड करेगा. ऑलराइट, that is working for your SIP communication. Okay, so this is for RDP port. This is the example given. All right, so you can create those ports for the service. Click on service host ports and you can click add and you can select the type. जो सर्विस होगा TCP है या UDP प्रोटोकॉल पे काम कर रहा है, IP है, ICMP है, ओके, IPv6 वर्जन है, जो भी प्रोटोकॉल्स पे काम कर रहा है, जो अवेलेबल है 4 अवेलेबल है, TCP, UDP, IP, ICMP and ICMP6. ओके, सो इन जो भी प्रोटोकॉल्स पे आपको सर्विस पोर्ट क्रिएट करना है, सिलेक्ट दोस. अगर TCP है तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, IP है तो यू कैन सिलेक्ट द पोर्ट नंबर. इफ यू हैव ICMP you can select the type and codes that are available on firewall. Okay, you can configure the options available here. Okay, and you can use it on the firewall rules. So let's say voice server के लिए कर रहे, RDP के लिए कर रहे, let's say secure नहीं है, but let's say we are creating this. So this way you can create the service host and you can use in the rules and policies. फिर आप further आप firewall rule पे कहीं पे भी वो सर्विस यूज कर सकते हैं. ओके, तो सर्विस का नाम होगा let's say voice port for example. Okay, the voice server port, कुछ भी हो सकता है नाम, but make sure you know the name. नाम से ही पता चल जाएगा इसके अंदर कौन कौन से पोर्ट है. और हम उसको जब माउस रखते हैं तो यू विल सी, अगर आप नाम के ऊपर जब भी अपना माउस होवर करेंगे, देन यू विल सी द पोर्ट नंबर देयर व्हिच आर यू, कौन कौन से पोर्ट आपने डिफाइन किए. So service based on TCP or UDP port that can be service based on IP protocol number. कोई particular protocol number पे जाना है, okay, और ICMP पैकेट और टाइप पे जाना है, we have the options available to configure those service ports. So default ports हैं वो भी अभी मैं बताता हूँ आपको थोड़ी देर में firewall पे. Let's finish up some slides and then we will go ahead. Okay. So service object can be created for TCP, UDP based on protocols, source and destination ports. IP based on the protocol number, ICMP, IPv6 version 6 based on the ICMP type and code. Each service object is for single type and can contain one or more definitions. So you can create groups of service objects. तो यहाँ पे भी हम मल्टीपल सर्विस ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और उसको भी ग्रुप कर सकते हैं. ओके, जैसे कि H232 है, ठीक है, लेट्स से RDP पोर्ट है या फिर SMTP पोर्ट है. ओके, जो भी पोर्ट्स, जो पोर्ट्स आपके कस्टम पोर्ट्स है, यू कैन डिफाइन दोस कस्टम पोर्ट्स और वो कस्टम पोर्ट आप उसको ग्रुप भी कर सकते हो सिमिलर टू रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. ओके, तो फायरवॉल पे जो होस्ट एंड सर्विस, जब सिस्टम पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यू विल एंड यू वंस यू क्लिक ऑन होस्ट एंड सर्विसेज यू विल गेट दिस पेज. ओके, सो यू विल सी डिफॉल्ट IP होस्ट, थोड़े से ग्रुप्स मिलेंगे, मैक होस्ट शायद नहीं होगा, बट IP होस्ट एंड सर्विसेज यू विल गेट द कंट्री ग्रुप. ये भी एक होस्ट है, राइट. यू कैन क्रिएट कंट्री ग्रुप, दैट इज द नेक्स्ट ग्रुप ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पे भी आप कंट्री वाइज क्रिएट कर सकते हो एंड यू कैन यूज
in the policies and the rules. तो आप यहाँ पे उसको फिर allow block कर सकते हैं यहाँ पे. Similarly, you can create your own group and you can use it on the configuration. Alright, so जो भी हमने अभी तक discuss किया, everything would be available on the tab navigation. जो आपका IP host है, IP host group, right? हमने पहले क्या किया था, IP host group, IP host बना रहे थे, right? Then multiple IP host बनाए आपने, like IP या फिर network, IP range, IP list, उसको फिर हम ग्रुप भी कर सकते हैं, यानी मल्टीपल बहुत कुछ है, उसको हम अलग अलग ग्रुप्स बना सकते हैं. Then similarly Mac host था, right? So again we can create the Mac host and group it. Similarly FQDN host group, services, service group. Okay, Mac host group नहीं बनेगा, okay, इसका group नहीं, but you can create a Mac list बना दो, okay, that it will include it in this. Service में भी ऐसा ही है, but still we have option service group. But if you have multiple service to be added, आपको multiple ports add करने, you have to click on plus sign. Yeah, you have to click on plus sign here. तो जो AD सर्वर है आपका, let's say RDP सर्वर, आपने एक सर्विस बनाया, click on plus sign here. Okay, तो एक आप उस पे UDP भी डाल सकते हो, again TCP डाल सकते हो, and so on. And you can add your source port and destination port. Okay, so ये RDP port हो गया 3389. Source port आपका ये by default you can put star, or you can put old ports like 1:65535. Okay, or you can put this one. किस कहते हैं सर? ये कंट्री ग्रुप में IP एड्रेस है ना सब कंट्री का? Yes, in country group, yes. Or it is updated automatically? Yes, Real time updating? Yes, it is real time updated. Yes, geographical good. आपका means आपको कोई future में अगर आपको country wise blocking करना है, you can use this object जो हम firewall पे use करेंगे आगे जाके. Yes. तो ऐसा requirement होता है कि country block करना है, इसको ये country से traffic नहीं आना चाहिए. Let's say China, or currently it is China, Russia. Okay, so you can block the traffic from those countries or group of countries where you don't want to allow, जहाँ से आपको allowed नहीं करना है. Okay, sir. Thank you. Yes, you don't have to worry about the geographical IP address here. So Sophos Firewall maintains a geo IP database. Yes, that's maps with IP address to your to the countries. This is automatically updated with the pattern definition. So we'll see the pattern updates and the firewall. जो firewall पे pattern जो definition है automatic update होता है, जो हमारी IPS की signatures होती है, फिर जितनी भी application signatures होती है, alright, जितनी भी database होगा वो automatic update होता है. Let's say आपने कोई website देखना है कौन सी कैटेगरी में फॉल होता है. ओके, लेट्स से sophos.com या फिर कोई गेमिंग वेबसाइट है, उसका वेबसाइट का URL है. सो वी हैव टू चेक ऑन विच category the website is falling. So all this is done under pattern update. So we'll see that session. Antivirus update हो गया. Okay, you will get regular pattern updates from the pattern updates definition from the firewall. Automatic यहाँ पे रहेगा. Okay, so we'll see that in the next slides. Yes. So there are several predefined company groups that are shipped with Sophos Firewall. So you can edit it, you can use it on your custom groups and policies, and you can take the action accordingly here. All right, now next is creating profiles. All right, so हम यहाँ पे और भी profiles create करेंगे. Objects, see, these are also, you can consider these objects. So we will see what are the schedule. But let me just move to the firewall and see what we have done till now. Okay, so let me share the screen, the another one, and then we'll come back to the profile session. Okay. All right, so let me just go through the firewall. So here we have head office, we have branch office, we have one MPLS connection, but we don't have to worry about now. We will work on this lab. But let's, whatever we have discussed, let's go through that. If you can see on the GUI. Okay, just let's log in first. Okay, let me share the screen.
Okay, so here is the lab. Okay, ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जो मैंने अभी डिस्कस किया, राइट? 2-3 ऑब्जेक्ट्स क्लियर करके देखते हैं. नाउ जो लैब होगा हमारा, राइट, जैसे मैंने बताया, लेट्स से बिगिन विद द CLI. ओके, तो CLI हमारा होगा कंसोल. तो जो हमारा टोपोलॉजी है, ऑलराइट, सो जब भी हम डिवाइसेस पे क्लिक करते हैं, वी विल गेट द कंसोल एक्सेस डायरेक्टली. ऑलराइट, दोज हु आर कंप्लीटली न्यू, ऑलराइट, जिन्होंने अभी तक, मींस if you have done CCNA or CCNP, then it is fine. Those who have not done, then it would be not difficult, but yes, of course you will learn it. Okay, so we have to get sync. Some will किसी को already पता होगा, किसी को नहीं पता होगा. All right, so just let's discuss it. All right, so on the lab, once you click on firewall, okay, मैंने firewall पे click किया तो you will get, आपको direct console access आ जाएगा. All right, so this is the console access you can see. हेलो Okay, हेलो in real life scenarios. हेलो हेलो Yes. सर, सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू, लेकिन सर इसमें मैनेजमेंट आईपी जो है, उसमें मैनेजमेंट आईपी कैसे देते हैं? मतलब बाय डिफॉल्ट वो मैनेजमेंट आईपी उसमें पहले से दिया होता है या फिर हमें मैन्युअली देना पड़ता है? आपको मैनुअली देना पड़ेगा, रितेश. तो सर मैन्युअली कैसे देते हैं? जनरली Sophos, या सॉरी यार रितेश, सर मैन्युअली आईपी इसको कैसे देंगे? okay, I think you have joined this batch very first time, right, Ritesh? यस यस. Okay, देखो मैनुअली आप अगर देना है तो कैसे दे सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ. लेट्स से अभी हम वर्चुअल में जाते हैं. ओके, सो वी विल सी विद द वर्चुअल. So before I answer to your question, just give me a moment. Yeah. So we'll change that IP where you can change the IP, the management IP there. So सबसे पहले तो आपको console access लेना है. तो जैसे कि हमारा ये सॉफ्टवेयर बेस है, once you click you will get the console access. तो ये आपका console access होगा. अगर आपके पास physical firewall है, ठीक है, hardware devices है, then you have to arrange the console cable. You have to get the console of your firewall. ओके, आपको आईपी कैसे चेंज करेंगे? ओके, सो अगर वेरी फर्स्ट टाइम है तो एडमिन पासवर्ड यूज होगा. ऑलराइट, एंड लेट्स से आपको पासवर्ड ही नहीं पता है, मुझे पासवर्ड नहीं पता है, तो मैं यहाँ पे जो पासवर्ड है, यू कैन सी द पासवर्ड, तो मैं यहाँ पे कैपिटल में रीसेट लिखूंगा. ओके, विच यू विल नॉट एबल टू सी. ओके, इवन नो आई विल नॉट एबल टू सी. सो जस्ट सिंपली टाइप RESET reset and press enter. So let me start from scratch and show you first that you don't know the password. So type RESET reset. Once you type reset, okay, I have typed, I don't know the password. Okay, someone handle me the firewall, किसी ने मुझे firewall दी है, but I don't know, or he doesn't know the password. So मैंने यहाँ पे password की reset करने के लिए reset किया, तो मैंने लिखा यहाँ पे RESET reset. Once I click, I will get this information. Okay, पासवर्ड रीसेट से स्टार्ट करते हैं. ओके, थोड़ा सा समझने के लिए. और अदरवाइज जैसे ये सेशन खत्म हो जाता है तो थोड़े से वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको भी एक बार देख लेना. तो आपको मैंने जो इनिशियल सेटअप किया है फायरवॉल का, वो आपको स्टेप्स मिल जाएंगे. और हम लैब पे भी, नो वरीज, मैं आपके सारे क्वेश्चंस रिजॉल्व करूंगा. ओके सर. ओके, पासवर्ड नहीं पता है, अगेन यस, टाइप RESET reset. And you will see some information. Please read carefully before proceeding. Okay, so you will able to reset the firewall to factory default. तो आपको अगर firewall को factory reset भी करना है तो आप ये वाला reset use कर सकते हो. But मैं यहाँ पे option number 4, okay, can you see menu and option number 4, reset password for admin user. तो मैं यहाँ पे option 4 use करूँगा. Okay, and it will ask me to just reset the password. Okay, let me just reset the password. So it will ask me, do you want to reset the administrator password? अगर आपका let's say firewall चल रहा है प्रोडक्शन में, ओके, और आपने ये पासवर्ड रिसेट किया तो कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होगा. ऑलराइट, बट आपने ऑप्शन नंबर 3 सिलेक्ट किया तो सारी कॉन्फ़िगरेशन रिसेट हो जाएगी, सारे सिग्नेचर रिसेट हो जाएंगे, रिपोर्ट सारे आपके चले जाएंगे. ओके, एंड इट विल कम टू द फैक्ट्री डिफॉल्ट. और उसका जो डिफॉल्ट आईपी होता है वो 172.16.16.16 रहता है. ओके, फायरवॉल का. तो आप उस नेटवर्क, उसको आप गेटवे आईपी दे सकते हो अपने पीसी पे, और कोई भी आईपी कॉन्फ़िगर कर दो, 172.16.16.100 255.255.255.0, और गेटवे डिफॉल्ट जो हो जाता है वो होता है 172.16.16.16. तो आपको फायरवॉल का एक्सेस आ जाएगा. दैट मींस you will get the GUI access, the web admin,
ओके थ्रू दैट मैनेजमेंट। ओके डिवाइस के ऊपर मॉडल्स के ऊपर डिपेंड करता है, मैनेजमेंट पोर्ट डेडिकेटेड भी होते हैं हायर एंड डिवाइस के लिए, सो डिपेंड ऑन द मॉडल नंबर। तो एक कोई पर्टिकुलर मैनेजमेंट पोर्ट यहाँ पे हम डिस्कस नहीं होगा, क्योंकि जनरली हम फायरवॉल का एक्सेस आ जाएगा, बट हायर एंड डिवाइस के मॉडल्स जब हम डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे कौन सा मैनेजमेंट पोर्ट डेडिकेटेड है वहाँ पे, कौन से मॉडल्स पे अवेलेबल है, कौन से मॉडल्स पे HM अवेलेबल है, और कैसे भी करके हम फायरवॉल का एक्सेस ले लेंगे, ऑलराइट, विदाउट एनी इश्यू। सो नाउ कमिंग टू योर पॉइंट, लेट्स से पासवर्ड भी नहीं पता है, सो आई एम रिसेटिंग द पासवर्ड विद ऑप्शन नंबर 4 हियर। ओके फिर हम 3-2 डिस्कस करेंगे, सिर्फ हमें थोड़ा सा कुछ जो भी रिसेट करने, देन यू कैन सिलेक्ट यस आई वांट टू रिसेट द पासवर्ड, पासवर्ड रिसेट सक्सेसफुली। जब भी आप पासवर्ड रिसेट ये फोर्थ ऑप्शन से करोगे तो अभी आपका यूजर नेम और पासवर्ड क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा, और डिफॉल्ट क्या है, एडमिन एडमिन। तो मैं पासवर्ड लिखता हूँ एडमिन। ओके तो मैं एडमिन से लॉगिन हो गया यहाँ पे। ओके नाउ यू कैन सी दी ऑप्शंस, राइट। अभी क्या दिख रहा है आपको, जैसे आपने कंसोल का एक्सेस आ गया, राइट, ये तो आपको इतना ये आ जाएगा कि कंसोल एक्सेस कैसे लेना है। You will get the details, you will read those details like what is the current firmware version running, the model number, अगर हार्डवेयर है तो XGS जो भी XG XGS सीरीज का जो नंबर होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। हमारा फायरवॉल वर्चुअल है, VMware में है ये सफोस, तो VMware में आपका ये जो मॉडल नंबर है वो डिस्प्ले होगा। होस्ट नेम, ओके सो कौन कौन से प्लेटफॉर्म में कर सकते हैं, आपके लैपटॉप पे कैसे इंस्टॉल करना है टेस्ट कर सकते हो आप, वो में भी आपको अलग से हम सेशन करेंगे, नो वरीज। लैपटॉप पे कैसे करना है, हाइपरवाइजर पे कैसे करना है, कोई भी वर्चुअल जो AWS में एज्योर में कैसे, या फिर कोई न्यूटनिक सर्वर है इंटेल के कंपेटेबल जो डिवाइस हार्डवेयर है उस पर हम कैसे सोफोस इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी हम जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है उसके ऊपर है, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। ऑलराइट सो जस्ट आई एम जस्ट वॉकिंग थ्रू सम ऑफ द पार्ट ऑफ द मॉड्यूल्स, द फर्स्ट मॉड्यूल्स। आज हम जो कर रहे हैं वो पहला मॉड्यूल है, तो दूसरे मॉड्यूल में भी हार्डवेयर के ऊपर भी बहुत सारी डिस्कशंस होगी, जो है हमारा मॉडल्स, टाइप ऑफ मॉडल्स अवेलेबल। ओके सो जो IP है, ठीक है, मैनेज कैसे करेंगे। ओके सो यू विल गेट दैट ऑप्शन अंडर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है 1। ओके इससे पहले मैंने आपको जो प्रीवियस स्लाइड थी उसमें सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में सिक्योर स्टोरेज हार्डवेयर कैसे, सिक्योर स्टोरेज जो मास्टर की है, ठीक है, वो कैसे रिसेट करना है, वो किस लिए काम आता है, जब आप अपना बैकअप लेते हो या बैकअप आप रिस्टोर करते हो, ऑलराइट, यू हैव टू प्रोवाइड दैट पासवर्ड सो दैट वो सिक्योर रहे, आपका जो बैकअप है कोई और यूज ना कर सकते, और या फिर सिक्योरली कोई आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो, उसके लिए सिक्योर स्टोरेज मास्टर की ऑप्शन हमें सेट करना पड़ता है, वो जो सोफोस में अवेलेबल है वो हमें मैंडेटरी फॉलो करना है। नाउ कमिंग टू द अगेन मैनेजमेंट, हमें देखना है मुझे IP एड्रेस क्या है इस फायरवॉल का, मुझे नहीं पता है, ठीक है, सो कंसोल एक्सेस लिया, ओके पासवर्ड नहीं पता था, रिसेट किया पता है तो मैंने लॉगिन किया, एंड देन ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, सो आई विल सिलेक्ट ऑप्शन सर ये सिक्योरिटी हॉल सिक्योरिटी रिस्क है ना, ये तो interface configuration DNS and exit. Obviously you have to select the first option, network configuration. Now you will see the network settings, okay, जो आपका network setting होगा आपको पता चलेगा। अभी यहाँ पे पता चल रहा है पोर्ट A पे 172.16.16.16 है, राइट, तो क्या कर सकते हो, वो LAN पोर्ट है यहाँ पे, तो क्या करो, लैपटॉप कनेक्ट करो पोर्ट A पे, ओके, एंड कॉन्फ़िगर 172.16.16 गेटवे IP कॉन्फ़िगर करो, सबनेट मास्क कॉन्फ़िगर करो, एंड कॉन्फ़िगर एनी ऑफ द IP from this range and try to access the firewall. ओके तो आपको फायरवॉल का एक्सेस आ गया, एंड देन यू कैन स्टार्ट डूइंग योर कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप और डिटेल्स करोगे, यस आपको दिखेगा पोर्ट B आपने वैन कॉन्फ़िगर किया है, ओके, you are getting internet connection from this 1.1, ये कोई अपस्ट्रीम का जो राउटर है, राइट, अपस्ट्रीम राउटर है उसके में से आ रहा है, राइट। ओके सो यू हैव सी यस कैप्टन टेल मी। सर ये कंसोल एक्सेस तो सिक्योरिटी रिस्क हो गई ना, किसके भी, और मेरा जूनियर इंजीनियर है वो जाके कंसोल लगा के ये रिसेट कमांड मार देगा और थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया तो सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन सब चला जाएगा, तो कंसोल का कुछ प्रोटेक्टेड नहीं है, कुछ प्रोटेक्शन नहीं कर सकते? तो पासवर्ड वुड बी मोस्ट प्रोटेक्टेड वन, बेटर जो कंसोल है, ठीक है, वो आप ही एक्सेस करो, राइट, डोंट गिव एक्सेस टू दोज इंजर व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड। तो हमें ना क्या करेंगे, जो ये वाला जो है, ठीक है, वो तो आपके पास ही पासवर्ड रहेगा, पर जो हमारे
आपके जो जूनियर इंजीनियर्स है राइट, उनको अलग से एडमिन यूजर पैम्पलेट क्रिएट करेंगे कि उनको क्या एक्सेस होगा। लेकिन तो अभी जूनियर इंजीनियर को भी मालूम गिर गया कि रिसेट से भी अपन फॉर्मेट कर सकते हैं पूरा। अभी आप स्टडी इसके लिए ये सपोज दूसरे जो कंसोल के जो टूल्स आते हैं वो आप यूज कर सकते हो फॉर ए सिक्योर कनेक्शन। जैसे कि प्रीमाइसेस पे ऑफ कोर्स वहाँ पे भी सिक्योरिटी होगी राइट। ऐसे ही नहीं कि कोई भी इंजीनियर वहाँ पे विदाउट परमिशन दे विल डू any of the activities right. In your server lab you might have cameras, you might have to take permissions, and there are many other softwares के कोई particular जो डिवाइस है उसका एक्सेस लेने के लिए भी परमिशन होगा। Yes, of course, आपका जो क्वेश्चन है that would be genuine, but you might look into some other solutions that will help to protect the access to the device. ऐसा नहीं कि Sophos Firewall, कोई भी firewall का अगर उस इंजीनियर को जैसे let's say switches, okay, so he can take this। लेकिन स्विच में भी कंसोल लगाने के टाइम पे पासवर्ड तो पूछता है, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट पासवर्ड जो रहता है जैसे आपने बताया सोपोस के अंदर रिसेट एज अ डिफॉल्टिंग एवरीथिंग, बट सिस्को के अंदर ऐसा नहीं है। सिस्को के अंदर कंसोल यूजर नेम एंड पासवर्ड रहेगा, कंसोल में भी पासवर्ड पूछेगा, तो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकता है। There is no way we can stop this reset command from itself on the firewall. The way you want that is not possible. Not possible. Okay. Yeah, maybe we have look into some other options available. जैसे कि आपके मल्टीपल डिवाइस होंगे, फायरवॉल्स होंगे, लोड बैलेंसर होगा या फिर स्विचेस भी होंगे, तो उसका ही अलग से एक कनेक्शन तो ऑलरेडी एक अपने एक कंसोल का जो हमारा जो जितने भी वेंडर है वहाँ कोई होगा जहाँ से कंसोल ही हम सारे डिवाइस का ले सकते हैं, तो ऑलरेडी जो पोर्ट होगा वो डेडिकेटेड होगा। Now the thing is that about the physical permissions, ये physically ही होगा, otherwise it is not possible. Okay. Physical security is very important for that. Yes, okay. Physical security is also important along with this policy. So that way we can secure it. Yes, of course. Generally, as I know, you cannot directly access the console access without permission. We should know at what purpose we need the console access of any of the security devices. So that premises might be already secure. Your L2, L1 engineer might not have access to that level of physical access. क्योंकि ये जो ऑप्शन है जो है ये खाली यही फायरवॉल के अंदर है, पालो अल्टो में भी नहीं है सर, फोर्टिनेट में भी नहीं है ये ऑप्शन ऐसा जैसे रिसेट करने का। Okay, let me just check it and re-verify if I get something new and I can discuss that on this similar matter. No problem, sir. No problem. Sure. So next would be like I can also see port C WAN, and this is my MPLS link here. Okay, so I can see those details. So I think Ritesh doubt till now might be clear. Done, sir. Done, sir. Clear, sir. Thank you, sir. Yeah. नो वरीज, जैसे जैसे हमारे मॉड्यूल्स हम क्लियर करते जाएंगे ना, आपके सारे डाउट्स भी वैसे ही क्लियर होते जाएंगे। अभी बहुत सारे डाउट्स आई कैन अंडरस्टैंड यू माइट हैव, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे यू माइट बी गेटिंग डाउट्स और भी ज्यादा क्रिएट होंगे। बट एज वी कंप्लीटेड, जैसे ही मॉड्यूल कंप्लीट भी हो जाएगा ना 12 के 12, देन यू विल कंप्लीटली नो अबाउट द फायरवॉल। Whenever you might have issue, even though you have deployed and it is working fine, अच्छे से चल रहा है, and in future you face any type of issue, we'll able to fix it with the Sophos XG firewall. All right. So any challenges we will discuss. Yes, of course. Thanks, Ketan, for sharing your feedback. I will definitely let me see what we can do on this as well. Okay. So next, this is the console access. Or let me just go to the PC now. So what I did, I connected this PC. I hope my screen is shared. Yeah. So what I did, I simply, as of now, I don't have any switch or layer 3 switch or any switch between my firewall and the PC. So I have connected my PC directly on my firewall on port A. Okay, directly connect here. Okay, let's say I have new configuration to set up. So I connected on port. Now I know the firewall works on
the default IP, that is 172.16.16.16. नहीं पता है तो यहाँ पे एक और एक कंसोल केबल लगा के पीसी पे कनेक्ट करके टर्मिनल लेना है, alright, and you will get the console access and you can verify कौन से नेटवर्क कहाँ पे क्या कॉन्फ़िगर है, alright. So let me just go back and select option number 1, interface configuration, and I know now port A is my LAN, so I can just connect one PC and configure the IP addresses respectively, 172.60, whatever the IP it is here, we can have the access. Yes, Captain. Sorry, I'm asking a lot of Yes, questions, sir. no, please continue. You can Yeah, ask me because as many as can. We will definitely will work on that. okay, Yes. when you want to access this management, this 172.16.16.16 and colon 444, okay, we can change that port, the 444. Yes. Because suppose yeah, we can change. hacker knows that the Sophos firewall want to access this port, because most of them knows that also. So we can change that port, right? We can put different port also. 44. We don't want to put 444. We put something else. We can do Yes. that, right? We can do that. Right now, what we are doing, Ketan, is that we are working on default configuration. If in future, if you want to change network, port number, everything is possible on the firewall. Yes. Okay, that's it. Thank you, sir. Thank you. If you are accessing, let's say, you are already working, if you are aware about the user portal on the Sophos Firewall, it works on 443. If you want to change, Yes. you can change it. The GUI works Yes. on default. Currently, I'm just guiding everything on the default settings of the firewall where you don't have to worry. Okay. So let's say as your requirement, if you want to change the port, yes, of course, you can change the port. Okay, sir. We will change right away. Just take the next question. No problem. Okay, so we will have to end up this session in next 8 minutes. So guys, you can ask me as many as doubt you have right now. Meanwhile, let me clear Ketan's doubt where we can see that. Okay, so anyone has any doubt till now here? It's because this session would be finishing, we will finish after 8 minutes. All right. Okay, so I have the access of the firewall right now. Okay, let's continue, guys. Let's continue then tomorrow. All right, we are dropping the call for a day. Problem, sir. No problem. Okay, sorry. Just let me show it, Ketan. Just give me a minute. We will finish this last question. Meanwhile, anyone in the batch has any doubt till now? Okay, you will get the notes for this. I'm so sorry. It's already taking, right? Okay. I think I reset the password. So now it is admin. And we have to change the password, right? So we reset the password from console. Okay, so it will give you this page to reset the password. So current password is admin and I will set new password. Okay, let me log in. I'm not adding, I'm not putting the right password. Let me try it again. Okay, I will try again. Sorry, guys. Okay, it took, I think, yeah.
Okay, fine. Save it as of now. So yes, let's see the default port number settings on the firewall. And then if no one has any doubts, after 4 or 2 minutes, we will drop the session. All right. So you can go to system administration. Okay, each module will have all the, it will clear all the doubt, but let's see, we can change where we can change the ports. So you can go to system. So we'll also see in case by mistake some other port has defined and it not took, or we forgot the port on which works. So how we can change that? We will fix that also in advanced troubleshooting steps. So here you can go to system administration, admin and user settings. So you will see admin console and end user interaction. So you can change the GUI port that is available and user port that is available, right? This way you can change the ports. All right, so we will continue tomorrow. We will take SSH. We have GUI, we have SSH, we have console. As a best engineer, we should have access to all the services, okay? Even though console and the GUI and SSH, yes, of course. All right, and we'll continue tomorrow from now. Anyone, any doubt? हेलो सर Yes, सर Ritesh. सर ये इसका मतलब वीडियो का मुझे लिंक मिल सकता है सर? हाँ, मैं भेज देता हूँ आपको। ठीक है सर। आप YouTube पे सर्च करोगे तो let me show you if I can. Okay, I'm sending you that link. Just give a minute. Click this and you can join this channel. All right. Ritesh, can you see? Okay sir, okay. Okay, just follow this. You will get all my recorded session till now and you will get more. Okay, so I'm just sending you on the chat. Okay sir. Okay, so you will get more idea, but Hindi में भी होगा, don't worry, for your query. Okay. जितना डिस्कशन हम हिंदी में ही करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन भी हिंदी में ही करेंगे, लॉग्स भी हिंदी में वेरीफाई करेंगे, बट जो थोड़ी सी जो डेफिनेशंस होंगी थोड़ा सा Don't worry sir, no issue sir, yes. not an issue. I will be not using the native English language, so it will be very simple one. No worries, you will understand if I. Okay sir. Okay, all right. Okay, so let's stop the session for today. We will see you tomorrow, guys. Then tomorrow we will continue the module. We will continue from here. Okay. All right. Good evening, everyone. Hope everyone is doing good. I hope I am audible. Okay, we will start. We will wait for 1 minute and then we will start. Okay, so I will be sharing my screen. All right, so we will start from where we have left yesterday.
All right, so let's wait for a while. Okay, we'll wait for another 30 seconds and then we will start. If you can see the screen and you can see, am I audible? Just say yes. Okay, I can let me know if you can see the ping request, all right, on the screen. Okay, so let's begin. So yesterday we have covered the host, right? How we can create objects with host, with IP address, network, IP range, then IP list. We have also looked into MAC, how to create object with MAC address, that is the system address, or might be the any type of system MAC address that we have to give access to allow from the firewall rule. Also, we have looked into the various hosts like service, then country host are the default one. So now today, whatever we have discussed yesterday, we will go through in our lab, all right? So we are on the lab, so you can, so let's say we have this topology. We have head office and branch office. So let's walk through the head office first. We have this PC. I have clicked there and I'm on the PC right now. So let me log into the firewall. If I just change, let me change the settings. If I go to property, font, and let me just make it large. Okay, so I can see I can reach the firewall. All right. Let me just log into the firewall. All right, so let me show you the settings of this system. Okay, so if I say ipconfig/all. Okay, once you execute the command, you will see the details for the Ethernet adapter. So the IP address of the system is 172.16.1600. All right, and the subnet mask is 24. Gateway is our firewall, 172.16.16.16. And we have configured the static IP on this PC. Okay, no DHCP, but yes, of course, DHCP is running on the firewall. So we will change that and we will see how the client send the request and we accept the request and the DHCP goes on. All right. Okay. So this is the settings on the system. I can ping firewall. So always make sure you are reachable the firewall. All right. If I telnet 172.16.16.16.4444, the default port of Sophos Firewall. If I press enter, if that let you in, agar aap telnet kar sakte ho, that means you are in the firewall. All right, that is working one. Okay. So you know the IP address of the firewall. You know the system or IP address of the firewall. Okay, the same way the branch office has 172.16.16.17 and 16. Okay, and system IP is 172.16.17.100. So we will also do some connectivity test today. All right, let me just log into the firewall quickly. So you can log into your admin account. Okay, so I hope everyone can see the GUI, right? So it will be being loaded. Okay, so you have to wait for a while. Now, जब पहली बार आप Sophos Firewall पे login करते हो, all right? Once you have the access to the firewall, lab पे रहेगा. Okay, so you don't have to worry about the rest of the firewalls if you don't have the access. Or if you are already working with Sophos Firewall and you don't have the necessary rights, अगर आपके पास rights नहीं है, you might have received rights from might be from senior. So you don't have to worry. Now you will be having full admin access.
All right, you will have all the access or to all the functionalities. If you would like to make any changes, if you like to test some configuration, you can do it here on the lab. So you will have full access here. So once you log in, what you will see now? All right, so you will see a lot of details. Currently, I can see the system. I can see interface. There are having some performance issue. Okay, it is not in green, let's say. I can see services and VPN are running properly. So we are on the control center. So we are looking into the control center. This is the quick recap what we have gone through on the theory part. Okay, so we are now looking into the practical part. All right, so we have already registered the firewall. All right, so we how we can register the firewall, how we can take the access of the firewall, that we have already done on the last session, where the default IP is 172.16.16.16. Okay, so 172.16.16.0/24 is your network on port A. तो आपको जब भी फायरवॉल का आपके पास वर्चुअल फायरवॉल हो या फिर हार्डवेयर फायरवॉल हो, you can access the firewall without any specific management port, because जो doubts थे इस हिसाब से, तो you can directly have the access of the firewall. आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? डायरेक्ट पीसी कनेक्ट करना है पोर्ट ए पे, ओके, एंड देन टेक द एक्सेस ऑफ द फायरवॉल. तो पीसी पे जैसे मैंने अभी आपको सेटिंग्स पता है, यू कैन कॉन्फ़िगर सेम सेटिंग्स ओके ऑन योर सिस्टम स्टैटिकली, राइट? सबको स्टैटिक कॉन्फ़िगर करना तो पीसी पे आता ही है. So you can configure the IP and subnet mask and just make a ping. If that is reachable, that means you are reachable to the firewall, and then you can take the access of the GUI and follow the step. Let's first आपको password change करना है. Once you change the password, click on next. Then you have to click just follow the initial setup wizard. All right. If you that I will not be showing today, but you can watch the previous video. और अगर एंड ऑफ द सेशन में भी अगर हमारा कोर्स फिनिश हो जाता है या फिर इन बिटवीन, हम वापस से वो स्टेप फॉलो कर लेंगे अगर किसी को कहीं पे भी वहाँ पे डाउट है तो. ऑलराइट, सो हम वापस उसको ऐसा होगा दूसरे टोपोलॉजी पे हम वापस फायरवॉल रजिस्टर्स करेंगे. बहुत सारी फायरवॉल्स हम रजिस्टर करेंगे, तो हमें रजिस्टर करना, कैसे एक्सेस करना है फायरवॉल को वेरी फर्स्ट टाइम, दैट विल नो. सो वी हैव रजिस्टर्ड द फायरवॉल. Once you have registered the firewall, you will have the access to the firewall, and this is the control center. अगर आपके पास हार्डवेयर डिवाइस होंगे, जब when you are working with the hardware device, physical device purchase किया होगा, then you will see the model number here. All right, let me just make it zoom for you. All right, so as it is virtual one, all right, we have unlimited cores, and we'll discuss about the cores और उसके भी licenses अलग होते हैं. So we'll discuss about license, which license you should purchase, all right, for 1 year, 2 year, and 3 year. What are different type of bundles again. Also for the virtual, we have different licenses. So we'll discuss those licenses later on, but let's look into the firewall GUI and CLI as well as on the console access. All right, and we also will test some configuration. We will create the objects which we have studied last. So what you can see here is first you will see the model number always here under control center and the firmware version. All right, and then you will see the appliance key. So this will help where ये आपको कब काम आएगा. Let's say if you are facing some issue, or आपने कोई configuration, you did it right but it's not working maybe. Okay, so you might be asked about your existing firewall details. तो आपके firewall की details आपको पता होनी चाहिए कौन से firewall पे काम कर रहे हैं, so that हम वो convey कर सकते हैं. All right, so the model number is important and the firmware is important. Appliance key you don't need to share until and unless the support is asking you. All right, so every firewall vendor has its support center, right? So in that case only you have to share your appliance key number, or otherwise just share the model number and the current firmware version that you are working on. So current firmware कौन सा होगा जो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा. अभी कौन सा firmware version है? Sophos OS, okay, FS OS 19.5.1 MR1. All right,
and it is built is 2.7.3. Okay, so these are the maintenance release. Okay, these are the firmware versions, and what type of improvement they have. So we'll discuss about the firmware version also in upcoming modules in details. What are the release notes, what they have resolved, what are the known issue on all right, which issues has resolved from Sophos, and if we have any bug or so we will discuss about the firmware also. So this is the we can say stable one, so we don't have to worry about the fix. If it is not working, yes, of course, we have latest firmware version. MR3 is the latest one. All right, so we have 2 and 3. So 2 firmwares they have released. So we'll discuss about what issue they have released, what issues they have fixed on the firmware version on the release note. तो आपको अलग से एक रिलीज नोट मिलेगा, उसमें कौन से अब तक के जो issues होते हैं, जो bugs होते हैं, वो resolve किए हैं. And there are many much more details in the firmware that they have fixed. So this is about the firmware till now. All right. So सबसे best when you are working with firewall, जब भी आप Sophos से काम कर रहे हो, whenever you are working, always have a good habit to take the backup. All right. So to take the backup, you should always set automatic backup to your mail. So you don't have to manually download the backup and worry about that whether you have a backup or not. All right, the latest backup. तो हमेशा backup जब भी आप कोई मेजर चेंज कर रहे हो या फिर कोई न्यू इम्प्लीमेंटेशन है existing firewall पे, so always have a first verify whether when was the last backup was taken, so that let's say you are doing any, if let's say yesterday we want to change the port, right? So better we take the backup before making this major change, so that we know that what was the last change, कौन सा change हमने किया. Alright, so we'll set automatic backup on the email, or if you have FTP server, we can send it to your FTP server. FTP server पे भी हम mails regular interval पे schedule कर सकते हैं, email पे भी करेंगे, and we will download local also, so we will get the idea how we can take the backup, and also we will restore the backup, so that we know the procedure for taking the backup and restoring the backup on the firewall. So let's say if your firewall, अगर आपका firewall okay factory report हो जाता है सारी configuration, any reason it has been reset, all right, might be some human error. So let's say, so we can restore the backup if we have the last backup that we have received on the email as per the schedule. तो हम schedule करेंगे, we don't have to worry that whether we have received the backup or not. So it will automatically reflect in the mail, and we will see the details. So we'll see that. Next would be the system. We can see system details, traffic inside graph. What are the web activities going on? If I'm accessing any cloud application, so you can you will be able to see here. So I think 3 app has got detected, so we will see what is sanction, unsanction, tolerate. So let's say you have Office 365 or the cloud application, well, it will get detected here. वो detect यहाँ पे होगी और उसको हम categorize कर सकते हैं, right? ऐसी applications जो cloud पे hosted है और categorize नहीं है, उसको हम categorize करेंगे. By default वो categorize हो ही जाती है, automated है. But in case if they are not getting detected, we can manually categorize those applications, and also we can give bandwidth. Let's say 5 Mbps, 10 Mbps of dedicated bandwidth, upload, download. So we'll see about the profile. कल हमने profile page रहा था, where that will come on the next page. तो उस पे हम bandwidth भी apply कर सकते हैं, and so on. So we can have a quick look from here. Okay, let's say if I click on performance, so it will give me more detail, right? कल हमने पढ़ा था, if you just click there, you will get more details insight from the dashboard or the control center. So we'll call it control center only from here. So you can see the performance graph. You will see which services, if any of the services are not running, it will get displayed here, but all the services are running. That is the reason we will not able to see any of the dead service or stop service and so on. So we'll वैसे भी हम इस पर काम करने वाला है, right? So it might happen that some service will get stopped or dead. So we will take some step in that case. What
what would the step we can take? Like, let's say we can restart those services and we can make them up and running. We can see interfaces. Let's say, yes, I can see why interface performance is low because my MPLS link is down. Okay, rest are up, but yes, the link which is down, it will show here. Okay, VPN, there is no VPN, so no VPN is being configured. Okay, कोई भी VPN हमने configure नहीं किया, that is the reason it is showing no VPN links. But अगर हमने VPN configure किया है, all right, तो एक टनल है या फिर एक से ज्यादा टनल है, ठीक है. लेट्स से हमारे पास 3 टनल्स हैं और 4 टनल्स हैं यहाँ पे. अगर कोई भी डाउन होएगा, then we will see this detail here. All right, so it will give you the system. You can see these are the system details which I click there and I got more details. Okay, और भी बहुत detail मिलेगी, but this would be from your dashboard. पूरा insight लेंगे यहाँ पे. All right, so yes, let me just click on CPU and memory. So similarly, we can get details of the CPU and memory graph here. Right, let's say अगर कोई ऐसा होता है, right? Let's say CPU high जा रहा है, so we'll find out what would the reason for getting high CPU, high memory, and so on. Right? अभी तो normal है, so it's fine. But yes, of course, advanced troubleshoot में हम यही सब करेंगे कि system को ही monitor करेंगे. Let's say CPU and memory, what are the reasons if they are getting high, and what are the other steps that we can take to slow down the CPU usage, right? Or हो सकता है maybe previous bugs भी होते हैं, right? So we will fix with the latest firmware version might be causing the issue. Verify करेंगे कौन से services क्यों high ले रही है. We might restart the services and so on. These are the advanced troubleshoot step that will take this later on. But completely we will be focusing first on the navigations, configurations के parameters कौन सी configurations हमें यहाँ पे करनी है. We will verify the traffic flow. We will do the basic configuration and the advanced configuration, and then we will troubleshoot and monitor the firewall. Okay. So you can see system graphs. I will not click here as of now. You can see log viewer. These are the options available for your troubleshoot. Whenever you want, जब आप troubleshoot करते हो, कोई system slow चल रहा है, right? जैसे Windows slow चलता है, you will look into the task manager. Similarly, we have the system. So you can see the system details from the control center. Also, we can do under diagnostics. We can check the log viewer. We can check the CLI console. Logs देखेंगे कि what is the root cause for causing CPU high and memory high. All right, right now I can see it is normal, so we don't have to worry about right now. Next is ping utilities. Let's say if you are troubleshooting something, you want to check some test connectivity, ping check करना है, trace route करना है, or an NS lookup, route lookup करना है. We can do it from here as well as from the diagnostic. All right. So ये जो हम click करते हैं तो ये यहाँ पे redirect कर देगा. All right. We will see that. Okay. Let me click on network there. All right. So I can see network details, live logs. Okay. So this will be the bandwidth on the network, so you can see what are the traffic going on, how many sessions are running on the firewall. Heartbeat would be if we have Sophos endpoint. Okay, so if you don't see anything here, that means you don't have Sophos Intercept X. Okay, so Intercept X generally अगर मैं short में आपको बोलूँ वो antivirus. Okay, endpoint है Sophos के. So if you are running Sophos endpoints, if there are some system which are at risk, or if there is malware has been found or compromised, you will see the details here. So you have to log into the Sophos Central and you have to troubleshoot from Sophos Central and from the system end. So we'll see how synchronous security works between Sophos Central and firewall and the endpoints to secure your network. All right. Advanced threat protection, if anything has been detected by advanced threat protection engine, if any threat has been detected, you will get the count, everything here. So हम scan करेंगे, we will download the virus purposely. We will also download the ransomware, and we will see whether firewall and the endpoints is protecting our system or not.
Right, so as of now we have not tested, and it is कोई भी ऐसी malicious website visit नहीं की है. That's the reason we are not getting much more detail. Also अभी हम scan नहीं कर रहे हैं, right? Traffic वो नहीं कर रहे, वो भी मैं अभी हम आगे आते हैं क्यों नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे red remote Ethernet device. If I type Sophos red, okay, so let's go to the red first. If I click on the images, ओके, सो जो रेड डिवाइस है आपके, ठीक है, वो कैसे रहेंगे? सोफोस के रेड डिवाइस कौन से होते हैं? सो देर आर 2 to 3 models are available. You can see the detail, I think, on the website. Let's click, go there. So what are red? Okay, remote Ethernet devices. Okay, let me just go to the website. I'm on the document part, no worries. सो रेड क्या था, मैंने जो लास्ट बताया था, जो हमारा रिमोट ब्रांच ऑफिस होगा. इफ वी हैव वेरी स्मॉल ऑफिस एंड इफ यू वांट, इफ और देयर आर लेस नंबर ऑफ यूजर्स, तो हम क्या कर सकते हैं वहाँ पे, अगर हेड ऑफिस से कनेक्ट करना है ब्रांच ऑफिस, राइट, तो फायरवॉल की जगह पे हम रेड भी यूज कर सकते हैं फॉर सिक्योरिंग दी ब्रांच ऑफिस. अगर हमारे पास मल्टीपल ब्रांच ऑफिस है, लेट्स से 15-20, बहुत सारी ब्रांच ऑफिस यहाँ पे है, देन यू विल सी द काउंट हियर. अगर कोई डिस्कनेक्ट है, इशू है, then you will see the count here. You can click there and you can fix the connectivity. All right, so we'll see that. Configure red configure करना है तो करेंगे यहाँ पे. Okay, we will see the alerts. Let's say I can see the new firmware is available to download. IPS is turned off. All right, so हाँ, IPS तो turned off रखा है मैंने, अभी ये on नहीं किया. We will, because this is the fresh. Okay, we will configure the IPS policy later on once we are in the module. So currently it is off. That is the reason it is showing you the IPS off. अगर आपने secure storage master key set नहीं किया, you will get the alert. You will get like, click here to set the secure storage master key. Immediately आपको उसको सेट करना है, राइट, उसको सिक्योरली एक मींस पासवर्ड देना है, एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट सिक्योर स्टोरेज की. ओके, अच्छा, उस वो किस लिए था? एनीवन, कोई किसी को याद है सिक्योर स्टोरेज मास्टर की किस लिए? शॉर्ट में कुछ भी याद है तो? व्हाई सिक्योर स्टोरेज मास्टर की इज सेट? बैकअप के लिए, बैकअप रिस्टोर. यस, फॉर रिस्टोरिंग द बैकअप. सो जब आप बैकअप रिस्टोर करोगे, इट विल आस्क यू फॉर द सेम password. Okay, then it will go ahead. Otherwise it will know, it for the security reasons it will not restore the backup जहाँ पे आप restore कर रहे हो. Alright, so next would be connections and interfaces. So यहाँ पे आपको और details मिल जाएगी, like you can quickly have a look here. Okay, this is your control center. You have to monitor your firewall. So control center, so you can see the gateway interface details. अगर कुछ भी down होगा, then you will see the details here. Alright, so अगर WAN है, you will see like active, right, those जो भी WAN zone होगा वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा. So I have 3 WAN zones. Okay, one is MPLS, 2 ISPs. हम और एक MPLS ऐड करेंगे, alright, for the failover. And we have already हमारे पास 2 इंटरनेट कनेक्शन है, तो दोनों को लोड बैलेंस भी करेंगे, देखेंगे, फिर एक पर्टिकुलर यूजर का ट्रैफिक एक पर्टिकुलर आईएसपी से जाने देंगे, पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन वॉइस ट्रैफिक है वो भी हम पर्टिकुलर आईएसपी 1 से 2 से जाने देंगे, जैसे हमें राउट करना है. ऑलराइट, वी विल कॉन्फ़िगर अनदर आईएसपी आल्सो and to see what is active and active backup states, how we can load balance the traffic, how we can, कैसे हम एक पर्टिकुलर आईएसपी से राउट करेंगे ट्रैफिक. ऑलराइट, सब यहाँ पे करेंगे. सिमिलरली इस दोनों आईएसपी से हम IPsec VPN भी कॉन्फ़िगर करेंगे, यानी IPsec क्या होगा, हमारा हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस कॉन्फ़िगर करेंगे फॉर कनेक्टिविटी, सो दैट वी कैन पिंग द पीसी. राइट नाउ नो पीसी इज कनेक्टेड, सो द डेस्टिनेशन IP जो सामने मेरे ब्रांच ऑफिस का IP है वो कौन सा है? 172.16.17.100 है. Okay, so right now I will not able to ping because कोई connectivity setup नहीं किया हुआ है. All right, MPLS, yes, of course I have tested many things, everything is working, but we will not go. We will go for step by steps. Okay, so right now it should pass from this, but right now it is down. All right, मैंने lab पे इसको
इसको ऑन ही नहीं किया, that is the reason. So we will see that. Okay, and also we will see अगर दोनों MPLS फेल हो रहा है तो हम उसको IPsec पे मूव करेंगे, and we can set whether कौन सी प्रायोरिटी किस पे रखना है, IPsec पे रखना है या फिर MPLS पे रखना है. ओके, क्या रखना है? ट्रैफिक for the connectivity between the head office and the branch office के बीच में. All right, and rest you can just scroll and you can see more details on the interface and connections. You can see port A, B, C. Every port is available. which जो भी आपको status होगा, जैसे मेरे connected है, you can see some traffic is getting forwarded. All right, you might see in real life scenario you will see more traffic here, but this is a lab, so it will be in bytes. Okay, so we'll discuss about bytes, kilobytes, क्योंकि जब हम we will configure the profiles here. Okay, then we will apply the bandwidth policy like 1 Mbps, 2 Mbps, or 60 kbps. It depends on the requirement and type of bandwidth that we have to apply on the users, or to your higher end users, let's say the directors, or to your servers and so on. So we'll use that also later on. Next is TLS and SSL and TLS inception. So we will decrypt the traffic. All right, so हम जो Sophos firewall है उसको हम कैसे यूज करेंगे? मैन इन द मिडल अटैक, यानी जो भी ट्रैफिक हमारा इंटरनेट से आएगा. all right, let's say there is internet and there is a PC, user PC, तो बीच में हम रहेंगे. ठीक है, and we will scan each and every traffic that is being accessed by the users. So जो request आती है कैसे आती है? TLS. I hope everyone is knowing about the TLS SSL protocol. All right, so that will not be the part of the course, because it would be another session, might require 2 to 3 hours to discuss all this basic of this protocol. But in short, हम क्या करेंगे? यहाँ पे scan करेंगे. We'll see in action. Generally, it is used for encrypting the traffic between your the client browser and the PC. जो हमारा let's say Google access करते हैं, right? तो जब कम्युनिकेशन होता है तो सिक्योर होता है, राइट? सिक्योर होता है, ऑथेंटिकेट होता है, इंटीग्रेटेड इंटीग्रिटी रहती है, एंड सो ऑन. दीज आर द फीचर्स ऑफ द TLS. बट एज अ फावल, जब फावल बीच में आता है तब क्या होता है? व्हेन वी स्कैन TLS. ऑलराइट, सो एज ऑफ नाउ वी विल नॉट सी एनीथिंग in much here, so we will go through which firewall has been encrypted and decrypted. तो हम क्या करेंगे? decrypt encrypt करेंगे, so हमको पता चलेगा कि इस यूजर ने कौन सी URL access की. all right, without scanning the SSL TLS traffic, you might not perform some task. तो अगर आप scan नहीं कर रहे हैं, that means you will not able to perform some task. like अगर आपको कोई exe ब्लॉक करना है, कोई फाइल टाइप है, okay, कोई वेबसाइट में से डाउनलोड करे, उसको ब्लॉक करना है, that then you have to scan the traffic for those websites. All right, so we will scan the traffic for a whole website so that we can get the details, and then later on we will get all the graphs for कौन सी website आपने encrypt किए, decrypt किए, and so on. So you will get the details here. Not only here, but there are other ways. This is the first way where you can just monitor the firewall through control center. ये troubleshoot के लिए तो नहीं है, but just need to, you can use this as well while doing the first step of troubleshoot. You can look into the dashboard first. Of course, then जब अगर कुछ issue आ रहा है, ठीक है, let's say चल रहा था, then now it's not working, then we will look into the packet capture देखेंगे, then we will see the log viewer and so on. Okay, now let's me click on control center. So कल हमने जो उससे पहले revision किया था, right? So we have gone through all this main menu where this is the control center where we get these details. उसको click करेंगे तो और details मिलेंगे, right? For we'll talk about the user insight with the security heartbeat. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? Installation भी करेंगे Sophos Intercept X. Okay, not today, but let's I will on the next class we will install the Sophos and antivirus. All right, and we will see the feature called synchronous security provided by Sophos.
राइट, और उसका यूज क्या है, क्या करेगा ये, अभी अब वो तो मॉड्यूल पे और भी अलग से हमारा सेशन होगा, 2-3 दिन डिस्कस करेंगे अबाउट द सिक्योरिटी, हार्टबीट एंड सिंक्रोनस एप्लीकेशन कंट्रोल थ्रू सोफोस इंटरसेप्ट एक्स। ओके, कैसे हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने पूरे टोपोलॉजी या फिर नेटवर्क को। सिमिलरली 0 डे प्रोटेक्शन, अगर कोई फाइल यहाँ पे, लेट मी जस्ट स्क्रॉल हियर, आई थिंक यू कैन सी। ओके, 0 डे प्रोटेक्शन यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे मिल जाएगा, एंड अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया इट विल रीडायरेक्टेड टू हियर। ओके, यहाँ पे आ गया। सिमिलरली कोई भी आप क्लिक करोगे उस पे यहाँ पे नेविगेट ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, लेट्स से इफ द एनी फाइल आप स्कैन कर रहे हो, ठीक है, ट्रैफिक, कोई EXE फाइल डाउनलोड की है, मैलिशियस है और या फिर सस्पिशियस है, जो भी स्टेटस होगा यू विल गेट द डिटेल हियर, एंड जो फाइल का जो सैंपल होगा वो सोफोस लैब पे ऑटोमेटिक जाएगा। ओके, एंड इट विल गेट स्कैन, इफ इट इज नॉट मैलिशियस देन इट यू कैन रिलीज दोस फाइल्स, ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा। सस्पिशियस में you might require the action to take, malicious पे you know what to do. Alright, so it depends on the, अगर genuine है and still it is getting malware, then the action has to be taken very cautious. Alright, बहुत ध्यान से steps लेने, and then you have to allow it. Otherwise, security breach हो सकती है, even though your configuration is tight and secure. Alright, so if we talk about कैसे वो चेक करेगा, राइट, लेट मी गो टू सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट। I'm okay, and I'm so sorry, go to backup and firmware, right, and we can see backup and storage. Okay, backup and restore. Let's just go through this one. So we have backup हम कैसे रखते हैं, लोकली ले सकते हैं। यहाँ पे अभी बैकअप नाउ करके इसकी बैकअप ले लेते हैं। let me just take the backup of this. So let me say head office. Okay, you can give your name, आप prefix लगा सकते हो अपने हिसाब से। Click on apply. Okay, yeah, so give the password. Okay, ये वाला पासवर्ड अलग रहेगा, encryption password. So yes, let me just first set it up and see the working. 65 applied. Okay, so I will it will no worries, I don't, what if I don't want no option, right? So let me just put some 65. All right, let me just click on apply. Okay, so password complexity. All right, so make sure you have that, otherwise it will take some time. Okay, so I have set one password, encryption password. I can click on backup now. तो अभी तक का जो मेरा बैकअप है वो आ जाएगा। अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस कर रहा हूँ और लेट्स से कुछ इशू आ रहा है, then I can restore the backup. All right, but yes, of course it will have the downtime for 5 to 10 minutes, you can say. So when अगर आपने लेट से उसको फैक्ट्री रीसेट कर दो, ठीक है, बैकअप तो आपने ऑलरेडी ले लिए। ओके, फैक्ट्री रीसेट किया। ओके, सो आई विल यूज दिस फर्स्ट ऑप्शन, डाउनलोड द बैकअप, एनक्रिप्टेड बैकअप। ओके, एंड यू कैन चूज द एनक्रिप्ट बैकअप विद डिफरेंट पासवर्ड, तो दूसरा पासवर्ड भी देना पड़ेगा, बट इट्स फाइन। आई विल यूज द फर्स्ट वन एज ऑफ नाउ। पहले ये टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा वाला टेस्ट करो, ठीक है। दूसरा वाला आप टेस्ट करके मुझे बताना अगर कुछ इशू आ रहा है, ठीक है, लैब का एक्सेस होगा आपके पास। सो मैंने एक बैकअप ले लिया। अब अभी मेरे पास, इफ आई गो व्हाट आई हैव, लेट मी सी व्हाट हाउ मेनी रूल्स आई हैव ऑन फायरवॉल रूल्स एंड पॉलिसीज, दैट इज अंडर प्रोटेक्ट। तो प्रोटेक्ट पे जाना है, फायरवॉल रूल्स, कितने रूल्स है मेरे पास, 9। ओके, सो 9 रूल्स तो है मेरे पास। सो आई हैव टुक द बैकअप। अगर मैं फैक्ट्री रीसेट कर रहा हूँ, देन आई विल नॉट डू द फैक्ट्री रीसेट नाउ। अभी लेट्स first focus on the main menu tabs and whatever objects we have discussed yesterday. So आज हम उसको टेस्ट करेंगे। Let us connect the branch office today with the IPsec VPN for this for today. All right. So next is we have set the backup locally. Okay, locally अगर आप setup करते हो तो आपको manually आके backup लेना है। Okay, अगर आपको ऑटोमेटिक बैकअप चाहिए तो आप FTP यूज करना है, मेल यूज करना है। सो लेट what is written here, last backup was taken on 12th,
Okay, so you will know कि last backup कब लिया था. ठीक है, यहाँ से पता चल जाएगा. Even though the backup file will have all the details like कब backup लिया था 12 December. Okay, you will get the time and everything after. ओके, नेमिंग कन्वेंशन जो होता है. ओके, सो जैसे कि आपका ब्रांच ऑफिस का नाम है, फिर आपके जो अप्लायंस की है, ठीक है, जो जहाँ जो फाइल का आपने बैकअप लिया, जिस फाइल का, उसका अप्लायंस की नंबर है, जो मैंने आपको कंट्रोल सेंटर पे बताया था, वही है. उसके बाद कौन सा फर्मवेयर वर्जन है, कौन से डेट पे लिया है, टाइम लिया है, सो आपको पता चलेगा कौन सा ये बैकअप है. और एंड यू कैन वेरीफाई फ्रॉम हियर ऑल्सो विच वॉज द लास्ट बैकअप वाज टेकन. Okay, now to restore the backup, you can browse that backup here and it will reboot the firewall. But right now I will not reboot the firewall. It will take around 5 to 10 minutes, and we will restore this backup not in this class, maybe we'll continue tomorrow. Right, so now APIs, we will discuss about APIs. Those who want to जैसे कि बैकअप रिस्टोर करने कोई ऐसी अप्लायंसेस में जो कंपेटेबल नहीं है, तो हम API का यूज करेंगे. पर्टिकुलर बैकअप हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको रिस्टोर कर सकते हैं. दैट इज पॉसिबल विद हेल्प ऑफ API कॉन्फ़िगरेशन. तो हम API के थोड़े एग्जांपल देखेंगे, नॉट टुडे बट यस ऑफ कोर्स इन अपकमिंग मॉड्यूल्स. मॉड्यूल्स के साथ ही जाएंगे. ऑलराइट, सो नेक्स्ट वुड बी इंपोर्ट एक्सपोर्ट. सो API आपको यहाँ पे इंटीग्रेट करना है. उसके बाद जब इंटीग्रेट हो जाता है API, जो आपका सिस्टम है जो रन करता है API, देन यू कैन use this. Okay, let's say आपको एक configuration export करनी, alright, so you can do a full export of the configuration or you can do some selective configuration. तो selective configuration में क्या क्या है यहाँ पे? Alright, let's say these are the things. Okay, users हैं आपके पास, आपने users create किए, आपके पास let's say 20 to 50 users हैं, they are created. So you can just type users. Okay, so here are the users. So you can export all the user list from this firewall. So we'll do that. Okay, so no need to worry now. Next is firmware. So if I click on firmware, you will see दो firmware store होते firewall पे. All right, so we'll see that currently I have one firmware. There is dash. Okay, so if I download if I just scroll down, okay, scroll down करो, then you will see the latest firmware version. Okay, click on new firmware version. If you see the firmware version, latest one, okay, you will find, okay, आपको firmware version number wise मिलेंगे, तो आपको idea आ जाएगा कौन सा latest है. Alright, you might see 2 or 3 firmwares listed here, but कैसे पता चलेगा कौन सा latest firmware है? जो सबसे highest number पे होगा वो latest होगा. Alright, and also you can have the release note. You can just click the release note here. You will get the details कौन सा firmware version latest. Alright, so click करेंगे फिर redirect हो जाएगा यहाँ पे. Alright, just open on the new tab. It's fine. But let's say अगर आप जो लोग Sophos Firewall पे काम कर रहे हैं, if you click on new firmware version and you don't find the firmware version, then wait for some time until and unless आप यहाँ पे firmware version नहीं दिखता है. Okay, मैनुअली भी कर सकते हैं. लेट्स से यहाँ पे वो फर्मवेयर नहीं दिख रहा है, बट आपके अकाउंट में जो हमने Sophos अकाउंट क्रिएट किया है, राइट, जिस अकाउंट से हमने फायरवॉल रजिस्टर किया है, उस पे आपको फर्मवेयर मिल जाएगा. जो भी फर्मवेयर आपको चाहिए आपके डिवाइस के लिए वहाँ पे अवेलेबल होगा. Alright, so we'll log into that and we'll see the firmware version available. But if you see the latest firmware version, then you can click on download. It will download the firmware version. All right, so let's say I click here and the firmware will start downloading here. Once it is getting downloaded, click on install or firewall boot होगा for 5 to 10 minutes. If you don't have HA, अगर HA नहीं है, single firewall है आपके पास, then you might have the downtime. अगर आपके पास HA तो आप zero downtime में भी firmware upgrade कर सकते हैं. Alright, you don't have to worry about the downtime. तो downtime क्या होगा? यहाँ जो लोग first time failover अगर कोई check कर रहा है, just make a continuous ping to your destinations and see if there is a drop or not. Alright, so हम देखेंगे failovers भी हैं आगे modules पे, we'll see that. Alright, so this should not get dropped in your HA configuration. HA high availability. दो firewall होगा आपके पास, head office single firewall है,
दूसरा फायरवॉल जैसे आप इसको बूट करोगे, डाउनलोड करते हो, HMA क्या होता है, यहाँ पे आप डाउनलोड करते हो तो दूसरे में पुश हो जाएगा कॉन्फ़िगर फर्मवेयर, फिर वो वाला जो डिवाइस है वो पहले बूट होगा, देन प्राइमरी विल गेट दी बूटेड अप, राइट। एंड वो पूरा प्रोसीजर हम चेक करेंगे, वो तो सेपरेट मॉड्यूल है, बट एज वी आर हियर वी आर डिस्कसिंग। ओके, सो यहाँ पे वो 2 फर्मवेयर आ जाते हैं, यहाँ पे आपका जो लेटेस्ट फर्मवेयर होगा वो आ जाएगा, जो भी फर्मवेयर पे काम कर रहे हो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा करंट जो वर्जन स्टोर्ड है। ओके, नाउ यहाँ पे एक्टिव है। ओके, सो यू जो येलो बटन होगा वो आपका एक्टिव फर्मवेयर होगा, यानी वो फर्मवेयर यहाँ पे रन हो रहा है। ओके, यू कैन मैनेज, यू कैन अपलोड द फर्मवेयर मैनुअली, अगर आपको मैनुअली अब फर्मवेयर अपलोड करना है आप कर सकते हैं, बट इसकी जो फाइल होती है कहाँ से डाउनलोड करनी है, sophos.id.sophos.com में से करना है। ओके, सो आई विल लॉग इन लेटर ऑन, नॉट नाउ, इट्स फाइन। जब हम बैकअप और रिस्टोर करेंगे तब एक बार मैं आपको वहाँ पे लॉग इन करके दिखाते हैं। नाउ पैटर्न अपडेट्स, सो हियर आर द पैटर्न अपडेट्स फॉर द फायरवॉल्स। तो ये ऑटोमेटिक होगा, तो ये किस लिए पैटर्न अपडेट्स यहाँ पे, सो यू कैन सी लास्ट अपडेट कब हुआ था, यहाँ पे 12th। ओके, दैट इज टुडे 5:42। ओके, यू कैन क्लिक ऑन अपडेट pattern now, अगर if you find that वो pattern update नहीं हुआ है, simply click here and it will get updated। ओके, सो देखो अभी ये अपडेट हो गया, राइट, फॉर्मवेयर। अभी इसमें कौन से पैटर्न है यहाँ पे, लेट्स गो देयर। सो इट हैज AP फर्मवेयर और उसका वर्जन। ओके, सो लेटेस्ट इज 11.0.21। ये कब काम आएगा, जैसे आपने सोफोस का AP स्विच पे लगाया, ठीक है, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा फायरवॉल। ओके, ऑन मैजिक IP 1.2.3.4, वो मैजिक IP है। अगर आप TCP डंप लोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि वहां से ट्रैफिक आ रहा है। तो क्या होता है, लेट्स से आपका जो AP है उसका पुराना फर्मवेयर है एंड हियर यू हैव द लेटेस्ट फर्मवेयर वर्जन, तो ऑटोमेटिक फायरवॉल ऑलरेडी कंट्रोलर है तो उसको पुश कर देगा फर्मवेयर फ्रॉम द पैटर्न अपडेट्स। ऑलराइट, सिमिलरली एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन का वर्जन है, सो देयर इज अ वर्जन यू विल सी हियर फॉर ATP, also for the antivirus you will see client authentication client, यानी कैप्टिव पोर्टल से जो हम ऑथेंटिकेशन करते हैं, सिमिलरली क्लाइंट जो होते हैं वो आपके यहाँ पे रहेंगे, वो भी उसका वर्जन आपको यहाँ पे दिखेगा, लास्ट कब अपडेट हुआ है वो यू विल गेट इट। ऑलराइट, सो GeoIP country DB database, so this is for Ketan, let's say country host group, right, so all the updates will be here, so you don't have to worry about, just you have to use the host। so Geo यहाँ से अपडेट हो जाएगा, इंटरनेट से ये पूरा डेटाबेस क्लाउड, सोफोस का जो क्लाउड है वहां से उसको सिंक कर लेता है। सिमिलरली IPS सिग्नेचर्स, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिग्नेचर्स और एप्लीकेशन सिग्नेचर्स, ये भी आपकी पैटर्न अपडेट्स में से होगा, सो लेटेस्ट वर्जन जो होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ऑलराइट, एंड ऑल्सो वी हैव वेबसाइट्स। ओके, आप वहाँ पे जाके भी वेरीफाई कर सकते हो वेबसाइट में, और अपने फाइल पे भी कंपेयर करना है एंड सी वेदर you are running on the latest version। alright, make sure on the firewall, कोई भी firewall हो, latest version पे आप उसको रन करो। एंड yes, of course, ऐसे ही नहीं डायरेक्ट फर्मवेयर अपडेट करना है, फर्स्ट इट डिपेंड्स ऑन योर टोपोलॉजी and the release note of the firmware version, whether it is any firewall that is available on the market। All right, so Sophos, it is very easy, you don't have to worry much about, just make sure you have the latest firmware version, आप latest firmware में काम कर रहे हो, that is enough, the rest will be taken care by the Sophos Firewall। Sophos Connect, alright, so ये कौन सा है, Sophos Connect आपका VPN, जो रिमोट यूजर्स के लिए, हम रिमोट यूजर के PC पे डाउनलोड करते हैं, जो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है उसको, उसका जो क्लाइंट इंस्टॉल करते हैं, राइट, उसका वर्जन है यहाँ पे। First you will verify, you will see the success, if it is getting failed, अच्छा सक्सेस है यहाँ पे, किसी किसी का फेल भी हो जाता है। ओके, तो वो रीजंस फाइंड करेंगे, फिक्स करेंगे, इट शुड शो सक्सेसफुल अपडेट, latest versions, and it should be have perfect date is fine, I understand, but version जो होता है, ठीक है, वो लेटेस्ट होना चाहिए, यहाँ पे कोई फेल नहीं होना चाहिए, कोई भी जो टेम्प स्टेटस जो होगा वो कोई फेल नहीं होना चाहिए। okay, if it is getting fail, you can always look here and verify whether the status of this pattern, it should be success only, fail है तो हम उसको troubleshoot करेंगे। दूसरा है
रेड फर्मवेयर, अगर आप जो मैंने अभी रेड डिवाइस नहीं दिखाया, राइट, लेट मी जस्ट शो यू दैट. If I go to the products, okay, Sophos के तो बहुत सारे products है, if you can see the screen. So under network, we have Sophos Firewall, wireless, AP, switch, we have everything, zero-day protection. So yes, this we will discuss also, what is zero-day protection. Let me just go through the red device, right? I think I will be able to see here. Let me click there, if I can see the red. Okay, let me compare the models, if I can see the models. This is the firewall. Yeah, so ये सारे firewall के models हैं यहाँ पे, XG series, very small devices, okay, small firewall. And we have the medium size and the large scale. All right, so yes, the hardware will be depending on the models. So we have SD Wi-Fi, remote Ethernet devices. All right, so let me click on compare models. Okay, so these are the models available. Let me just scroll at 20 and 60. These are the red device. Okay, so these are the hardware configuration. So आप इसका hardware compare करके you can purchase this device. This is to connect the branch office or multiple branch office. All right, for connectivity, secure connectivity. Okay, फिर आप इसका traffic head office से move कर सकते हैं and so on. We'll check that in a while. All right, so इसका जो firmware होगा, right? So in that case also, firewall, if there is a latest firmware, it will push to the red devices, red firmware. And Sophos antivirus, okay, Sophos जो firewall होगा, ठीक है, उस पे दो antivirus होंगे, एक Sophos AV, Sophos का ही antivirus होगा, एक I think this is Avira. Okay, so Avira engine is also integrated with the firewall. So you have two antivirus engines to scan the traffic, दो engines रहेंगे. All right. Then you have SSL client, SSL VPN client भी है हमारे पास. So that is the version running. All right. Let's say किसी सिनेरियो में ऐसा होता है, आपके पास firewall पे इंटरनेट नहीं होता है, तो मैनुअली आप अपलोड कर सकते हो the pattern, जो भी latest pattern है, you can manually upload the pattern. So we'll see that. Also, you can automate the updates, the interval, कौन से interval पे आपको pattern updates पे रखना है. Okay, so by default it is 2 hours. So you can set the options available here. All right, so this is about the firmware backup. We'll talk about the firmware restoration later on. All right. Now coming to the next point, that is the host and services. So देखो यहाँ पे क्या होगा, you have host. Okay, so what are IP host, Mac host, FQDN host, जो हमने कल पढ़ा था, right? रिविजन हम कर रहे हैं अभी, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं and firewall पे देख लेते हैं. We will not look into the theory part now. And yes, country group service. So if you see the first one, okay, so how you can add, you have to click on add. Okay, सब जगह आपको add का option मिलेगा. You will see the option to add the host. तो Mac host add करना है, Mac address add करना है. So just simply give the name. All right, let's say Ankit. Okay, and here उसका जो Mac address है. Okay, so उसका Mac address I will put it here. So this will only create one particular MAC address. अगर आपके पास multiple MAC address list है, so you can just give the name and select the MAC list. Okay, you can just put comma करके दूसरा MAC address डालना है, then comma, then again you have to add the another MAC address. Okay, no space. I think I left the space. Let me see if I'm getting the error or not. Okay, it is taking. So it took. All right, so it took the single. Let me just create the another one, MAC list, and I will put 2 MAC addresses. Okay, let me click on save. तो ये object जो हमने कल पढ़ा था, right? They are the building blocks for your configuration, जो आपका speed up कर देगा configuration, right? तो आप ऐसे सारे ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे. मोस्टली आपके ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे होंगे, आईपी होस्ट पे रहेंगे. ऑलराइट, अभी आईपी होस्ट में एक बार जाते हैं. ऑलराइट, सो मैंने 2 मैक ऑब्जेक्ट्स तो यहाँ पे क्रिएट कर दिया, राइट? कल हमने जो पढ़ा था वो यहाँ पे हमने
दोनों क्रिएट किए, विल सी बोथ. आई थिंक वाई लिस्ट वॉज नॉट क्रिएटेड, लिस्ट नहीं हुआ, दो मैक एड्रेस आना चाहिए. लेट मी ट्राई बैक मैक लिस्ट, इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, एग्जाम्पल को कॉपी एंड आई थिंक पेस्ट एंड लेट मी राइट टेस्ट. ओके, आई कैन गिव कोई भी नाम दे सकते, इट्स फाइन, बट मैक लिस्ट होना चाहिए, यानी एक से ज्यादा मैक. यस, नाउ ओके, आई थिंक डुप्लीकेट मैक था, उसकी वजह से वो नहीं, उसने नहीं लिया. ओके, सो डुप्लीकेट मैक होगा वो एक में हो जाएगा. सो दिस आर द डिफरेंट मैक, दैट इज द रीजन इट टुक. बट हम इसको इफ आई क्लिक ऑन टेस्ट, अभी मैं शायद इसका नाम, लेट मी जस्ट मेक टेस्ट अंडरस्कोर 1 and see if I can make any changes. Okay, for MAC address it is taking. Let me give another name like test 555. I can give any name. Click on save. Okay, so I can. तो क्या कर सकते हैं, जो हमने लास्ट पढ़ा था, we cannot make any changes, right? But yes, of course, जो टाइप है वो डिफॉल्ट ही रहेगा. यानी इस पे जो मैक लिस्ट है, ठीक है, मैक लिस्ट है, तो दूसरा मैक एड्रेस यहाँ पे आप आगे जाके ऐड कर सकते हो. ओके, लेट मी जस्ट ट्राई टू ऐड दैट, बट डुप्लीकेट हो जाएगा, राइट? ओके, आई विल चेंज वन अनदर ऑक्टेट. ओके, 0, लेट्स से देयर इज अ 0. ओके, सो इसको अपडेट कर सकते हैं, यस, इसको कर सकते हैं, बट टाइप जो होगा वो नहीं चेंज होगा. तो टाइप कौन सा है, कैसे पता चलेगा टाइप पे यहाँ पे? सो इट इज लाइक, लेट मी सी द टाइप हियर, इट इज लिस्ट, ऑल आर लिस्ट. Single MAC address, let me just add one MAC address here and click on save. Let me see. Okay, so it is now type कौन सा है, एड्रेस. so जो टाइप है वो चेंज नहीं होगा. so जो मैंने अभी तक क्रिएट किया था वो लिस्ट से क्रिएट किया था, और दूसरा मैंने एक सिंगल मैक एड्रेस से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है. ऑलराइट, सो यस, यू कैन क्लिक ऑन ऐड. अगर बहुत सारी लिस्ट है, यू कैन डायरेक्टली सर्च दैट मैक एड्रेस डायरेक्टली हियर. You can also click on filter here. आप filter कर सकते हो, let's say contains, not contain. Okay, आप इधर आके objects को filter कर सकते हैं यहाँ पे. Alright, ये troubleshoot में या फिर कोई changes आ रहे हैं, okay, at that time if you have multiple objects you can filter it with the name. और आप MAC address इधर डाल के, अगर list है बहुत सारी, तो आप वो particular MAC address को search करना है, then you can just type that MAC address and you will get the result. Okay, so I think जो भी होगा वो दिख जाएगा. Let me put one MAC address here and click on apply contains. Okay, and MAC address. Let me click on apply and I can see जहाँ पे भी वो MAC address था वो मुझे list मिल गई वहाँ पे, right? Okay, so this is your MAC address of सबको ये तो आगे होगा, right? So next is IP host में जाते हैं and let's see. Now you will see some default objects. So ये आपके default objects होंगे, okay? So यहाँ पे जो ग्रे आउट होगा आपका, ठीक है, फायरवॉल पे जो भी ग्रे आउट देख रहे हो यहाँ पे, वो आप उसको कुछ नहीं कर सकते, यू कैन नॉट एडिट इट. बट यस, ऑफ कोर्स दिस आर सम अदर ऑब्जेक्ट्स व्हिच वी कैन एडिट. सो जो टाइप है अगेन, सो दिस इज सिस्टम. ओके, सिस्टम जनरेटेड ऑब्जेक्ट है, सो यू कैन नॉट डू एनीथिंग. क्लिक ऑन टाइप, you will get it. So you can just filter it, okay, by clicking this arrow. तो उस हिसाब से फिल्टर हो जाएगा. Okay, let me keep it to default. So you can again search with name. यहाँ पे आपको फिल्टर पे क्लिक करना है, यहाँ पे भी फिल्टर दिया हुआ है. अगर आपको कोई कुछ सर्च करना है, ओके, लेट्स से 172.16 नेटवर्क अगर है, तो मुझे यहाँ तक का जो भी नेटवर्क है, ओके, वो मुझे देखना है. सो क्लिक ऑन अप्लाई and I will see all the objects. Okay, so if I just scroll, let me just put this down. Okay, yeah. So अभी इसको जब भी आप फिल्टर करो, okay, तो make sure you clear it. Otherwise, if you come back here, let's say I go, मैंने firewall rule पे गया पहले, ठीक है, और वापस मैं objects पे आता हूँ. Let's see. Let me click on objects. Yes, so filter remove हो गया. Generally, if you can't find that, just remove the filter. यहाँ पे filter enable अगर है तो उसको remove करना पड़ेगा by clearing, making it clear. Sometime maybe the browser की वजह से issue होता है.
उसके हिसाब से आपको वो फिल्टर हटाना पड़ेगा. ऑलराइट, so these are the default one. Let's see type. So we have IP address. Okay, देखो यहाँ पे IP address है, ये आपका IP है, means एक single IP है. IP subnet है, that means there is a network here. Okay, एक network configure किया है. And again I can see some IP address, and okay, let's say these are some other IP address. This is created by me. Okay, some are default. So IP range, देखो यहाँ पे IP range भी by default एक create किया हुआ है. So let's click on add. Once you click on add, you will get this template. You can add your host. So give the name like let's say आप IPsec VPN configure कर रहे हो. So हमारा खुद का network होगा, right? और सामने वाला का network होगा. So let me just zoom it for you. And what I will do, I will create one object that is local LAN. All right, IP version IPv4. All right, type is not IP. Okay, मैं पूरा network communicate करना चाहता हूँ. So I will select networks and I will put the local network of this firewall. So it is 16. All right, and subnet is 24. Okay, and click on save. तो मेरा object create हो गया. ठीक है, और एक object create करते हैं. Let me click on add and I will type remote subnet, or we can say LAN network, कुछ भी, जो भी आपको नाम देने. So this is remote means सामने branch office का network. Okay, click on network. By default IP version तो 6 ही है, and I can create 172.16 17.0. ठीक है, ये मेरा branch office का network है. All right. So वहाँ पे जो PC है वो .100 है उसका IP. All right. So we'll do some test connectivity. Click on save. So similarly, अगर देखना है कि कोई सेम नेटवर्क तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं हो गया, तो लेट्स से आई विल जस्ट फिल्टर इट आउट एंड आई विल टाइप 172.16.16. तो जितना भी 16 वाला नेटवर्क है, ओके, लेट मी जस्ट टाइप वन मोर 16. ऑलराइट, सो देखो यहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्ट और ये वाला ऑब्जेक्ट, राइट, एंड दिस वन, दिस आर बोथ आर सेम बिकॉज ओनली नेम इज डिफरेंट. और नाम से तो कुछ करना नहीं, नाम तो मैं फायरवॉल पे यूज करना है, बट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट है, जो नहीं चाहिए उसको डिलीट कर दो और एक यूज करो. हो सकता है आपके में मल्टीपल डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स ऐसे क्रिएट हो जाएंगे. तो क्या करो, फाइन ट्यून के लिए जितने भी डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट होते हैं, जो एड्रेस में जाके आप सारे जितने भी नेटवर्क्स है उसको वेरीफाई कर लो ऐसे, और जो भी ऐसा लग रहा है डुप्लीकेट है उसको डिलीट करो. और हो सकता है आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हो कहीं पे, तो उसको भी ऑडिट करना पड़ेगा आपको. ऑलराइट, और जितने भी डुप्लीकेट सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे जितने भी फाइल पे डुप्लीकेट सब्जेक्ट्स होते ही जनरली, सो उसको लोड नहीं देना है. तो बेटर है कि जितने भी डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट की लिस्ट बना के उसको एक एक करके डिलीट करना है. ऑलराइट, अगेन यस ऑफ कोर्स, जब भी हम ये कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हैं या फिर कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर रहे हैं या फिर कॉन्फ़िगरेशन हम या फिर ऑब्जेक्ट्स भी डिलीट कर रहे हैं, before and after backup must. Backup is always must for any firewall in this world. Sophos पे हम बेस्ट प्रैक्टिस में सब अभी कोर्स तो फायरवॉल Sophos पे, तो मैं ज्यादातर तो Sophos यूज करूंगा. Sophos फायरवॉल में हम बैकअप लेंगे फॉर मेकिंग एनी माइनर और मेजर चेंज. बैकअप लेना मस्ट है, और वी डेफिनेटली वी विल सेट द ऑटोमेटिक बैकअप ऑन द ईमेल टुडे विद द जीमेल. ओके, जीमेल पे कर लेते हैं आज. सो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट है उसको डिलीट करना है. ऑलराइट, यू कैन फिल्टर फ्रॉम हियर विद द एड्रेस. नेटवर्क डाल के डालो, या फिर आप नेम से पता है तो नेम से डाला एंड सी, और देखो कौन से चैलेंजेस आते हैं. अगर कुछ डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट, अभी कितने ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, 2 पेज के तो ऑब्जेक्ट्स आई कैन सी. ऑलराइट, नाउ सिमिलरली ऑब्जेक्ट्स तो क्रिएट किए थे. वी विल सी, वी नो दैट हाउ टू क्रिएट आईपी. सीधा इधर आईपी डालो और नाम डालो यहाँ पे. लेट्स से जो हमारा एडी सर्वर होगा, राइट, एडी अंडरस्कोर सर्वर एंड द सर्वर आईपी. सिमिलरली आईपी रेंज करना है. ओके, जैसे कि आपके पास 3 सर्वर है, लोड बैलेंसिंग करना है. ठीक है, बाहर से आपने उसको एक्सेस दिया है, तो आप पोर्ट फॉरवर्डिंग जब करते हो तो आप
आईपी रेंज हम ये यूज करेंगे। ओके, तो हम आईपी रेंज जब हम पोर्ट फॉरवर्डिंग मल्टीपल सर्वर के साथ करेंगे, पहले एक सर्वर के साथ करेंगे, देन वी विल सी हाउ द लोड बैलेंसिंग वर्क विद पोर्ट फॉरवर्डिंग डीनेट से। एंड मल्टीपल जो सर्वर होगा, ठीक है, हम उसको अराउंड रोबिन रिक्वेस्ट से हम उसको देखेंगे कैसे हम आईपी रेंज देके हम उसको लोड बैलेंस कर सकते हैं। ओके, दिस इज नॉट लोड बैलेंसर, ऑलराइट, बट जो रिक्वेस्ट होती है कैसे हम उसको फॉरवर्ड करेंगे आपके सर्वर्स को, जो भी सर्वर्स होंगे उसको कैसे फॉरवर्ड कर सकते हो, आईपी रेंज से होगा। नेटवर्क है और आईपी लिस्ट, जैसे जो भी लिस्ट आईपी लिस्ट होगा उसको व्हाइट लिस्ट करना है, ब्लैक लिस्ट करना है, यू कैन डू इट बाय क्रिएटिंग दैट ऑब्जेक्ट। ओके, अगर कोई नेटवर्क ग्रुप बना है या फिर आईपी रेंज बना है एंड आपने नेट आईपी बनाया है, तो उसको ये सपोज जो कल बताया था ग्रुप्स भी कर सकते हैं। सो यू कैन ग्रुप इट, ग्रुप बना सकते हैं, क्लिक ऑन ऐड। ओके, डिफॉल्ट है ये वाला, ऑलवेज देखो कितने डिफॉल्ट वन है, ये कोई मैंने क्रिएट नहीं किया है। आदि कॉन्फ़िगरेशन जो कॉन्फ़िगरेशन में बताता हूँ वो अगर मैं उसको पर्टिकुलर बोलता हूँ तो वही मैंने क्रिएट किया। रेस्ट बाय डिफॉल्ट आती है फावल पे, यू डोंट हैव टू वरी, यू विल। अगर आप फर्स्ट टाइम लैब भी कर रहे हो तो आपको जब आप फावल पे पोर्ट ए पे पीसी कनेक्ट करोगे लैब पे तो ऑटोमेटिक इंटरनेट मिल जाएगा उसको, क्योंकि उसमें ऑलरेडी फायरवॉल रूल भी होगा और नेट रूल ऑटो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे होता है। ओके, will I have already shown you, but I will go there. Before that, for creating IP group, give the name, और जो हमने IP बनाया है कि ये वो लिस्ट आ गई जहाँ पे पता है अभी लोकल बनाया था, रिमोट बनाया था। सो सिमिलरली आप उसको ग्रुप करके उसको फिर यूज कर सकते हो। एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक राइट नाउ इट इज नीडेड, बट यस ऑफ कोर्स इन द रियल सिनेरियोज वी विल नीड इट। और वी जब हम प्लान करते हैं नेटवर्क एट दैट टाइम जो हमारा टोपोलॉजी होगा, सो सारे ऑब्जेक्ट्स हम यहाँ पे पहले क्रिएट कर देंगे। कौन कौन से, जैसे अभी मैंने 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए क्योंकि मेरे प्लान के हिसाब से 2 कनेक्टिविटी है तो उसमें 2 नेटवर्क्स है। फिर अगर मेरा स्टास होता तो मैं और एक एडी सर्वर डालता, राइट, ऐसे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता। देन आई विल क्रिएट एफक्यूडीएन होस्ट। अगर लेट्स से आई हैव सम क्लाउड सर्विसेज, क्लाउड के ऊपर जो भी है, ओके, सो उसको मेरे को देना है। ओके, सो इन दैट केस आई विल क्रिएट द एफक्यूडीएन। एफक्यूडीएन क्या होगा, यूआरएल्स होगा आपका, जैसे कि facebook.com, ऑफिस 365 एंड सो ऑन। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट होगा, लेट्स से ऑफिस 365 एंड आपको URL आपको फाइंड आउट करना है, alright, and you have to add it here. So let's say www dot, this is not a URL but I'm just typing one URL, so you can just use this one. Okay, so I will not type W, it's fine, office.com. okay, so this is one of the URL, so I simply click on add. ओके, कोई ग्रुप पे ये डालना है तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर ग्रुप बना सकते हैं। नाउ एफक्यूडेंट जो होस्ट है, राइट, वहाँ पे ऑलरेडी आपके पास ये डिफॉल्ट एफक्यूडेंट्स होंगे, ऑलराइट, सो यू कैन इफ यू वांट यू कैन यूज इट, अदरवाइज यू कैन लीव, इट्स फाइन। 15 आई थिंक 15 पेजेस आर देयर, यू कैन क्लिक एंड यू विल सी विच आर द एफक्यूडेंट्स, कौन कौन से ऑलरेडी यहाँ पे बने हुए हैं। ओके, ड्रॉप बॉक्स एंड यू कैन सी फेसबुक, गूगल एंड सो ऑन, बट दे आर नॉट इन यूज में नहीं है। अगर आप यहाँ पे रखोगे ये माउस अपना होवर करोगे, यू विल सी नो सब डोमेन फाउंड, यानी ये रिजोल्व नहीं होगा, क्योंकि यूज नहीं होगा तो ये आपको यहाँ पे डिटेल नहीं बताएगा। अदरवाइज यू विल सी IP दैट इज गॉट रिजोल्व बाय ड्रॉप बॉक्स, विल सी दैट। ओके, एक स्टूडेंट जब टेस्ट करते तब चेक करेंगे। अगेन ग्रुप बना सकते हो बहुत, अगर आपने 2-3 URLs लेके आए हो, ठीक है, कोई वेबसाइट है उसको बाईपास करना है, उसकी 5-6 URLs है, सो यू हैव क्रिएटेड एफक्यूडीएन होस्ट एंड देन यू हैव ग्रुप इट एंड यू हैव अप्लाइड ऑन द फायरवॉल रूल। कंट्री ग्रुप जो अभी पैटर्न्स बताया था, राइट, वहाँ पे आपका जो GUIP लोकेशंस है, यू कैन गेट दी GUIP लोकेशंस एंड देन उसके ऊपर आप उसको अलाउ या ब्लॉक कर सकते हो। सो दिस आर द डिफॉल्ट, ये सब डिफॉल्ट ही है। जब आप फायरवॉल बूट करोगे, जो लैब पे करोगे, वही सेम चीज आप रियल सिनेरियो में भी देख सकते हो, डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन सी आती है फायरवॉल के साथ। ऑलराइट, सो लेट मी जस्ट क्लिक ऑन अफ्रीका। तो ये देखो यहाँ पे एक नाम डाला हुआ है और सारी अफ्रीकन कंट्रीज यहाँ पे एडेड है यहाँ पे। ऑलराइट, सो दिस वे these are the default ones. So अफ्रीका एशिया में होगा तो एशिया इंडिया आ जाएगा इसमें। If you click on Asia, I think yes you will get India here.
सो कॉन्टिनेंट वाइज सब है यहाँ पे, सारी कंट्रीज इसके अंदर ही है. यू कैन डायरेक्टली यूज दिस, और जनरली वी विल क्रिएट आवर ओन कस्टम पॉलिसीज. तो ये वर्ड बहुत यूज करेंगे हम, कस्टम पॉलिसीज. कस्टम पॉलिसी यानी दो पॉलिसीज होगी फायरवॉल पे. एक होगी डिफॉल्ट पॉलिसीज, जो भी हम देखते हैं, जो हमने कुछ कॉन्फ़िगर नहीं किया, राइट. आईपी होस्ट में देखा कि वहाँ पे मैक होस्ट में कुछ नहीं था, इट वाज कंप्लीटली एम्प्टी. ये सब मैंने क्रिएट किया. सो यहाँ पे कोई डिफॉल्ट मैक एड्रेस पॉलिसी या फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं था, यहाँ पे डिफॉल्ट है. ओके, सिमिलरली आपको सारे मॉड्यूल्स में से डिफॉल्ट सेटिंग्स तो दिखेगी. ऑलराइट, सो वी विल गो. अभी ये वाला मॉड्यूल जो हमने लास्ट जो कंप्लीट किया उसी हिसाब से जा रहे, तो वहाँ पे नहीं मेंशन था, बट यस ऑफ कोर्स एज वी कैन सी ऑन द GUI वी कैन सी दोस डिफॉल्ट IP होस्ट ऑब्जेक्ट्स जो ऑलरेडी क्रिएटेड हैं और फायरवॉल के साथ ही आते हैं. और ग्रुप्स आप देख लो डिफॉल्ट कौन कौन से आते हैं. सो सिमिलरली कंट्री ग्रुप वो भी डिफॉल्ट है, एंड यू कैन क्रिएट योर ओन कस्टम ऑब्जेक्ट्स. और कस्टम ऑब्जेक्ट्स, हम ऑब्जेक्ट्स में तो ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे, अगर पॉलिसी पे तो पॉलिसी वहाँ पे हम बोलेंगे लेट्स से कस्टम पॉलिसीज और डिफॉल्ट पॉलिसीज. ओके, सो डिफॉल्ट पॉलिसी से देखना है कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं. अगर डिफॉल्ट पॉलिसी नहीं करता है तो देन वी विल क्रिएट आवर ओन पॉलिसीज. और एक चीज होता है क्लोन, यानी उस जो डिफॉल्ट पॉलिसी है या फिर कस्टम पॉलिसी उसका क्लोन कर दिया, यानी डुप्लीकेट कर दिया है, तो फिर उसको हम एडिट करें और उसको हम यूज करेंगे. so this way we will manage the firewall. Right, so let's say, so you can give the name, let's say block countries. Okay, जो कंट्री को आपको ब्लॉक करना है सिलेक्ट कर लो यहाँ पे. Alright, and then you can apply on the firewall rules. तो वो जो भी कंट्री से अगर ट्रैफिक आ रहा है हिट हो रहा है फायरवॉल पे, वो ड्रॉप हो जाएगा. ओके, अगर एक्सेप्ट किया है तो एक्सेप्ट होगा, ड्रॉप किया है तो ड्रॉप होगा, और रिजेक्ट है तो रिजेक्ट होगा. राइट, सो वी विल सी what is actions in more details like drop. Okay, then we have accept and we have reject. ड्रॉप में तो ट्रैफिक ड्रॉप हो जाएगा, राइट, यानी लेट्स से पिंग करे तो पिंग नहीं लगेगा. एक्सेप्ट होगा तो पिंग एक्सेप्ट हो जाएगा. रिजेक्ट अगर एक्शन है तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा. ऑलराइट, देन यू कैन टेक द एक्शन, इट्स फाइन. सो दिस इज कंट्री ग्रुप. सो वो पैटर्न अपडेट में से आएगा. यस, नाउ सर्विस. सो देखो डिफॉल्ट सर्विसेज है इसमें. यस, सो देखो अभी तक मैंने यहाँ पे ये मैंने क्रिएट किया एक policy, but this is the not the default, but it comes with the firewall SMTP 465 port. All right, so सबने हमने पढ़ा है, राइट. DSCP ये देखो यहाँ पे ग्रे आउट है, so you cannot make any changes on this current services. Okay, so what are these? Okay, the BGP port. Okay, अगर आपको पोर्ट नंबर पता है तो you can verify like DSCP UDP है. Okay, so it is UDP 6768. Okay, and let's say well known protocols पे जाता है, DNS है, so it's TCP UDP, it's UDP and TCP both, दोनों added है यहाँ पे DNS पे. Okay, so you'll get protocols, you will get details कौन से पोर्ट उस पे आपने कॉन्फ़िगर किए. so HTTPS on 443, TCP 443. GRE we have on 47. Then we have H32 for voice. We have all the ports that जो डिफॉल्ट पोर्ट्स हैं. ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं फायरवॉल का ये स्टैंडर्ड है. आप कोई भी फायरवॉल पे अगर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज करना है देन दिस आर द पोर्ट नंबर. ओके, इंटरव्यू में भी यस ऑफ कोर्स ये तो आना ही आता ही होगा सबको. सो यू नो द पोर्ट नंबर. ओके, यहाँ से भी हम सीख सकते हैं. एंड दिस आर दी आई कीवर्ड पोर्ट 500. ओके, IPsec के लिए पोर्ट कौन सा है. सो यू कैन क्रिएट योर ओन पोर्ट्स ऑन सर्विस. ये डिफॉल्ट है, यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस पेजेस. आई थिंक 4 पेजेस आर अवेलेबल. NTP ports, IMAP, POP, all the ports are given. Ping, okay, type of request. Then we have NTP, we have PPT, POP, IMAP. Okay, this we have syslog, TOC, and so on. Okay, we'll use it directly, but you can create your own custom port. Let's say आप एक वेबसाइट रन हो रहा है, राइट. यहाँ पे लेट्स से मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट तो रन करके रखा हुआ है. सो इफ आई एक्सेस दैट वेबसाइट विद द IP, उसका IP एड्रेस है 100, जो सिस्टम का ही IP है. ओके, तो 172.16.100 and it is working on port 8080. All right, तो मेरी एक वेबसाइट है, so it is working on this
अभी मुझे इसको बाहर से एक्सेस करना है, राइट, आई नीड टू एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले तो एक सर्विस क्रिएट करूंगा, लेट्स से 8080, ओके, एंड द डेस्टिनेशन पोर्ट कौन सा होगा, जिस पोर्ट पे काम करती है मेरी वेबसाइट, 8080, दैट्स ए टीसीपी पे काम कर रहा है। अगर कोई यूडीपी पोर्ट काम कर रहा है तो सिलेक्ट यूडीपी, ओके, और जो पोर्ट नंबर है वो यहाँ पे मेंशन करना है। तो हो सकता है आपका वॉइस भी हो, तो सारे पोर्ट्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, राइट। सो इफ इट इज यूडीपी, एंटर द पोर्ट, लेट्स से कोई सिप प्रोटोकॉल है तो 5060 एंड सो ऑन, ओके। अभी तो एक ही वेबसाइट करते हैं, सो आई विल नॉट यूज दैट, एंड सिंपली क्लिक ऑन सेव। वंस यू क्लिक ऑन सेव, आई थिंक डुप्लीकेट मैसेज आएगा, yeah. So let me click on services, and you can click, or you can just filter that. Okay, let me just search that 8080. Okay, so here it is. So I will get 8080 TCP port. So जब अभी मैं यूज करता हूँ इसको 8080, कहाँ पे यूज कर सकते हैं, डीनेट में यूज करेंगे, बाहर से वेबसाइट एक्सेस करने। अगेन यू कैन ग्रुप दो सर्विसेज, यानी अगर अलग अलग आप लेट्स से क्लिक ऑन ऐड करके देखते हैं, एंड सिलेक्ट सर्विसेज, यू कैन गिव सर्विस फॉर वॉइप के जितने प्रोटोकॉल्स है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, लेट्स से सिप, ओके। तो सिप यू कैन यूज सिप, एंड जो प्रोटोकॉल्स आपको आगे जाके अलाउड या फिर जो भी डिनाई करना है, जो भी एक्शन लेना है, उससे पहले, उस एक्शन लेने से पहले आप एक ग्रुप बना सकते हो, उस ग्रुप पे एक्शन ले सकते हैं, लेट्स से अलाउ और डिनाई और रिजेक्ट, ओके। सो पिंग, लेट्स से पिंग कर सकते हैं, एंड क्लिक ऑन अप्लाई। Okay, once you click here, once you select any protocol, let's say, let me select UDP, okay, default port, I can click on apply. Okay, so these protocols, so this group of protocols, I can take the action, click on save, so it will save that group. All right, so right now I will not create it, it's fine for me, but you can test it if you are test कोई particular app कोई testing करने वाले हो, तो आप ग्रुप बनाओ एंड देखो, अगर नहीं चलता है, it's working, then also you have to check the packet flows, and if it is not working, then definitely we have to look into the advanced troubleshoot step, with again being back us to check the packet flow, तो हम देखेंगे। All right, so this is for the objects and services we have discussed last. All right, now let's use these objects in our rules. Okay, so if I go to firewall, let me click on release note first. Okay, I'll click किया था, right, जब हम firmware, so you will get the firmware versions details here, जो भी firmware है उसके रिलीज नोट है यहाँ पे, ठीक है। आपको रिलीज नोट गूगल पे सर्च करोगे Sophos रिलीज नोट, you will get redirect to this page, and you can just go through the known issues, previous issue, resolve issues, and so on. So we'll see this not now, as it is not needed right away, everything is working, so we'll see that later on कौन से अभी भी पेंडिंग इश्यूज है। तो अगर वो वहाँ पे अगर आपका लाइव नेटवर्क चल रहा है, alright, so you can verify from this whether you are facing this issue or not on the IPsec and SSL VPN, for example. Alright, we will look into the release note, yes, of course, later on. So let me come to the topology, and let's come to the branch office PC. Okay, anyone, any doubt till here, guys? Anyone? No doubt? Okay, we will begin with the next step then. Okay, no worries, you can ask later on then. Okay, and now this is the branch office, so let me just open the firewall. Okay, तो ब्रांच ऑफिस का जो firewall है वो हम देखते हैं। तो जो पीसी है, ठीक है, उसकी सेटिंग स्टैटिक वैसे ही है, डीएससीपी भी रन करेंगे यहाँ पे, DSCP नहीं है, सो विल रन दैट DSCP
Now let me just check the setting of the PC. PC में कौन सी settings है यहाँ पे? So let me just wait for a while. Getting loaded. It's fucking slow. Okay, so we have Ethan, we have Arshad and Rahul, Ritesh, Saikand. Okay. Okay, let me click on the CMD. Okay, so ये system का IP क्या है? 7.172.16.17.100. Okay, and IP address gateway क्या है? 172.16.17.16. So that is my IP address of the firewall. Let me just access that. Firewall access करते हैं and let's see. If it is slow, then we will go to the same PC which we are working on. So I think here. Okay, let me just do one thing. I will delete it. Okay. Now let me show you one port forwarding step. तो आपको firewall rule कैसे configure करना है, you will know. Right, so simply हम port forwarding करेंगे. So ये जो PC है, ठीक है, उस पे सबसे पहले आपको ये वेबसाइट चलाना है. ये कैसे? I think everyone knows how to run this. Okay, let me show you. Once you run this PC, you can go to control center. Yep. पहले control center में जाना है. Then you have to click on install a program. Okay, stop me in between if you have any queries, doubt, or suggestions, guys. Okay, raise your hands, or you can just directly speak up, please. All right, so next is you click on turn on the Windows features on and off. Okay. Okay, those who know, it's okay. Those who doesn't know, what you have to do once this box comes up. अगर ये open होता है तो then you have to click on Internet Information Service. Tick here and click on OK. Once you click OK, it will install. You have to wait for 1 or 2 minutes. और जो system का IP है, ठीक है, उससे आपको access करना है. तो HTTP जो system का IP है and port change करना है तो क्या करेंगे? You can go to IIS. इंस्टॉल होने के बाद आपको इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस IIS मैनेजर मिलेगा. ओके, सो यू कैन गो देयर एंड चेंज द पोर्ट. बाय डिफॉल्ट 80 पे काम करेगा. सो आपको फायरवॉल पे देखना है ट्रैफिक कैसे फ्लो हो रहा है. देन यू कैन चेंज द पोर्ट फ्रॉम 80 to 8080 और एनी पोर्ट, कोई भी पोर्ट यूज करो बट 80 मत यूज करो. ऑलराइट, बिकॉज यू विल गेट लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन पोर्ट 80. सो उसको फिल्टर करना, it will be difficult for us, not only you, but yes, of course, for us it is easy, but not now. हम इसको भी थोड़ा simplify way में करेंगे. Then थोड़ा सा ये मेटी में जाके भी इसको filter कर सकते हैं. ऐसा नहीं कर सकते. We can do anything, but for a safer side and to save our time on the labs, you can change the port. So once you click on information manager is open, you have to click on site. You will see default website. Click there, and under sites, click on binding, and here you can select the first one. Okay, click on edit. So here by default is 80. So just I have added 8080. That means the port is open. And if it is unassigned, then you can just select the IP address of the system. Okay. Click on OK.
close it and browse it on your browser. If this opens, then only we can forward it to your from outside. बाहर से उसको हम करेंगे. So let me just stop this ping first. It's fine. Now, what would be the next step? और एक step होगा putty open करना है सबसे पहले. All right. Now let's see three-way handshake. All right. So we will see the three-way handshake on the CLI packet capture देखते हैं. All right. Let's see how this works. So I will open putty. दो पुट्टी सेशन आपको ओपन करना है. यू कैन टाइप 172.16.16.16 and click on open. Once you click on open another duplicate session here. और एक ओपन करो यहाँ पे and just enter the password of the firewall. All right, enter the password of firewall. So you will get this detail. Okay, is it fine if I keep this or should I enlarge this? Okay, let me just try change settings, and I think appearance change. Try to save it. Okay, if you know, if you don't know, then let me just show you. So I will keep 20, and what I will do, I will save the logs. All session output or printable output would be fine. And let me save on particular location. Desktop पे save कर लेते हैं. And I will type 3-way handshake. Okay, this is not needed. This is to just show you how 3-way handshake works. And firewall के पास भी हम देखेंगे कैसे पैकेट फ्लो का, राइट? तो पैकेट फ्लो को समझने के लिए ये हम ये कर रहे हैं. So CLI आ गया, right? You have these options. You have to go to option number 4 and type TCP dump and apostrophe port 8080. तो dumps ले रहा हूँ यहाँ पे. अगर कोई भी रिक्वेस्ट 8080 पे आती है, you have to let me know. All right, means the firewall has to let me know. So let me just log in here and जब पोर्ट फॉरवर्डिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले स्टेप ये करना है. ठीक है, दोनों कंसोल एक्सेस ले लो. ओके, नहीं लेना नहीं चलेगा तो भी चलेगा, बट if you want to learn to fix and troubleshoot the issue in case of not working, तो ये आपको स्टेप फॉलो करना है. Okay, so let me just log in the firewall. Now on the you have to select option number 4. What I will do, telnet करूंगा मैं यहाँ पे. किसको telnet करना है? जहाँ पे मेरी वेबसाइट रन हो रही है. तो उसका IP क्या है? First you have to type. Let me just change the settings for this also. Appearance change. Okay, let me make it 20. All right, so telnet 172.16.16.1.100 ये मेरा सर्वर का IP है. सर्वर है PC whatever. So my PC is working as a server. कौन से पोर्ट पे मेरी वेबसाइट काम कर रही है? 443. अभी मैं कौन से पोर्ट पे चला रहा हूँ? 8080. Let's say simply press enter. If you find this connected, that means your port is open. अभी देखो फ्लो कैसे होगा यहाँ पे. Let me just come here. Let me just zoom it. और एक बार टेल वापस करते हैं. Let's say यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं. क्लिक. और what can you do? You can just differentiate करने के लिए you can just add some lines and जो आपका दूसरा ये था उस पे हम वापस टेलनेट करते हैं. Okay, so let me just these are the finished packets. So let me just put another line. Okay, and let me just go to this CLI और telnet करते हैं वापस. ठीक है, telnet IP address 8080. Press enter. That's it. So you can see अभी देखो क्या हो रहा है यहाँ पे. पोर्ट A से आपका yes पोर्ट A आउट, यानी फायरवॉल ने रिक्वेस्ट भेजा किसको? सर्वर को. ऑलराइट,
this is the IP address of your firewall. So this is the source IP. Okay, मैं firewall से कर रहा हूँ इसलिए source IP है. All right. So from port A, it is sending the request on random ports. This is the random port number. Now this is the interface. This is ingress. Okay, and the out draft is going out, and the time. All right, time, seconds, and milliseconds, and so on. Interface out, IP address, my firewall IP. Okay, random port. Now firewall is doing telnet किया, right? हमने 172.16.1600 on port 80. कौन सा फ्लैग लेके जा रहा है? सीन. ऑलराइट, तो 3-way handshake कैसे होता है? सीन सिनेक्ट एक्ट, राइट? सो यस, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी हम जो अगर नहीं पता है तो हम एंड ऑफ द कोर्स जितनी भी टेक्नोलॉजी हम गो थ्रू करेंगे. हमें तो सिर्फ वर्किंग देखना है, वर्किंग देख रहे हैं यहाँ पे. But if you want to discuss like 3-way handshake in more detail, that would be a different part again. So we will discuss that. But we can see flag scene packet leke ja raha hai, right? And it is taking many other details for the first packet. Okay, like MSS. So it has a 1460 MSS value and so on. So we have sequence number and window sizing options and so on. So this is your part of your for the 3-way handshake first packet. This is your first packet going out from your firewall. तो ये कर रहा है. Then packet, now you can see the port in, यानी packet in आ रहा है. Packet वापिस पहले बाहर गया firewall से, then it is coming back from the system. So what is now source? Source क्या है? यानी 100 है मेरा, right? वहां से request आ रही है. Again, it is seen act. So it got acknowledged that yes, I have received your request, and then again act. So this is your act request. तो आपका हो गया 3-way handshake. यहाँ पे ये हो गया locally. अगर आपका ये locally चलता है, that means it will work from your LAN network. All right, now we will verify from outside. बाहर से भी देखेंगे. This is generally what happens that क्या issue, ये क्यों चेक कर रहे हैं हम यहाँ पे? पहले तो देखते हैं पैकेट फ्लो कैसे हो रहा है. रिक्वेस्ट बाहर भेजी, फिर वापस रिक्वेस्ट अंदर आई, सोर्स आईपी लेके आया, राइट? पोर्ट 8080 से मेरे फायरवॉल की तरफ, तो उसको टेलनेट मिल गया. जो यहाँ पे टेलनेट का मेरा कनेक्टेड स्टेटस था, राइट? सो आई गॉट दैट टेलनेट कनेक्टेड टू माय सर्वर सिनेक्ट, एंड फायरवॉल ने उसको एक्नॉलेज कर दिया. यस, आई हैव रिसीव योर एक्नॉलेजमेंट. सो for what? For port 80, that port 80 is open from your end, or I can reach the port. तो अगर देखो अब अभी इसमें अगर मैं let's say विंडोज में जाता हूँ यहाँ पे. ओके, let me type firewall. Let me type firewall. If I can see the firewall settings, these are the Windows firewall. Let me just go there, and what I will do, currently the local firewall is disabled on this system, right? So you can see it is disabled. So what I will do, let me just turn it on. All right, so let me turn on, click on OK. Now what we'll do, firewall is on right now, right? If I go to my browser, and if I access the website, let me access the website first that is running on the server with the local IP address. Okay, local IP address है मेरा, ठीक है? So we know what is private IP and the public IP. यानी अभी मैं private IP से access कर रहा हूँ firewall जो मेरा website है, right? So it would be like :44 so sorry, it is firewall, right? 808. Okay, I might be audible now. Okay, so I'm accessing the website right now. It is working. But let me just go and verify from the firewall whether I'm able to do telnet. Okay, so I think you can see it's showing me trying. All right, now let's check the packet capture.
So what is happening here now? Let me just do one thing. I will put a line to differentiate this packet, previous packet, दूसरे packets, नए वाले packets को हम differentiate करते हैं, उसके लिए line डालना है. And what I will do, let me tell it again. So I can see result of the telnet from the firewall से मैं telnet कर रहा हूँ, ठीक है. जब मैं port forwarding कर रहा हूँ तो मैं basic check कर रहा हूँ कि मैं telnet कर पाता हूँ कि नहीं. Alright, so here currently she is saying time out. क्यों? क्योंकि अभी पता है firewall जो local firewall है उसको वो block कर रहा है. Okay, but still I can access the on the browser because it is allowed for that. But here देखो अभी out request जा रहा है, firewall उसको out, कोई in packet आ ही नहीं रहा है. We are sending SYN request. We are not getting SYN-ACK request or ACK request. जैसे ऊपर 3-way handshake complete हो रहा था. This is the complete 3-way handshake, right? See. So we are getting service request out and request in, and 3-way handshake is getting completed. But here you can see the packet is going out. यानी firewall packet बाहर तो भेज रहा है, but जो सामने वाला जो IP है, okay, जो remote IP वो respond नहीं कर रहा है. It is not responding. So this way जो आपका 3-way handshake होगा, in और out packets होंगे, 3-way handshake होगा, वो आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि सामने जो आपका नेबर होगा वो रिप्लाई कर रहा है कि नहीं. ओके, सो दिस विल हेल्प यू टू, दिस इज द ट्रबल शूटिंग स्टेप एज वेल. अगर कोई वेबसाइट नहीं चल रही है आपकी, ठीक है, लेट्स से आपने फेसबुक एक्सेस किया और फेसबुक नहीं चल रहा है, तो व्हाट यू विल सी दिस सेम थिंग, 3-way handshake, राइट. 3-way handshake देखेंगे हम. यू विल सी द पैकेट इन एंड आउट फ्रॉम पोर्ट बी, जो पोर्ट बी पे हमारा इंटरनेट है, राइट. तो हम वहां से इन आउट देखेंगे कि इन आउट हो रहा है कि नहीं है, टीसीपी हैंडशेक कंप्लीट होता है कि नहीं. यू कैन चेक एंड वेरीफाई. इफ यू सी कि पोर्ट बी से आउट ही हो रहा है रिक्वेस्ट, इन नहीं आ रहा है, दैट मीन्स आईएसपी ने वो पर्टिकुलर वेबसाइट ब्लॉक करके रखा हुआ है या फिर पर्टिकुलर पोर्ट ब्लॉक करके रखा हुआ है. देन वी कैन आइडेंटिफाई एज पर द पैकेट कैप्चर दैट whether the firewall is sending the request or dropping the request. अगर let's say ऐसा नहीं कि ISP से भी इशू हो सकता है, firewall से भी इशू. So how we can identify कि firewall के साथ इशू है कि नहीं. So let me check drop packet. So जैसे TCP dump लिया, right? TCP dump कमांड था, right? मैंने पोर्ट नंबर पे लिया. So similarly you can take the drop packets. So drop packets कैसे लेंगे? Let me type dr tab drop packet capture and पोर्ट पे हम डम्प्स लेंगे. ऑलराइट, मैं अभी पोर्ट पे ले रहा हूँ, होस्ट पे भी ले सकते हैं. और मैं आपको ये कमांड्स शेयर करूंगा, बहुत सारे कमांड्स है, हाउ वी कैन फिल्टर दी पैकेट, कैसे हम फिल्टर कर सकते हैं होस्ट बेस, नेटवर्क बेस, या फिर कोई पर्टिकुलर है कोई सर्विस है उसके ऊपर कैसे पर्टिकुलर पैकेट्स कैसे चेक करना है. ट्रबल शूटिंग इश्यू मैं उसके अलग से आपको नोट्स पे शेयर करता हूँ. बट एज ऑफ नाउ लेट्स सी द पैकेट फ्लो. इफ आई enter and check the drop packet capture, okay, और मैं यहाँ पे telnet करता हूँ. alright, let's me do telnet again from the CLI. अगर मैं CLI करता हूँ और यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं मिल रहा है, देखो अभी मेरे को यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है, that means firewall कुछ ड्रॉप नहीं कर रहा है. obviously यहाँ पे तो हमारे पास actually we have the proof that the firewall local firewall of the server is dropping the traffic, not the Sophos firewall. अगर यहाँ पे firewall ड्रॉप करेगा तो आपको डिटेल्स मिलेगी कौन से रीजन से ब्लॉक हो रहा है, जैसे कि firewall रूल नहीं मिल रहा है या फिर नेट रूल नहीं मिल रहा है या फिर आपने कोई ऐसी पॉलिसी लगाई है जिसकी वजह से वो ड्रॉप हो रहा है. तो हमें उसकी आईडी सब मिलेगा एंड देन वी कैन गो टू दैट पॉलिसी एंड एडिट दैट पॉलिसी और उसको हम अलाउड कर सकते हैं एंड वी कैन हैव द फ्लो. ऑलराइट, सो ऐसे हम ट्रबल शूट करेंगे. सो टीसीपी डंप एंड ड्रॉप पैकेट्स. टीसीपी डंप देखना है और ड्रॉप पैकेट देखना है CLI से और GUI से भी देखना है. ऑलराइट, सो GUI से भी देखेंगे. ऑलराइट, तो हम कर रहे हैं अभी क्या कर रहे हैं, पोर्ट फॉरवर्डिंग कर. अभी हम करेंगे बाहर से एक्सेस इसको, यानी लेट्स से इफ आई गो टू माय टोपोलॉजी, ओके, एंड दिस इज द आप यू आर सिटिंग एट होम, ओके, लेट्स से, एंड दिस इज योर ऑफिस और यहाँ पे एक सर्वर है आपका. यू वांट टू एक्सेस दैट सर्वर फ्रॉम आउटसाइड, सेम सर्वर जो अभी हमने वेबसाइट एक्सेस किया था, राइट, उसको हमें एक्सेस करना है. तो कैसे करेंगे? ऑलराइट, सो अभी एक चीज बता देता हूँ उससे पहले. मैं यहाँ पे मेरे 2 ISPs हैं, और ISP1 ISP2, ओके. सो आई विल डू विद दी पोर्ट B. ओके, तो ये जो राउटर है उसका पब्लिक IP क्या है वो देख लेते हैं.
ओके, सबसे पहले हमने देखा कि फाइवल से पोर्ट रीचेबल है। सबसे पहले टास्क क्या था, मैंने जो चेक किया वो कि पोर्ट टेलनेट होता है कि नहीं, तो होना चाहिए टेलनेट, अदरवाइज ऑलवेज देयर इज अ इशू फ्रॉम माइट बी द लोकल फाइवल दैट इज जो अलाउड नहीं कर रहे कलेक्शन। तो हमेशा जो हमने CLI से टेलनेट किया था राइट, अभी ये वाले में, सो आपको सिर्फ टेलनेट करना है यहाँ पे। सो यू शुड नॉट गेट दिस मैसेज रिक्वेस्ट टाइम आउट। अगर ये टाइम आउट कर रहे हैं यानी आप टेलनेट कर रहे हो, दैट मीन्स पोर्ट क्लोज है। कहाँ से? सर्वर एंड से। यू हैव टू ओपन दैट पोर्ट फर्स्ट एंड देन यू कैन डू टेलनेट। अगर आपने ओपन कर दिया तो यहाँ पे कनेक्ट आ जाएगा। वेरीफाई कैसे करेंगे? पैकेट कैप्चर से 3-वे हैंडशेक कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। ऑलराइट, सो यू कैन सी विद हेल्प ऑफ 3-वे हैंडशेक। सो ये पहले लोकली चेक करना है। ऑलराइट, यहाँ से टेलनेट करोगे तो हो ही जाएगा पीसी से, बट हमें फायरवॉल से टेलनेट करना है और CLI से करना है। ऑलराइट, now let me just go to the ISP router and I will show you why I'm going to ISP. ये ISP का router है, so I will go to that ISP router here and let me just connect. All right, let me just all right, so enable and show IP interface. Now जो मेरा पब्लिक IP है, ठीक है, वो कौन सा है? ये वाला है 192.168.1.101. all right, you can remember this. So this is the IP, यानी जो मेरा फायरवॉल तो नेटेड डिवाइस है और एक जो ISP है वो भी एक नेटेड डिवाइस है। यहाँ से मेरा इंटरनेट कनेक्शन है। ऑलराइट, सो यहाँ पे भी अगर मैं पोर्ट फॉरवर्डिंग करता हूँ देन आई हैव टू डू पोर्ट फॉरवर्डिंग हियर, बिकॉज जो मेरा पब्लिक IP है, दिस इज माय पब्लिक IP एंड दिस इज माय प्राइवेट IP। एक्चुअली दोनों प्राइवेट ही है, बट लैब पे टेस्ट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऑलराइट, पब्लिक IP एंड प्राइवेट IP आर डिफरेंट. Okay, you will see some other class range. This is the same class range, so don't get confused. Alright, तो हम सिर्फ टेस्ट लैब पे टेस्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से हम इसको पब्लिक प्राइवेट डिफाइन कर रहे हैं। ऑलराइट, सो जो ISP है उसका पब्लिक IP है वो कौन से रेंज में? 1 रेंज पे। ऑलराइट, और जो फायरवॉल पे है वो 98 पे। ऑलराइट, यहाँ से इंटरनेट आ रहा है, यहाँ से कनेक्टेड है। और मैंने क्या किया हुआ है? शो रन, इफ आई जस्ट शो यू द शो रन कमांड। ओके, सो मैंने व्हाट आई डिड पोर्ट फॉरवर्डिंग, तो मैंने यहाँ से भी पोर्ट फॉरवर्ड कर दिया है। सो हियर इट इज। ओके, सो दिस इज द कमांड। तो मैंने जो फायरवॉल है, मेरा फायरवॉल का IP क्या है? 192.168.98.2, वो मेरा फायरवॉल का IP है, वैन IP है। और मैंने 8080 वहाँ से भी फॉरवर्ड किया है। ठीक है, दोनों साइड से मुझे फॉरवर्ड करना पड़ेगा क्योंकि ये नेटेड डिवाइस है। ऑलराइट, I will show you this configuration, but you don't have to worry now. Let's say आपके पास डायरेक्ट पब्लिक एक्सेस है। ये तो जनरली ISP का जो राउटर होता है वो ISP ही कंट्रोल करते हैं। सो अगर आपको कोई पोर्ट फॉरवर्ड करना है, अगर कोई ब्लॉक है पर्टिकुलर पोर्ट, देन यू हैव टू टेल देम टू जस्ट फॉरवर्ड द पोर्ट, दे विल बी डूइंग फॉर यू। अगर आप मैनेज कर रहे हो देन डेफिनेटली यू हैव टू टेक केयर ऑफ डूइंग द पोर्ट फॉरवर्डिंग फ्रॉम योर ISP राउटर, अगर आप मैनेज कर रहे हो। अदरवाइज इट इज फाइन, पर लैब पे तो हम करेंगे, नो वरीज। सो आइडिया आएगा कि फायरवॉल से इशू है, ISP से इशू है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, सो अभी फायरवॉल पे आते हैं, व्हाट वी विल डू नेक्स्ट। सो वहाँ पे मैंने पब्लिक IP आपको बताया। नाउ लेट मी जस्ट गो टू दी फायरवॉल। ऑलराइट, सो ऑफिस, let me just go to network and show you some settings. Okay, तो जो मेरा सर्वर है, ठीक है, वो कहाँ पे कनेक्टेड? पोर्ट A पे कनेक्टेड है। उसका IP क्या है? 172.16.16.100। फायरवॉल का IP है 16 एंड जो मेरा पब्लिक IP है वो ये रहा। राइट, जूम करता हूँ इसको। या सो पोर्ट A पे है 172.16.16, फायरवॉल का IP अगेन एंड सिस्टम 100 है। राइट, 172.16.16.100 जो कनेक्टेड है। पोर्ट B पे मेरा पब्लिक IP है। ऑलराइट, पब्लिक IP जो मैंने अभी राउटर पे बताया था, राइट, 68.2, वो मेरा पब्लिक IP है फायरवॉल पे। यानी जो अपस्ट्रीम राउटर है उस पे पब्लिक IP है, और इसमें भी इसके लिए पब्लिक IP, इसका जो पब्लिक IP ये रहेगा, और इसके ऊपर और एक राउटर है। राइट, ये राउटर है यहाँ पे। तो यहाँ का जो पब्लिक IP है यहाँ ये रहेगा। ओके, दैट इज 1.101 एंड यहाँ पे है 98.2, 1 and 2। ओके, सो हियर इट इज। तो गेटवे रहा, वेट फॉर अ मिनट गाइस।
sorry, we have Air Force nearby, so sorry for that. Okay, so next is this is my ISP2. Okay, जो ISP2 लिखा हो मेरे एक्चुअली पोर्ट बी पे यहाँ पे we will change this, so we don't have to worry about the naming convention, but yes, for a better topology अच्छे से प्लान करना है. But here पोर्ट बी पे लेते हैं, बोले पोर्ट बी पे हम पोर्ट फॉरवर्डिंग करेंगे, यानी यहाँ का जो ये पीसी है, ये जो वेबसाइट हमने एक्सेस किया था वो हम दूसरे यानी होम पीसी पे एक्सेस करेंगे, यानी बाहर से. Alright, so let me just begin with that. So दो टाइप के मैनुअल है और we can configure automatically or we can configure manually. Okay, so today we will configure it automatically और पैकेट फ्लो देखते हैं. Alright, so what you have to do for port forwarding, पोर्ट कैसे फॉरवर्ड करना है, यानी आपका जो लोकल सर्वर है वो बाहर कैसे एक्सेस करना है. You have to go to protect, rules and policies, firewall rules, add on firewall rules. So आपका सबसे पहला firewall rule आज हम ऐड कर लेते हैं. Alright, and then दो ऑप्शंस होंगे, add new firewall rules and server access assistant DNet. Okay, so this is your port forwarding help assistance. Okay, so directly you can configure, click on that और वहाँ पे आपको directly configure हो जाएगा. So internal server IP address आपको देना है. So you have to select the internal IP address. You can select the server IP. Alright, you can, हमने object क्रिएट तो शायद नहीं किया, राइट, नहीं किया, उसकी वजह से यहाँ पे आ नहीं रहे, बट डायरेक्टली यू कैन, यस ऑफ कोर्स, आप यहाँ पे इनलाइन भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो. जस्ट टाइप द आईपी एड्रेस ऑफ द सर्वर, वो इनलाइन ही क्रिएट कर लेगा ऑटोमेटिकली. ऑलराइट, सो ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ है जब मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस टाइप किया था. ऑलराइट, सो आई विल यूज दैट सेम ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट. So internal IP address, specify the private IP address of your internal server to access from internet, यानी बाहर से. Okay, click on next. Now next is public IP. आपको select करना है जो आपका public IP होगा, जो आपके WAN interface पे होगा. You have to select that one. Okay, so I have B and D both. So I will go with the B first. B से हमें port forwarding करना है. Then you can click on next. कौन से पोर्ट फॉरवर्ड करना है आपको. ऑलराइट, सो विच सर्विसेज यू हैव टू फॉरवर्ड, HTTP, HTTPS, SMTP. ओके, सो जो भी डिफॉल्ट पोर्ट्स देखे था ना सर्विस पे, वही यहाँ पे लिस्टेड है. प्लस मैंने जो कस्टम सर्विस क्रिएट किया था, ऑलराइट, हाँ, वो भी मैं यहाँ पे मैं देख सकता हूँ. तो पहले हमेशा जो भी पोर्ट्स पे जो काम कर रहा है आपका वेबसाइट, वो हमेशा पहले सर्विस ऑब्जेक्ट्स एंड सर्विस में जाके क्रिएट करना है, क्योंकि हम सर्विस जो है वो यहाँ से क्रिएट नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है. इफ यू सी ऐड न्यू आइटम्स, तो शायद आप सिलेक्ट ही कर सकते हो. आई कैन नॉट सी द ऑप्शन टू ऐड, यहाँ से ऐड नहीं कर सकता. सो मैंने पहले ही ऐड कर लिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट एंड सर्विसेज में, एंड देन मुझे यहाँ पे लिस्ट पे मिला है एंड आई एम सिलेक्टिंग दैट वन. ऑलराइट, नाउ लेट मी जस्ट अप्लाई. ओके, एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट. ओके, सो एक्सटर्नल सोर्स कौन से जो नेटवर्क है या फिर डिवाइसेस है जिनको ये राइट से एक्सेस करने के लिए, अभी के लिए कोई भी एनी वन फ्रॉम दिस वर्ल्ड, बट यू कैन क्लिक ऑन आइटम्स और जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे जो पब्लिक आईपी, लेट्स से लेट मी सी इफ आई कैन सी द कंट्री वाइज. लेट्स से ऑस्ट्रेलिया है. ओके, सो ऑस्ट्रेलिया कंट्री ही एक्सेस कर पाएगा. सो यू टू सिलेक्ट ऑस्ट्रेलिया, रेस्ट इट विल गेट ड्रॉप. और जो भी आपने कस्टम पॉलिसीज क्रिएट की होगी वही एक्सेस कर पाएंगे. लिस्ट ऑफ आईपीज या फिर ग्रुप ऑफ आईपीज जो आप यहाँ पे जो सिलेक्ट करोगे वही लोग बाहर से एक्सेस कर पाएंगे. बाकी सब जो सिलेक्ट नहीं किए वो ड्रॉप हो जाएगा यहाँ से. ऑलराइट, लेट्स से इंडिया, तो इंडिया के लोग ही एक्सेस कर पाएंगे. ऑलराइट, सो आई विल ट्रबल शूट के लिए एनी रखो पहले, उसके बाद आप उसको एडिट कर सकते हो एग्जिस्टिंग रूल को, फिर पर्टिकुलर कंट्रीज या ग्रुप ऑफ आईपीज उसको आप अलाउड कर सकते हो. ओके, उसी को ही अलाउड करना है, बहुत पर्टिकुलर. सो दिस विल बी द रिव्यू ऑफ योर सिलेक्शन. जब सेव करते तब डी नेट रूल ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाते हैं इसके, ठीक है, यानी नेट रूल्स, जो नेट रूल्स होते हैं वो ऑटोमेटिक क्रिएट होते हैं. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दोज रूल्स, बट यस ऑफ कोर्स हम उसको गो थ्रू तो करेंगे क्योंकि हम मैनुअली भी क्रिएट करेंगे, राइट. तो हमने क्या सिलेक्ट किया कि जो सर्वर है उसका IP 100 है. ऑलराइट, उसका नाम ये है. ओके, ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हुआ है उसका नाम सोफोस नहीं रख दिया, इंटरनल सर्वर.
जो बाहर से आईपी एक्सेस होगा वो आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे दिखेगा. ऑलराइट. Okay, so this is actually private IP in the lab, पर आपका in the real scenarios you will have the public IP. कौन से पोर्ट पे कौन सी सर्विस पोर्ट पे वो आपने फॉरवर्ड किया हुआ है, कौन कौन उसको एक्सेस कर सकता है. ओके, इट इज एनी. और आपके ये 3 रूल्स ऑटोमेटिक क्रिएट होंगे. ओके, सो it will create 3 net rules. Okay, so one is dnet rule, one is loopback rule और एक reflexive rule होगा. Okay, let's say LAN पे है. Okay, तो LAN when and to LAN, I think let me just take a pen. Okay, so एक होगा LAN to WAN. Okay, एक होगा WAN to LAN, that is your DNet rule. Okay, LAN से WAN ट्रैफिक जाएगा आपका यहाँ पे. और एक होगा LAN to LAN यानी इंटरनली पब्लिक एड्रेस से भी तो एक्सेस कराना है, राइट, प्राइवेट आईपी से नहीं करना है. सो आई एम सो सॉरी, इट्स LAN to LAN. ओके, 3 रूल ऑटोमेटिक क्रिएट होंगे. नेट रूल्स, दिस इज योर नेट रूल्स. तो हम वो देखते हैं अभी. सो दिस विल बी योर नेट रूल्स. ये वाला रूल बाहर से कोई ट्रैफिक आ रहा है और आपके LAN पे सर्वर पे उसको एक्सेस करना है. ऑलराइट. फिर ये जो LAN to LAN रूल है, अगर आपके LAN यूजर ही आपका सर्वर एक्सेस कर रहे हैं पब्लिक आईपी से, तो आपका वो LAN to LAN रूल आएगा काम में. ओके, अगर आपका सर्वर को इंटरनेट चाहिए तो सर्वर का LAN to WAN रूल होगा. ऑलराइट. सो कौन सा है वो रूल यहाँ पे देखो. इनबाउंड यानी WAN to LAN, ये वाला, दिस वन, दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड and this is your third. ये third. All right. So these 3 rules will be created. Okay, just have a look on this. So inbound, just a bit. Okay. So we have inbound DNet route from outside to inside, that is from public IP, that is from WAN zone to LAN zone. Then we have outbound rule, masquerade, for that is from your internal server. Okay, reflexive rule, that is called reflexive rule. Okay, no worries if you don't remember it right now. A reflexive rule, that is from LAN to WAN rule. In short, ट्रैफिक कहाँ से जाएगा, LAN से WAN की तरफ जाएगा. जो इनबाउंड होगा वो आपका WAN से LAN की तरफ आएगा. और लूप बैक कौन सा होगा, इंटरनल यूजर्स जो LAN पे ही है, ठीक है, वो प्राइवेट आईपी से एक्सेस नहीं करेंगे. कौन से आईपी से एक्सेस करेंगे, जो आपका पब्लिक आईपी है, उससे लूप बैक से उसका ट्रैफिक जाएगा, उस रूल से ट्रैफिक जाएगा. हम वेरीफाई भी करेंगे अभी कि उसी रूल से ट्रैफिक जा रहा है. ऑलराइट. Okay, then also we have service rule for any, that is fine. So rule are added from top on the table. Okay, default top to bottom approach होता है firewall rules का. जितने भी firewall rules और net rules होते हैं वो कैसे चेक करते हैं, top to bottom. ठीक है, मॉड्यूल्स में आएगा, डोंट वरी. सो टॉप टू बॉटम का मतलब ये रूल्स टॉप पे ही हमेशा ऐड होता है, तो कुछ इशू ना है. ओके, फॉर जस्ट मैनेजिंग दोस रूल. सो बाय डिफॉल्ट वो टॉप पे रखेगा. ओके, क्लिक ऑन सेव एंड फिनिश, तो ऑटोमेटिक वो रूल क्रिएट कर देगा. लेट मी जस्ट रब दिस. Now wait for a while to get it saved. And meanwhile what I will do, अभी ये home user है और we are sitting outside of the premises. Okay, so we have one user. So 123 is the password. Okay, let it get on. Meanwhile let me just go to that PC. Okay, so DNet rule हो गया, तो ये वाला रूल क्रिएट हो चुका है. ऑलराइट. पोर्ट फॉरवर्डिंग इज डन ऑटोमेटिकली. जस्ट वी हैव सिलेक्टेड द आईपी एड्रेसेस. ओके, क्या सिलेक्ट किया हमने, सर्वर का आईपी एड्रेस सिलेक्ट किया, पब्लिक आईपी एड्रेस सिलेक्ट किया और पोर्ट नंबर सिलेक्ट किया. ऑटोमेटिक हमारा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हो गया. ओके, स्कैन हम बाद में करते हैं, इसको आईपीएस से पॉलिसी बाद में लगाते हैं, पहले हम राउट करते हैं. सो राउटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट. सो वी विल डू द राउटिंग. सो this is the DNet rule that is created. Okay, so that is from WAN to LAN. ओपन करते हैं इसको, चलो. So let's see, नेम ऑटोमेटिक आ गया, राइट. यू कैन उसको कोई ग्रुप में डालना है, ग्रुप में डाल देंगे, बट अभी लेट्स कीप एज इट इज. एक्शन, इट इज एक्सेप्ट, ड्रॉप, क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, ड्रॉप करना है, रिजेक्ट करना है. एक्सेप्ट करोगे तो ये सब कुछ बाहर से अलाउड होगा, ड्रॉप करोगे तो सब कुछ ड्रॉप हो जाएगा. ओके,
All right. So let me log the traffic for this. All right. And this is WAN to LAN. Port B पे traffic जा रहा है. Port 8080 के लिए सारे डिवाइस बाहर से एक्सेस कर सकते हैं. ओके और बाद में दूसरी सिक्योरिटी पॉलिसी बाद में डालते हैं. राइट. क्लिक ऑन सेव. ओके एक अपडेट किया है. हमेशा जो फायरवॉल रूल्स होगा उसका logs देख सेव करना है. then you have to make sure logs firewall traffic should be enabled on the firewall rule. Now let's look into net rules. So automatically 3 rules was created, right? 3 net rules create हो चुके हैं यहाँ पे. Okay, so reflexive rule यानी LAN to WAN rule, loopback LAN to LAN rule and WAN to LAN rule. 3 रूल यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं. सो यहाँ से ट्रैफिक जाएगा. अगर इंटरनल LAN पे यूजर्स वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं जो आपका सर्वर है पब्लिक आईपी से, तो ट्रैफिक ये वाले रूल से जाएगा. अगर सर्वर ही इंटरनेट एक्सेस कर रहा है आपका, ठीक है, सर्वर से आप कुछ सर्वर पे ब्राउजर ओपन कर दिया जहाँ पे वेबसाइट रन है, तो यहाँ से ट्रैफिक जाएगा. और बाहर से कोई आ रहा है तो ये वाला नेट रूल यूज करेगा. सो वी विल discuss this net rule tomorrow. Okay, so right now we will not make any changes on this, and let's go to PC and check whether the website is working or not. So open the browser. और जो पब्लिक आईपी है पता है इसका, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो पब्लिक आईपी है, दैट इज 192.168.1.101 वो आईपी, राइट. सो उस आईपी से एक्सेस करते हैं. सर्वर का आईपी क्या है 172.16.1600, बट पब्लिक आईपी क्या है 192.168.1.101. या सो लेट मी ट्राई इफ आई कैन एक्सेस. अगर नहीं चलता है तो यस ऑफ कोर्स देखो यहाँ पे हम ट्रबल शूट करेंगे. विल सी द फ्लो. दिस विल हेल्प. अगर नहीं चलता है तो ज़्यादा लर्न करेंगे वो in that case. So let me just type the IP address. Okay, press enter. Let's see. Okay, so 101, I think public IP is 101. Yeah, I think I done with the port B. Site cannot be reached. Okay, so it's not working. Why? Because if you remember, let me do the basic one. I think the firewall is blocking, right? मैंने वो firewall on किया था, right? PC पे तो ब्लॉक कर रहा था, टेलनेट हो रहा था, उसकी वजह से वो अलाउड नहीं कर रहे. सो टुमारो व्हाट वी विल डू, tomorrow we will enable we will disable the firewall on the server. Okay, let's do it because we will be ending the session after some time. Anyone has any doubt till now here? Say yes. Just pick it up. Okay, let me just do it quickly if I can. Firewall might be open. Okay, anyone has any query, doubt, you can just unmute yourself and say. Okay, meanwhile I'm turning off the firewall. Okay, Ritesh, how many are present here? Ketan is here, 7. Okay, you can learn 3-way and check on here also. Okay, so in 5 minutes we will be ending the session, but yes, of course, if you have any query, doubt till now, let me know. Tomorrow we will continue. Okay, so I can see the firewall is on. That's the reason the port is not working. Okay, the port will block कर रहा है, so I just turn it off. पहला स्टेप मैंने बताया था, राइट, कि सोफोस से ही टेलनेट करो. अगर टेलनेट होता है तो ही बाहर से चलेगा. तो यहाँ से तो नहीं चल रहा, उसलिए क्यों? क्योंकि फायरवॉल यहाँ पे लोकली ऑन है, उसको वो ब्लॉक कर रहा है. सो दैट इज द रीजन इट इज नॉट वर्किंग. ओके, तो बाहर से अभी नाउ आई एम एबल टू एक्सेस. कल हम क्या करेंगे, पैकेट फ्लो देखेंगे. ओके, जैसे कि हमारे पास तो सर्वर का एक्सेस नहीं होगा, राइट. कभी कभी हमें प्रूफ भी तो करना पड़ेगा कि पोर्ट कहाँ से क्लोज है.
सो पैकेट फ्लो से देखेंगे कि कहाँ से वो पोर्ट एग्जैक्टली क्लोज है, सर्वर एंड से है, आईएसपी एंड से है, फायरवॉल के एंड से, कहाँ से वो ब्लॉक कर रहा है. ऑलराइट, ओके. एनीवन, any doubt till now here? No, sir. Sir, but when we'll get a document and that lab access? Ketan, just give a moment. Wait. Yes, sir. Hello. Yeah, Ketan, you can speak now. Yes, sir. Yeah. When we'll get this the document and the lab access? If you have not received, then okay. Allow me time till tomorrow. Tomorrow you might get received the documents and the labs. Okay, no problem, sir. You have not received the lab access. No, I did not get any lab access. I did not get any documents, sir. Okay, by tomorrow, I will contact the team and I will try my best to get you as soon as possible. All right. No problem, sir. Okay, sir. Thank you. Do you have any doubt till now here? Anything, Ketan? No, sir. Rahul? Yeah. Yes, Ketan, go on. Don't have any doubt, sir. Okay. Okay, we will provide you the lab access and the documents. And what about Rahul, Ritesh? Everything going fine? Srikanth? Yes, sir. Fine, sir. ओके, सो मैनेजमेंट आपने देख लिया होगा, राइट? मैनेजमेंट मीन्स आप जब भी फायरवॉल पहली बार एक्सेस कर रहे हो तो लैपटॉप डायरेक्ट पोर्ट ऐप पे लगा के आप फायरवॉल का एक्सेस मिल जाएगा. ओके, लैब पे भी सेम टेस्ट कर सकते हो. ऑलराइट, और मैनेजमेंट पोर्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे. वो सारे मॉड्यूल्स जो हार्डवेयर डिवाइसेस है वो तो एक अलग सेपरेट मॉड्यूल है हमारा, जिसमें हम सारे जितने भी स्मॉल स्केल से लेके लार्ज स्केल के जितने भी फायरवॉल हार्डवेयर डिवाइसेस आते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे. उसमें कौन कौन से पोर्ट्स अवेलेबल है and we'll discuss those things. All right. We still have 3 minutes. Anyone has any doubt? Adishat, I think, yeah. Can you hear? Are you there? Rahul? Srikanth? Okay, good evening, everyone. I hope everyone is doing good. All right, so we have all are present today. All right. So let me share the screen first before we begin with our class. Okay, so before we begin our class, can you please everyone raise your hands, those who can hear me? Rahul, Srikanth, Gaurav, Harishat, Ketan. Okay, can you please introduce yourself a bit? तो मैं मुझे एक दूसरे से पहले जान लेते हैं so that I can know कौन से लेवल पे हमें एक दूसरे को एक्सप्लेन करना है. ऑलराइट, यू कैन स्टार्ट विद योर yes, of course, you can start with your name and some basic information. Are you working or non-working? All right, like, okay. Yes, Bharat, I am starting with first. Yes, I Gaurav. have experience of 9 years, and the 4 years experience is the SD-WAN technology for the BT project. And with the 6 year, I have experience in the SCL technology as well for the AT&T project and Verizon. And before that, I have just started my work lifestyle with the job with the physical connectivity of routing, switching, and WAN connection from the ISP, and switch to switch connectivity and configure the dynamic IP address and all the things. With the previous 1 to 2 years, then I have selected for the SCL Comnet Limited for the network operations center for the L2 level. In the L2 level, I have configured the BGP OSPF, configure the static routes, default route towards the SP sometimes, and sometimes checking the DC to DR replication links. When DC is down, the uh, link is just forwarded to the DR, and we need to just
when the DC is up, so we need to migrate the all traffic from the DC. And in the switching part, I have done the port security part, and I have done the trunk port issue. I have checked, and I have just tagging the trunk port VLAN, and we have configured the HSRP for the router. When one link is down, then the other automatically take the virtual IP with the different subnet. This is the SL Comnet Limited experience, and same experience in the Nokia, AT&T, and Verizon. And for the SD-WAN technology, I have just migrated the 50 to 60 site of the ISP migration for the Nokia Novas for the premium, basic, and standard. For the basic, there is a one link connected on the NSG, and the standard one is the device is one, but there are two link configured on the NSG, and the premium side is like that. One is connected with the uh, router 1, and second one is connected with the router 2, and this will be connected with the failover testing for the shunt connection is connected between the core switches of the SD-LAN switches. And there are two type of site here. One is the SD-LAN, one is the non-SD-LAN. We need to check with the customer which one is the SD-LAN, which one is the non-SD-LAN. So I have migrated more site here. There are 50 site. If I have just suppose, then the 99% success rate of the ISP migration. And in GUInet, I have done the SD-WAN technology learning, and I have done the Palo Alto firewall as well. Palo Alto is going on, and we are working on the Panorama, but I haven't joined the class from the last 1 week due to the lots of load on the on my Okay, I head understand. Office side. by Okay. the BT project. Okay. No worries. If you have if you have started with the आपने पालो अल्टो का कोर्स अटेंड कर रहे हो, वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हर एक अलग अलग लोकेशन पे जो रिक्वायरमेंट होती है, लाइक प्राइसिंग वाइज एंड सो ऑन, तो नॉट ओनली द प्राइसिंग बट कौन कौन से फीचर्स आपको कौन से वहाँ पे यूज करने, तो फायरवॉल के ऊपर डिपेंड करेगा यार। तो ये ऑफ कोर्स आपको अगर सारी जितना मैक्सिमम फायरवॉल आता हो तो इतना इजी रहेगा। अगर आपने ओके, जस्ट इफ आई एम नॉट मिस्ड, आपने अभी तक राउटर स्विचिंग पे काम किया है, कोई फायरवॉल पे राउटर स्विचिंग SD-WAN एंड फायरवॉल पे मैंने काम नहीं किया है, बट व्हेन आई विल गेट इट द चांस फॉर द इंटरजोन to define the some like IP address policy, giving the policy on the interzone, so I will do it very well. So I know it very well with the help of Pankaj sir. Pankaj sir is the giving the best example, and with the live environment giving the such lab to do the same. So IPS IDS is there, like here filtering is there, data filtering, content ID, user ID. I know it very well, but I need to focus again, because with the parallelly working with the office time, we haven't a time for like every time to read all the things and recap the videos. So this is the problem, and we are managing with the Abhishek sir for this Sophos videos. When I will get it, then I will be active in the Sophos firewall as well in the current live classes. What means after this course, what you will do is like you can deploy the Sophos firewall जहाँ पे भी आपने routers deploy किए होंगे, ठीक है, सेम चीजें आप Sophos को यूज कर सकते हो फ्यूचर में। आप उससे पहले जो आपकी करंट टोपोलॉजी आप काम कर रहे हो, सेम टोपोलॉजी आप यहाँ पे जो आप लैब्स परचेज करते हो, राइट, तो वही लैब पे आप सेम सिनेरियो क्रिएट करो, वहां पे एक बार पालो अल्टो रखो, उसके बाद आप सोफोस रखो। राउटर्स तो आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, राइट, सिस्को के राउटर्स, मैं करेक्ट? सो ऐसे करके FortiGate है, जितनी भी फायरवॉल्स आप रिप्लेस करके आप पूरा यहाँ पे वर्चुअलाइज करके फिर उसको लाइव में ले जा सकते हो, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में टेस्ट करके, राइट?
Yes, So I want to say one thing here also. For the BT project, I am working as a technical designer for the SD-WAN technology, and I am working L3 plus here actually. But my salary is very low, so I have joined the many course with the going net, so I can just improve my salary with like 30 plus and 35 plus. So I'm doing every day my effort with the knowledge of the different technology. If when these are the collected by in mind, then I will just grab the opportunity of a better company in the yes, future. yeah. It can may ऐसा भी हो सकता है, लेट्स से कोई फावल के ऊपर हम वी नो, हमको उसके बारे में ज्यादा यू हैव टू लर्न नॉट ओनली द कॉन्फ़िगरेशन, राइट? कॉन्फ़िगरेशन तो आपको डॉक्यूमेंट्स में ही मिल जाएगा, बट मेन चीज होता है कि जब आप लाइव में डालते हो, लाइव नेटवर्क में डालते हो, जब आपका नेटवर्क ग्रो करता है, राइट, तब कैसे वो फायरवॉल को, या फिर ये ऑफ कोर्स कोई भी फायरवॉल, मैं सोफोस की बात नहीं कर रहा हूँ, बट कोई भी फायरवॉल हो उसको कैसे मैनेज करना है, राइट, डे टू डे कैसे इश्यूज आ रहे हैं तो उसको कैसे मैनेज करना है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो यस ऑफ कोर्स, जो मैं यहाँ पे सोफोस फायरवॉल सिखाऊंगा वो आपको टेक लेवल का भी ट्रबल शूट सिखाऊंगा, कि आपको जो अगर हार्डवेयर इशू है तो यस ऑफ कोर्स हमें फिर हम सब सपोर्ट लेंगे सोफोस का, यानी जो भी वेंडर होगा हम उसका सपोर्ट लो लेती हैं। बाकी तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन और बेसिक ट्रबल शूट और एडवांस ट्रबल शूट में भी लोग अगर मांगते तो सब हम प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे। सो वी विल अंडरस्टैंड नॉट ओनली दी फावल, बट जो फावल के साथ जो टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई है, राइट, लेट्स से अभी हम प्रोफाइल पढ़ने वाले हैं, लेट्स से डिस्क्रिप्शन प्रोफाइल, यहाँ पे हम ट्रैफिक को एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करते हैं, यानी हम उसको स्कैन करेंगे इवन दो इट इज अ सिक्योर कनेक्शन, जो HTTPS होता है, राइट, सिक्योर SSL, I am SSL correct if या SSL TLS, ये एक ही टेक्नोलॉजी, एडवांस मींस इंप्रूवमेंट हुआ है ये सफोस, बट हाउ Sophos Firewall say, यानी as a man in the middle we will understand this technology, क्योंकि not only the TLS, okay, सारी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड होती है कोई भी फायरवॉल पे, and we can use those technology. That is the reason we study the TLS and SSL, ये इसका encryption सेटिंग्स, जो फायरवॉल कैसे काम करेगा उससे हमें और आइडिया आएगा। दोज हु आर, यस आई अंडरस्टैंड, सम आर न्यू हियर एक्चुअली, तो वो भी उनको भी पता चलेगा, यस ऑफ कोर्स इफ दे हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दोस टेक्नोलॉजीज दे विल अंडरस्टैंड हाउ दे आर इम्प्लीमेंटेड इन रियल लाइफ सिनेरियोस, कैसे हम उसको यूज करते हैं यहाँ पे, एंड हाउ इट वर्क्स, कैसे चैलेंजेस से आते हैं, कौन कौन से हमें चैलेंजेस को ओवरकम करना है, फिक्स करना है, एंड सो ऑन। So Yes, on sir. Yes, sir. I understood your point. Tomorrow is one migration of like Cisco SD-WAN from the 5:30 p.m. to 9:30 p.m. So I will be not in the class, but what can I do? I can just stand by with the joining the this call, because I have taken a lots of work, because when I am giving the 100% output to company is giving the more work to me drive no, the migration. So don't mind if I am not available any class or any next class. And what can I do? We can manage the video by the Abhishek sir. When I will get it, then the Saturday Sunday will thoroughly check all the video, and we taken a points where I am stucking, where I am stuck. So I will just speak with the different class for the all videos related to. no Okay. worries. You can gather your doubts. Okay, jot it down, Yeah. and within the course or end of the course, or you have any special topology that you are trying to configure, or you need Mhm. any help. Mhm. If we are establishing Sophos products, okay, particular Sophos product and ecosystem for the Sophos, you can definitely contact me for that if you have any doubt. In the class, you can discuss anything there, so that other those who are completely new, who are just wants to start their career also, they can start from here. Right? So we can Sir, just one question in this also, with the Sophos file, this is working as a router or SD-WAN technology also in built in this product? yes, SD-WAN router. yes, Okay. all the features are available. You can say SD-WAN, or you can say even WAF,
or even have some functionality to load balance your servers. You can Mhm. fail over IPsec connections, MPLS Yes, connections. this is a HA. You are saying that active, 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 passive also is HA, there. HA is also available. Yes, of course, that is so. Okay, okay, okay. Understood. We will configure that. We will understand how HA works, how we can, let's say if some another device is getting failed due to hardware failure, how we Mhm. can replace that device, how we can restore the backup back, how can make that inactive active or active passive scenario back to the prevalent once we have received the device. But before that, we will understand what is HA, what is hybridity, how traffic is load balance, how the Mhm. failure would take place from one device to another device. Okay, here, if those who are listening, HA means two Sophos firewall Mhm. are combined together. All right, Yeah, yeah, so yeah. With the active, active, with the active passive, and the traffic is with the load balancing for the active, active. For the active passive, yes. traffic is going with the one. If one is the down, then second one is the active now. Yes. So configuration would be very simple, and also troubleshoot will be very, very simple for you once you have gone through this course with me. All right. Okay, okay, understood, understood. I need to know one thing here also. If you do the packet level troubleshooting, like in the routing switching, I know it very well. There is a wire arc is there. So I just need to know the source, destination, type field, Mm, protocol number, and mm. ARPA request and ARP request, all the things from the layer 3 to layer 1, how to packet flow. If you have any extra class, so you can just conclude the packet level troubleshooting. हाँ ये दिस इज फॉर ऑल एक्चुअली. यस, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर यू. जो पैकेट कैप्चर है, ठीक है, उसी से हमें पता चलता है ट्रबल शूट करने की. तो हम एकदम जो फावल से पैकेट कैप्चर है, मैंने वो कल स्टार्ट कर दिया था. कैसे हम Okay. पैकेट्स देखते हैं, कैसे इन आउट होता है, कैसे फ्लो होता है, और और भी डीप लेवल में जाएंगे जैसे जैसे मॉड्यूल्स आगे बढ़ते जाएंगे हमारे. और ये ऑफ कोर्स इट इज नॉट लिमिटेड टू फावल. ये ऑफ कोर्स वी कैन, जो पीकैप लेते हैं हम फायर शॉट में, वो भी हम ले सकते हैं. So not only Okay. that, we will check from SSH, we will check from GUI, and also we will check the packet flow on the Wireshark as well. Yeah, sure. Thank you so much. Okay, yes, of course, I understand that. That will help you to understand which the neighbor is causing the issue, or firewall is causing the issue, or your upstream or downstream device which is connected to firewall may have issues or not, or maybe it is server an issue or the client an issue. So how we can identify whether it is issue from the firewall side, or server side, client side, or neighbor routers, switches. Only packet flow can help us to get those details, right, Gaurav, as you know. Sure, sure, So sure, from sure. firewall, yes, of course, let's say if you don't have, मैं आपको यहाँ पे यही दिखाने वाला हूँ कि जब अगर कुछ इशू आता है तो फायरवॉल पे कैसे देखना है, कैसे वेरीफाई करना है कि यहाँ पे इशू है कि नहीं है. अगर नहीं है तो कैसे नेक्स्ट होप या फिर नेक्स्ट जो हमारा डेस्टिनेशन होगा उस पे कैसे वेरीफाई करना है इशू है कि नहीं है, एंड कैसे हम इसको फिक्स करेंगे, अप एंड रनिंग कैसे लाएंगे विद इन SLA टाइम पे हमें रिजोल्व करना है. SLA टाइम जिनको नहीं पता, ये ऑफ कोर्स 1 आवर का होता है, 30 मिनट्स का भी होता है, 1 आवर का होता है. वी हैव टू रिजोल्व दैट इशू विद इन दोज पीरियड ऑफ टाइम. So we'll see Okay, that. okay. Thank you, Okay, sir. so Thank you, sir. some are working, some are only just attending the course. But those who want to just introduce yourself, you can unmute and just introduce yourself. Those who don't want, then we will begin the session. That's why. Sure, sure. Okay, so anyone want to just introduce yourself, then it would be great. Otherwise, it's fine if you are shy, it's fine. Okay. All right. So no worries. You can let me know whenever you are ready to introduce yourself. We will start some introduction so that मुझे भी पता चलेगा. अगर यहाँ पे कोई I don't know how many are professionals and how many are new, but let's say if you are very good in English, okay, आपका English communication अगर fluent है, and if you're looking for a very good job, all right, with the tech support with Sophos Firewall, do let me know. If other person wants to join some companies and looking for the job
and has very good fluent English and also in technical background, is having a technical background and wants to join for the job and want to prepare for Sophos के कोई role पे security engineer बनना है और tech support engineer बनना है, you can contact us. And सर मेरा एक ड्रॉबैक है यहाँ पे, मैं मैकेनिकल से बीटेक किया हूँ, बट आई डोंट नो द नॉलेज ऑफ मैकेनिकल एनीथिंग. आई नो इट दिस विल इम्पैक्ट विद द CS branch as well for this technology like SD-WAN, Palo Alto, firewall, other AWS. You mean to say computer science? Yes, I'm not from the computer science background actually. I have done the BTech with the mechanical specialization. If you it doesn't matter until and unless you know the technical stuff. All right, so if you better you do some certification now. Yes, I have done the CCNP. CCNP certification in the if possible, read more books regarding to the computer engineering. Go Yes, through yes. them once, and you might be knowing all these things. It's fine. Yes, I have read many things, and I have tried very videos and very books like the packet level forwarding the how to echo request work, how to layer 3 work, how to layer 2 work. I know it very well with the packet level with the Wireshark on the routing switching. So I think with the initial day of the SCL Comnet layer, I have a very problem I'm getting, uh, uh, but I did not get now any problem because I know it very well all the process of networking and firewall. Yeah, that's it. So uh, just keep on learning and just update it, update your knowledge, and just that will do actually. That is Yeah, from sure. Gaurav. Yes, Ketan, go ahead. Yes, my name is Ketan. I have 22 years experience in networking. I know routing, switching, security, voice, and storage as well also. And I know this Palo Alto. In my network, I have the Palo Alto, the Fortinet load balancer, Fortinet WAF, and I know all this thing. But the Sophos is a new for me. But regarding the technically or whatever the concept or same thing is that for Palo Alto or for a Fortinet. So for me, this is Sophos is just to learn this thing. Okay, yeah, I agree with you that you will get the same functionality which 48 and Palo Alto or any. I think there are many other firewalls have the same functionality like Sonic or WatchGuard and many others. But yes, of course, the only thing is that how we are capable of handling any of the firewall if in case of any new requirement or in case of any issue, right? That is more important thing. And which are the features we can use on the firewall, that is also most important. Is of course, as you have very great experience, that would be very helpful for rest of the team also. Thank you, Ketan. Thank you. Yeah. Okay, so the introduction, I thought let's take some introduction so that I can know rest of the people if they are willing, if they are new to and willing to start their network or want to upgrade on their network, in your career actually. Yeah, then you can introduce yourself, or not today. It's fine if you are just listening, you are somewhere else. It's fine. You don't need to introduce, but yes, whenever you are free, you can let me know about yourself so that I can help you to upgrade your knowledge. Yeah. Sir, I have a good one suggestion for our teams. Can we make one group as a WhatsApp group? We can add all the numbers and our team members. Yes, this is the correct option. Actually, I have done with the Palo Alto firewall with the group. So Yeah, for Sophos also it will be good. Yeah, we will create one group. Just allow me some time. You will get a group and of course the notes and some links, okay, regarding the Sophos. All right. And yes, on the completion, you will get the maybe certificate if you pass the exam. Okay, so I will just ask you some questions,
You can just give me the answer. It's fine. It is open book. I will share you the notes. You can, if you don't know the answer, you can just go through those notes and you can give me the answer, and then I will provide you the certificate. All right. So there is a Sophos certification is available. We can do the certification Yes, you can like do that. CCNS, CCNP. We can do that, right? Yes, it is possible. Okay. Thank you, sir. We will come on that. Everyone will have. After this completion of this code, you will be like Sophos administrator, all right? Sophos Firewall administrator. So you can like in Palo Alto, there are two certifications is that for PCNSA and PCNSE. Yeah, So in Sophos like also, same things. yes, in Sophos also you have a different level of certification. This is the Sophos Firewall administrator. Next is Sophos architecture engineer, and so on. Okay. So currently I'm doing Sophos Firewall administrator. So after completion of this course, you will be like Sophos Firewall administrator. Okay, or not only all the team, all the members right now who is present here. Okay. All right. So yes, Rahul, Ritesh, everyone, you can just update your resume and you can mention about the Sophos Firewall administrator, and it might help you, all right, to build your career. Sir, can I ask one question? This is not a technical question. Please go ahead. Yeah, regarding this in India, how much the Sophos are selling, and how this what we say that because in Gulf, I'm working in a Gulf country, because in the Gulf we are not buying the Sophos. People are buying this Cisco Firewire, Palo Alto, and the Fortinet. Yeah, so how is the market in India for Sophos? In India, I must say it is very low, but the reason currently actually are maybe many reasons are there. It is not only the price. It was having the price, plus it was the price was too high after the chip war. The recent, if you look into the recent years, we have chip shortage issues, right now also might we have the chips, the devices are coming very, if someone orders the switches or routers or firewall, we have a very less possibility to get it on time. So not only that, but yes, of course, in India, for Indians, the firewall, I whatever feedback I have got till now, the firewall is it's very expensive compared to rest of the firewalls. Yes, of course, I have not gone through the exact price, but definitely I was in tech support, so yes, I have gone through the techs, not with the pre-sales, but yes, of course, I have heard the feedback that the reason is they only not being sold, that is the high price, very expensive firewall. So they go for FortiGate or Palo Alto, or even they use a PF-Sense and the less cheaper firewall. But when we are buying the firewall, make sure that we get the maximum security from that product. Actually, that is the main concern. That's it. So in India, I cannot say right away what is the status. But yes, of course, there are many organizations, they are using Sophos and also FortiGate. Palo Alto is most popular now in India. But in Gulf, the Palo Alto is very expensive here compared to Fortinet. Fortinet is very good price that they are giving us a good price that Fortinet. So that's the reason they are not going for this Sophos. They are going for the FortiGate only. But so Fortinet, yes, yeah. Go ahead, sir. Yeah. Yeah, but managing the firewall from FortiGate and Sophos both are same. You can use any of the firewall. Yes, this is right. Yes, yeah. And if you look into the Gartner report, let me share, if I can share something. This is Sophos is an Indian company from Gujarat, right, sir? Ahmedabad, right? They build this Sophos, right? Yes. If I tell about the history of the firewall,
It was built by one, yes, Gujarati, yes. You might know Hemal Patel, that was the who is the creator of the firewall, and it was previously it was Cyberome. So it was got acquired by Sophos, that is London-based company. And yes, of course, Cisco also want to acquire Cyberome firewall, but finally they have deal with the Sophos. My two brother is working in Sophos, sir. One in Australia, he's in technical team, and one is in software team. He's in UK. Okay, then just give me one. Yeah, my two brother is working in Sophos company, sir. One in Australia is a technical support team. Before he's working on in Ahmedabad. And one guy is in my friend is in UK. My brother is in UK. He's a software engineer. He's making the software in Sophos. Okay, sounds great. Great. All right, so if you look into the Gartner report, like this way, you will get the firewall. You can see the which is the most popular firewall here. So we have FortiGate in the first. You can see FortiGate, then Checkpoint on the second place. Then third place we have Palo Alto series, Cisco, and yes, of course, then we have Sophos. That is, I think, fifth. So ratings, if you look into the ratings, you can see the ratings and feedbacks here. You can compare, let's say if you want to compare Sophos Firewall, if I click on Sophos Firewall, I think you can click compare here, and you can compare with any of the firewall before you buy. Okay, कोई भी firewall अगर आप purchase कर रहे हो. Okay, some are new here, so you can suggest, right, like this way. If you want to compare the firewall, you can compare with, let's say, P series or let's say FortiGate. And let me scroll down. We have other firewalls also. We have SonicWall. Okay, SonicWall T series, E series, every firewall is available. But let's compare this four. It's fine. You can compare it, and then you can take decision which firewall you want to deploy it. But before you deploy it, yes, of course, you should be aware about all the modules, all integrated modules that are available on the firewall and their functionalities, how they work, and how we can manage it. Configuration is simple. Configuration to simple, but to fix the issue, to manage the firewall is much more tedious task than the doing some configuration, finding bugs, and so on. So you can see, you can see all the three firewalls with the Sophos firewall. Right? Let's say, let me just delete SonicWall. So I can see, yeah, you can compare the differences, like how many reviews they have got. So you can see on the ratings. Okay, so you can see FortiGate ko to इतना rating 2500 above rates मिले हैं, thousands and 18. So it depends on the ratings. Okay, and you can see the highlights. You can see the type of evolution, contracting, development with the firewalls, integrations, service and support. Whose service and support is better, you can see here. So as per the Gartner, I can see 4.64 is for Sophos. All right, so it will make much more easier. Okay, it's growing, so you can use it. Yes. As Ketan has told, in UAE, when I was working with the Sophos, when it was Cyberome, mostly from the UAE, yes, of course, they were using Cyberome, but now they have replaced with some other firewall. So migration, if let's say you are looking for the migration, then after doing this course with the Sophos Firewall, आपको जब माइग्रेशन करते हैं, ऑलराइट, और जो यहाँ पे नए हैं उसको अगर माइग्रेशन नहीं पड़ता है, माइग्रेशन यानी एक ट्रेडिशनल फायरवॉल होता है, ओके, यानी पुराना फायरवॉल है, उसको हमको रिप्लेस करना है विद द न्यू फायरवॉल. या हो सकता है सिस्को का आपका राउटर चल रहा हो, सिस्को का ही फायरवॉल हो, और उसको रिप्लेस करना है विद FortiGate, ओके, तो उसको माइग्रेशन बोलेंगे, या फिर पालो अल्टो या फिर सोफोस. सो यू कैन डू द माइग्रेशन विद एनी ऑफ द फायरवॉल फ्रॉम हियर.
But yes, of course, we should know how to configure it, how to manage and troubleshoot. We should also know about the firmwares, the hardware versions, कौन से जिस जो हार्डवेयर पे हम काम कर रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, एंड ये सब जो फर्मवेयर जो हम रन कर रहे हैं उसके बारे में हमें डिटेल में पता होना चाहिए. कैसे पता चलेगा? रिलीज नोट्स होगी, राइट? सो यू हैव टू लुक ऑन द रिलीज नोट्स एंड द हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन जो हम ये क्लास में तो हम करने ही वाले हैं. ऑलराइट, सो यू कैन कंपेयर द फायरवॉल एंड यू कैन परचेज एज पर योर चॉइस. ऑलराइट, मैं FortiGate भी यूज कर सकता हूँ. ऑलराइट, if my customer is not agree with the Sophos or Palo Alto, I have to use FortiGate, or my customer wants Palo Alto. So yes, of course, we should know some of the firewalls so that we can manage it. Okay, तो Sophos में हम जैसे कोर्स करेंगे, just give me a minute. Let me have the water, please. Sorry. Okay, so as Sophos में जब हम लैब करेंगे तो जैसे हम Sophos मैनेज करना जब आ जाएगा, alright, maybe you be having a good experience with the rest of the firewall. Some will have, some will not. But you can compare the management of the Sophos firewall with the rest of the firewall. And what are the challenges that comes with the Sophos firewall? What challenges that are coming with the rest of the firewalls, and you can just differentiate it और उसके ऊपर आप डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा हमें यहाँ पे जाना है. राइट, बट ये सब सारी जो इतनी टेक्नोलॉजी होगी वो यहाँ पे हम देख सकते हैं. सो दोज हु आर जो नए हैं, राइट, सो यू विल लर्न अबाउट जो टेक्नोलॉजी अभी तक सुना होगा. ओके, you will see it here in live action. All right, so we'll begin with some part of the theory first, and as it is, we will look for 1 hour or maybe 40 minutes. We will go through the theory part थोड़ा देखेंगे, उसके बाद हम lab practice थोड़ा बढ़ेंगे. All right, so कल हमने जहाँ से छोड़ा था वहाँ से हम continue कर रहे हैं. All right, so we have understood the objects, right? We have created objects, IP object बनाया था, IP list किया था. So we will use those objects very particularly today. वो यूज करते हैं आज. और मैक होस्ट क्रिएट किया था, FQDN, एंड कंट्री होस्ट जो डिफॉल्ट है. ओके, यू कैन वी हैव ए लुक देयर के वहाँ पे कौन कौन से डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट ऑलरेडी, कौन से वर्जन, जो 18 वर्जन होगा, हो गया फर्मवेयर के वर्जन है 17, 18 और 19. ये 3 वर्जन हैं यहाँ पे. तो तीनों वर्जन्स में अगर आप काम कर रहे हो तो और यू माइट बी योर सीनियर्स वुड बी वर्किंग, ऑलराइट, इन डिफरेंट वर्जन. तो डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे और हमारे कस्टम ऑब्जेक्ट्स होंगे. जो डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे वो फायरवॉल के साथ इनबिल्ट आते हैं, एंड सम आर कस्टम ऑब्जेक्ट्स जो आपने क्रिएट किए. ऑलराइट, वेदर फ्रॉम द इनलाइन यानी अगर आप फायरवॉल रूल क्रिएट कर रहे हो, वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी जो है नहीं. ओके, तो आपने वहाँ पे क्रिएट कर दिया, दैट इज इनलाइन. और आपने पहले से ही प्री प्लान करके ही आपका पूरा नेटवर्क है, तो आपने पहले से ऑब्जेक्ट सारे क्रिएट करके रखे हुए हैं, सिर्फ आपको यूज करना है. तो आपका ये कब काम आता है? ये आपका कॉन्फ़िगरेशन स्पीड अप करने में काम आएगा. यानी we don't have to create the object again and again. एक ही ऑब्जेक्ट को आप यूज कर सकते हो बहुत सारी जगह पे. ऑलराइट, लेट्स से जब हम आगे जाके IPsec और MPLS फेल ओवर करेंगे, ओके, हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस के बीच में. भरत सर, स्क्रीन फ्रीज है क्या? मींस yes it is fixed. Actually, I'm just discussing what are the objects जो हमने कल रिवीजन किया था. Yes, you have missed the class, so कल का जो एक क्लास है वो आप देख लेना, ठीक है? यस कल मैंने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए थे लैब पे, और उसको आज हम यूज करेंगे. श्योर सर. Okay, so yes, about the default objects we have created. Coming back to the country objects, जो default थे वो कहाँ से होंगे? पैटर्न अपडेट में से होंगे, राइट? जो पैटर्न अपडेट था हमारा. Okay, we'll see that on everything on the lab. So today next is profile.
जो प्रोफाइल्स होगी, जैसे ऑब्जेक्ट्स है वैसे प्रोफाइल है और पॉलिसीज है, राइट। सो डिफॉल्ट पॉलिसीज, डिफॉल्ट प्रोफाइल, डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट्स, वैसे कस्टम प्रोफाइल, कस्टम ऑब्जेक्ट्स एंड कस्टम पॉलिसीज, ये सब इससे ही हमें प्ले करना है, मीन्स इससे ही हम खेलेंगे। ऑलराइट, वी विल प्ले, वी विल बिल्ड, वी विल डिस्ट्रॉय, वी विल प्ले, वी विल क्रिएट, वी विल डिस्ट्रॉय। जितना ये प्रैक्टिस हम करेंगे इतना ही हमें फायरवॉल के बारे में पता चलेगा कि वो कैसे काम करेगा। ओके, हेलो सो यस सर, रितेश बोल रहा हूँ। यस रितेश। सर एक्चुअली कल मैं अपना ये क्लास अटेंड प्रॉपर कर नहीं पाया था क्योंकि मेरा एक मीटिंग था। तो मैंने ज्वाइन तो कर लिया था लेकिन प्रॉपर मैं क्लास अटेंड कर नहीं पाया था। तो सर इसका वीडियो मुझे मिल सकता है तो मैं देख के कंटिन्यू कर सकूँ उसको? आई थिंक आपको मिल जाना चाहिए, बट अगर नहीं मिला है तो मैं सर से बात करता हूँ, अभिषेक सर आपको प्रोवाइड कर देंगे। ऑलराइट, ओके सर, ओके कल सर। का कल का तो आपको वीडियो एक बार देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने लैब प्रैक्टिस थोड़ा करवाया है, वही हम आज भी कंटिन्यू करेंगे। एक बार मैं आपको अभी दिखा देता हूँ थोड़ी देर में। ओके सर, राइट, थैंक यू। and yes, of course I will inform my team to share you all the videos first. Okay, so जैसे ऑब्जेक्ट्स थे वैसे हमारे प्रोफाइल्स है यहाँ पे। तो कौन कौन सी प्रोफाइल्स है? सो वी हैव स्केड्यूल, स्केड्यूल कर सकते हैं, यानी वी कैन स्केड्यूल द टाइम। ओके, कौन से टाइम पे, लेट्स से स्केड्यूल कैसे होगा? स्केड्यूल यानी कौन से टाइम पे कब आप एक चीज एक्सेस कर सकते हो। लेट्स से आपको यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम ऑफिस वालों को अलाउड करना है, ठीक है, ब्लॉक्ड है आपके ऑफिस में, ये सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स ब्लॉक्ड है। ऑलराइट, एंड यू वांट टू अलाउ इट फॉर पर्टिकुलर टाइम, लेट्स से लंच आवर में ही अलाउड करना है, और वो भी हम कर सकते हैं लेट्स से पर्टिकुलर यूजर को ही देना है, लेट्स से इतना फुल हम कर सकते हैं। लेट्स से कोई पर्टिकुलर यूजर है, सो एट दैट टाइम यू विल create schedule policies. So schedule policy क्या होगा? Define a period of time, और इसको हम वन टाइम यूज कर सकते हैं। रिकरिंग क्या होता है, यानी बार बार अगर हर रोज यूज करना है, कौन कौन से दिन यूज करना है। रिकरिंग वन ऑफ क्या है वो हम पॉलिसी में देखेंगे अभी। ऑलराइट, सो रिकरिंग और ऑफ, दैट मीन्स अगर ये आए यहाँ पे कोई भी यहाँ पे, दैट मीन्स यू कैन यूज दैट schedule again and again. ऑलराइट, लेट्स से पूरा वीक में ब्रेक टाइम में 1 to 2 लंच आवर्स में सोशल मीडिया अलाउड होना चाहिए। ऑलराइट, सिमिलरली उसी जो स्केड्यूल का एक्सेस टाइम हम डिनाई कर सकते हैं या फिर अलाउ कर सकते हैं, तो उस पे एक्शन ले सकते हैं। वो स्केड्यूल पे क्या करना है कि अलाउ करना है या फिर डिनाई करना है। लेट्स से सोशल यूट्यूब ब्लॉक नहीं है, अलाउड है, सब कुछ अलाउड है, बट आपको डिनाई करना है, यानी इस ये टाइम से ये टाइम पे आपको ब्लॉक करना है। ऑलराइट, दैट वुड बी योर एक्सेस टाइम प्रोफाइल। तो स्केड्यूल और एक्सेस दोनों मिलके काम करेगा। ओके, बाकी तो सारी पॉलिसी एक साथ काम करती है, बट दिस वे यू कैन यूज दिस प्रोफाइल्स इंडिविजुअली एज वेल। सर स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा है सर। केतन, जस्ट गिव मी अ मिनट। या केतन, पे खाली गार्टनर का ही दिख रहा है कुछ, वो आपने फ्रीज करके रखा है क्या फिर? यस इट इज फ्रीज। यू कैन सी हाँ हाँ, स्केड्यूल, स्केड्यूल देख सकते हो? नहीं दिख रहा है ना। Okay, oh, I'm so sorry. Yes, yeah, let me share the screen. Okay. Okay. So प्रोफाइल के बारे में बताया मैंने। प्रोफाइल, सो प्रोफाइल में कौन कौन से पॉलिसीज होंगी जो मैंने आपको, जैसे डिफॉल्ट होती है, राइट, डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट्स थे फायरवॉल पे, सिमिलरली डिफॉल्ट प्रोफाइल्स भी होगी। तो कौन कौन सी प्रोफाइल्स होगी यहाँ पे? एक तो होगी स्केड्यूल, द फर्स्ट वन। आई होप एवरीवन कैन सी द स्क्रीन, राइट, स्केड्यूल। सो स्केड्यूल, या सो स्केड्यूल वो क्या होगा, यानी एक आप टाइम डिफाइन करोगे कि अभी जैसे मैंने एग्जांपल बताया, राइट, यूट्यूब आपको लंच आवर में अलाउड करना है, ऑलराइट, और उसके बाद ब्लॉक करना है। सो यू कैन यूज स्केड्यूल पॉलिसी एंड एक्सेस टाइम पॉलिसी। सो दीज आर द टू पॉलिसीज वी विल यूज। तो थर्ड इज सर्फिंग कोटा। सर्फिंग कोटा क्या होगा, यानी एक यूजर के ऊपर आप सर्फिंग कोटा अप्लाई करोगे। एक कोटा, एक ब्राउजिंग टाइम, एक टाइम लिमिट सेट करोगे कि यही टाइम पे वो इंटरनेट सर्फ कर पाएगा। ओके, फुल इंटरनेट एक्सेस यही टाइम पे एक्सेस कर पाएगा फॉर एग्जांपल। सो दिस पॉलिसी ऑल्सो आप रिकरिंग और वन ऑफ, यानी आप उसको बार बार
यूज कर सकते हो. Alright, just give me a minute. Okay. I'm just keeping you on mute. Okay, you can raise your hand or you can just stop me in between. I will. अगर कोई डाउट है तो ओके इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो बता देना, नो वरीज. बट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो शायद लैब पे और सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. देन वी हैव नेटवर्क कोटा. तो आप नेटवर्क बैंडविड्थ भी डाल सकते हो. सो बैंडविड्थ यानी 1 Mbps 2 Mbps, राइट. अपलोड डाउनलोड स्पीड कंबाइन करके भी हम डाल सकते हैं. सो वी कैन restrict the user with the help of traffic quota. Okay, तो traffic quota वर्ड है यानी हमारा स्पीड होगा, इंटरनेट स्पीड. ओके. दूसरा है हमारा डिक्रिप्शन. सो हम करेंगे, वी विल सी द डिफॉल्ट सेटिंग्स. सो हम ज्यादातर तो डिफॉल्ट सेटिंग्स यानी कुछ जो फायरवॉल पे आते हैं वो डिफॉल्ट सेटिंग्स मैं आपको बताता हूँ. विल सी व्हाट आर द कौन कौन सी डिफॉल्ट सेटिंग्स है, उसी को यूज करना है या फिर हमें कोई अपनी कस्टम पॉलिसी क्रिएट करना है डिस्क्रिप्शन के लिए. ओके, सो वी विल यूज अबाउट SSL TLS डिस्क्रिप्शन. ये क्या करेगा, हमारा फायरवॉल उसको डिक्रिप्ट करेगा. Okay, sorry for that. And then we have device access, a role for administrator. जो roles होंगे, let's say you have L1 engineer, you have L2 engineers, okay, और आपको access देना है. कौन सी rights देनी, we will do with the help of access device. So profiles, what are profiles? So they are the collections of settings that can be defined and used when configuring protection features. So these profiles used for a schedule which defines a period either recurring or one off. Reoccurring यानी उसको हम बार बार ऑटोमेटिक यूज होगा, जो हम लैब पे देखेंगे. अगर वन टाइम यूज करना है तो वन टाइम यूज करेंगे. सो हम तो लैब पे दोनों टेस्ट करेंगे. ओके, वन टाइम भी चेक करके देखेंगे वेदर इट इज वर्किंग और नॉट, whether reoccurring is working or not for schedule, access time, surfing quota, network quota, okay, description and so on. So जितनी भी profiles है 6 सारी use करेंगे. Access time that defines to allow or deny the action for the schedule. तो जो हमने schedule बनाया है, ठीक है, उसका access time होगा, वो define करेगा क्या आपने action लिया उसके ऊपर, उसको allow करना है या फिर deny करना है. And we have surfing quota. सर्फिंग कोटा भी रिकरिंग होगा, उसको हम बोल सकते हैं ब्राउजिंग, यानी ब्राउजिंग टाइम डिफाइन कर रहे हैं उसको, ठीक है. देन वी हैव नेटवर्क ट्रैफिक कोटा फॉर अपलोड एंड डाउनलोड बैंडविड्थ कोटा रिस्ट्रिक्शन. तो आप बैंडविड्थ दे सकते हो, कंप्लीटली अपलोड डाउनलोड और इंडिविजुअली अपलोड डाउनलोड स्पीड दे सकते हो. लेट्स से आपने 2 Mbps दिया अपलोड और डाउनलोड के लिए, यानी 1 Mbps अपलोड के लिए और 1 Mbps डाउनलोड के लिए, अलग अलग वो बैलेंस कर लेगा. ऑलराइट. और आप इंडिविजुअल भी दे सकते हो कि 2 Mbps अपलोड के लिए, 2 Mbps डाउनलोड के लिए, वो भी दे सकते. सो विल सी दैट इन एक्शन. Okay. Description for controlling the description TLS. So TLS traffic, okay, जो आपका ब्राउजर का ट्रैफिक है. Okay, so don't worry if you don't have deep knowledge about TLS, but everyone knows what is TLS. TLS क्या होता है, अपना जो ब्राउजर पे, let's say we are accessing Google, okay, on HTTPS. That is a secure connection that works on TLS. So you might be 1.2, you might be on 1.2 or 1.3 version. Okay, so 1.1, 1.2, 1.3. These are the version of TLS. Okay. कैसे चेक करेंगे? You can click you can press F12 on Chrome browser, open Google and just press F12, press करना है, and you will know on which encryption protocol your communication is working, so you can know. All right, and we will discuss about that in detail, how Sophos handle the TLS traffic. Okay. Next is the device access. Device का access हमें कैसे define करना है? So we will define the roles. Roles define करेंगे L1, L2, L3 engineers के लिए, so that they can log into the GUI of the firewall, web admin of the firewall. Now interface and routing. All right, interface and routing कैसे करेंगे हम? Sophos firewall पे. So we have, you can see the diagram first. हमारे पास Sophos firewall है, LAN 1 है, LAN 2 है. ओके, यहाँ पे एक नेटवर्क है, यहाँ पे भी एक नेटवर्क है, यहाँ पे भी एक नेटवर्क है.
करेक्ट, यहाँ पे सर्वर्स है, यहाँ पे यूजर्स है, यहाँ पे some other users, other departments may, let's say, and it is connected to your internet. All right, so these are called zones. LAN zone, LAN 1, LAN 2, DMZ zone. DMZ zone भी एक टाइप का ही जोन ही, ओके, LAN जोन ही है, लेट्स से, ओके, ज्यादा कंफ्यूज इसमें नहीं रहना है. It's a one type of network, okay, but it is a particular defined zone, that is DMZ zone, demilitarized zone. So इसमें भी कम्युनिकेशन होता है, जैसे लैन पे कर रहे हैं वैसे ही होता है, बट इसमें हम स्पेशल फायरवॉल रूल्स डिफाइन करेंगे कि कौन सी सर्विसेज लैन 2 यूजर्स, लैन 1 यूजर, लैन डीएमजी यूजर्स का सर्वर में क्या एक्सेस कर सकते हैं. लेट्स से HTTPS और SSH जो होता है, कौन से यूजर एक्सेस कर सकते हैं, तो वो रूल से डिफाइन करना है, उसी को एक्सेस होगा. पूरा भी एक्सेस दे सकते हैं, जैसे ये दो कम्युनिकेट कर रहे हैं वैसे इन दोनों को भी कम्युनिकेट करा सकते हैं. So, इसमें sir, Bharat sir, this is the interzone, interzone routing. In this, we need to do. जैसे लैन 1 लैन 2 में राउटिंग करते हैं, वैसे ही आप कर सकते हो इसमें सेम कम्युनिकेशन. मींस यहाँ पे हमको पॉलिसी अलाउ करना पड़ेगा जोन टू जोन, आई थिंक, एज पर द पालो अल्टो फायरवॉल, आई थिंक. यस करेक्ट. सो जोन वी आर टॉकिंग अबाउट जोन ओनली. तो पालो अल्टो भी जोन बेस्ड फायरवॉल है, ओके, वो भी जोन बेस्ड होता है, ये भी सोफोस में भी जोन है. सो यहाँ पे देयर कौन, आर 3 रिक्वायरमेंट: राउटिंग, नेटिंग एंड पॉलिसी, आई थिंक. यस, वी आर कमिंग टू दैट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. यस, श्योर. सो यहाँ पे जोन्स है. अभी यहाँ पे डायग्राम में कितने जोन्स दिख रहे हैं? सिर्फ हमें 3 जोन्स दिख रहे हैं. दैट इज लैन जोन 1, ओके, लैन जोन 2. दिस इज लैन जोन बट it is divided into sub part 1 and 2. This is LAN zone. Then we have DMZ zone and WAN zone. Okay, 3 जोन है. ये इंटरनेट के लिए जनरली अगर सिस्को कॉन्फ़िगर किया तो अनट्रस्ट बोलते हैं. Palo Alto we also say untrust, we can say, or WAN zone. And here these are trusted zone. So trust, untrust, that's it. And this is also trusted zone, or we can give another name as DMZ zone, जहाँ पे हमें पर्टिकुलर सर्वर्स रखे हैं लोड बैलेंसिंग के लिए, फॉर एग्जांपल. ऑलराइट, सो दिस इज द जोन. जो हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरफेस एंड राउटिंग. व्हाट आर जोन्स? ओके, हाउ वी कैन क्रिएट आवर ओन जोन. So Sophos Firewall is also a zone-based firewall. It is important to understand what are zones is before we proceed to what are interface and before we go with the interface and routing. So when we talk about zones on Sophos Firewall, we have logical grouping of the network. Okay, so networks, so let's say zone, those who are not getting, भूल जाओ ये जोन है, बट जो भी डिफरेंट, ये जितने भी जोन्स होंगे, ओके, उसमें डिफरेंट नेटवर्क ही रन हो रहा होगा. और आप जब भी नेटवर्क कॉन्फ़िगर करते हो, नया इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ़िगर करते हो, आप लैब प्रैक्टिस करते हो, तो हमेशा अलग अलग IP एड्रेसेस और इवन आपका नेटवर्क भी यूनिक होना चाहिए. और अगर सोफोस में भी ऐसा है तो आपको यूनिक IP है, आप डुप्लीकेट IP यूज नहीं कर सकते. लेट्स से, ओके, लेट्स से आपका इंटरनेट का कनेक्शन आ रहा है यहाँ पे एंड यू कॉन्फ़िगर सेम IP. दूसरा एक नेटवर्क आ रहा है, आप उसने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो सेम नेटवर्क नहीं कॉन्फ़िगर कर सकते. यू कैन नॉट कॉन्फ़िगर द सेम नेटवर्क इन एनी ऑफ द, आई थिंक, राउटर. कोई भी कहीं पे भी वो इशू करेगा. सो द जोन्स आर डिफरेंट नेटवर्क्स. जो भी जोन्स को आप कंसिडर कर सकते हैं, अलग अलग नेटवर्क है. दैट इज द लॉजिकली डिवाइडेड. सो यू कैन गिव जोन लैन 1 लैन 2 है, तो वो जोन तो लैन ही है. ऑलराइट, DMZ भी कर सकते थे, DMZ 1 2, और उसको हम DMZ जोन पे डाल सकते हैं. Similarly, same. Okay, so is a logical group of the network where traffic originate or destined to each interface is associated with single zone, which means that the traffic can be managed between zones rather by interface or network, simplifying the configuration. यानी आपको यू डोंट हैव टू, आपको ऐसा नहीं देखना है कि पोर्ट 1 से पोर्ट 2 जाना है, या फिर मुझे पोर्ट 3 से पोर्ट 4 जाना है, या फिर मुझे ये वाला नेटवर्क से, ओके, 192.168.1.0 से मुझे 196.1.2.0 जाना है. नो, व्हाट यू कैन डू, आप जोन टू जोन फायरवॉल जो रूल्स कॉन्फ़िगर करते हैं वो करेंगे हम. यानी वो जोन ही सिलेक्ट करना है, ऑटोमेटिकली उस जोन से रिलेटेड आपको ट्रैफिक
ingress or out हो जाएगा. All right, so we'll see that. So you have to select the zone instead of interfaces or जो इंटरफेस होते हैं फाइल पे, ठीक है, वो आपको इंटरफेस सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं. यू हैव टू सिलेक्ट द जोन्स. ऑलराइट. So yes, the interface and the zone are not equivalent. Those are not equivalent, but yes, multiple interface can be associated with that zone. तो आप एक मल्टीपल इंटरफेस होते हैं, राइट, अलग अलग नेटवर्क है आपके पास. अलग अलग इंटरफेस यानी अलग अलग नेटवर्क हुआ आपका, राइट. पर अलग अलग जो भी नेट इंटरफेसेस है आप उसमें जोन असाइन कर सकते हैं. वो क्या है, एन है या फिर डीएमजी है या फिर वैन जोन है, एमपीएलएस जोन है, वाईफाई जोन है या फिर कोई प्रिंटर का जोन है, सो ऑन. इस जोन के ऊपर भी आगे हम आते हैं, उस पर क्या करेंगे आगे, कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, वो सारी एप्लीकेशन एप्लीकेबल रहेगा सब इंटरफेस पे. सो फाइवर पे जोन्स. ओके, कहाँ पे यू हैव टू क्लिक ऑन कॉन्फ़िगर नेटवर्क और जोन्स होंगे यहाँ पे. ओके, सो दिस वुड बी द लाइक डिफॉल्ट जोन है यहाँ पे, लैन, वैन, डीएमजी, वीपीएन एंड वाईफाई. यू कैन एडिट दिस जोन. एडिट में क्या कर पाएंगे, जो डिवाइस का एक्सेस की राइट्स होगी वो आप एडिट कर पाएंगे. रेस्ट विल बी रिमेन एज इट इज. आप उसमें ये डिलीट नहीं कर पाओगे. ओके, दिस आर द डिफॉल्ट जोन ऑन द फायरवॉल, यू कैन नॉट डिलीट इट. ओके, तो आई थिंक रेस्ट ऑफ द फाइल में जोन क्रिएट करना पड़ता है इफ यू वांट टू डिफाइन सम जोन, बट इन सोफोस बाय डिफॉल्ट जोन क्रिएट हुए आते हैं. और जब भी आप बूट करते हो फायरवॉल तो ऑटोमेटिकली इंटरनेट मिल जाता है. यू डोंट हैव टू क्रिएट दी firewall rule and the net rule which is required. Okay, जो net rule होता है firewall rule चाहिए होता है, उसके बिना तो इंटरनेट नहीं चलेगा. ओके, उसको हमें सोर्स डेस्टिनेशन डिफाइन करना पड़ेगा, तब जाके वो इंटरनेट पे पहुंचेगा. बट जब आप फायरवॉल डिप्लॉय करते हो तो ऑटोमेटिक रूल्स क्रिएट हो जाते हैं. थोड़ा सा ऑटोमेशन है यहाँ पे, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द complex configuration with the if I have also have experience with some of the firewall, तो आपको इतना कॉम्प्लेक्स जाने की जरूरत नहीं. ये सिंपली यहाँ पे ऑटोमेटेड भी है तो ऑटोमेटिक भी हो जाएगा. प्लस अगर नहीं होता है तो हम ये सपोज पैकेट फ्लो देखेंगे, ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है और कहाँ से लाना है और कहाँ पे बेचना है. ओके, तो उस हिसाब से हम फायरवॉल रूल्स यहाँ पे उसको फाइन ट्यून करेंगे एंड देन वी विल मेक इट वर्क्स. सो अबाउट जोन्स, जो भी जोन के मेंबर होंगे यानी लैन पे, तो जितने पोर्ट, जो पोर्ट्स पोर्ट 1 3 फॉर एग्जांपल यहाँ पे, और XG2 लैन, ये कस्टम इंटरफेस है, उसका नाम दिया है. तो जो भी उसके मेंबर होंगे, ओके, फॉर लैन, वो आपको यहाँ पे देखेंगे. यू कैन सी इट फ्रॉम हियर. यू कैन गो टू कॉन्फ़िगर नेटवर्क एंड जोन्स. और जैसे कि फायरवॉल्स पे जो मॉडल नंबर होता है, ठीक है, मॉडल नंबर यानी हार्डवेयर होता है या फिर सॉफ्टवेयर होता है, उस पे पोर्ट्स होते हैं. ओके, पोर्ट्स लेट्स से किसी में 4 पोर्ट्स होंगे, किसी में 8, किसी में 12 24. ओके, सो ऑन. सो कौन से पोर्ट यूज में है और कौन सा पोर्ट कौन से जोन पे है वो आपको यहाँ पे मिलेगा. ऑलराइट, सो यू विल गेट दैट डिटेल्स. दिस इज वेरी हेल्पफुल टू सी कि वेदर आपने वो पोर्ट को उस जोन पे डाला है कि नहीं. जैसे कि कोई नया आईएसपी है, राइट, तो नया आईएसपी उसमें यहाँ पे अटैच हो गया, वो मेंबर बन चुका है, देन यू कैन वेरीफाई इट फ्रॉम हियर. ओके, डिफॉल्ट में आ जाएगा, बट यस, इसको हम डिलीट और चेंज नहीं कर सकते. ओके, बाय डिफॉल्ट ही है. फिर उसके बाद टाइप आएगा वैन, लेट्स से, और आपने क्या क्या अलाउड करके रखा हुआ है वो यहाँ पे दिखेगा. लेट्स से पिंग अलाउड करके रखा हुआ है, HTTPS सर्विस ऑन करके रखी हुई है, SSL VPN एंड यूजर पोर्टल एनेबल कर रखा हुआ है. सो यू विल सी फ्रॉम हियर ऑल्सो, यू विल सी फ्रॉम द डिवाइस एक्सेस जो मैंने बताया था, राइट, उस पर भी बताएगा. दोनों जगह पे वेरीफाई करना है, दोनों जगह पे वेरीफाई कर सकते हो, सो दैट यू नो हाउ इट वर्क्स. सिमिलरली डीएमजी जोन पे आप देख सकते हो कौन से जो टिक मार्क किया होगा वो आपको दिखेगा. ओके, सो यहाँ पे सब सारी सर्विसेज अलाउड है, लैन पे ट्रस्टेड है उसलिए. वैन पे जनरली सम आर नॉट नीडेड, बट इट्स फाइन इन दिस, जो ये स्नैपशॉट में इट्स फाइन, डोंट हैव टू वरी. नाउ यहाँ पे वीपीएन है. सो वीपीएन आप एक जोन क्रिएट नहीं कर सकते, वीपीएन जोन. ओके, सो सारे जोन्स क्रिएट कर सकते हो, लैन जोन, वैन जोन, डीवीएन, वाईफाई जोन, प्रिंटर जोन. और यहाँ पे एक वीपीएन डिफॉल्ट एक है, यहाँ पे आप ऐड करोगे तो कोई वीपीएन जोन ऐड नहीं कर पाओगे. ओके, टाइप जो है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक है वो सबके लिए रहेगा.
अगर आप IPsec VPN कॉन्फ़िगर कर रहे हो, ठीक है, जो हम करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आ जाएगी, जैसे कि ये राउट बेस के लिए, ठीक है। सो दैट इज द रीजन आपको XFRM मिलेगा, ओके, कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे। सो एक्स, और यहाँ पे कौन सी सर्विस अलाउड है, SNMP, और पिंग भी कर सकते हैं, वो विल सी दैट विल गिव द राइट्स, okay, and so on. So these are zone, and you will see the description, how you can manage, how you can add, how you can delete the custom zone, अगर आपने कुछ बनाया तो delete कर सकते हैं, and so on. Okay, so Sophos Firewall comes with the five default zone. So Sophos Firewall में 5 default zone तो होंगे, कौन कौन से? LAN, WAN, DMZ, VPN. So LAN is the most secured zone by default, and it is your internal network, यानी trusted वाला. ओके, ट्रस्टेड एंड ट्रस्टेड, जिसने राउटर कॉन्फ़िगर किया है, देन यू, आपको रिकॉल हो गया होगा। ओके, WAN zone is also used for external interface, जनरली आपका ISP और मे बी योर MPLS लिंक, ओके, दैट आपका MPLS लिंक हो सकता है, आपका ISPs हो सकते हैं, दैट वुड बी योर अंडर WAN zone। ओके, यहाँ से हमारा SD-WAN आएगा, that is provided for internet access or accessing your remote branch offices and so on. Then you have DMZ zone. This zone is hosted publicly accessible server. तो हो सकता है अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक अलग से सेगमेंटेशन किया हुआ है, ओके, तो DMZ एक सेगमेंटेशन का ही पार्ट है। सेगमेंट करना यानी आपका नेटवर्क डिवाइड कर रहे हो अलग अलग स्मॉल सब नेटवर्क में। तो एक हमारा जब DMZ जोन आता है तो जनरली पब्लिकली एक्सेसिबल सर्वर, यानी हम उसको बाहर भी उसको पब्लिश कर रहे हैं, यानी इंटरनेट पे एक्सेस होता है। लोकली तो एक्सेस होगा सर्वर, वेबसाइट लोकली एक्सेस होगा लैन में, बट हमको बाहर से एक्सेस करना है, DMZ से भी कर सकते हैं, लैन से भी कर सकते हैं, ओके, अगर कस्टम जोन है तो वहां से भी कर सकते हैं, कर तो सब कॉन्फ़िगरेशन तो पॉसिबल है, उसको प्रोटेक्ट करना भी पॉसिबल है, बट येस ऑफ कोर्स सेगमेंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रेदर देन जब एक ही जगह पे हम नहीं डालेंगे, सब अलग अलग नेटवर्क पे अलग अलग जोन्स पे डालो, ऑलराइट, जैसे कि सर्वर का अलग से जोन, यूजर का यूजर 1 यूजर ग्रुप 1 के लिए अलग, यूजर 2 ग्रुप के लिए अलग, वाईफाई यूजर्स के लिए अलग, ऑलराइट, एंड सो ऑन, प्रिंटर्स के लिए अलग, ऐसे नेटवर्क को सेग्रीगेट कर दो तो इजी रहेगा मैनेज करना, और अगर कोई अटैक भी होता है एक जोन में तो दूसरे जोन को वो इफेक्ट नहीं करेगा। सो दैट इज द रीजन वी हैव जोन्स हियर, ओके, और भी आगे फीचर्स हैं, सो कैसे प्रोटेक्ट करेगा वी विल सी दैट, क्योंकि ऐसा नहीं कि जोन उसको प्रोटेक्ट करेगा, राइट, अगर और भी एडिशनल सिक्योरिटीज नहीं होगी तो you might have the chances of attack. Next is VPN zone. This is the only zone that do not have a physical port. कोई physical port नहीं है उसका, but उसका virtual port है. Okay, so interface assigned to it. When a VPN is established, either to site or remote access, the connection is dynamically added to the zone and removed when disconnected. तो जब आप साइट टू साइट या फिर साइट टू साइट कनेक्शन करते हो तो ऑटोमेटिकली उस जो VPN उसके अंदर वो मेंबर बन जाएगा। अगर वो मेंबर को हम निकाल देंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ वो मेंबर से हट जाएगा, बट जोन वहाँ पे रहेगा। ओके, यू कैन नॉट डिलीट दैट VPN जोन दैट इज देयर। ओके, सो इट इज नॉट अ फिजिकल जोन, इट इज अ लॉजिकल जोन। Now next is the Wi-Fi zone, or एक zone है Wi-Fi zone. This zone is providing security for wireless network except for the VPN zone. So yes, of course, you cannot make any security on the VPN zone. It is already secure. The default zone can be customized. Zones are managed under and created under configure network and so on. So आपको सारी पैरामीटर्स कहाँ पे नेविगेशन से यू शुड नो वेयर टू ऐड व्हाट, लेट्स से कहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐड करना है, कहाँ पे जोन ऐड करना है, कहाँ पे नेटवर्क ऐड करना है, कहाँ पे राउटिंग अपडेट करना है, और कहाँ पे फॉरवर्ड रूल्स अपडेट करना है, वेफ कहाँ देखना है, पैकेट फ्लो कहाँ पे देखना है हमें, और लोग व्यूअर कैसे देखेंगे, राइट, यस ऑफ कोर्स अभी आएगा, बट ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। नाउ जब हम जोन क्रिएट करते हैं, नया वाला जोन क्रिएट करते हैं, देन वंस यू क्लिक ऑन ऐड, जो ऐड वाला बटन है ना यहाँ पे, इफ यू क्लिक ऑन दिस ऐड, तो देखो कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं उसके बाद। ओके, डिफॉल्ट यूज करो तो इट्स फाइन, जोन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बट लेट्स से इंट्रानेट करके भी जोन होता है, तो ये क्रिएट इंट्रानेट इंटरनल पर्पस के लिए, इंटरनल एक्सेस के लिए, तो यू कैन क्रिएट योर जोन। लेट्स से इंट्रानेट, एक एग्जांपल इंट्रानेट
डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, टाइप सिलेक्ट करो कि वो कौन से टाइप का है, डीएमजी जोन है या लैन जोन है, ये भी जस्ट अंडरस्टैंड दी जोन। उसको डीएमजी रखो तो डीएमजी जोन पे रहेगा, यानी अगर रूल होगा तो आपका बनेगा डीएमजी टू वैन, इंटरनेट की तरफ जाना है तो डीएमजी टू वैन, वैन टू डीएमजी, लैन करो तो लैन। ऑलराइट, देन मेंबर तो अभी यहाँ पे नन दिखेगा। वंस यू अप्लाई इंटरनेट ऑन द इंटरफेस, जिस इंटरफेस पे आपका इंटरनेट होगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिक फिर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा ऑटोमेटिक। फिर कौन कौन सी सर्विसेज देनी है, यहाँ पे एडमिन सर्विसेज है, यानी फायरवॉल का जो एडमिन HTTPS पे चलता है उसको देना एक्सेस, SSH देना है तो आप टिक मार्क कर सकते हैं, यू कैन लीव इट इफ यू डोंट वांट। अगर आपको ऑथेंटिकेशन करवाना है, ठीक है, कैप्टिव पोर्टल से या फिर विंडोज के वहाँ के अगर पीसी है, अगर वहाँ पे ऑथेंटिकेशन करवाना है, सेंड योर टिक मार्क, अदरवाइज ऐसा ये यू डोंट टिक मार्क दिस, इट्स फाइन। बट नेटवर्क सर्विसेज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर ए नेटवर्क इंजीनियर, यू कैन टिक मार्क ऑन पिंग, ओके, क्योंकि अगर पिंग टिक नहीं होगा तो टेस्ट करोगे तो ये फायरवॉल ड्रॉप कर देगा इंट्रानेट के लिए। सो दिस मस्ट बी मस्ट, आई थिंक, यस। नेक्स्ट इज अदर सर्विसेज। जो अदर सर्विसेज आपको अगर अलाउड करनी है, अदर सर्विस है यूजर पोर्टल, जो सोफोस का यूजर पोर्टल क्या है, यहाँ पे जो रिमोट जो रिमोट यूजर्स होते हैं, राइट, उसको कनेक्ट करना है या VPN से कनेक्ट करना है, यू कैन, यस गौरव, गो अहेड। सर एक चीज पूछना था मुझे, जैसे पिंग 1 मिनट। और पिंग 6, दिस इज द IPv4, IPv6 है क्या? Yes, it is for both Okay, IPv4, and in IPv6. yes, intranet zone is the like same zone we need to packet flow from the one destination to other destination. This Intra zone, that means this would be for source and destination both. yes, for the same zone. Yes, for the same zone. Okay, and we need to enable also the like ping and SSH, all the things on the any port of the Sophos firewall. Management is it's already enable all the ports like HTTPS, SSH, all the ports. Yeah, But but that manually is, I need to just enable on the different port for the you have to enable those services which are actually required. If you, let's say, if you enable HTTPS, तो कोई भी फायरवॉल का जियो एक्सेस लेके फिर उसमें अटैक करके पासवर्ड क्रैक कर सकता है, राइट? ओके ओके तो क्या हाँ कर हाँ तो उसको डिसेबल रखो, ओके। एज ए नेटवर्क इंजीनियर आई कैन से, लेट्स से, पिंग, ओके, नेटवर्क सर्विस, कैन यू सी नेटवर्क सर्विसेज हियर? तो मैंने पिंग एनेबल किया, दैट मीन्स मुझे अगर कोई कनेक्टिविटी टेस्ट करना है तो मैं इसको एनेबल करूंगा, अदरवाइज आई डोंट रिक्वायर पिंग ऑल्सो। सर थोड़ा सा वेब प्रॉक्सी का एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, व्हाट इज वेब प्रॉक्सी? आई डोंट नो एक्चुअली। या इट विल कम, जो कोर्स के साथ हम करते हैं। अगर लेट से कोई, अगर आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक भी होगा, गौरव, अगर वो कोर्स में इंक्लूड नहीं हो रहा है, ओके, आपने जो भी डाउट पूछा, तो फिर आगे जाके हम उसको कोर्स से बाहर से हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक ऑलराइट, ठीक सर, सो ओके एक फ्लो में जाते हैं पहले, उसके बाद या हम, या श्योर सर, क्योंकि आप जो पूछ रहे हो वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है? ओके ओके अंडरस्टूड। ओके, वेब प्रॉक्सी भी आएगा, यस ऑफ कोर्स वी विल यूज वेब प्रॉक्सी। अच्छा, इसके बारे में बता रहा हूँ, ये अलग से मैं आप इसमें आता हूँ, ओके। अदर सर्विसेज आई विल कम टू ईच एंड एवरी पॉइंट वी विल डिस्कस हियर, बट एज ऑफ नाउ जोन, जो हम, आपने पालो अल्टो पे काम किया, राइट? सो पालो अल्टो यस में भी श्योर, जोन, पालो अल्टो पे भी जोन क्रिएट किया, राइट? उसमें भी अपने यस सर्विस यस एनेबल किए हैं, करेक्ट? yes, there वेब are two प्रॉक्सीज, default यस zone ऑफ in कोर्स, that. One एग्जैक्टली, is the अलाउ uh, दो सर्विस, yes, हमें there are प्रॉक्सी। yes, there are two zone in that Palo Alto: 1 intranet, मिनट, internet. गौरव, Yes, hello hello। यस गौरव, टेल। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ डिफॉल्ट जोन क्रिएट रहता है ऑलरेडी पालो अल्टो में, इंट्रा जोन और इंटरनेट जोन। पालो अल्टो में क्रिएटेड, आई थिंक क्रिएटेड है, राइट? उसमें यस यस, डिफॉल्ट में सर, वी कैन नॉट चेंज, वी कैन नॉट मॉडिफाई। एक अलाउ रहता है, एक ब्लॉक रहता है, या सही है? देखो, यस यस हाँ, फायरवॉल्स में जैसे मैं अभी सोफोस में आपको बताऊं कि थोड़े से ऑब्जेक्ट्स जो होंगे, जोन्स होंगे, पॉलिसीज होंगी, प्रोफाइल्स होंगी, तो सारी फायरवॉल्स में डिफॉल्ट भी होती है और उसके बाद हम कस्टम क्रिएट करते हैं। तो डिफॉल्ट तो यस यस होती है, करेक्ट। जोन्स भी 2-3 कौन होंगे उसमें डिफॉल्ट, तो हम वही देख रहे हैं कि सोफोस में डिफॉल्ट कौन कौन से है। तो यहाँ पे भी 5 है, राइट? 5-6 जोन्स हमारे पास।
Okay, ये understood. सपोज दूसरी फायरवॉल्स में भी होंगे, डिफॉल्ट पॉलिसीज, डिफॉल्ट कस्टम रूल्स भी होंगे, ओके रूल्स भी होते हैं डिफॉल्ट। सो वही देख रहे हैं हम, पहले हम डिफॉल्ट ही सब देख रहे हैं, सो वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन डायरेक्टली यूज, हमें सिर्फ डायरेक्टली यूज ही करना है, हमें कोई यहाँ पे क्रिएट नहीं करना पड़ेगा कोई पर्टिकुलर जोन। बट अगर हमें इन केस क्रिएट करना है, ऑफ कोर्स एज पर द रिक्वायरमेंट, तो हम कैसे करेंगे, कौन कौन सी सर्विसेज एनेबल करेंगे इस जोन पे, ऑलराइट। या फिर हम आगे जाके भी एनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसी समय उसको करना है। Okay, sir, understood. यस यस कहते हैं। सर जो सब इंटरफेस बनते हैं ये भी बना सकते हैं उसके अंदर, जैसे अभी मेरे पास छोटा सा सोफोस फायरवॉल है, आई हैव ओनली 4 पोर्ट and I have number of VLANs in my network. Okay, I want to make inter VLAN routing on a firewall itself. कर सकते हैं ये ऑफ कोर्स। लेट्स से आपने एक जो लैन जोन है, ठीक है, वो तो लैन जोन ही रहेगा। बराबर है। अगर आपने 4 वीलैन बनाई है, ठीक है, एक होगा आपका लैन, एक होगा आपका इंट्रा लैन, एक होगा आपका डीएमजी जोन, एक होगा आपका लेट्स से प्रिंटर जोन, ओके वाईफाई जोन भी है, तो ये सारे जोन्स आप वहां पे लगा सकते हो। यस, और और मैं सबके इंटरफेस लिए पे आईपी भी दे सकता हूँ मैं। यस ऑफ कोर्स यस दे सकते हैं। Okay, हम that's- उसको वो प्रैक्टिकल, आई नो आपने ये डाउट मुझे भी पहले भी पूछा, हम पूछा था। प्रैक्टिकल्स करेंगे, प्रैक्टिकल पे भी आप जो बोलेंगे वैसे ही कॉन्फ़िगर करते जाएंगे, जैसा ठीक है सिनेरियो। सर। ओके सर, Alright, थैंक we यू will सर। see that, don't worry. But yes, of course, यही जोन आपको वहां पे अप्लाई करना है, you can apply these zones. So let's go to the next one. So these are the authentication service. So you can enable it if you, अगर आपको authenticate कराना है यूजर को for user and password के बाद ही उसको access मिलेगा, alright. We will see in action everything. जो भी हम पढ़ रहे हैं हम उसका practical तो एक भी नहीं, ऐसा नहीं कि सब practicals में ही देखेंगे mainly. So let's look how you can create your own zones. When you create custom zones, you can choose between 2 type of zone, LAN zone and DMZ zone, which is used to indicate the level of trust of the zone. All right, तो type of जितना हम enable disable करेंगे, that means the level of trust उस zone के ऊपर है हमारा, right? Like अगर हमने HTTPS enable कर दिया, ठीक है, तो कोई भी firewall access कर सकता है उस gateway IP से, right? अगर उसमें DHCP चल रहा है and user knows that this is the gateway IP, तो HTTPS लगा के access करेगा, firewall access आ जाएगा, right? So we will not tick mark for the security reasons. We will not enable any admin settings in particular zone, ठीक है, और admin zone अलग से बनाएंगे, let's say admin zone के लिए allowed है, okay, and some other zone it is not allowed. So this way you can define zone. This is only to understand zone. Yes, of course, इनको पता है ये update होगा again, and those who don't know, now you know about what is zone and how they are used in day-to-day life. Okay, allowed और ब्लॉक करने के लिए, बट इसके लिए हम डिफरेंट ACL भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेट्स से एक पर्टिकुलर इंट्राजोन में एक पीसी है जो एडमिन को यूज करना है, ओके, और उसको फायरवॉल का एक्सेस वहां से देना है इसी इंट्राजोन की आईपी से जो नेटवर्क पे है, तो हम क्या करेंगे, ACL क्रिएट करेंगे, ऑलराइट। टिक मार्क नहीं करेंगे, नहीं तो सबके लिए ग्लोबल, ये ग्लोबल सेटिंग्स होगा, तो ग्लोबल ये अलाउड हो जाएगा, तो हम ACL क्रिएट करेंगे फायरवॉल पे, यानी पर्टिकुलर एडमिन का यूजर के सिस्टम के आईपी से ही उसको फायरवॉल का एक्सेस मिलेगा, बाकी कहीं से भी उसको एक्सेस नहीं मिलेगा, नॉट फ्रॉम द लैन जोन, नॉट फ्रॉम द वैन जोन, नो, एज पर द डेफिनेशन, एज पर द रूल, जो रूल हमने डिफाइन किया होगा उसी पीसी को ही फायरवॉल का GUI एक्सेस मिलेगा, CLI एक्सेस मिलेगा, या फिर सिर्फ पिंग देना है तो पिंग देंगे उस L1 L2 इंजीनियर को कि तुम सिर्फ पिंग चेक कर सकते हो, तुम सिर्फ आप GUI एक्सेस करके ये रीड राइट परमिशन एंड सो ऑन, so that can become under zones. So you can create your additional VPN or okay, so as I said, no additional VPN or WAN zone you can create, तो WAN और VPN, okay, so Sophos की जब एग्जाम दोगे तो ये क्वेश्चन आएगा कौन से जोन क्रिएट नहीं कर सकते, so VPN and also WAN zone you cannot create it, so that is not possible. ट्राई करके देखना, अगर क्रिएट कर सकते हो then maybe they have the update on the सॉफ्टवेयर, ओके, सोफोस सॉफ्टवेयर में हो सकता है कि VPN तो नहीं होगा, बट लेट्स से WAN ट्राई करो, मेरे को भी चेक करना पड़ेगा, आई डोंट बिलीव दैट यू कैन क्रिएट दिस 2 जोन्स, बट LAN DMZ जोन अलग अलग क्रिएट कर सकते हो, वाईफाई जोन एंड सो ऑन. So you can customize those zones to define which services of Sophos Firewall provides and which is accessible. This is broken down into 4 categories.
तो जो सर्विसेज है, एडमिन सर्विसेज फॉर एक्सेसिंग मैनेजिंग द सोफोस फायरवॉल, ऑथेंटिकेशन सर्विस है फॉर यूजर ऑथेंटिकेशन, and network services for ping and DNS request, and other services which can control like web proxy, wireless access point, and user portal and forth. Okay, so web proxy, wireless access point, and user portal, okay, upcoming modules mein aayega. Okay, so don't worry. So let's go with the flow first. So I will clear all your doubts, even though the course is finished. If I left something, or if I miss out something, we will come back to that point. Just note it down and I will come back to it. All right. मे बी हो सकता है कि कभी कभी आपको और भी क्लियर वे से भी बोलना पड़ेगा, शायद मेरे वे से if I understood misunderstood something, or may I required if I required more information, all right, to understand your scenario. So हो सकता है we will see and fix and we will work together to achieve the best network as much as I can. Okay, so next is configuring interface. Interface कैसे configure करेंगे Sophos Firewall पे? तो कहाँ पे जाना है हमें? You have to go to configure network and interface. Configure पे क्लिक करना है, network पे and interface. वहाँ पे सारे interface पहले आपको दिख जाएंगे firewall पे कितने हैं हमारे पास. Okay, तो lab पे तो by default 4 होंगे. Okay, उसको हम scale कर सकते हैं, यानी उसको बढ़ा सकते हैं like 8 or 18 maybe. Okay, you can use as many as you want. You can use for अगर आपको SD-WAN बहुत practice करना है तो ज़्यादा ports चाहिए होंगे, right? So you can edit on the lab and you can create your own topology, test it. Okay, but यहाँ पे जब मैं already 3 ISP और 2 MPLS से करूँगा तो आप और ऐड अपने सही कर सकते हो and you can see the traffic flow. So interface कैसे configure करेंगे? Interface configure करना यानी एक different network configure करना, all right? So जो different networks configure करना है हमें, all right? So name देना है, let's say you can give the name. Okay, interface पे आके add नहीं करना है, यहाँ पे already interface होगा, वहाँ पे click करो and you will get this interface. अभी lab पे आता है. So you can see the name देना है तो name दे दो, नहीं देना है तो it's okay. By default port 7 लिखा होगा let's say यहाँ पे. Okay, then network zone. तो हार्डवेयर होगा, हार्डवेयर यानी जो पोर्ट होगा, और नाम भी बाय डिफॉल्ट पोर्ट वही होगा, पोर्ट 7. और इफ यू वांट टू एडिट, आप अपना खुद का भी इंटरफेस का नाम दे सकते हैं यहाँ पे, फ्रेंडली नेम जो आप याद रख सकते हो, राइट? देन वी हैव हार्डवेयर, उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, बट ये जोन होगा वो उसको हम चेंज कर सकते हैं. तो इंटरनेट है, लैन है, डीएमजी है, जो भी आपको असाइन करना है जोन, वो जोन असाइन कर दो. ये काम आएगा जब आप रूल कॉन्फ़िगर करोगे, फायरवॉल रूल्स कॉन्फ़िगर करोगे ना, जहाँ पे जैसे इंटरनेट देना है, तो कैसे इंटरनेट होगा? इंट्रा से वैन, या फिर आपको लैन है, या फिर डीएमजी पे एक सर्वर है तो उसको कम्युनिकेट कराना है और आपको सिर्फ पिंग सर्विस देना है, तो क्या रूल कौन सा होगा? इंट्रा टू डीएमजी और इंट्रा टू लैन. और सर्विस में क्या अलाउड करेंगे? जो सर्विस आपको अलाउड करनी है, जैसे कि पिंग फॉर एग्जांपल. ओके, नाउ आईपी असाइनमेंट स्टैटिक देना है. पीओई तो नहीं दे सकते क्योंकि पीओई इंटरनेट जनरली इंटरनेट के लिए होता है, सो इट्स ओके, यू डोंट गेट कंफ्यूज. डीएससीपी पे देना है डीएससीपी, बट स्टैटिक देना है हमेशा. ओके, इंटरफेस पे अगर आपको डीएससीपी से आईपी मिल रहा है, ऑलराइट, तो स्टैटिक दे दो. पीओई लाइन है तो यहाँ पे पीओई लाइन तो होगा नहीं हमारे पास लैब पे. पीपीओई नहीं होगा हमारे पास. पीपीओई जनरली आईएसपी प्रोवाइड करेगा, और इफ यू वांट टू कनेक्ट इंटरनेट थ्रू पीपीओई कनेक्शन, ऑलराइट, सो फायरवॉल सपोर्ट पीपीओई कनेक्शन. वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन द वैन जोन. सो ये तो लैन ही है, जैसे डीएमजी है, लैन है, वैसे इंटरनेट है, सब सेम ही है, तीनों आप सेम, बट नेटवर्क अलग होंगे. वहाँ पे जो नेटवर्क्स होंगे हमारे वो डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे. दैट इज द रीजन मैं आपको बोल रहा हूँ जोन्स, एंड जोन आपका ये होगा. सो यू कैन असाइन दी नेटवर्क. सो ये नेटवर्क हो गया, उसका पहला आईपी दे दिए यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 55.1/25. यू कैन ऑल्सो यूज IPv6 अगर IPv6 आपको आता है और आपको कॉन्फ़िगर करना है व्हील्स. ओके, तो कोर्स पे IPv4 पे थ्रू आउट होगा. लास्ट में हम IPv6 कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है, देन वी विल एनेबल इट, विल कॉन्फ़िगर इट, विल टेस्ट इट. ऑलराइट, सो दिस इज द गेटवे. तो ये होगा गेटवे आईपी. जितने भी इंटरफेस पे 7, ये जो 7 इंटरफेस, उसके बाद एक लेट से एक स्विच रखा है आपने, स्विच कनेक्ट करा है, स्विच के पीछे बहुत सारे आपके पीसी है, तो गेटवे क्या होगा? 55.1, राइट,
और इसके ऊपर आप DHCP रन करना है तो DHCP रन कर सकते हो, स्विच पे करना है तो स्विच कर सकते हो, रिले कर सकते हो स्विच से DHCP की रिक्वेस्ट अगर कहीं पे जाने देना है। सो आगे DNS और DHCP भी है, लेट्स सी। Before that, what we have discussed till now. So now you know how to create zones. We look at the configuration of interface. By default, interface are named after hardware device ID. Okay, device ID के होगा, ये जनरली ट्रबल शूट में काम आएगा। As of now it's fine, मैंने already बता दिया, right? hardware ID. However, you can कुछ इशू नहीं आएगा, you don't have to इसमें कुछ डीप में जाने की इसमें जरूरत नहीं, it's fine. ये जनरली अगर कोई पोर्ट फेल होगा तो भी हम आगे जाके वैसे भी लॉग्स कलेक्ट करेंगे, कैसे हम देखेंगे कि हार्डवेयर पोर्ट्स पे कोई इशू है, हार्डवेयर फेल हुआ है कि नहीं। विल सी अगर हार्डवेयर में पोर्ट अगर काम नहीं कर रहा है देन वी विल गेट द रिप्लेसमेंट, राइट। अगर वो पोर्ट नहीं चल रहा है तो फिर हम केस रेज करेंगे फॉर द RMA, नया रिक्वेस्ट होगा, एंड अगर लाइसेंस है तो नया डिवाइस मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर में तो इशू नहीं आएगा, इट्स फाइन, विल सी दैट। सो बाय डिफॉल्ट देयर नेम, बाय डिफॉल्ट नेम कौन सा होगा, हार्डवेयर आईडी होगा। So however, you can give the friendly name if you want to give for easier identifying it. Easier to begin the configuration with network settings, you must assign the interface to a zone. तो जो भी इंटरफेस आप कॉन्फ़िगर करो, नेटवर्क कॉन्फ़िगर करो, उसको जोन दे दो, कोई भी जोन हो दे दो। आई थिंक वैन दोगे तो फिर उसका इंटरफेस चेंज हो जाएगा। ओके, लैन वैन में अलग रहेगा। सी व्हाट डिफरेंस यू सी विद द सोफोस फायरवॉल। So it will determine what IP configuration can be set as only interface in the WAN zone are configured with the gateway. Okay, तो अगर आपने WAN सिलेक्ट किया, ठीक है, WAN असाइन कर रहे हो, यहाँ पे कैसे इंट्रा सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे LAN भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने WAN सिलेक्ट किया तो आपको यहाँ पे गेटवे डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आपने स्टैटिक किया तो ये ग्रे आउट हो जाएगा, यू डोंट हैव टू मेंशन द गेटवे IP। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी एक LAN जोन है। ओके, वैन जोन होगा तो उसको तो गेटवे तो देना पड़ेगा, कौन उसका अपस्ट्रीम डिवाइस है, तो ये एनेबल हो जाएगा। एंड यू हैव टू गिव द नेम ऑफ दैट गेटवे एंड यू हैव टू गिव द IP एड्रेस ऑफ द गेटवे। ओके, सो माइट बी ये 2 है तो ये हो सकता है ऊपर का जो राउटर है 1 इन केस ऑफ वैन। ओके, जो हमारे केस में है ऑलरेडी, हमने तो कॉन्फ़िगर किया हुआ है, अभी देखते हैं। सो यू विल कॉन्फ़िगर इंटरफेस इन IPv4 पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जनरली ऑलमोस्ट ऑल द नेटवर्क्स आर इन IPv4 और IPv6 भी सपोर्ट करेगा, और दोनों एक साथ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, इधर स्टैटिकली और यू कैन डिफाइन DHCP। बट बेटर है कि हमेशा स्टैटिक पे ही कॉन्फ़िगर करो। आप जब भी वैन लैब पे भी आपको जो IP एड्रेस है वो पहले कहाँ पे मिलता है, DHCP से मिलता है। तो जैसे DHCP से IP असाइन हो जाए उसके बाद उसको स्टैटिक कर दो। ओके, यानी उसके बाद जो पहले क्या होगा कि इंटरफेस पे यहाँ पे आपका DHCP होगा, उसको IP मिल गया, देन क्लिक ऑन स्टैटिक। ओके, तो स्टैटिक हो जाएगा, जस्ट सेव इट, दैट्स इट, तो ऑटोमेटिक वो IP सेट हो जाएगा, तो आपको लैब पे इशू नहीं रहेगा। ऑलराइट, स्टैटिक है तो उसको ये सपोज लैब पे हम देखेंगे कौन कौन से उसको ट्रिक्स हैं फिक्स करने के लिए। ऑलराइट, जो रियल लाइफ से इशू नहीं होगा, कोई रिलेवेंट नहीं है उससे। ये ऑफकोर्स लास्ट है। IPv4 configuration also support to configure via PPOE connection. So PPOE connection ISP provide करता है for internet connection. All right, so we don't have to worry about that router, or you can just go through the technology how PPOE works. That is fine. ज़्यादातर तो सोफोस में इश्यू नहीं आता जब तक यूजर नेम एंड पासवर्ड गलत ना हो। ठीक है, तो अगर यूजर नेम इंसर्ट पासवर्ड गलत है, अगर PPOE कनेक्शन यानी एक इंटरनेट, हमारे पास 2 इंटरनेट कनेक्शन था, एक एयरटेल से लिया और एक हमने लिया रिलायंस से। फॉर एग्जांपल रिलायंस ने दिया हमने PPOE कनेक्शन, उन्होंने एक अलग से पावर ओवर ईथरनेट दिया, राइट। तो उसमें क्या होता है, यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा हमें। सो PPOE कनेक्शन मेंशन भी होता है फ्रॉम द ISP, ये आप उसको डायरेक्ट सोफोस पे कनेक्ट कर सकते हो, और PPOE सिलेक्ट करना है इंटरफेस पे जब आप फैन जोन सिलेक्ट करते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ यूजर नेम पास, इसमें कोई इशू नहीं आता, जनरली पासवर्ड ही गलत होता है ज्यादातर, तो ये काम करेगा ही आपका। ओके, और स्टैटिक है तो अगर स्टैटिक IP ISP से प्रोवाइड किया तो इजी, आपको सिर्फ IP देना है जो ISP ने प्रोवाइड किया है, ISP आपको देता है। You have to just put the IP, the gateway IP and the name and the subnet. कौन सा सबनेट है, सबनेट IP and this.
गेट। अभी कितने टाइप के इंटरफेस है हमारे पास सोफोस में, कौन से इंटरफेस होंगे या फिर क्रिएट होंगे? ओके लेट्स से अभी वी विल गो विद दिस ऑल द इंटरफेस, सारे इंटरफेस यू कैन सी। ओके कलर कोड से भी हम उसको वी कैन रिकॉग्नाइज, हम उसको पहचान सकते हैं एक एक। ये सारे लॉजिकल होंगे यहाँ पे इंटरफेस, राइट, नॉट फिजिकल। यानी फिजिकल और लॉजिकल इंटरफेस देखेंगे, कौन कौन से फिजिकल इंटरफेसेस हैं और कौन कौन से लॉजिकल इंटरफेस है। इंटरफेस यानी पोर्ट, जो फायरवॉल में पोर्ट होता है, ओके सिंपल। बट एक फिजिकल पोर्ट होगा, बट लॉजिकल नहीं देख पाएंगे हम। लॉजिकल देखना है तो क्या करेंगे, जीओ पे लॉगिन करके देख लेने का, ये वाला। ओके सो ब्रिज, अगर हमने ब्रिज कॉन्फ़िगर किया यानी दो इंटरफेस को हमने मर्ज कर दिया, यानी पोर्ट ए है या फिर पोर्ट 1 2 है, ठीक है, उस दोनों को मर्ज कर दिया, दोनों को स्पीड बढ़ाने के लिए या फिर रिडंडेंसी लाने के लिए, तो उसको हमने ब्रिज किया। तो ब्रिज का इंटरफेस का जो सिंबल होगा, ओके, वो it will look like purple, green, okay, greenish. So तो we allow सर ब्रिज yes यानी Hitesh, वन टाइप ऑफ द ईथर चैनल ना? yes you can say ether channel, or you can say lag also, both. ओके ओके ओके। yes we will वो भी हम कॉन्फ़िगर करेंगे, हम एक फायरवॉल के साथ है ना ब्रिज करेंगे एंड एक स्विच लेंगे, स्विच पे दोनों कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ऑलराइट। एंड वी एक लिंक ऐसे हम निकाल देते हैं एंड विल सी दैट कि हमारा ट्रैफिक ड्रॉप होता है कि नहीं। जनरली नहीं होगा क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन हमारा प्रॉपर होगा। अगर नहीं होगा तो फिर हम उसको फिक्स करेंगे। लैब पे तो वर्चुअल है, तो वर्चुअल में ऐसा हो सकता है कि वो थोड़ा मिसबिहेव करे, तो कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे कि एकदम प्रॉपर ही होगी, बट शायद हो सकता है मिसबिहेव करे, तो उसको कैसे फिक्स करेंगे वो भी देखेंगे, राइट। यस इट्स पोर्ट इथरनेट चैनल, और एक है एलएस लैग भी है, जो एलएससीपी प्रोटोकॉल है वो भी सपोर्ट करता है। ये रहा, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। सो ब्रिज like a port channel, so allows two or more interface to use to create transparent layer 2 or layer 3 layer 2 or layer 3 bridge interface for seamless communication between the interface। तो हम ब्रिज करेंगे दो, मीन सोफोस फायर का दो पोर्ट लेंगे, ओके लेट्स से डीएमजी है, डीएमजी जोन है, वहां पे हम एक पोर्ट चैनल बनाएंगे, एक लैंड जोन पे भी पोर्ट चैनल बनाएंगे एंड देखेंगे हाउ इट वर्क्स विद द फायरवॉल। if anyone has any doubt or query, you can stop me in between, raise your hand if I am not unable to hear you। Sorry guys, if I am missing, अगर कोई मुझे inform कर रहा है and I am not listening, just raise your hand also, I will get the notification, okay, and I will stop and I will come back to you on that। Okay everyone, okay, now ब्रिज किया हमने, ऑलराइट। नाउ व्हाट इज एलियास? तो एलियास आईपी भी होगा, एन एडिशनल आईपी एड्रेस दैट कैन बी एडेड ऑन इंटरफेस। तो इसका सबसे ज्यादा बड़ा एग्जांपल क्या होगा, लेट्स से आपने आईएसपी से स्टैटिक आईपी लिया, ठीक है, 5 6 आईपी लिए या फिर उससे भी ज्यादा आईपी लिए, नो वरीज, बट लेट्स से 5 आईपी है, तो वो 5 आईपी कहाँ पे कॉन्फ़िगर करोगे, लाइक तो एज ए एलियास कॉन्फ़िगर करोगे, ओके। आपके पास फायरवॉल पे 4 पोर्ट्स ही, ठीक है, एक लैंड जोन है, एक वैन जोन है, एक डीएमजी जोन, एक वाईफाई जोन है, सारे सारे पोर्ट ऑक्यूपाइड है, राइट। और आपने लिया है आईएसपी से 5 6 आईपी परचेज किया हुआ है, ऑलराइट, एंड नाउ यू वांट टू कॉन्फ़िगर दैट ऑल 5 आईपीज ऑन दैट इंटरफेस। तो कैसे करेंगे, एलियास आईपीज से करेंगे, ऑलराइट। इजी है, क्लिक करना ऐड एंड यू कैन ऐड दैट आईपी, विल सी, बट we have to understand the terms, okay, हम ये जो terms है, we will understand what is alias, bridge, VLAN, lag and thread, okay, इंटरफेस, लॉजिकल इंटरफेस क्या है अभी हम कॉन्फ़िगर भी करेंगे, सो ज्यादा आइडिया आएगा। नाउ एलियास पता चल गया कि जैसे कि अगर आपको वो नेटवर्क है, ओके, नॉट ओनली आईएसपी, अगर इंट्रानेट भी है, अगर उसके नीचे और एक आईपी आपको कॉन्फ़िगर करना है नेटिंग के लिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो आप उसको वहाँ पे एज ए गेटवे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, एक एडिशनल आईपी भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ओके, बट सेम नेटवर्क नहीं कॉन्फ़िगर कर सकते दूसरे इंटरफेस पे, वो सेम इंटरफेस पे आप एलियास आईपी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज VLAN। सो VLAN इज, everyone know VLAN, तो सेम
राउटर पे VLAN कॉन्फ़िगर करते हैं, हमने प्रैक्टिस भी किया है कि राउटर ऑन अ स्टिक फॉर एग्जांपल, तो वैसे ही सोफोस में भी आप कर सकते हो अगेन। सो अगर आप सोफोस एज अ राउटर ऑन स्टिक यूज कर रहे हो, देन यू हैव टू डिफाइन दैट you can define VLAN on Sophos Firewall also, and you can do inter routing and tagging from Sophos Firewall. Sophos से ही आप inter routing और करेंगे। तो हम जो लैब होगा ना उसमें Sophos पे हम इंटर राउटिंग Sophos को मैनेज करने के लिए देंगे, और एक हम करेंगे L3 स्विच पे, ऑलराइट, कि L3 से स्विच की तरह विदाउट डूइंग VLAN ऑन दी Sophos Firewall। उसमें तो मैं सिर्फ या फिर आप राउट्स डाल दो, स्टैटिक राउट्स और डायनेमिक राउट्स डाल दो, तो ऑटोमेटिकली इट विल डू द कम्युनिकेशन बिटवीन योर नेटवर्क्स। या बट वी विल सी ऑल दिस इन एक्शन। हम राउट सोफोस पे करते तो हमें और आइडिया आएगा, फिर हम उसके बाद तो ऑलरेडी आपको कॉन्फ़िगर करना आ गया होगा, देन यू कैन प्ले विद द कॉन्फ़िगरेशन। आप जितना प्ले कर मीन्स इफ यू रन द, आप डिलीट करो, you create another scenario, again reconfigure it, do multiple times, तो आपको फिर बैठ ही जाएगा कि कैसे इसको करना है। okay, not only to configure but troubleshoot also later on. Now we have lag होगा again the group of interface acting as a single connections. Bridge भी same ही है and lag भी both are same, which provides you as a redundancy or to increase the speed between the two device। और ब्रिज में भी हमें पता है कि ब्रिज यानी हम एक एज अ स्विच यूज कर सकते हैं, यानी लेट से हमारे पास 10 पोर्ट है, ठीक है, उसमें से 5 पोर्ट हमने ब्रिज कर दिया, दैट मीन्स वो जो ब्रिज क्रिएट किया दैट इज अ स्विच एक्चुअली। ओके, एक टाइप का वो स्विच बन चुका है, वो भी फायरवॉल नहीं है, मीन्स दैट इज अ पार्ट ऑफ अ फायरवॉल बट इट इज एक्टिंग एज अ ब्रिज। तो आपने ब्रिज भी कॉन्फ़िगर किया है, ओके, आपने ऑलरेडी गेटवे तो कॉन्फ़िगर किया है, आपने 2-3 इंटरफेस उठा के ब्रिज कर दिया, 2 इंटरफेस लेके लैग कॉन्फ़िगर कर दिया, तो फायरवॉल कौन से मोड में जाएगा? दैट इज इन मिक्स मोड। ओके, दैट इज जाएगा नहीं बट आई कैन से इट इज कॉल्ड मिक्स मोड। ओके, तो हमने पढ़ा था गेटवे मोड, व्हाट इज गेटवे मोड, ओके, व्हाट इज ब्रिज मोड, व्हाट इज मिक्स मोड, ओके, और एक डिस्कवर मोड भी पढ़ा था जो पोर्ट मिररिंग के लिए था, राइट। तो जो हमारा ब्रिज था, राइट, गेटवे ब्रिज लेट से मिक्स मोड नहीं है, तो जनरली क्या होता है, जो हमारे राउटर्स होते हैं वो जनरली गेटवे मोड पे ही होते हैं, राइट, थर्ड लेयर 3 डिवाइसेस जो आपके राउटर्स हैं, फिर लेयर 3 भी आपका गेटवे मोड में होगा, देन यू हैव L2 द डिवाइसेस। सो यस, if you in the जो Sophos Firewall है उसमें अगर आपने इंटरफेस में दो इंटरफेस है जो लैग कर दिया है फिर ब्रिज भी कर दिया, तो गेटवे प्लस आपका ब्रिज मोड यानी मिक्स मोड, यानी सारी फंक्शनलिटी एक ही साथ चल रही है, गेटवे भी चल रहा है, ब्रिज भी चल रहा है, एंड यस टुगेदर इट इज कॉल्ड मिक्स मोड ऑन द फायरवॉल। सो लैग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या अगर आपका जो Sophos Firewall का लेट से 2 कनेक्शंस 2 पोर्ट आपने यूज किया, ठीक है, और एक स्विच से कनेक्ट किया जो सपोर्ट करता है लैग LSCP, देन यू कैन कॉन्फ़िगर लैग एज वेल। सो हम लैग कॉन्फ़िगर करेंगे, ब्रिज भी देखेंगे, ऑलराइट। नेक्स्ट इज रेड। तो रेड तो Sophos का ही है, ऑलराइट, सो इट इज प्रोप्राइटरी टाइप, यू कैन यूज टू कनेक्ट Sophos रिमोट इथरनेट बैक टू Sophos Firewall। जो Sophos का डिवाइस कल बताया था मैंने आपको, जो उसको जब हम कनेक्ट करते हैं तो एक रेड इंटरफेस क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, ओके, इंटरफेस जहाँ पे आपका इंटरनेट कनेक्शन है। सो उसका कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे, तो जैसे हम कॉन्फ़िगरेशन पे अप्लाई करते तो ये वाला जो इंटरफेस है वो क्रिएट हो जाता है, यानी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन हम क्रिएट करते हैं, अप्लाई करते हैं, सेव करते हैं, उसके बाद ये इंटरफेसेस आपके क्रिएट होंगे। ऑलराइट, सो we have gone through the interface, और 2 इंटरफेस है, ओके, सो yeah, that is tunnel interface, okay, so tunnel interface IPsec के लिए है, राइट, सो देयर आर टनल इंटरफेस। ये टनल इंटरफेस आपका राउट बेस्ड पॉलिसी पे होगा, सो मैं आपको आगे जाके जो 4th मॉड्यूल है उस पे आएगा कि वो IPsec VPN कैसे एस्टेब्लिश करना है बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस। ये यस कहते हैं से रेड जो आपने रेड बताया वो Sophos का स्विच रहेगा, और कौन सा प्रोटोकॉल पे चलता है ये? सॉरी केतन, कम अगेन। जो रेड स्विच आपने बताया मुझे, रेड स्विच जो है कनेक्ट दिस Sophos।
This और one. हाँ, और सोफोस की स्विच रहेगी या कोई सी भी स्विच चल सकती है? नहीं, ये जो रेड डिवाइस है ना, रिमोट एथरनेट डिवाइस, वो एक पर्टिकुलर एक आप बोल सकते हो कि छोटा सी फायरवॉल है, राइट? इट इज नॉट अ स्विच, आई थिंक. एम आई गेटिंग यू करेक्ट? आई डोंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन. दिस इज, Yeah, that's just correct. This is small firewall, not a yeah, switch. not as it, that is not a switch. Yes, that Because is he has a, mentioned the remote Ethernet devices. That's why I thought this is a yeah. switch. No, yeah, but this is not a switch. This is a device like firewall only. Okay, Okay. let's say you have a small office, you have one company, a very small company, and that company has a very small number of user in the remote location. Now how you will secure with the firewall? Sophos से कैसे secure करेंगे? तो आप क्या करो, remote Ethernet device आता है. You have to deploy that between the router, internet router, and the switch. जो आपके लेट से, ओके, ये सो छोटा सा एक टोपोलॉजी है कि वहाँ पे जो ब्रांच ऑफिस है, वहाँ पे लेट से 5 यूजर्स हैं, वहाँ पे एक सिंपल टीपी लिंक है, एंड देन टीपी लिंक से स्विच पे जा रहा है, नॉर्मल स्विच पे, और वो पीसी पे जा रहा है, 2-3 पीसी है वहाँ पे. पर उसको सिक्योर करना है, तो कैसे करेंगे? वी कैन नॉट डिप्लॉय अ बिग और स्मॉल फायरवॉल. Instead, we have a small, very small device called Sophos Ethernet device. You can deploy between, I mean, इंटरनेट का जो कनेक्शन है वो स्विच से निकल के और राउटर से निकल के आप डायरेक्ट रेड पे डालो, और राइट, और इसको मैनेज कर सकते. ये जो रेड डिवाइस होगा वो कॉन्फ़िगर होगा यहाँ से, Sophos Firewall Sir, automatically. हाँ. can you explain a diagram for this, because I did not understand that, sir. Okay, just give me, let me go to the browser. Let me show the browser. Okay, might we have the images? Okay, it will look like this way. This is a very small one. 1 minute. Okay, then just, yeah. It's okay, no problem. Okay, can you speak up? Yes, I saw this one, but how the connectivity will be there? This is my question. I'm sorry, Ketan, now you can speak up, please. Yeah, this is, I understand this is small devices that, but how the connectivity be, it will be connect to the head office to the branch. So Yeah. we want internet both the side, right? Yes, internet is required. We are securing that small network. Okay, so here is the diagram. Can you see? Okay. This is your head office. Okay, let's say you have 100 users here, you have 50 users here, but you have very 2-3 users here. Okay. Or it is not about 2-3 users. Let's say you have 10 users or multiple users as well, but you want to protect it. You want to यहाँ पे भी इंटरनेट तो होगा ही, इंटरनेट तो देना ही है, पर वहाँ पे कोई सिक्योरिटी डिवाइस नहीं है, और वी कैन नॉट डिप्लॉय दी सोफोस फायरवॉल देयर. तो क्या कर सकते हो? रेड डिवाइस है ये, तो ये आप वहाँ पे कॉन्फ़िगर करो, सारा ट्रैफिक यहाँ से हम सिक्योर करके भेज सकते हैं. बराबर. In between there is IP site to site tunnel, right? Yes, but it is called a red tunnel here. Red tunnel. Yeah, it is called side to side red tunnel. तो उसका कॉन्फ़िगरेशन भी इजी है. ओके, जस्ट यू टू इसको इंटरनेट से कनेक्ट करना है. ऑलराइट, लेट्स से यहाँ पे ऑलरेडी एक राउटर तो है जहाँ से इंटरनेट तो मिल ही रहा है सबको, बट हमको सिक्योर करना है, राइट? तो क्या करेंगे, इसको हम बीच में रखेंगे, मींस वी विल कनेक्ट दैट इंटरनेट कनेक्शन ऑन द रेड, एंड वहां से आगे जाएगा स्विच पे, स्विच से आपके पीसी पे जाएगा. Bharat sir, this cannot be work as a router as well. Sorry? This cannot be work as a router as well. This red device? Yes, yes. It will, yeah, we can bridge, and we can route, we can use as a gateway also. So that is called router. Yeah, we can use that. That is possible. We can use as a router as well. It's with like the a small firewall. Yeah, It's small. like a small firewall. Yes, yeah. Okay, okay, understood. And अगर मैं आपने मॉड्यूल्स तो देखे होंगे, उस पे एक डेडिकेटेड मॉड्यूल है रेड करके, जो मैंने आपको बताया था. उस पे एक आई थिंक दिस इज द 9th मॉड्यूल. We will study about a red configuration.
Okay, so if I go to Sophos, let me just show you that device again. So product and firewall. Okay, so you have to connect that internet connection here. Okay, Ketan. Yes, sir. And the traffic will pass from the tunnel then, not from the eyes. जहाँ पे वो इंटरनेट है वहां से ट्रैफिक जा रहा है, राइट? बट जब आप फावल जो यहाँ पर रेड डिप्लॉय करोगे तो ट्रैफिक जाएगा आपका टनल से जाएगा, सिक्योर होके जाएगा. Okay. Okay, sir. Okay, we will discuss we have dedicated module for this also, so we'll see this in much more detail. It will look like this. This is 60 for a load. You can connect two ISPs for load balancing. Means that you must have two ISPs and दो tunnels इस पे बनेगी. So one fails, then it will take it over. But I trade 20. I think that is not supported. Only one is supported. So that would be the difference. So we'll understand which model should we use as per the requirement or business needs actually, mainly. Now, Yes, yes, same device in Fortinet also they have it 40 FE201 with E with the 4G and 5G connectivity. Yes, like same box is saying that. Yeah. Okay, I yeah. got it, sir. I So, got it, sir. Bharat Yes, sir, we can also connect a wireless device to take access of wireless devices. Or not for the third party, only for Sophos AP. If you Only let me, for the Sophos will work the wireless as a wireless device in this. yes, but only the Sophos APs. You have to remember that very well, because mainly people misunderstood that the third party APs can be controlled by Sophos. Okay, Okay. तो जो एक बार वो भी देख लेते हैं अभी इसमें है, तो let me just show you that models. सर ये एक्सेस पॉइंट और जो कंट्रोलर जो है कौन सा प्रोटोकॉल पे चलता है? 1 minute, Ketan. Yeah. Okay. Hello. हाँ जी Yes, सर जी, yes. जैसे सिस्को जो है, सिस्को वायरलेस कंट्रोलर और वायरलेस एक्सेस पॉइंट, they are working with the CAP Ketan, protocol. just give me a moment. Okay. Okay, yeah, Ketan, speak up. से सिस्को के अंदर है सिस्को कंट्रोलर एंड एक्सेस पॉइंट, they are working with the CWAP CAP protocol, CWAP protocol, something like that. Okay. So in that one also, what types of protocol they are using this in the with this? Yeah, okay. So it depends on the model, Ketan. So we have to look into the model. You can see here. Can you see my screen? Yes, I can see your screen. Yes, yeah. Yeah, so you can look into the screen. I think it is supported here. You can use this. Okay, No, so I'm talking about protocol. This which protocol in between the controller, because this is for Sophos Firewall as a controller, wireless controller as well as wireless access point. In between, there is a secure protocol. Is that CWAP protocol or something like that, or different protocol? What types of protocol they are using? Okay, so I don't know about the particular protocol. They have the proprietary or not. Might be the standard one, Yep. but I'll come to that which exact protocol they are using. Generally, these APs are getting integrated with particular type of traffic through Sophos Firewall. We will see that how that APs are automatically getting detected on Sophos Firewall with help of the magic IP they supports. Of course, on the wireless controller, we have not mentioned about that particular protocol, but I will get back to you and confirm which exact protocol is working between this Sophos Firewall and the APs. Okay, sir. No issue, sir. Okay, so generally what happens as a administrator when you use this Sophos APs, okay, these are the models available. If you, I think you can scroll for the bigger one. Okay,
and small one, it depends on the type of organization, the type of users we are using, let's say. So whenever you purchase any of these APs, okay, whether it is AP 120 or to any one till 740, the firewall automatically detect the APs and configure rest of the things for you. So it's just you have to plug and play and we are good to go. This is the advantage of Sophos controller and Sophos AP. But yes, of course, let me just confirm that what exactly like Cisco, how Sophos they are getting detected, but generally they are getting detected on the particular traffic called magic IP called 1.2.3.4, and yeah, that would be all for APs. So let's go ahead. Sure, sir. Understood this point. Okay. So we will be the classes would be from 6 p.m. to 8 p.m. So we will be always ending the class for time being on 8 p.m. 8 taking, we'll have a lot of time. So let's discuss about two type of interface, and if time permits, then I think I believe that we have to start. I will not able to start the lab today because our time is up right now. Okay, so no worries. Let's continue this last two interface type, that is interface tunnel and the Wi-Fi tunnel. Okay, so this is the icon on the firewall. So when you, yeah, by default, this interface is there on the Sophos firewall. If you don't like, you can delete it if you are not using Sophos AP, but still you will find this icon. So if you want, you can, yes, of course, that is possible to delete, but once you click on delete, it will stay as it is. Okay, you require some special command from the advanced cell to delete these tunnels if you want. But mainly the tunnel what is tunnel interface for the IPsec? The tunnel interface are created using type of IPsec that allows for standard routing to use to send over VPN. So if you want to send any type of traffic, any type of traffic, then you have to use the tunnel interface. It will act like a GRE tunnel, the same as the GRE tunnel. It is a tunnel interface on the Sophos firewall. When you create when you're working with the Sophos firewall and when you are connecting head office and branch office, always go with the tunnel interface. All right. So in future, if you get any type of requirement changes, you don't have to worry about, or you don't have to down the tunnel. You don't have to take the downtime to move the particular traffic. Okay. So we will understand how we can move particular traffic, voice traffic or application traffic, service-based traffic for particular interface on the firewall. Alright, तो ऐसे हम define कर सकते हैं SD-WAN जब हम use करेंगे. हम default पहले जब lab पे कर रहे हैं तो static करेंगे, then we will go with the dynamic. उसके बाद SD-WAN से भी start कर सकते हैं, SD-WAN करो. But कभी ऐसा होता है कि sometime there might be the bug where the policies are not working properly. तो कैसे verify करेंगे? Again, we can do the static, right? अगर हमने dynamic और static था सबसे पहले तो क्या करते थे कि let's say dynamic static से test कर लिया, it is working. फिर हमने किया dynamic से dynamic routing BGP किया OSPF, उससे भी communication चल रहा है. बट एक टोपोलॉजी पे एक जगह पे हमने ऐसा किया सीधा हमने डायनामिक चलाया, नहीं चल रहा है, बट स्टैटिक कर रहे तो हो जा रहा है, राइट? सो दीज आर द स्टेप्स, राइट, फॉर टू फिक्स दैट, टू चेक वेदर वेयर इज द इश्यूज. सिमिलरली सोफोस में भी हम ऐसे करेंगे. SD-WAN जब आता है यहाँ पे टनल इंटरफेस पे, तो अगर इट्स वर्किंग इट्स गुड, इफ इट इज नॉट वर्किंग वी विल टेक द स्टेप्स टू ट्रबल शूट. ऑलराइट, जब आप लैब करेंगे आपके सामने ही लैब करूंगा, जो भी होगा ऐसा प्री कॉन्फ़िगर करके कुछ भी नहीं होगा कि मैं उसमें से दिखा रहा हूँ, वहाँ पे आपके सामने ही करूंगा. अगर नहीं चल रहा है देन वी विल सी हाउ वी कैन फिक्स दिस. कभी कभी ऐसा होता है कि चल जाता है, या कभी कभी ऐसा होता है नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा उसमें ही ज़्यादा हमें फोकस करना है कि कैसे हमें उसको अप एंड रनिंग करना है. So we have understood the type of interface. Additionally, you can create a wireless interface and IPsec interface. These are the two type of types that are created as a part of configuring your functionality of the Sophos firewall. So IPsec VPN and the wireless network use separate zone configurations
Tunnel interface can create use type of IPsec that allows standard routing which you can use to send over IPsec VPN. तो आप वहाँ पे स्टैटिक भी चला सकते हो, अगर आपको डायनेमिक राउटिंग चलाना है ओवर IPsec, ओके, BGP चलाना है ओवर IPsec, OSPF चलाना है, then you can use all the standard routing over the VPN also with the Wi-Fi. So Wi-Fi interface are created when Wi-Fi network are routed traffic back to the Sophos firewall with a separate zone. तो यहाँ पे भी एक जब हम AP कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसको सेपरेट जोन कर दो तो ऑलरेडी वो सेगमेंट हो गया, राइट, आपके गेस्ट यूजर के लिए फॉर एग्जांपल. बट आपको अगर आपके कोई एम्प्लॉइज के लिए अगर आ रहा है देन वी विल सी व्हाट आर द अदर ऑप्शन, लाइक हम उसको ब्रिज कर सकते हैं, जो आपका ब्रिज इंटरफेस है, तो वी विल ब्रिज दैट इंटरफेस विद आवर LAN इंटरफेस. ओके, वी विल सी दैट ऑप्शन. ओके, फायरवॉल पे सिर्फ ऑप्शन है, हमें सिलेक्ट करना है एंड वी आर गुड टू गो. सो वी हैव टू सिलेक्ट द इंटरफेस के हमें एक सेपरेट नेटवर्क ही क्रिएट करना है या फिर कोई लैन से ही जो DHCP है उसी से वो वाईफाई को मिलना चाहिए एंड सो ऑन. So these are the example that I am discussing. We will see in action also. All right, we will discuss about the WAN link manager. All right, so जितना ISP आपका connected होगा WAN zone पे, you will see this is the global one. Okay, यहाँ पे global settings है आपका, तो यहाँ पे वो applicable रहेगा. ये global setting applicable throughout. अगर आपने कोई special SD-WAN configure नहीं किया, let's say SD-WAN क्या होता है जनरली, लेट्स से आपका वॉइस ट्रैफिक EISP से जाना चाहिए, फिर ये यूजर का ट्रैफिक EISP से जाना चाहिए, फेसबुक का ट्रैफिक EISP से जाना चाहिए, और आपका जो इंट्रानेट का ट्रैफिक आपका जो पोर्टल होता है, राइट, सेल्सफोर्स एंड मे बी 365, वो EISP से जाना चाहिए. वो आप SD-WAN से कर सकते हो. अगर आपने वो डिफाइन नहीं किया है तो क्या होगा, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लोड बैलेंस हो जाएगा अगर एक्टिव है तो. ओके, अगर यू कैन सी द टाइप हियर, अगर एक्टिवेट किया तो ऑटोमेटिक वो लोड बैलेंस होगा. और एक चीज होता है जैसे कि यहाँ पे आपकी 10 Mbps की स्पीड है, यहाँ पे 30 Mbps की स्पीड है, तो जो आपके दो ISP है, तो मैंने क्या बोला 10 और 30, तो 40 Mbps नहीं हो जाएगा, ठीक है, वो वैसे काम नहीं करेगा. वो ट्रैफिक आपका सिर्फ लोड बैलेंस करेगा ट्रैफिक. यानी अगर आपने लेट्स से यहाँ पे 10 Mbps का स्पीड है, यहाँ पे 30 Mbps का स्पीड है, 10 वेट आपने यहाँ पे 10 दिया, यहाँ पे 30 दिया, यानी 30 पैकेट्स पहले यहाँ से जाएंगे. अगर ये एक्टिव है तो, ये तो बैकअप एग्जांपल है, एक्टिव है तो पहले 30 पैकेट्स ओके यहाँ से जाएंगे, दूसरे 10 पैकेट यहाँ से जाएंगे, 30 यहाँ से. ओके, इस हिसाब से लोड बैलेंस होगा ट्रैफिक. यानी बीच पे मीन्स आप लोड बैलेंस कर सकते हो, 10 Mbps और 30 Mbps मर्ज नहीं कर सकते आप स्पीड फायरवॉल पे. I don't think कोई भी फाइल पे मर्ज कर सकते हैं. If anyone has a good idea, you can share with us and you can just share your knowledge, all right, in case you know. But फाइल पे क्या होगा, अगर 20 Mbps है और 10 Mbps है, then we cannot merge that IP. Yes, Ketan. सर, पालो अल्टो के अंदर एक ECM फैसिलिटी है, इक्वल कॉस्ट मल्टीपाथ ECM. मे बी द गौरव नोज अबाउट दिस. उसके अंदर कोई सा भी स्पीड रहने दे तो दोनों जगह से इंटरनेट चलेगी. इक्वल कॉस्ट मल्टीपाथ. यानी आपके पास दो ISP है जैसे कि 10 Mbps और 10 Mbps, तो अगर मैं स्पीड टेस्ट करूँ तो मुझे 20 Mbps में मिलेगा, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है. दोनों एक्टिव रहेगी, लेकिन एक पैकेट ऐसा इंटरनेट एक ISP से भी जाएगा, दूसरी इंटरनेट से भी जाएगी. दोनों ISP से दोनों एक्टिव रहेगी, दोनों इंटरनेट चलेगा उससे. Yes, तो yes, this the firewall with the help of load balancing, and this is used with the path attribute of the firewall, Yes. and like in the routing there is a other things in the SD-WAN also there is a path attribute we need to use. So this will be load balance for the both ISP. ओके, तो आप जो बता रहे हो वो तो सोफोस में भी अवेलेबल है. हाँ, ऐसा है. अगर आप जो अभी जो सेम चीज बताए वो तो सोफोस में भी ऑटोमेटिक ये अगर आप एक्टिविटी रखा हुआ है, ठीक है, 10 Mbps है, तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा ट्रैफिक लोड बैलेंस. नहीं, 10 हो या कुछ भी हो, 10 हो 5 हो कुछ भी हो. वो तो मैंने सिर्फ यस वो मैंने एग्जांपल समझाने के लिए बोला कि लेट्स से यहाँ पे मैंने अगर 10 तो पैकेट्स में ऐसे राउट्स करवा सकता हूँ. अगर 1 रखा है, अगर 10 रखा है या फिर 30 रखा है, ओके, सो 30 पैकेट्स फ्रॉम दिस, 30 पैकेट्स फ्रॉम दिस, बोथ.
भरत सर, इसमें भी जैसे मैं चाहूँ कि एक लिंक से मेरा व्हाट्सएप का एप्लीकेशन चले, एक से फेसबुक का, तो ये हो सकता है मीन्स सोफोज में? कर सकते अच्छा हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो हम ठीक है आएंगे, सर। एसडी वैन कॉन्फ़िगर करेंगे ना, तो अच्छा सर वो सर। करेंगे उसमें। आप अब अभी जाके टेस्ट कर सकते हो, एसडी वैन राउटिंग में एसडी वैन क्लिक करो, वहां पे एप्लीकेशन करके होगा, सर, ठीक है। पॉलिसी बेस्ड राउटिंग में यूज होता है, सेंट्रलाइज लोकलाइज पॉलिसी आर यूज एंड एआर पॉलिसी इज आल्सो देयर, and there are different policy are in the SD-WAN, Cisco SD-WAN. ओके, तो सिमिलरली जो आपने वहां पे कॉन्फ़िगर के यहाँ पे ट्राई करना है आपको, और मुझे भी आप बता सकते हो कि सेम चीजें यहाँ पे भी अचीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, चल रहा है नहीं चल रहा है, तो आई कैन हेल्प यू आउट। Sure, sir. There are controller in this SD. We are using the controller for Sophos as well for the SD-WAN technology when we will use in the Sophos firewall. वी डू हैव कंट्रोलर दैट इज कॉल्ड सोफोस सेंट्रल, हाँ वहां से भी कर सकते हैं, बट वो पर्टिकुलर अलग से मैं वो कोर्स में आऊंगा, बट यहाँ से हम सोफोस से ही कंट्रोल करेंगे। Sure, sir. Sure. Okay. क्लाउड वाला हम डिस्कस करेंगे, बट दैट वुड बी आफ्टर 12th मॉड्यूल, ऑलराइट। Okay. Okay. Understood. वो कोर्स का पार्ट नहीं, बट डेफिनेटली हम वो देख लेंगे, क्योंकि शायद आप तो लाइव सिनेरियो में काम करते हो, तो मैं आपको अलग से उसको Yes. गाइड कर दूंगा। और ये सब कोर्स, ये एक्चुअली जैसे बताया केतन ने, अलग 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 लेवल के कोर्सेज होते हैं, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट लेवल, ओके, फर्स्ट Yeah. Yeah. लेवल, सेकंड Sure. लेवल। तो सेकंड लेवल का भी एक कोर्स में उसको बहुत डिटेल में मैं आपको बता दूंगा कि इसको आपको क्लाउड से भी कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं, इस इवेंट्स। Sure, sir. ओके, ऑलराइट। सो ट्रैफिक लोड बैलेंस कर सकते हैं, जैसे ये ऑफ कोर्स केतन ने शेयर किया, थैंक्स फॉर योर इंफॉर्मेशन। बट सिमिलरली जो भी फंक्शनैलिटीज, जो बेसिक फंक्शनैलिटीज अगर आपको दूसरे फायरवॉल में दिखता है, वो सोफोस फायरवॉल डेफिनेटली कर देगा। वेट के बारे में हम, sorry, I might get make someone confused, but let's say 1-1, then traffic will get load balance between these two ISPs, okay। अगर जो लोगों ने अभी तक फाइवल पे काम नहीं किया, उसको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर आपके पास दो आईएसपीज है, अलग अलग स्पीड है, ओके, 10 Mbps 10 Mbps, अगर आप स्पीड टेस्ट अप करते हैं, राइट, तब आपको 20 Mbps नहीं दिखेगा, ओके। ये आपको याद रखना है। कोई सी भी, आई थिंक कोई भी फाइल पे ऐसा नहीं होगा 20 टोटल दिखेगा, टोटल नहीं कर सकते इसको, यानी मर्ज नहीं कर सकते दो आईएसपी का स्पीड, दैट इज फॉर श्योर, ओके। वी कैन जस्ट लोड बैलेंस, वी कैन राउट, लाइक जैसे अभी बताया आईपी से, अगर मैं, मेरा व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ओके, तो मेरा वो 10 Mbps वाली आईएसपी से जाने दो ट्रैफिक, और जो मेरा जो ऑफिस का ट्रैफिक है, जैसे सेल्स फोर्स, जितनी भी क्लाउड एप्लीकेशंस होती है जिसपे ऑफिस, तो उसका अलग से डेडिकेटेड से भेज दो, ऑलराइट। सो इट विल नॉट फेस एन इशू। यस, यस केतन, एनीथिंग? No, sir. Thank you. ऑलराइट, सो व्हाट विल डू, आज के लिए हम इतना रखते हैं, एंड टुमारो कल लैब करेंगे, ऑलराइट। वट एवर वी हैव स्टडीड नाउ टिल हियर, वैन लिंक मैनेजर, ऑलराइट। फिर हम देखेंगे राउटिंग वाला, देखेंगे कैसे राउटिंग प्रेसिडेंस होता है, जैसे कि टॉप टू बॉटम चेक होता है, स्टैटिक राउट होता है, देन इट विल लुक फॉर राउट्स, देखेगा कि जब डेस्टिन होता है, जो कि डेस्टिनेशन जब हम जाते हैं, ओके, लेट्स से मुझे हेड ऑफिस जाना है, या फिर मुझे जाना है गूगल, ओके, या फिर मुझे ब्रांच ऑफिस जाना है, सो इट विल लुक इनटू द टेबल कौन सा मैच हो रहा है, Yes, जो, this is like, sir, hub to hub and hub to spoke, spoke to Spoke. spoke. यस। Sir, सो could you go on the profile tab so I can just take a screenshot and question with the Palo Alto, sir? विच वन? Profile you are like, yes, this one, profiles. I'm taking a screenshot. I need to check these features are available or not in the Palo Alto. Is available. नो, एवरी No, फायरवॉल I has, think there is something not available because bandwidth restriction is there, access time. I don't know actually. hello, Yes, Bharat sir. yeah, so yeah, please yes, you have, I will share this PPT to you, so don't worry. Yeah, yeah, sure, sir, sure, sure. So you don't have to take this snapshot. Instead, you can use the PPT. Let me share it right away so that everyone can has the PPT. Okay, I will share you for the first module as of now. All right, Yeah, yeah, and I sure, will sir. share all the notes one by one as we complete Sure, the sir, whole. sure. Hello. Sure, sir. Understood. Okay.
Let me just. Okay, so we have 4 minutes to go, but let me check if I have the access to the firewall. Okay, anyone has any doubt? Rahul, Ritesh. Okay. Okay, so no worries. We will see the default. जो हमने अभी बोले, I think demo.sophos.com. Let me access this if I can. Okay, so Gaurav, you can go to the firewall. Okay, Yes. demo वाला लिख लो, ये demo username password भी मैं send कर देता हूँ. Yeah, yes. So if you go to here it is, okay, profile. Profile. Okay, okay, understood. 1 minute. 1 minute, Gaurav, just give a minute. Sure. Yeah, speak up. Sure, sir. You can send Gaurav. me so I can access the same. I can understand the same. Yeah, I'm sharing this link. Okay, you click on the profile here. Okay. Okay, so these are the policies. अभी अब जो हमने पढ़ा है मैंने वही है, देखो यहाँ पे schedule, access time, surfing time, all right. तो आप ये डाल सकते हो. Sure, sir. Sure. तो आप ये डिफॉल्ट पॉलिसीज है जो आती है. यू कैन क्रिएट योर ओन. सो ट्राई दिस लिंक. और आप लैब पे भी ट्राई कर सकते हो. आप अगर सोफोस इंस्टॉल किए है लैपटॉप पे देन इट इज गुड. नहीं किया तो नो वरीज. में भी नेक्स्ट. Sir, how much device and like how much RAM and CPU core is needed for Sophos Firewall? 4 GB of RAM is required minimum. 4 GB, so it's a 8 GB of yes, you can, it's my yeah, and you can the install. core is the i3 and there are 4 logic virtual core and 2 is the hard drive core. Okay, so tomorrow what we'll do? Today हमने थियरी आज किया, राइट? तो हम करेंगे प्रैक्टिकल. Yes, ठीक है, sure, आज sir, हमने sure. थियरी किया, कल हम पूरा प्रैक्टिकल ही करेंगे. तो Sure, sir, sure. कल मैं ना सबको लैपटॉप पे एटलीस्ट इंस्टॉल कर देता हूँ. तो क्या है कि आपको एटलीस्ट सब जगह पे नेविगेट कर सकते हो, राइट? जो हम नेविगेशन सीख रहे हैं अभी. Sure, sir, sure. ओके, लिंक मैंने आपको भेजा हुआ है. मैं यूजर नेम है डेमो और पासवर्ड है डेमो xg @dmo0 यूजर. ठीक है, ये पासवर्ड है. ओके. Okay, sir. Okay, okay. Did you get the link and the username password? Yes, yes, sir. I got it. Okay, सबको मिल जाएगा. Okay, save this link. Sure, sir, sure. Okay, और मैं है ना और एक चीज शेयर कर देता हूँ आपको. Alright, so no worries, कल शेयर कर देता हूँ क्योंकि this session will. Okay, we'll start the session after 1 minute. All right, good evening, everyone. I hope everyone is doing good. Am I audible? Say yes on chat. Am I audible, guys? I believe yes. Okay, so let me share the screen.
Okay, I hope everyone can see my screen. We will continue with our module where we have left, and we will have a quick recap. थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जो आपने कल तक जो भी टॉपिक्स कवर किए. So if I let me just click. Okay, so हमने कल जो इंटरफेस प्रोफाइल्स, यस, प्रोफाइल्स डिस्कस की थी. What are profiles on Sophos Firewall, और हम उसका यूज कैसे कर सकते हैं, right? Profiles and the use of those profiles. Alright, so one of the profile is called schedule, जहाँ पे हम schedule apply करेंगे, schedule policy, जहाँ पे हमें एक फिक्स टाइम डिफाइन करना है, डे डिफाइन कर सकते हैं, मंथ एंड सो ऑन, एंड बेस्ड ऑन दैट प्रोफाइल schedule policy, वो जो schedule policy हमने बनाई उसके ऊपर हम एक्सेस टाइम पॉलिसी प्रोफाइल है वो हम डिफाइन करेंगे टू अलाउ और डिनाई एक्शन फॉर द schedule. तो जो schedule क्रिएट होगा वो you will see under access time policy. Then we have discussed about surfing quota. Surfing quota कितना देना है यूजर्स को, ब्राउजिंग टाइम इन शॉर्ट, राइट? को कितना ब्राउजिंग टाइम देना है, कौन से टाइम पे ब्राउजिंग कर सकते हैं, कितना टाइम तक कर सकते हैं, उसके रिस्ट्रिक्शंस होंगे यहाँ पे उसकी. So we will allow it and give some restrictions, and then again we will allow it as per the requirement that come from the management. Okay, lab पे टेस्ट करेंगे तो और ज़्यादा पता चलेगा. Then we have bandwidth quota, जो हमें सोफोस फायर पे ट्रैफिक कोटा बोलेंगे. ओके, जो भी होगा ट्रैफिक शिपिंग वर्ड आएगा, सो यू शुड बी फेमिलियर अबाउट द सेम वर्ड. ओके, जो टर्मिनोलॉजी है सेम रहेगा, बट it has the same concept. To apply the bandwidth restrictions, we will apply 1 Mbps apply करेंगे, 2 Mbps apply करके चेक करेंगे whether this profile are working or not. And then we have description profile for encrypting and decrypting the traffic for web. Okay, जो ब्राउजर में हम वेबसाइट एक्सेस करते हैं, राइट? तो उसकी भी अलग से हम प्रोफाइल करेंगे. हम उसमें डिफाइन करेंगे कौन सी कैटेगरी या फिर पर्टिकुलर वेबसाइट को आपको एनक्रिप्ट करना है, नहीं करना है, ऑलराइट, एंड सो ऑन. Then we will create access to the device. We will create some role for the administrator to access the firewall and make changes, or they can view the firewall. What would be the rights for each component? जितने भी components हैं, जितने modules हैं, all right? तो कहाँ पे कौन से users क्या कर सकते हैं? So we will define that with one policy. You can test it, and if not working, you can let me know, or you can also troubleshoot and fix it. So next will be interface and routing. जो अपने interface, तो starting जो firewall हम कहाँ से start करते हैं, right? Interface से ही port जो होते हैं firewall में, जो ports आते हैं, so हम ports configure करेंगे. तो हमारा scenario again एक LAN होगा, DMZ zone होगा चेक करने के लिए एक्चुअल में DMZ और LAN में हम कैसे secure connections कर सकते हैं, and what is the difference and how they are similar. दोनों similar ही होगा, but yes, of course, we have divided the network from LAN, and for the LAN users and for the servers. तो server zone अलग होगा और LAN zone जो user होगा उसका zone अलग होगा. And routing, तो static routing करेंगे, उसके बाद dynamic routes देखेंगे, how डायनेमिक राउट्स आर वर्किंग विद सोफोस फायरवॉल. जैसे सिस्को के फायरवॉल पे हमने पैकेट ट्रेसर पे या फिर कोई भी सिम्युलेटर पे या फिर कोई भी सिस्को के राउटर में काम भी किया है, तो सेम जो राउटिंग फंक्शनैलिटी है वो सेम सपोर्ट करेगा सोफोस फायरवॉल. तो फायरवॉल तो राउटिंग तो फ्री होगा, उसमें लाइसेंस की जरूरत नहीं है. तो राउटिंग जितनी भी होती है नॉर्मली वो सब राउटिंग सपोर्ट करेगा, और वी विल चेक दैट. सो स्टैटिक, then we have dynamic and SD-WAN. So SD-WAN और ज़्यादातर SD-WAN में भी जाएंगे क्योंकि हमारे पास तो मल्टीपल WAN कनेक्शंस होंगे, राइट? सो MPLS में MPLS है वो हमारा WAN कनेक्शन है यहाँ पे, MPLS 1, MPLS 2, इवन हमारा जो ISP कनेक्शन है ISP 1, 2, 3 और our WAN connections. So we are managing the WAN infrastructure through SD-WAN technology. और देखेंगे whether it is working or not
कौन कौन से फर्मवेयर में कौन कौन से बग्स होते हैं, राइट. सो वी विल सी the working, the workarounds, how to fix them, and so on. All right, so as of now, let me just go through. Then those who have any doubt, you can raise your hands and you can let me know. Ritesh, do you have any doubt? No, sir. 1 minute. Yes, Ritesh, speak up. Okay. Those who have a doubt, just raise your hand so that I can know if you are asking me anything. मुझे notification मिल जाएगा, ठीक है? So I can know. All right. So yesterday we have discussed about type of zones. Okay. So again we have LAN zone, DMZ zone, and WAN zones. हम इन सबको communicate करेंगे securely. All right, and to give the access to the services. All right. So यहाँ पे सर्वर्स है, राइट. डीएमजी जोन पे सर्वर्स है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि डीएमजी जोन पे ही सर्वर्स हो. सर्वर्स तो हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, एंड बट द ओनली थिंग इज दैट हमें कम्युनिकेशन करवाना है टू फायरवॉल. सो वी माइट हैव सर्वर हियर आल्सो इन लैन 2. ओके, सो वी हैव सम सर्वर्स इन लैन. एप्लीकेशन सर्वर्स यहाँ पे हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल वेब सर्वर्स यहाँ पे हो सकते हैं, मेल सर्वर्स हो सकते हैं. राइट. सो वाइस वर्सा वी कैन प्लेस इट एनीवेयर, बट the task is to communicate with the end users. So server और client के बीच में communication होना चाहिए, and secure communication हमारा होना चाहिए, right? So we have discussed about zone, कहाँ पे हम zone create कर सकते हैं. We know everyone knows how where you can create the zone, कौन कौन से default zones हैं यहाँ पे. How you can identify the members, कौन कौन से ports उसके members हैं यहाँ पे, कौन कौन से permissions, कौन सी permissions हमने enable की हुई है. All right, so you can just read and you will get it. So that would be the zone. और जब zone create करते हैं तब हम जो सर्विसेज चाहिए हमें उस जोन के लिए, ठीक है. लेट्स से इंटरनेट के लिए सिर्फ हमें पिंग ही अलाउड करना है. सो वी कैन जस्ट एनेबल द पिंग, वी कैन जस्ट मेक rest would be disabled. Okay, here some of the services are enabled as per the requirement. All right, तो requirement में तो वेब प्रॉक्सी है, ऑथेंटिकेशन है, पिंग है, HTTPS वेब एडमिन सर्विस भी है, अलाउड है, SSH अलाउड नहीं है यहाँ पे, and so on. So you can enable, disable it, and test it on the lab. All right. So next was the interface. कैसे हम interface सारे configure करेंगे? तो LAN interface configure करना है, WAN interface configure करना है, MPLS. So we have gone through that. So when you click on the interface, you will get the name. You can define. अगर नाम देना तो it's fine. Otherwise, it will take the default name. Okay. Port 7 hardware. You cannot change the hardware port, but you can change the name of the interface. उसका नाम उसका change कर सकते हैं. All right, and you can select the zone. जिस zone पे उस interface को डालना है. तो LAN भी हो सकता है, WAN भी हो सकता है. All right. So lab पे तो हम select करते रहेंगे बहुत सारे zones configure, सारे zones हम सारे interface पे apply करके. So you give the IP address static दे सकते हैं यहाँ पे. All right, as it is a LAN zone, एक टाइप का LAN zone ही, right? ये भी इंट्रानेट भी एक LAN टाइप, जैसे DMZ है वैसे ही इंट्रानेट भी होगा, right? So इतना कंफ्यूज में नहीं होना इसमें. So it's like a different type of zone, बस उसमें अलग परमिशंस होगा हमारा. तो यहाँ पे LAN zone और इंट्रा जोन या फिर DMZ जोन जो भी हमें स्टैटिक IP देना है इंटरफेस पे, राइट. सेम नेटवर्क नहीं देना है, यानी जैसे पोर्ट 7 और पोर्ट 8 55 दो नहीं चलेगा. जो 192.168 वाला नेटवर्क है, राइट, /24 8 7 में भी दिया, 8 में भी दिया. ओके, दैट विल नॉट वर्क. ओके, इट विल क्लैश. सो दैट विल नॉट बी वर्किंग कॉन्फ़िगरेशन. सो रिमूव एनी ऑफ दिस नेटवर्क, कॉन्फ़िगर अनदर वन, प्लान अनदर वन. सो आपका प्लानिंग भी ऐसा नेटवर्क होना चाहिए, आपका टोपोलॉजी ऐसा होना चाहिए जिसमें यूनिक नेटवर्क है, कहीं पे भी वो ओवरलैप नहीं होना चाहिए. अगर ओवरलैप होगा तो बहुत कुछ चेंज करना पड़ सकता है आगे जाके. सो यू हैव टू प्लान इट. यू माइट गेट इनटू द डाउन टाइम भी लेना पड़े. सो बिफोर यू plan your topology, make sure you plan which networks
यू आर गोइंग टू यूज, कौन कौन से नेटवर्क्स यूज करेंगे. सिंपल है, सिर्फ अलग अलग नेटवर्क लिख लो, 5 6 10 15, एंड यू कैन यूज दोस. यू कैन ऑल्सो segregate those network, उसको smaller network में divide कर लो VLSM से, and so on. You can use it, right? So you just make sure overlap नहीं होना चाहिए, overlap नहीं support करेगा. So next was the type of interface. हमने कल पढ़ा था what is bridge interface. When two interface are created, okay, when they are added together, they will create a layer 2 or layer 3 interface. Layer 2 भी कर सकते हैं, layer 3 interface भी हम उसको दोनों मिला कर सकते हैं. So for the seamless communication between the interface. No worries, Gaurav, your these videos are already get reported. Those who find that they are not able to attend the class, no worries, they can just watch the video, recorded videos, and then come back to me in case of an issue. Okay, Gaurav, yeah, no worries. Okay, then we have alias. When you want to configure additional IP address, जैसे कि एक LAN नेटवर्क है उसमें, ठीक है, या फिर WAN है, WAN जोन. कल एग्जांपल बताया था, ISP ने अगर आपको मल्टीपल IP भी दिया हुआ है, तो कहाँ पे जो WAN इंटरफेस पे है वहाँ पे हम एज ए एलियस ऐड करेंगे. ओके, तो जब ऑप्शन होता है उस पे एलियस सिलेक्ट करना है, ठीक है. ब्रिज होगा, एलियस होगा, VLAN भी होगा, लैग ऑप्शन होगा और रेड ऑप्शन होगा. ये सारे ऑप्शंस आपको पॉपअप करेंगे. यू हैव टू सिलेक्ट एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट कौन से इंटरफेस पे वो लगाना है. सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. ओके, रियल लाइफ में ये सारे यूज में आते हैं, so we will use that. Then we have VLANs. Okay, let's say if you want to perform inter VLAN routing, tagging करना था, so Sophos can handle that. You can create virtual LANs on Sophos Firewall, उसके इंटरफेस पे VLAN कॉन्फ़िगर करके आप इंटर VLAN routing और tagging कर सकते हैं हम Sophos पे. Alright, so we'll see that VLAN. Then we have lag. When we group two interface together, okay, दो इंटरफेस को यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम 4 इंटरफेस यूज कर सकते हो आप टू फॉर्म ए लैग. तो 4 इंटरफेस यूज कर सकते हो अगर 2 इंटरफेस लेट्स से आपके फाइल पे, या फिर एक इंटरफेस खाली है, ठीक है, तो आपका जो लैन नेटवर्क है उसका और एक जो पोर्ट खाली है, उस दोनों को आप लैग कर सकते हो, दोनों को कंबाइन कर सकते हो. अगर आपके पास स्विच सपोर्ट सामने करता है तो लैग, तो स्विच अगर करेगा देन यू कैन यूज लैग बिटवीन योर फायरवॉल सोफोस पे और आपके स्विच पे, दोनों पे कर सकते हो. दिस विल प्रोवाइड यू रिडंडेंसी एंड ऑल्सो इंक्रीज स्पीड बिटवीन टू डिवाइस. ओके, तो स्पीड बढ़ाने के लिए अगर कोई लिंक फेल होता है तो रिडंडेंसी आ जाए, एंड देन अगर कोई स्पीड इंक्रीज करना है इन दोनों के बीच में, देन यस ऑफ कोर्स लैग विल हेल्प यू टू अचीव दैट. एंड देन इट वाज रेड. अगर आपके पास रेड डिवाइस है या फिर हम रेड कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, देन वी विल सी द रेड इंटरफेस क्रिएटेड. तो जब हम साइड टू साइड अभी अपकमिंग मॉड्यूल्स में जब कॉन्फ़िगर करेंगे, यस ऑफ कोर्स यू विल सी दिस इंटरफेस. ये इंटरफेस आपका एज अ नेटिंग के लिए होगा. ओके, तो जैसे लैन होता है या फिर वैन आईपी होता है नेटिंग के लिए, सिमिलरली रेड और लैग भी यूज करते हैं एज ए नेटिंग, नेट करने के लिए. जब हम ब्रिज भी यूज करेंगे तो उसको भी हम नेट एज ए नेट कर सकते हैं. इट्स फाइन, यू कैन यूज एनी ऑफ दिस इंटरफेस फॉर द नेट एड्रेस ट्रांसलेशन. सो आफ्टर दैट और 2 इंटरफेस थे जो डिफॉल्ट एक वाईफाई होगा. ओके, सो वाईफाई हमेशा आपको दिखेगा, दैट वुड बी द डिफॉल्ट इंटरफेस ऑन द Sophos XG फायरवॉल. तो ये जनरली किस लिए होगा, आपके Sophos AP के लिए. सो अगर वहाँ पे कोई कनेक्टेड नहीं, इट्स फाइन, देन ये इंटरफेस का कोई यूज ही नहीं है. इफ यू हैव वायरलेस मॉडल्स भी आते हैं Sophos में जिसमें एंटीना होते हैं, सो ऑन द फायरवॉल पे ही एंटीना होता है, सो दैट विल एक्ट एज अ वाईफाई राउटर. ओके, स्मॉल डिवाइस में होगा, मीडियम टू लार्ज स्केल में नहीं अवेलेबल है. जैसे मैनेजमेंट पोर्ट किसी में अवेलेबल नहीं है और HA पोर्ट नहीं है, वैसे ही हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस जो नेक्स्ट मॉड्यूल होगा वो हम देखेंगे कौन कौन से हार्डवेयर अवेलेबल है, कौन कौन सी उस पे हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस है वो हम देखेंगे यहाँ पे. सो सिमिलरली सब पे आइकन तो रहेगा. ऑलराइट, ये डिफॉल्ट इंटरफेस आप इंटरफेस में जाके चेक करोगे, देन यू विल गेट इट.
एंड टनल इंटरफेस जब हम आईपी से साइड टू साइड लैप करेंगे और मॉड्यूल्स एक डेडिकेटेड मॉड्यूल तो है ही. So when we do that module and after that we create the connection, that tunnel will get created. Okay, जैसे सारे 40 gate में create हो जाता है when you can select, and you can also select with the rest of the firewall. Similarly, Sophos में भी same tunnel interface है. And ये जो इंटरफेस होगा वो कैसे क्रिएट होगा, राउट बेस्ड पॉलिसी में होगा. ओके, सो जैसे मैंने बताया था राउट बेस्ड पॉलिसी होता है आईपीसेक में और एक होता है पॉलिसी बेस्ड. तो पॉलिसी बेस्ड में नहीं होगा, उसमें आपको ये इंटरफेस नहीं दिखेगा, बट अगर आप राउट बेस्ड में जाते हैं तो वो होगा. और सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होगा यहाँ पे, हम राउट बेस्ड दोनों टेस्ट करेंगे. पॉलिसी बेस्ड राउटिंग से एक बार कनेक्टिविटी चेक करेंगे, सब कुछ सर्विसेज चल रही है उससे, देन वी विल क्रिएट राउट बेस एंड वी विल सी द सेम थिंग दैट सारी सर्विसेज हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस के बीच में चल रही है. ऑलराइट, एंड देन वी विल सी व्हाट इज द मोस्ट एडवांटेजेस. तो एडवांटेज वाला तो एज पर माय एक्सपीरियंस राउटिंग वाला बेस्ट रहेगा. ओके, इट विल एक्ट एज अ जीआरडी टनल, सो सारे ट्रैफिक आप फॉरवर्ड कर सकती हो, सो विद द हेल्प ऑफ द टनल इंटरफेस. Then we have discussed about a WAN link manager. All right, तो WAN link manager में जितने हमारे WAN connections है आपको यहाँ पे you will get the list here. So interface पे जब हम configure कर रहे हैं WAN, all right. So after those interface are up, once you click on WAN link manager, then you will see the status. Okay, status of the ISP. The gateway address. Okay, so this would be your gateway address of your ISP, यानी आपका जो ISP का जो IP होगा, ठीक है, वो होगा ये. और इंटरफेस पे जो IP दिया होगा, जो इंटरफेस होगा आप यूज कर रहे हो उसका IP और सबनेट मास्क होगा यहाँ पे. इफ यू जस्ट कीप योर माउस हियर तो आपको पूरा IP एड्रेस और सबनेट मास्क दिखेगा. ओके, फिर टाइप एक्टिव एंड बैकअप. तो एक्टिव बैकअप कर सकते हैं इसको. अगर ये जो सेटिंग है, ठीक है, ये एग्जिस्टिंग सेटिंग है, अगर एक्टिव बैकअप रखा है तो ट्रैफिक अभी इसी से जाएगा, जब तक ये फेल नहीं होगा तब तक वो बैकअप पे नहीं जाएगा. ओके, सो वंस दिस ISP इज डाउन इट विल कम हियर, और जब ये ISP अप आ जाता है देन द ट्रैफिक विल पास फ्रॉम पोर्ट 2. और एक्टिव भी है, एक्टिव में लोड बैलेंस होगा, उसी में भी सेम ही है. लेट्स से ये ISP फेल होगा तो ISP 2 से जाएगा, अगर वापस ये आ जाता है तो वापस IP2 से ही जाने देगा. पर बैकअप में वो ट्रैफिक स्टैंड बाई पे रखेगा, पूरे का पूरा ट्रैफिक यहाँ से जाएगा, इसको यहाँ से ये ट्रैफिक लेगा ही नहीं क्योंकि ये बैकअप पे रखा हुआ है. राइट, अनटिल एंड अनलेस फेल ओवर कंडीशंस जो हमने सेट की है. ओके, सो फेल ओवर कंडीशंस होंगी यहाँ पे, so you can set it here. So we'll go through that failover conditions one by one. Okay, it will be coming up in the next slides. तो यहाँ पे फेल ओवर कंडीशन सेट कर सकते हो कि कौन से कंडीशंस में फेल ओवर हमें करना है. ऑलराइट, देन वी हैव फेल ओवर रूल. तो फेल ओवर रूल पे ये पिंग चेक करेगा अपने गेट, यहाँ पे गेटवे आईपी रखा हुआ है यानी ISP का गेटवे आईपी रखा हुआ है. अगर ये पिंग फेल होता है तो फायरवॉल समझेगा ये डाउन है. ऑलराइट, सो we will test this, we will test the backup settings. कोई ISP कैसे फेल हो रहा है, कैसे हम एक्टिव ISP दोनों एक्टिव है. ओके, सो how we can click we can make another or third और एक ISP है, थर्ड है, दो एक्टिव है और एक बैकअप पे रखते हैं. तो वो बैकअप पे रखेंगे एंड वी विल सी द कंडीशन एक्टिवेट दिस गेटअप इफ दिस फेल, इफ एनी ऑफ दिस फेल. मैन्युअली भी कर सकते हैं. ऑलराइट, एक्शन ऑन एक्टिवेशन कौन कौन से एक्शंस लेने हैं. ऑलराइट, so depends on the weight. all right, and inherited weight कौन सा है वो हम देखेंगे. weight क्या है वो देखेंगे. what is weight, generally we can say like a priority, कौन सी priority हम यहाँ पे set कर रहे हैं. then we have action on fallback. तो action क्या लेना है. all right, serve all new connection to the reserved. तो जब एक्टिव वापस फेल हो जाता है तो कनेक्शंस जो है उसी में रहने देने कि वापस उसको मूव करना है. सो यू कैन सिलेक्ट दोस. ओके, तो ये जो सेटिंग्स है ये सोफोस का डिफॉल्ट सेटिंग है. सो यू कैन यूज दिस डिफॉल्ट सेटिंग्स. फिर उसके बाद ये टेस्ट करो, या हम अभी लैब पे टेस्ट करेंगे एंड देन वी विल टेस्ट बोथ. ओके, खुद वी विल चेंज द ऑप्शंस, लाइक वी विल सेट दिस एंड वी विल फेल ओवर मींस जो राउटर होगा हम उसको शट डाउन कर देंगे एंड विल सी हाउ द ट्रैफिक इज मूविंग. तो हम जब लैब करेंगे तो एक ऑन करेंगे या फिर इंटरफेस भी शट डाउन कर सकते हैं. And then we can check the failover. So this way you can do the failover. So this is your first failover with the internet connection or your ISPs. Similarly, both 3-4 failovers we will have that failovers.
All right, so our next topic is routing. So Sophos Firewall routing कैसे दिखता है, all right, how it takes routing. So जो Sophos Firewall होता है, हमेशा जितने भी जो चेक्स होते हैं, it will checks from top to bottom, ऊपर से चेक करेगा. अगर लेट्स से इंटरफेस है, ओके, पहला इंटरफेस आपका लैन है, दूसरा इंटरफेस आपका वैन है, देन अगेन कोई डीएमसी है, एंड फिर अगेन वैन जो है इंटरनेट कनेक्शन है, वहाँ पे आईएसपी है, एंड देन एमपीलेस है, उसके बाद दूसरा एमपीलेस है. तो ऊपर से ही चेक करेगा सब चेक्स जो चाहेंगे. ट्रैफिक जैसे डेस्टिनेशन जो होगा, जैसे डेस्टिनेशन गूगल है, तो ऊपर से चेक करेगा. पोर्ट ए से वो तो लैन है राइट, तो वहां से नहीं देगा. देन पोर्ट बी आपका इंटरनेट है, तो ओके, उसको वहां से सर्व कर देगा. ओके फाइन. अगर वहां से बंद है तो नेक्स्ट इंटरफेस चेक करेगा, उसके नीचे नेक्स्ट इंटरफेस चेक करेगा. सिमिलरली सेम वे. सिमिलरली फायरवॉल रूल्स है हमारे, जितने भी रूल्स होंगे, जो भी जोन टू जोन होगा, उसमें भी टॉप टू बॉटम चेक होगा. यानी सब फर्स्ट फायरवॉल टॉप पे जो होगा, टॉप पे जो प्रायोरिटी पे रूल रखा होगा आपने, वो फर्स्ट चेक करेगा. अगर मैच करेगा तो वहां से ट्रैफिक चला जाएगा. अगर मैच नहीं करेगा दूसरा रूल देखेगा. अगर दूसरा रूल भी मैच नहीं किया तो तीसरा देखेगा. अगर लास्ट में हमने तो ड्रॉप रखा हुआ था रोल में, तो वो ड्रॉप कर देगा ट्रैफिक, अगर मैच नहीं करेगा तो. सिमिलरली जब राउटिंग होती है तो इट विल फर्स्ट चेक द राउटिंग प्रेसिडेंट. जो यहाँ पे कमांड में वर्ड यूज करेंगे वो प्रेसिडेंस है. सो इट विल टेक फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऐसे चेक करेगा. So first it will check the static routes. Okay, so if they are directly connected networks, कोई static route आपने कॉन्फ़िगर किया है, लेट्स से आपने SD-WAN कॉन्फ़िगर किया है, ठीक है, बट आपने static route भी कॉन्फ़िगर किया है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देगा यहाँ पे? वो static route को देगा. ऑलराइट, डायरेक्टली कनेक्टेड. Then it will give the dynamic routing protocol. Then it will give the unique first. So अगर आपने ये पहले कॉन्फ़िगर किया है, then it will route the traffic. जो आपका डेस्टिनेशन नेटवर्क होगा उसको पहले प्रायोरिटी. स्टैटिक राउट्स अगर आपने डिफाइन किया हुआ है तो वहां से देगा. लेट्स से आपने SD-WAN कॉन्फ़िगर किया है, स्टैटिक राउट नहीं किया है, तो ये ऑफ कोर्स इट विल चेक. आपने स्टैटिक राउट नहीं किया है, इट्स ओके, यू हैव कॉन्फ़िगर SD-WAN, तो वो SD-WAN राउट्स लेगा. ऑलराइट, लेट्स से दोनों कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो ट्रैफिक स्टैटिक से ही जाएगा. ऑलराइट, सिमिलर. देन वी हैव VPN राउट्स. देन इफ दैट राउट्स, जो राउट है वो जो VPN में डिफाइन किया हुआ है, अगर वहाँ पे वो राउट्स अवेलेबल है, देन इट विल पास फ्रॉम दी VPN राउट्स. अगर कहीं पे भी नहीं है तो डिफॉल्ट राउट लेगा, जो हमारा वैन लिंक मैनेजर से चेक करेगा कि वहाँ पे कोई डिफॉल्ट है कि नहीं. ओके, लेट्स से गूगल जाना था राइट, तो ये सब चेक किया उसने, तो उसको लास्ट में डिफॉल्ट राउट मिला. ऑलराइट, और मे बी यू हैव सम अदर कनेक्टिविटीज दैट आर डिफाइंड विद हेल्प ऑफ राउटिंग्स. सो इट विल चेक दिस कंडीशन, तो ये कंडीशंस चेक करेगा. ऑलराइट, सो ये हम लैब पे ही देखेंगे. ऑलराइट, वी विल सी दिस एवरीथिंग, बट जस्ट रिमेंबर कि वो कैसे चेक करेगा. तो अगर आपको प्रायोरिटी स्टैटिक को नहीं देना है और SD-WAN को देना है पहले, या फिर VPN को देना है पहले, यू कैन चेंज दैट प्रेसिडेंट. कमांड से हम चेंज कर सकते हैं इसके प्रेसिडेंट. इन तीनों के बाय डिफॉल्ट सोफोस का एक राउट रहेगा, यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस, उसको हम टॉप पे नहीं ला सकते. बट बाय डिफॉल्ट जो सोफोस होगा उसका जो राउटिंग प्रेसिडेंट है, अगर आप कमांड में देखोगे शो राउट प्रेसिडेंट करोगे वहां पे, तो आपको दिखेगा स्टैटिक लिखा हुआ है, देन SD-WAN लिखा होगा, एंड देन VPN लिखा होगा. यू कैन चेंज इट. ओके, चेंज कर सकते हो उसको, जैसे आपको प्रायोरिटी देना है, जैसे SD-WAN को देना है, उसके बाद स्टैटिक राउट देखो. ठीक है, जैसे कि आपने SD-WAN भी कॉन्फ़िगर किया है, स्टैटिक राउट भी कॉन्फ़िगर किया है, तो SD-WAN से पहले हमने फोर्स किया कि SD-WAN से चेक करो. अगर SD-WAN में नहीं है तो फिर स्टैटिक राउट्स में जाके चेक करो. सो वी कैन फोर्सफुली चेंज दी प्रेसिडेंस, बट जो टॉप टू बॉटम आप सेट करोगे वैसे ही चेक करेगा. जैसे आपने SD-WAN ऊपर रख दिया है तो टॉप में वो SD-WAN से ही देखेगा. सारी फायरवॉल्स आई थिंक सब टॉप टू बॉटम ही चेक करता है. सो इट इज सिमिलर. सो एवरीथिंग विल बी लाइक ऑटोमेटेड, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. तो कैसे पता चलेगा सब ऑटोमेटेड है और सब कुछ ठीक चलेगा? सो वी कैन डू इट ऑन द लैब एंड टेस्ट इट, और उसके बाद उसको लाइव में डालो, लाइव प्रोडक्शन में डालो. फर्स्ट यहाँ पे चेक कर लो एवरीथिंग इज वर्किंग, then you can just plug and play on at your sites. So one of the primary function of the firewall is routing packets from one network to another. So पहला primary function हमारा firewall का क्या है? Routing.
ओके सो सबका राउटिंग तो होता ही है, एवरी फायरवॉल्स और एनी राउटर जिसकी भी जितनी भी फंक्शनलिटीज है, इट विल वर्क ऑन दी राउटिंग दी पैकेट्स राउट करेगा यानी रास्ता दिखाएगा, राइट. देन वी हैव फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर, we might have multiple paths. So Sophos Firewall support multiple method for building and dynamically control the routing, which falls into three main types, that is static, SD-WAN and VPN routes. Okay, so these are processed in order. Static routes define the gateway to use based on destination network. This include directly connected network and a route added by dynamic routes protocols. Then we have policy routes, which is policy routes makes decision based on the property of the traffic, such as source, destination and service. Okay, so जो हमारा SD-WAN होगा, okay, वो policy based routing है. So policy based routing क्या है? जो हम ट्रैफिक है, okay, वो हम कैसे फॉरवर्ड कर रहे हैं, राउट कर रहे हैं, based on source, destination, service, also with the help of application and authentication बेस से भी सेंड कर सकते हैं. तो ये प्रिसाइज ट्रैफिक हम भेज रहे हैं कि हाँ, अगर ये यूजर का ट्रैफिक आ रहा है, SD-WAN से कर रहे हैं कि ये यूजर का ट्रैफिक आ रहा है, अगर उसका वॉइस का ट्रैफिक है, वॉइस लेके आ रहा है, तो इस ISP से या फिर उस ISP से जाने देना है, ऑलराइट, और या फिर ब्रांच ऑफिस है तो वहां से कम्युनिकेट करवाना है, एंड सो ऑन. So VPN routes are created automatically when VPN connections are established on the firewall. तो जो VPN के routes है वो आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं, आपको ऐसा नहीं स्टैटिक routes क्रिएट करना है या फिर डायनेमिक राउट्स क्रिएट करना है या फिर SD-WAN करना है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक राउट्स हो जाएगा. इन केस ऑफ जब आप IPsec VPN पॉलिसी बेस कर रहे हो, सिर्फ एक राउट बेस में आपको डिफाइन करना पड़ेगा स्टैटिक. अगर पॉलिसी है तो आपको डिफाइन नहीं करना है, कोई स्टैटिक राउट करना है या फिर SD-WAN करना है, नहीं कर सकते. बट राउट बेस में हम कर सकते हैं. यू कैन डिफाइन इधर SD जा रहे हो तो SD-WAN कर सकते हो, स्टैटिक भी कर सकते हो. लेट्स से आपका SD-WAN आपने कॉन्फ़िगर किया, यू नो हाउ टू कॉन्फ़िगर द रूल्स, बट इट्स नॉट वर्किंग. ओके, तो पहले देखो स्टैटिक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है. इफ इट इज वर्किंग विद स्टैटिक, then there is something issue with your SD-WAN rules. Okay, so we will fix that, but generally it will work. Okay, it sometime maybe might some कोई ऐसा रीजन हो सकता है जहाँ पे कुछ ऐसा चेंज किया है जो नहीं पता था. ओके, राउटिंग प्रेसिडेंट किसी ने चेंज किया और हम SD-WAN कॉन्फ़िगर कर रहे हैं. ऑलराइट, so that will be the issue. Otherwise definitely it will work until and unless any changes is not done on the default setting. So next would be another when there is no routing match. अगर कोई भी route match नहीं होगा तो Sophos Firewall will send the packets on the default routes, which is the gateway derived from the load balancing configuration across the active gateways. जो active gateway होगा, अगर बैकअप रखा हुआ है, एक रखा हुआ है बैकअप, एक एक्टिव रखा हुआ है, तो वो बैकअप से नहीं जाएगा. वो एक्टिव, जो भी एक्टिव गेटवे होगा वहां से वो चेक करेगा कि ये उसका डिफॉल्ट राउट है, एंड यू कैन फाइंड दी सेटिंग्स. ओके, सो नेक्स्ट वाज स्टैटिक राउट. कैसे हम स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करेंगे? ऑलराइट, सो इट इज वेरी सिंपल. यू कैन गो टू नेटवर्क एंड स्टैटिक राउटिंग, वहाँ पे ऐड पे अगेन एक बटन होगा, यू टू क्लिक एंड यू विल गेट दिस पेज, यू टेम्पलेट. So define your destination network that wants to communicate and subnet mask. So ये network कौन सा होगा? Destination network that is not directly connected to Sophos Firewall. Let's say आपने VLAN configure किए L3 switch के पीछे, alright, from on that side. तो यहाँ पे आप static configure कर सकते हैं, right? Dynamic होगा, no worries. You can, if you want, you can configure OSPF, RIP, BGP, no worries. But yes, let's try first what is static route. So statically add कर दो के सामने जो L3 के पीछे जो आपका नेटवर्क है, right, वो 16 है. Okay, in this case, so this is not directly connected to Sophos Firewall, but you can define कौन से इंटरफेस पे वो कनेक्टेड है और उसका गेटवे जो सामने जो स्विच का IP है. Okay, let's say it is the gateway. And कौन से इंटरफेस पे कनेक्ट है, you to select that interface here. Okay, and save it. So you have created static route. अगर दो Sophos firewall है, okay, point to point connectivity है आपके पास, एक मुंबई पे है, एक दिल्ली में है, ठीक है,
दोनों फायरवॉल और वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है. इन दैट केस you can use static routing or you can use the dynamic routing, okay, so to route your LAN network. So you can use this, okay, and test it. So where you can configure, where you can see static routing, configure routing static routes. So that is the example of static route. If you have a network that is not directly connected to Sophos Firewall, it will send traffic destined for, or it has the default gateway. So if the traffic needs to take a different route, you can use a static route. You can define network where traffic is destined, and you can define what IP address the traffic should send via the which interface. So you can select कौन से interface से उसको जाना है, okay? Out interface select करना है, out, and automatically in interface would be there. So similarly, you can configure SD-WAN route. Okay, so SD-WAN route कहाँ से कैसे configure करेंगे? You have to go first to configure routing. वो भी जो static route था वो configure routing के अंदर है, right? Static routing and SD-WAN routing is here. So once you click on that, click on add. तो यहाँ पे आपको मिलेगा incoming interface. You can select, you can see the options like traffic selector, like incoming, source network कौन सा है, destination, okay, DSCP marking if you have, and the services if you want to forward through that particular application and IT. and then नीचे gateway हम आते हैं next slide पे. So first you have to select the criteria. तो हम पहले ना ट्रैफिक सिलेक्ट कर रहे हैं. लेट्स से पोर्ट 2, ओके, पोर्ट 2 से जो ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, कहीं से भी आ रहा है, ओके, कहीं पे भी जाना है, ओके, सोर्स नेटवर्क अगर कोई भी है और डेस्टिनेशन नेटवर्क भी कोई भी है, बट द सर्विस कौन कौन सी ही अलाउड होनी चाहिए उसमें, HTTP, HTTPS एंड LDAP, ओके, एज पर दिस, और पिंग हो सकता है, DNS हो सकता है. देन वी हैव फाइल ट्रांसफर. So there is file transfer application allowed, and this is only for the IT users. ये use IT group है, इसके अंदर users है, तो इन ये users का traffic ये rule से जाना चाहिए for these services. So SD-WAN routes, policy routes are very similar, except they are selected traffic for routing for much wider set of properties, and you can define more advanced routing option. सिर्फ इसमें advanced routing options आपको options मिलेंगे यहाँ पे. Okay, कौन कौन से options मिलेंगे? Based on service, DSCP marking, users and application, right? तो आप सर्विस यूज कर सकते हो एंड एप्लीकेशंस यूज कर सकते हो, जैसे मैंने वॉइस एप्लीकेशन बताया था, क्लाउड एप्लीकेशंस यू कैन यूज इट, एंड ऑथेंटिकेशन, जैसे कि कोई डायरेक्टर्स हैं, ऑलराइट, लेट्स से डायरेक्टर्स है, कोई सेल्स, आईटी, मार्केटिंग टीम, यू कैन सिलेक्ट डिफरेंट, यू कैन क्रिएट डिफरेंट राउट्स फॉर ईच ऑफ दिस ग्रुप, और डिफाइन कर सकते हो कौन कौन से एप्लीकेशंस एंड सर्विस वो लोग एक्सेस कर सकते हैं, ऑलराइट. लेट्स से यहाँ पे एनी रख दिया, ओके, तो हो सकता है कि कोई ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दे, यहाँ पे भी एनी कर दिया, यहाँ पे सोर्स ये ठीक है, इट्स फाइन, आईटी का ट्रैफिक यहाँ से जाएगा, बट दिस थिंग्स आर अलाउड. मे बी दे आर इंस्टॉलिंग, कोई प्रॉक्सी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देंगे, ऑलराइट, बट आपने कोई पर्टिकुलर सर्विस अलाउड किएगा तो वही अलाउड रहेगा, रेस्ट सारा ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगा. तो हम देखेंगे कि कौन सर्विस की कौन कौन सी पर्टिकुलर सर्विस ही अलाउड करनी है जो नेसेसरी है. अननेसेसरी एप्लीकेशन या फिर अननेसेसरी सर्विस एनी कर दिया है, फॉर एग्जांपल एनी यहाँ पे, तो हो सकता है कि इवन दो आपने ऐसे फिल्टर लगाया हुआ है कि प्रॉक्सी ब्लॉक है, बट प्रॉक्सी एप्लीकेशंस जो होती है, राइट, जैसे कि कोई VPN, तो वो अलाउड हो जाएगा. सो क्योंकि जो एप्लीकेशन होता है क्या होता है, बहुत सारे पोर्ट्स पे काम करेगा. अगर वो पोर्ट्स यहाँ पे एनी रखा हुआ है, ठीक है, बट आपने ये सब कुछ ब्लॉक करके रखा है, तो भी वो ब्लॉक नहीं हो रहा है यहाँ पे. तो ब्लॉक क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो सर्विसेज है वो तो सारी अलाउड है, राइट, वो सारे पोर्ट्स पे काम करेगा. सो इन दैट केस यू विल सी जनरली तो ब्लॉक हो ही जाता है, एप्लीकेशन फिल्टर पॉलिसी लगाते हैं तो वेब फिल्टर एप्लीकेशन, बट there are some other Thor applications, okay, like those application, malicious applications जो multiple ports पे काम करती है, so that can cause the issues. So that is the reason सारे objects define करो, जितना possible हो इतना any use नहीं करना है. Okay, so this is the perfect example, though it's fine you can use these two, but अगर any use कर रहे हो, okay, avoid trying any services, okay, any services, not only any services. जब हम नेटवर्क प्रोटेक्शन मॉड्यूल करेंगे, नेक्स्ट मॉड्यूल है उसके बाद,
तो हम जब रूल्स डिफाइन करेंगे तो पर्टिकुलर सब कुछ डिफाइन करेंगे, सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, सर्विस कौन कौन से अलाउड है, कौन कौन से सोर्स नेटवर्क में भी, नेटवर्क में होस्ट कौन से अलाउड है या फिर नेटवर्क कौन से अलाउड है, ऑलराइट, पर्टिकुलर सब आप डिफाइन करो जितना पॉसिबल हो सके, सो दैट इट विल नॉट बाईपास योर कॉन्फ़िगरेशन। एंड जनरली वीक कॉन्फ़िगरेशन उसी को ही बोलते हैं, राइट। अगर आपने एनी एनी इधर एनी रखा है, इधर एनी रखा और इधर भी एनी रख दिया, ओके इधर तो ठीक है, इट्स फाइन फ्रॉम इट्स टेकिंग एनी सोर्स बिकॉज इट इज ट्रस्टेड, ओके। और इंटरनेट पे जाना है कहीं पे भी तो मेरे को एनी रखना पड़ेगा इंटरनेट के लिए। आई कैन नॉट फिक्स दैट थिंग, आई कैन फिक्स हियर बिकॉज यहाँ पे एनी मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे इनकमिंग रखा हुआ है, यहाँ पे भी एनी हो सकता है, यहाँ पे एनी उसके बाद पोर्ट 1 पोर्ट 2 की पूरा ऐसा लिस्ट आएगा। सो मेक श्योर कि जो आप डिफाइन कर रहे हो जितना हो सके इतना उस आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सिक्योर और टाइट होना चाहिए। अगर नहीं चलता है तो पता चल जाएगा, अगर कुछ ड्रॉप हो रहा है, अगर हमने रूल बहुत ही सिक्योर किया है, फुल्ली सिक्योर किया हुआ है तो वो तो ड्रॉप हो जाएगा ट्रैफिक। अगर वो जेन्युइन ट्रैफिक है उसको अलाउड करना है तो हम वैसे भी लॉग्स देख के उसको फिर, जैसे कि कोई सर्विस है तो यहाँ पे हमने 3 रखा है बट कुछ और ड्रॉप हो रहा है, जैसे डीएनएस ड्रॉप हो रहा है, इसमें तो डीएनएस ड्रॉप होगा क्योंकि अलाउड ही नहीं है। डीएनएस अलाउड नहीं करूंगा तो फिर जो google.com है वो रिजोल्व कैसे होगा, राइट। सो आई विल गेट दैट ओके विच अदर प्रोटोकॉल्स आर स्टिल रिक्वायर्ड विच आर जेन्युइन, तो हम उसको फिर अलाउ कर सकते हैं लॉग्स को देख देख के। सो विल सी दैट ड्रॉप लॉग्स to allow those services. So this is about SD routes. So just we SD जो SD-WAN है, ठीक है, उसमें जनरली क्या होता है, एडवांस फीचर्स, राउटिंग के फीचर्स हैं, जितने भी वेंडर्स होंगे उसमें एडवांस फीचर्स होंगे जिसमें हम डिफाइन कर सकते हैं कैसा ट्रैफिक जाना चाहिए, दैट्स इट। सो लाइक सर्विस डिपेंडिंग ऑन द सर्विसेज, ओके, DSB मार्किंग, यूजर्स एंड एप्लीकेशंस एंड सो ऑन। नाउ जो SD-WAN नीचे होगा, राइट, उसके नीचे आपको वहाँ पे भी राउटिंग तो सिलेक्ट करना है कि कहाँ से जाना है, ऑलराइट। सो लेट्स से यू हैव 3 ISPs, सो यू कैन डिफाइन दिस वे, ओके, कि वॉइस ट्रैफिक मेरा ये वाले गेटवे से जाना चाहिए, ओके। बैकअप गेटवे भी सेट कर सकते हो, अगर ये फेल होगा तो यहाँ पे जाएगा। अगर आपने यहाँ पे टिक मार्क किया, ओके, लेट्स से यू हैव टिक मार्क, तो अगर ये ISP फेल होता है तो बैकअप नहीं लेगा, वो बैकअप में नहीं जाएगा बिकॉज वी हैव ओवरराइड दी monitoring decision, alright, so status नहीं चेक करेगा, इसी से ही जाएगा। बट इफ यू हैव लीव एज इट इज तो ये फेल होगा तो फिर यहाँ पे जाएगा SD रूट्स में, ओके। सो यू कैन डिफाइन दैट। सो इन राउटिंग सिलेक्शन यू कैन डिफाइन प्राइमरी एंड बैकअप गेटवे फॉर ट्रैफिक। तो लोड बैलेंसिंग हो गया आपका, ओके। सो यहाँ पे आपका लोड बैलेंसिंग है, अगर 1 ISP फेल्स another विल टेक ओवर, ये आपका फेल ओवर हो गया यहाँ पे, सॉरी, बट यू कैन डू लोड बैलेंसिंग ऑल्सो। तो उसके लिए प्रोफाइल क्रिएट करेंगे आगे जाके, तो दोनों गेटवे होगा वो सिलेक्ट करेंगे, ओके, ऑटोमेटिक वो लोड बैलेंस कर देगा वहाँ पे। बट यहाँ पे हमें अभी तक क्या डिस्कस किया था, कोई पर्टिकुलर सर्विस, पर्टिकुलर यूजर, पर्टिकुलर ISP से जाना है, राइट, उसकी वजह से हमने ये SD-WAN कॉन्फ़िगर किया है यहाँ पे। यू कैन ऑल्सो दूसरा भी आप जैसे कि कोई ऐसी एप्लीकेशन है उसको लोड बैलेंस करवाना है तो अलग से एक रूल बना के यहाँ पे लोड बैलेंसिंग वाला प्रोफाइल सिलेक्ट करना है, जिसमें ये 2 ISP होगा, ये सेम ही ISP वही काम करेगा। एक जगह पे प्राइमरी बैकअप फेल ओवर चेक करेगा, एक जगह पे लोड बैलेंसिंग करेगा, एक जगह पे तो सिर्फ पर्टिकुलर ही ट्रैफिक अलाउ करेगा, जैसे कि सोशल मीडिया वेबसाइट, ठीक है, तो वो जो सबसे लोएस्ट वाला बैंडविड्थ होगा मेरा, ठीक है, मैं वहां से जाने दूंगा और कहीं से भी नहीं जाना है, और कोई भी ISP उसको यूज नहीं करना है अगर फेसबुक इंस्टाग्राम का ट्रैफिक आता है तो, ठीक है, प्रोडक्टिविटी के लिए फॉर एग्जांपल। सो इफ यू always want the traffic to be routed by a specific gateway, no other, you can optionally enable the override monitoring decision। अगर आपको लगता है कि दूसरे गेटवे से नहीं जाना है तो इसको टिक मार्क करना पड़ेगा, अदरवाइज लीव एज इट इज, ओके। टिक मार्क जब कॉन्फ़िगरेशन एनेबल, ठीक है, जब ऑलरेडी यहाँ पे डिसेबल दिख रहा है, कहीं पे बहुत सारी जगह पे आपको रूल्स पे कहीं पे दिखेगा, सो अगर वहाँ पे है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो सबके लिए एप्लीकेबल है, बहुत ही रेयर कंडीशंस में एप्लीकेबल होती है, तो बाय डिफॉल्ट वो डिसेबल होती है। सो वी हैव टू एनेबल इट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इट्स इम्पोर्टेंस। सो अगर उसका इम्पोर्टेंस पता चल गया देन हियर, अभी हमें पता चल गया, राइट, कि मुझे दूसरे गेटवे पे नहीं जाना है, इट्स ओके, तो मैं वहाँ पे यहाँ पे मैं एनेबल कर सकता हूँ।
तो दूसरा जो एक पॉलिसी अप्लाई करके देखेंगे, टेस्ट करके देखेंगे कैसे एक्चुअली वर्क करता है यहाँ पे। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वुड बी द गेटवे। ओके, सो सारे गेटवे आपको यहाँ पे राउटिंग में भी देखेंगे, वैन लिंक मैनेजर में भी आपको गेटवे वो जो आपका है ग्लोबल सेटिंग्स। ओके, ग्लोबल सेटिंग यानी सबके लिए एप्लीकेबल है। और यहाँ पे जो गेटवे दिख रहा है वो आपको गेटवे का स्टेटस, हेल्थ और वो सब आपको डिटेल मिलेगा, वेयर यू कैन मैनेज दिस गेटवे, लाइक मॉनिटरिंग करना है। ओके, जैसे मॉनिटरिंग यानी गेटवे स्टेटस है यहाँ पे, ठीक है, वो यू कैन सी, यू कैन यूज दिस गेटवे इन द SD-WAN पॉलिसी। सो दोनों सेम ही है, यू डोंट गेट कंफ्यूज। वो जो वैन लिंक मैनेजर था यहाँ पे, ठीक है, वो ये वाला और वो दोनों सेम ही, सिर्फ वो आपको अलग अलग जगह पे दिखा रहा है। ये कहाँ पे, अंडर नेटवर्क, और ये कहाँ पे, राउटिंग की जगह पे। सो बोथ आर सेम। ओके, सो गेटवेज, सो यू कैन कॉन्फ़िगर, हाँ यहाँ पे यू कैन क्रिएट मोर गेटवेज। जब हमने IPsec टनल इंटरफेस मैंने जो बताया था, राइट, तो जब आप उसके लिए गेटवे कॉन्फ़िगरेशन आता है, सारे डॉक्यूमेंट्स में दूंगा आपको, उसमें स्टेप्स लिखा हुआ है कि कैसे आपको क्रिएट करना है। सारे स्टेप्स है उसको ही फॉलो करना है, सेम, कुछ भी ऐसा नहीं अलग चीज करना है, सेम स्टेप्स फॉलो करोगे आपका टनल भी एस्टेब्लिश हो जाएगा, और जो हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस में जो PC है उसका RDP आप ले सकते हो। तो राइट, so you can take the RDP, not only RDP, I'm just taking the example, but you can take the services from head office and branch office। सिर्फ आपको वो डॉक्यूमेंट की एक लिंक दूंगा मैं आपको, यू हैव टू फॉलो दैट लिंक। इट्स नॉट वर्किंग, डोंट वरी, मैं लैब पे ही तो परफॉर्म करने वाला हूँ सब कुछ। ऑलराइट, सो यू कैन नो दैट, बट बिफोर दैट वी आर जस्ट गोइंग थ्रू सम थियरी पार्ट। ऑलराइट, और ये एग्जाम में सब आएगा। ओके, सो नेक्स्ट यू कैन कॉन्फ़िगर गेटवेज। SD-WAN में जाके भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो आप। अगर कोई नया गेटवे है, लेट्स से IP से एक गेटवे बन जाएगा, राइट, राउट मोड में, सो यू कैन गो टू देयर एंड यू कैन ऐड द गेटवे देयर। नाउ DNS एंड DHCP, तो फायरवॉल पे हम DNS, you can use Sophos Firewall as a DNS server. You can configure Sophos Firewall as a DHCP server. You can configure Sophos as a CA certificate authority device. ओके, तो तीनों सर्वर्स का परफॉर्म वो कर सकता है। ऑलराइट, बट जनरली तो इन हाउस ही होते हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट DNS एंड DHCP। सो बट फायरवॉल पे कैसे करेंगे, स्मॉल नेटवर्क के लिए अगर IP एलोकेशन करना है ऑटोमेटिक, ऑलराइट, तो कैसे करेंगे, सो वी विल डू विद हेल्प ऑफ DHCP। और जो DNS एज ए फायरवॉल एज ए DNS सर्वर भी यूज करेंगे, वो रिजोल्व करके लेके आएगा आपके लिए सारी वेबसाइट की IP। So we can use as a DNS resolver, we will configure as a DHCP server। Also हम देखेंगे पैकेट कैप्चर, देखते हैं कि कैसे डोरा प्रोसेस होती है, राइट। सबको पता होगा DHCP का जो नेगोशिएशन होता है, राइट, डिस्कवर होता है, रिक्वेस्ट होता है, फॉरवर्ड होता है। ओके, सो विल सी दैट होल प्रोसेस इन एक्शन, लाइव में देखेंगे कैसे पैकेट एक्सचेंज होता है, कैसे PC सेंड करेगा रिक्वेस्ट, फिर CLI में लॉग्स दिखेगा। ऑलराइट, लेट्स से इनकमिंग रिक्वेस्ट, देन वी विल हैव आउटगोइंग रिक्वेस्ट, ऐसे कितने पैकेट्स एक्सचेंज करेगा टू कॉन्फ़िगर टू गेट दैट IP फ्रॉम द DHCP सर्वर। ओके, कोई बात नहीं, देखते हैं आगे, नो वरीज। ओके, सो DNS कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल ऑन द फायरवॉल, ये आप DNS की सेटिंग में जाओगे, यू विल गेट इट। सो लेट्स से यू वांट टू कॉन्फ़िगर DNS सर्वर, कहाँ से उसको कॉन्फ़िगर करना है, यू कैन सिलेक्ट द ऑप्शन कॉन्फ़िगर DNS फ्रॉम द DHCP, या फिर आपका कोई अपस्ट्रीम डिवाइस है वहाँ पे DHCP चल रहा है तो वहाँ से वो उठा लेगा। ऑलराइट, if you have PPU connection then it will select you have to select that option। ये grey out इसलिए, अगर आपका PPU connection नहीं है तो वो यूज में नहीं, that is the reason it is grey out, you cannot do anything on this। but if you have PPU connections then automatic just आपको select करना है, तो automatic IPs आ जाएंगे, alright, from your upstream router। अगर स्टैटिक है, ओके, ये ऑटोमेटिक होगा दोनों के लिए। अगर आपको स्टैटिक DNS देना है, लेट्स से आपके पास खुद का DNS सर्वर है, ओके, इन हाउस, यू कैन पुट दैट IP, यू कैन कॉन्फ़िगर DNS 1 2 3 DNS सर्वर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। लेट्स से अगर ये फेल हो जाता है रिजोल्व करने में, देन इट विल आस्क दिस DNS सर्वर एंड दिस, सो ऑन। सो दिस इज फॉर IPv4। ओके, तो IPv6 के लिए DNS सेटिंग्स करना है, ये सपोज इट इज सपोर्टेड। So that is all
for DNS settings. So Sophos Firewall needs to be able to resolve the host name and the IP addresses. Okay, so आप टेस्ट करके देख सकते हो whether it is working or not. तो आप जैसे DNS सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं DNS सर्वर में, वैसे ही फायरवॉल पे आपको ऑप्शन मिलेगा. यू कैन पुट वन नेम, एक IP एड्रेस डाल दो और देखो कि वो चलता है कि नहीं चलता है, एंड लेट मी नो. ओके, देन आई विल परफॉर्म इट लेटर. ओनली DNS. ओके, ओनली आपको DNS करना है, क्योंकि जनरली DNS सर्वर्स तो होते हैं, उसको हम रिले करेंगे DNS रिक्वेस्ट, एंड DHCP भी रिले करेंगे, क्योंकि हम सोफोस एज अ DNS और DHCP एंड CA वो हम सर्वर्स से करवाते हैं. ओके, जनरली कंपनीज में डेडिकेटेड सर्वर्स होते हैं, सो वी विल नॉट do it from the firewall. Okay, but for testing purpose, yes, of course we will do it from the firewall. DNS configure करेंगे, DHCP भी करेंगे और CA भी यूज करने वाले हैं हम लैब पे, तो पता चलेगा कि कैसे वो वर्क करेगा यहाँ पे. So during the initial setup, you will set a DNS server. You can modify under configure network and DNS में जाके you can change it. Here you set up how Sophos Firewall open its DNS server and set up the 3 DNS servers statically for IPv4 and IPv6. Now we have some additional options. All right, so जो मैंने बोला था Sophos में आप DNS records create कर सकते हो. You can click on add. Okay, जैसे कि उसका नाम है, आपका NTP server का नाम है. Okay, so you have to click on add, give the name, okay, domain name and the name of the IP. Okay, just like this, and your DNS record will be get stored. Okay, और Sophos Firewall as a जो आपका PC है उस पे Sophos Firewall को आपको as a आपका जो DNS settings है उसमें Sophos Firewall को DNS settings में डालना पड़ेगा रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि वो कह रही है कि यहाँ पे आएगा, and it will resolve this into IP address and IP address into DNS server and so we'll see this in working. But generally तो क्या होता है कि organizations में if they don't use, in rare conditions, they use, in very special case, they use firewall as a DNS server or DHCP server. Even the CA is the CA तो I think use ही नहीं करते क्योंकि वो थर्ड पार्टी ही रहता है. Okay, certificate authority. तो हम सर्टिफिकेट अथॉरिटी के बारे में कोर्स में तो डिटेल में नहीं है, बट विल मेक द यूज ऑफ द थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट के सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्या होता है, और वो जनरली क्या होता है. अगर शॉर्ट में आपको बोलूँ, वी हैव टू ब्राउजर पे सर्टिफिकेट जो सिक्योर कनेक्शन होता है, राइट, TLS कनेक्शन में हमें जो फायरवॉल जो ब्राउजर है उसको ट्रस्ट करवाना है, दैट इज द जेन्युइन वेबसाइट. सो वी विल यूज द सर्टिफिकेट. सो सर्टिफिकेट साइन करवाना पड़ता है, एंड वी हैव टू जनरेट सेल्फ साइन सर्टिफिकेट होगा. ओके, और CSR होगा. सो CSR सर्टिफिकेट जनरेट करके वी हैव टू गिव टू द सर्टिफिकेट अथॉरिटी, दे विल वैलिडेट इट. ओके, यानी वो साइन करेगा. Steps you can see on some, I will show you some steps how that negotiations happens, and we will see how we'll sign the certificate and वो upload करना पड़ेगा यहाँ पे वो sign किया हुआ certificate. So that is about certificate authority. Similarly तीनों servers हम देखते हैं फिर lab में. Alright. Sophos Firewall acts as a DNS server using its configured DNS server to resolve and respond to the request. So you can set how Sophos Firewall can handle the preference between IPv4 and IPv6 lookup. So you can configure DNS records on the Sophos Firewall itself. So you can include a reverse lookup from IP to get address back to the host. So reverse lookup पैक करोगे तो इस जैसे मैंने बताया IP into address, IP address, name into IP address and IP address to अगर name चाहिए, so you have to, okay, यहाँ पे tick mark कर देना. It's fine if you don't tick mark, if you don't want to use the reverse lookup. Okay, so अगर routes करवाना है, alright. So next is yes, DNS route request. If you have third party DNS, then yes, then you click on add and add your DNS server. ओके, जो इन हाउस होगा आपका या फिर आउट बाहर होगा, जो भी है आपको ऐड करना है, जो आपका DNS सर्वर है उसको रिले करवाना है. यू कैन जस्ट क्लिक ऑन ऐड एंड सेट DNS सर्वर IP to look up for the network. All right, so you can use the route like a relay.
So if a Sophos firewall is configured to use your ISP DNS server, so you can it can resolve the host on your internet. You can override the specific domains and networks by configuring DNS route request. All right. So particular request अगर भेजनी है ISP से भेजना, you can add it, or you can send it from your in-house DNS. Right. A DNS request route defines what DNS server should be used to look up host to in selected domain. So request routes can be created for reverse lookup to define what DNS server should be used for lookup IP address and selected networks. So generally, let's say we have engineers, all right, who is handling the DNS server, DSCP server, and the certificate authority. We are handling firewall. So just we have to route the request for the DNS server towards their server. That's it. So it will work. Now we have dynamic DNS. That is a different thing. Dynamic DNS. Let's say if I want to explain you, let's say you have dynamic IPs. Okay, let's say PPA connection लिया, right? आपने यहाँ पे PPA connection दिया हुआ है और उसका IP change रहता होता है. So आप जब what is my IP करते हो, so IP change होता रहेगा आपका, right? उस सिचुएशन में हम यूज कर सकते हैं DDNS. ऑलराइट, तो DDNS क्या होगा, जैसे कि यू कैन देयर आर सम सर्विस प्रोवाइडर्स. ओके, सर्विस प्रोवाइडर के बाद हमें परचेज करना पड़ेगा. ओके, परचेज करने के बाद ही हम इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क. ओके, सो यस, इफ यू हैव डायनेमिक आईपीस, डायनेमिक आईपी आईएसपी का जो आईएसपी का कनेक्शन लिया उसमें एक डायनेमिक आईपी है. In that case, the IP is not stable नहीं रहती, right? चेंज होती रहती है. तो उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे? विद द हेल्प ऑफ नेम. तो नाम तो सेम ही रहेगा. ओके, लेट्स से नेम इज दिस. ओके, लेट्स से netgui.com. तो netgui.com यही रहेगा. जिसका IP चेंज होता है वो पोर्ट में सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, जिसका IP चेंज होता रहता है. तो नाम तो सेम ही रहेगा, राइट? IP भले चेंज होती रहे, वो रिजोल्व करके आपको दे देगा. दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द DNS सर्विस प्रोवाइडर. These are the list. ये जो लिस्ट यहाँ पे जो दिख रही है वो लिस्ट में से ही आपको उनको ही कॉन्टैक्ट करके परचेस करना पड़ेगा आपको DDNS. ओके, ये कब काम आएगा? लेट्स से अगर आपके पास स्टैटिक आईपी नहीं है, डायरेक्टली फायरवॉल पे, ओके, अपस्ट्रीम राउटर पे, और आपको आईपी सेट करना है कॉन्फ़िगरेशन, तो DDNS दे सकते हो, राइट? यानी नेम दे सकते हो. यू कैन गिव लेट्स से netgui.com. ओके, और यू कैन से ipsec.netgui.com. ओके, वो जो रिजोल्व करके आता है वो फायरवॉल का आईपी है, सोफोस का फायरवॉल जो वैन कनेक्शन है. देन यू कैन एक्सेस द फायरवॉल विद हेल्प ऑफ दैट DDNS. ओके, नाम से एक्सेस कर सकते हो, आईपी एड्रेस से एक्सेस करते हैं अभी तक. अगर ये लेट्स से इफ यू आर स्टिल वर्किंग कोई भी राउटर, ओके, नॉट ओनली सोफोस फायरवॉल, आप कोई भी राउटर यूज करो, बाहर से एक्सेस करो, पब्लिक आईपी से एक्सेस करो, राइट? भले वो स्टैटिक है, नो वरीज, डायनेमिक नहीं है, बट स्टिल यू कैन बाय दिस डोमेन्स फ्रॉम दिस सर्विस प्रोवाइडर, और आप उसको नाम से एक्सेस कर सकते हो, राइट? So that can be integrated with Sophos also. So you can go to configure network and DDNS. Okay, so I think it will be, the options would be here under network. Okay, I'll show you that. It may be here. तो वहाँ पे जाके ऐड करना है DDNS में. So once you click on add, give the host name, okay, जो आपने परचेस किया है, give that name, select that interface. Okay, use the default settings, or if you want to net it with public IP, we'll see when to use these two options. Then select the provider. Okay, जैसे कि आपने नो आईपी या फिर गूगल DNS से सर्विस लिया है, तो आपको यूजर नेम पासवर्ड उसका डालना है, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड. देन इट विल गेट इंटीग्रेटेड और आपको फायरवॉल बाहर से एक्सेस मिल जाएगा. ओके, सो इफ यू हैव enabled the WAN access, otherwise it's fine. Or you can use in other services like IPsec VPN में आप यूज कर सकते हो, रिमोट यूजर में यूज कर सकते हो, राइट? कैन यूज इट इन मेनी वेज. ओके, सो नेक्स्ट इज लेट्स से आपने ये आपने दूसरा लिया, आपने DDNS एक आपने पॉइंट किया आपके पोर्ट 2 पे, तो आप एक ही नेम 2-3 पॉइंट पे भी कर सकते हो विद हेल्प ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर. आपको वहाँ पे उसके सेटिंग्स चेंज करने पड़ेंगे. ओके, इसका एक्सेस आपको मिलेगा, इसका डैशबोर्ड होगा, वहाँ पे आपको ऐड करना है, वहाँ पे सिलेक्ट करना है, एंड यू विल गेट इंटीग्रेटेड विद
those WAN interfaces. ओके, फिर आप इसको रिमोट यूजर की सेटिंग्स में जब हमारा मॉड्यूल आएगा रिमोट यूजर वाला, हम देखेंगे ये कहाँ पे इसका यूज हो रहा है. ओके, तो जैसे कि एक एग्जांपल है, यू आर कनेक्टिंग रिमोट यूजर्स. ओके, रिमोट यूजर्स से आपके पास 2 ISPs है. अभी लेट से वहां पे एक ISP डाउन हो गया, तो यूजर को बिना पता चले उसका तो कनेक्शन ऑन ही रहना चाहिए, राइट? वो घर से काम कर रहा है, इज वर्किंग ऑन वन सर्वर, तो ऐसा नहीं कि वो डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए. ओके, फेल ओवर होना चाहिए, राइट? सो कैसे वो फेल ओवर होगा, whether it is working or not. Okay, so you might have faced this issue. How we can fix it, we will see that. Okay, but yes, of course we might have to purchase some services, okay, to make this work. If you, अगर आपके पास कोई नेटेड डिवाइस है या फिर कोई डायनेमिक IP जो IP चेंज होती रहती है, then of course you need to buy DDNS. If those who are having static IP, okay, it's fine, you don't have to purchase DDNS. It's completely, it will work with the static IP, static public IP. So if your ISP assign the IP address to DSCP, okay, so जो PPU connection है, yes of course वो तो DSCP उसका वहाँ पे रन हो रहा होगा. So that is the dynamic, यानी IP चेंज होती रहेगी. So जब भी हम अपने राउटर में भी, अगर हमारे पास PPU कनेक्शन है, घर पे भी है, so you can check what is my IP. You will see the IP will getting changed the day after day, all right? So a dynamic DNS provider, so you can use the dynamic DNS service provider to host DNS records for this IP address, and have the firewall updated their IP address associated with it with the help of the DNS. So to configure dynamic DNS, you can either use the host name and select the WAN interface it should resolve to, and you need to select your provider, जो provider से साथ आपने purchase किया, and you have to enter your credentials. Okay, credentials वही होंगे जो आपके provider पे login करते हो, वही same credentials आपको use करने. Okay, I think एक हम ये use करेंगे, ये 30 days no IP वाले free देते हैं. So you can go to the website, okay, and just create the account there. You can go to the Google पे जाके no IP लिखना, no IP/no/IP, तो वेबसाइट आ जाएगा, and then you can create that account, create करो वहाँ पे, and you can use this in the lab. आप लैब से भी बाहर से सेम for 30 days you can use this. Okay, बाकी तो शायद कोई फ्री में कोई दे नहीं रहा है. I think only no IP is there. You can try. Okay, लैब पे करेंगे, मैं तो करने ही वाला हूँ, but yes of course if you have the access to the firewall, अगर आपके पास firewall का access है Sophos का अभी, तो आप अलग से एक अकाउंट नो IP में जाके क्रिएट करके फिर वहाँ पे कॉन्फ़िगर करो. ओके, तो हो जाएगा. Now to configure dynamic DNS, you can enter the host name and select WAN interface that it has to resolve to. You can you then need to select your provider and enter your credentials. So okay, so पहले तो Sophos देता था फ्री में myfirewall.co करके, but अभी now they have stopped the services. So here last, I don't believe that option will be available. Okay, so just ignore this. Okay, so next is DHCP server. कैसे DHCP server configure करेंगे? DNS देखा, right? Now we will see DHCP and dynamic IP address. You can dynamic DNS कहाँ पे था? यहाँ पे. Okay, and the same under configure network. तो वहाँ पे DNS, DHCP zones interface and dynamic DNS है, right? We will look into these other 3 options later on. Okay, so this is the RF table and this is the IP tunnel. We will see later on. Now DHCP server, कैसे हम DHCP configure करेंगे? firewall पे click on add and you will get the option to configure the DHCP server. It is very simple. By default एक DHCP server होता ही है, right? firewall पे ये जब आप DHCP पे click करते हो तो you will get some insight what is exactly configured on DHCP server. So name, the interface, जो interface पे DHCP रन हो रहा है, let's say LAN port पे है, ठीक है आपका, ये तो bridge है, LAN port भी हो सकता है, ये Wi-Fi है, and so on. जो पोर्ट पे कॉन्फ़िगर किया है वो पोर्ट आपको दिखेगा यहाँ पे ब्रिज 0, यानी दो पोर्ट को मर्ज किया हुआ है, उसकी वजह से BR0 दिख रहा है डायग्राम में. यहाँ पे पोर्ट 1 हो सकता है, पोर्ट A हो सकता है, और ओके कुछ भी हो सकता है. Now you can see lease details.
तो आपने जो लीज रखा हुआ है राइट कि ये आईपी से आईपी के बीच में लीज होना चाहिए, ओके, तो आप वो भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि 17 से 20 तक, एंड देन यू कैन 50 to 100, ओके, यू कैन डिफाइन दैट थिंग्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसी पीसी को यही आईपी मिलना चाहिए, सो यू कैन कॉन्फ़िगर स्टैटिक आल्सो। सो दिस इज स्टैटिक अवेलेबल। अभी यहाँ पे डैश है, दैट मीन्स वो वाला मैं जो बता रहा हूँ अभी कि इस पीसी को यही आईपी मिलना चाहिए, वो नहीं कॉन्फ़िगर है, बट यू कैन ट्राई, यू कैन कॉन्फ़िगर दैट, ओके, ये जो सर्वर है उसको यही आईपी मिलना चाहिए, ओके, सो स्टैटिक हो जाएगा उसमें। ओके, आईपी वर्जन का डिटेल मिलेगा, कौन सी वर्जन है, IP4 है, ओके, ऑब्वियस, एंड द स्टेटस। यू कैन ट्रबल शूट करने के लिए इसको टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हो, ऑलराइट, बट yes, of course, if it is everything is working, don't make any changes. If for troubleshoot, you can do some testing here. Okay, once you click on this pencil sign, you will able to edit the DSCP settings, and delete options is also available. You can select and delete, or you can directly click on the icon of delete and it will get deleted. So Sophos Firewall can provide DSCP to any network that are connected to जो भी नेटवर्क कनेक्टेड है वहाँ पे आपको डीएससीपी रन करवाना है, ओके। डीएससीपी क्यों रन करवाते हैं, ऑलराइट, आई नो, दोज हु आर न्यू उनके लिए बता दें, तो लेट्स से आपको मैनुअली नहीं स्टैटिक कॉन्फ़िगर करना है, मैनुअली एक एक पीसी पे जाके आपको आईपी नहीं देना है, तब हम डीएससीपी कॉन्फ़िगर करते हैं, ऑलराइट। तो ट्रबल शूट में भी यही होता है, जैसे कि डीएससीपी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं बट आईपी नहीं मिल रहे हैं, तो क्या करेंगे वहाँ पे उस समय ट्रबल शूट के लिए। सो क्या करेंगे, एक स्टेप तो है स्टैटिक करके देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, राइट। अगर स्टैटिक से भी नहीं चल रहा है तो फिर कुछ और इश्यू है, वो हम देखते हैं बाद में, बट अगर स्टैटिक से कर दिया और आपका पिंग कनेक्टिविटी हो गया और डीएससीपी से आईपी नहीं मिला तो फिर अलग से स्टेप है। सो डीएससीपी सर्वर में इशू, ओके, या फिर ये सर्विस उसका रिस्टार्ट कर दो तो शायद हो जाए, ओके। नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फायरवॉल, बट एनी ऑफ द डीएससीपी सर्वर जहाँ पे भी जो डिमांड चल रहा है, राइट, सर्विसेज होती है डीएससीपी सर्वर, उसको जनरली यहाँ पे डीमंस बोलेंगे, तो डीमंस उसको रिस्टार्ट कर दो तो इट माइट वर्क। उसका रीजन फाइंड आउट करेंगे लॉग से, लेट्स से आईपी लीज टाइम में कुछ इशू है, या फिर डीएससीपी सर्वर हैंग हो जाता है, क्रैश हो जाता है, राइट, करप्ट हो जाता है, एंड मेनी मोर रीजंस आर देयर, बट विल सी दैट। बट स्टैटिक से हो गया, दैट मीन्स जो पहला ट्रबल शूट है हमारा वो सक्सेसफुल है, राइट, के स्टैटिक किया हो गया, डीएससीपी से आईपी नहीं मिला, एंड यस इट विल वर्क, ओके। ऐसा नहीं है कि ये करना ही पड़ेगा, बहुत रेयर कंडीशंस होती है जहाँ पे ये ट्रबल शूट करना पड़ेगा फॉर टू चेक आउट वेयर इज द एग्जैक्ट इशू। जनरली चलना ही चाहिए सब कुछ। नाउ सोफोस फायरवॉल एज ए डीएससीपी किया था ना, अभी करेंगे रिले, यानी सोफोस एज ए डीएससीपी हम नहीं कर रहे, हमको हमारे पास इन हाउस सर्वर है अगेन, जैसे डीएनएस था, तो वैसे ही आप उसको राउट कर दो कि भाई यहाँ से आपको आईपी का रिक्वेस्ट भेजना है और उठाना है, ऑलराइट। सो वी विल ऐड दैट डीएससीपी सर्वर, वी हैव टू ऐड, क्लिक ऑन ऐड अंडर डीएससीपी रिले, वहाँ पे ऑप्शन है, वहाँ पे लिखा होगा रिले अंडर डीएससीपी, हियर नीचे ही है, वहाँ पे पेज पे देखते हैं भी लैब में जाके। सो देर इज अ रिले एंड देर इज ऐड बटन, ऐड बटन पे क्लिक करना है और जो डीएससीपी सर्वर का आईपी है सिर्फ हमें ऐड करना है, ओके। नाम दे दो, नाम देना है, और जो इंटरफेस पे है, ओके, पोर्ट लैन पोर्ट पे है फॉर एग्जांपल, तो लैन पोर्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है, फिर डीएससीपी का आईपी देना है और सेव पे क्लिक करना है, इट्स डन, ओके। सो आईपी एड्रेस विल, जितनी भी रिक्वेस्ट आएगी वो आपके सर्वर को फॉरवर्ड कर देगा फायरवॉल, अगर वो बीच में आ रहा है तो ठीक है। सो Sophos Firewall can act as a DSCP relay, so bypassing DSCP request from your client to their DSCP server. Now another role profile is device access and administration. So डिवाइस को कैसे एडमिनिस्ट्रेट करेंगे हम खुद ही, ओके, एज ए नेटवर्क इंजीनियर और एडमिनिस्ट्रेटर। सो वी हैव डिवाइस एक्सेस ऑप्शन, तो इसका भी बहुत यूज करेंगे यहाँ पे। सो वी हैव लोकल, ये जो आपको सेटिंग्स दिख रही है, ऑलराइट, सो दिस इज योर ग्लोबल सेटिंग्स, तो ये जो एप्लीकेबल होगी वो सबके लिए एप्लीकेबल होगी, ऑलराइट। लेट्स से आपने लैन पे HTTPS एनेबल कर दिया तो सब लोग फायरवॉल एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबली आपने एनेबल किया हुआ है, ओके। अगर आपने SSH भी किया तो फायरवॉल का SSH ले पाएंगे,
ओके पासवर्ड नहीं होगा तो सबको आता है कैसे करेक्ट करना है, बट दिस इज द ग्लोबल सेटिंग्स ऑफ द फायरवॉल. सो सम आर रिक्वायर्ड, सम आर नॉट. लेट्स से ये तो इसकी जरूरत नहीं है, तो हम इसका एक सॉल्यूशन है, हम आगे जाके एक रूल बनाएंगे कि जैसे कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ राइट, मेरे पीसी पे ही एक्सेस होना चाहिए, तो मैं एक अलग से रूल बनाऊंगा मेरे पीसी के लिए, नीचे ही है. ओके क्लिक ऑन ऐड एंड वहाँ पे आईपी डालना है और कौन कौन सी सर्विस देनी है टिक मार्क करूंगा, तो मेरे को एक्सेस मिलेगा और किसी को एक्सेस नहीं मिलेगा, वो ट्राई करेगा पिंग करेगा, नहीं मिलेगा उसको. ठीक है, अगर पिंग एनेबल है तो पिंग उसको डिसेबल कर दो एंड दिस इज द सिक्योर वे. बट लेट्स से देर आर सम, दिस इज द एडमिन सर्विसेज एक्चुअली. सो यहाँ तक आपका एडमिन सर्विसेज है यहाँ, राइट, जो हम संभालेंगे. अगर यहाँ पे एनेबल ग्लोबली कर दिया तो सबके लिए एप्लीकेबल होगा. बट देर आर ऑथेंटिकेशन सर्विसेज. ये वाली जो सर्विसेज है वो तो ग्लोबली रखना पड़ेगा. कहाँ पे, जब हम कैप्टिव पोर्टल यूज करेंगे, यानी कैप्टिव पोर्टल पेज, यानी आपको एक पॉपअप मिलेगा कि भाई यूजर नेम पासवर्ड डालो. ओके तभी आपको इंटरनेट एक्सेस या फिर जो भी रिसोर्स का एक्सेस आपको मिलेगा, या नेटवर्क पे आप एंटर कर सकते हो. सो कैप्टिव पोर्टल ऑटोमेटिक, अगर आपके पास रेडियस सर्वर है, एलडेप सर्वर है, एडी सर्वर है, ठीक है, अगर वो करना है, ठीक है, तो इसको भी टिक मार्क करना पड़ेगा दोनों को. सो यू कैन ऑथेंटिकेट द यूजर्स. अच्छा, और यहाँ पे क्रोम बुक, इसकी तो बहुत मैंने अभी तक तो नहीं देखा है, बट क्रोम बुक होती है राइट, उसके उससे ऑथेंटिक आपके लेट से 50 यूजर है और सबके पास क्रोम बुक है. ओके इन दैट केस आपको ऑथेंटिकेशन करवाना है सबका, देन यू कैन यूज दिस. अगर विंडोज है तो आप क्लाइंट ऑथेंटिकेशन कर सकते हो. ओके और ये एलडेप के लिए भी रहेगा, रेडियस के भी रहेगा, सबके लिए रहेगा. राइट, सो दिस इज दी सेटिंग्स फॉर दैट. लैब पे हमारे पास एडी सर्वर है, सो हम ये यूज करेंगे. राइट, ऑथेंटिकेशन के लिए कैप्टिव पोर्टल से स्टार्ट करेंगे. ओके देन यू कैन सी नेटवर्क सर्विसेज. अब नेटवर्क सर्विस में क्या है, एक तो पिंग है और डीएनएस है, दो चीज है कि कौन से जोन पे अलाउड करना है. तो अभी कौन से जोन पे अलाउड है, लैन और 5 पे डीएनएस और पिंग अलाउड है. यानी तुम आप पिंग कर सकते हो, फायरवॉल को पिंग कर सकते हैं या फिर एक दूसरे को पिंग कर सकते हैं एंड सो ऑन. बट अगर ये डिसेबल है, आपने डिफाइन किया पर्टिकुलर एसीएस, तो वो ही रूट लेगा. सो देर इज अ नेटवर्क सर्विसेज एंड देर आर अदर सर्विसेज. ओके सो अदर सर्विसेज है नेटवर्क वायरलेस प्रोटेक्शन, SSL VPN, वेब प्रॉक्सी है, देन वी हैव यूजर पोर्टल, डायनामिक राउटिंग, SNTP रिले, SNMP. Okay, so yes, if you are using firewall as a web proxy, SSL VPN, यूजर पोर्टल सोफोस का होगा, जैसे कि यूजर उसमें लॉगिन करके देख सकता है कि मैंने कितना डेटा यूज किया है, मैंने कौन कौन सी वेबसाइट विजिट की है. ओके उसका अगर कोई ईमेल स्कैन हुआ है फायरवॉल से, अगर वो क्वारंटीन में है, अगर उसको रिलीज करना है तो वो यहाँ से करेगा. ओके डायनेमिक राउटिंग में अगर आपने स्टैटिक यूज नहीं कर रहे हो और OSPF रन करना है, RIP यूज कर, डायनेमिक राउटिंग यूज करना है, ओके वो प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, तो आपको ये एनेबल करना पड़ेगा जिस जोन पे आप करना है. जैसे कि स्विच और फायरवॉल के बीच में आपको OSPF चलाना है, तो क्या करोगे, इसमें ये एनेबल कर दोगे. अगर आप MPLS में वैन वैन MPLS है, अगर वहाँ पे MPLS पे BGP चल रहा है, ओके तो आपको ये टिक मार्क करना पड़ेगा, तो ही वो उसके राउट्स लेगा. ओके और उसको BGP भी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी एंड देन फायरवॉल रूल्स लास्टली. सिमिलरली अगर आपके पास अगर बाहर ईमेल सर्वर है, रिले करना है, जैसे अभी DHCP रिले किया था ना, वैसे ही अगर SNMP मेल सर्वर, ओके अगर वो करना है तो आप उसको एनेबल कर सकते हैं. यहाँ पे SNMP सर्वर हम PRTG यूज करेंगे. ओके सो वो तो एनेबल ही है बाय डिफॉल्ट. अगर वेन साइड है तो वेन साइड एनेबल करना है, अगर रिक्वेस्ट भेजनी है तो. और SNMP भी कॉन्फ़िगर करेंगे. SNMP कॉन्फ़िगर कैसे करना है, वो स्टेप्स भी अवेलेबल है अपकमिंग लैब्स में. तो डाउट्स होंगे वो आगे जाके भी क्लियर हो जाएंगे, जो मैं अभी भी डिस्कस कर रहा हूँ. अगर नहीं दिखाया है तो बाद में वो आने ही वाला है वो चीज़. ओके सो लेट मी रिमूव दिस. ओके सो दिस इज डिवाइस एक्सेस टिल नाउ. ओके तो नीचे ACLs क्रिएट करेंगे फॉर सिक्योर कनेक्शंस. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. So device access, when you create a zone,
you can configure which service it can access on the Sophos firewall. All right, and this can also be managed with the device access page for the all zone. अभी all zone कर रहे हैं, ठीक है, फिर उसको particular करेंगे. जैसे particular में मैंने बोला अगर हमने वो ग्लोबली कर दिए यहाँ पे तो सबके लिए होगा, उसको डिसेबल कर दो, लैब पे भी डिसेबल कर देना, तो जो ये फाइल का एक्सेस है वो चला जाएगा. ठीक है, तो पहले डिसेबल मत करना, पहले हम रूल कॉन्फ़िगर करेंगे. लेट्स से क्लिक ऑन ऐड और रूल का नाम दे दो लेट्स से एडमिनिस्ट्रेटर्स. ओके, जोन सिलेक्ट करना है, लैन जोन यहाँ पे तो है वैन बार से एक्सेस के लिए, इधर लैन सिलेक्ट करना है. यू टू क्लिक हियर, यू विल गेट द ऑप्शंस. उस ऑप्शन में से आपको वैन जोन लैन सिलेक्ट करना है. देन सोर्स जो आपका पीसी का आईपी जहाँ से ही हम सोफोस का जीओ एक्सेस करना है. ओके, वो आईपी तो डाल दो यहाँ पे. ओके, अगर आपके पास मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटर L1 L2 इंजीनियर्स हैं तो उसके सिस्टम का भी आईपी यहाँ पे डाल दो. डेस्टिनेशन होस्ट आप इट्स ओके एनी चलेगा. एंड सर्विस HTTPS और SSH. ओके, बाय डिफॉल्ट ड्रॉप होता है तो उसको एक्शन पे लाके फिर सेव करना है. देन रूल क्रिएट हो जाएगा ऐसे. दिस इज द रूल, और ये रूल को क्लिक किया तो एक्सपांड होके ये दिख रहा है यहाँ पे. तो ये वैन जोन से अगर आपको लेट्स से बाहर से आपको आपने वैन जोन ये जो है राइट, ये वैन जोन यहाँ पे डिसेबल ही है राइट, तो यहाँ पे कोई अटैक नहीं होगा आपका. बट आपको आपके घर से आप ऑफिस में काम करो, आपके पास फाइल का आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, आपको बाहर से एक्सेस करना है. ठीक है, तो ACL से कैसे करोगे, ACL की बात कर रहा हूँ. ACL से कैसे करोगे, आप क्या करो, सोर्स जोन वैन करना है. जो सोर्स नेटवर्क है यहाँ पे आपका जो घर से जो काम करे वहाँ का आईपी डालना है. डायनेमिक है तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा, स्टैटिक है तो डाल दो. स्टैटिक आईपी डालना है. अगर एनी और सर्विसेज HTTP SSH एंड एक्सेप्ट, तो आपके घर पे विदाउट ये जो एनेबल किया है उसके, yes of course as per the rule you will get the access of the firewall. Now घर से पब्लिक जनरली तो डायनेमिक आईपी हो सकता है, बट इफ यू हैव स्टैटिक आईपी देन यू कैन यूज इट. अगर बाहर से फाइल एक्सेस करना है तो मैंने सोफोस सेंट्रल आपको रजिस्टर करवाया था, फ्री ट्रायल वर्जन राइट, वो तो फ्री है, उसके लिए लाइसेंस नहीं चाहिए. अगर आप करंटली भी काम कर रहे हो तो भी लाइसेंस नहीं चाहिए उसके लिए. अगर फाइल को मैनेज करना है बाहर से लाइक SD-WAN करना है या फिर मैनेज करना है, अपडेट करना है, बैकअप्स लेना है, तो आप सब कुछ वो कर सकते हो सिक्योरली. तो ये दूसरा दो ऑप्शन है हमारे पास फाइल को सिक्योरली एक्सेस करने के लिए. एक तो लोकल ACL अगर स्टैटिक आईपी है तो डाल दो और बाहर से आपको एक्सेस मिल जाएगा. ओके, और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर है लेट्स से वो घर से भी काम करते हैं, अगर उनको भी एक्सेस करवा तो आपको आईपी यहाँ पे आईपी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो. ओके, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो आईपी लिस्ट, और सारी पब्लिक आईपी डाल दो सारे यूजर्स की, जितने एडमिनिस्ट्रेटर है आपके, तो उनको एक्सेस मिल जाएगा. अगर नहीं चलता है दैट मीन्स आईपी चेंज हो गया. ओके, यहाँ पे तो आईपी होगा बट हो सकता है यूजर कैन से दूसरा आईपी बता रहा हूँ. ओके, सो यू कैन ट्रबल शूट. ओके, लॉग्स देखेंगे लॉजिकली तो यहाँ पे देखेंगे भाई आईपी है क्या नहीं. ओके, अगर है तो नहीं चल रहा है तो भी अलग से इशू हो सकता है, वी विल सी दैट, बट जनरली नहीं होगा. ओके, सो लोकल ACL एक्सेप्शंस, तो ये जनरली ACLs ये जो हम क्रिएट कर रहे हैं ये डिवाइस के लिए ही है. ओके, ऐसा नहीं फायरवॉल रूल है, ये फायरवॉल रूल नहीं है, ये इस लोकल ACLs है, ये डिवाइस के लिए है पर्टिकुलर. ये आप उसमें दूसरा कुछ नहीं कर सकते. जैसे कि डायनेमिक राउटिंग चलाना है या फिर यूजर पोर्टल यहाँ पे एनेबल नहीं रखना है. ओके, बाहर से किसी यूजर को एक्सेस देना है, बहुत सिक्योर करना है, तो वो सब चीजें आपका लोकल ACL में आप डाल सकते हो. ओके, और अगर आपको ऐसा लगता है ये दिस इज नॉट अ सिक्योर वे, ओके, ये भी सिक्योर नहीं, ये भी ग्लोबली सबके लिए एक्सेसिबल है यूजर पोर्टल. तो पब्लिक आईपी से अगर एक्सेस करोगे तो आपको यूजर पोर्टल आ जाएगा राइट, तो अटैक कर सकते हो उस पर. यस, और बग भी है वैसे, वी विल सी दैट कैसे सिक्योर कर सकते हैं इसको. सो लेट्स सी यूजर पोर्टल किस लिए था, वो सबको शायद जिनको नहीं पता है, यूजर पोर्टल यूजर्स डाउनलोड कर सकते हैं जैसे कि उसको बाहर से कनेक्ट करना है. ठीक है, लोकल नेटवर्क जैसे ऑफिस में काम कर रहे हैं वैसे ही वो बाहर से काम कर सकता है, बट उसको पहले पहले यूजर पोर्टल से लॉगिन करके EXE डाउनलोड करना पड़ेगा. एंड देन योर
that user has to run that exe, that is VPN generally. तो VPN कनेक्ट करेगा जो IP सेट है या SSL है, जो भी उसके ऊपर जो प्रोफाइल होगी ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगी, and then can access the internal resources. और लैब पे तो मीन्स आगे मॉड्यूल पे, बट currently we are going through all the options available. All right, so local ACLs, so you may not always want to enable or disable a service for the whole zone. Okay, so in this case you can create a local service ACL exception rules. ये रूल होंगे इसके लिए, ये भी एक टाइप का फायरवॉल रूल है, बट फायरवॉल के लिए सिर्फ फायरवॉल जो रूल्स होंगे हमारे रूल्स एंड पॉलिसी में, वो हम दूसरी वे से डिफाइन करेंगे, इन एंड आउट. So in this example shown here, we are allowing the web access of web admin and SSH from the WAN zone, but only from the public IP address of the head office. तो head office यहाँ पे जो example है वो head office का डाला हुआ है कि head office के ही IP, जो अगर branch office में मैं हूँ, ठीक है, अगर मुझे उसका WAN access चाहिए तो मैंने वहाँ पे उसका IP डाला हुआ है. ओके, सो मैं वही IP जो head office का IP है वही access कर पाएगा वहाँ से. ओके, vice versa. You can just add it vice versa and you will get the access. So यहाँ पे head office का public IP address डाला हुआ है. So head office का जो firewall है, ठीक है, वो मुझे access मिलेगा. Okay, branch office पे. Okay, so next is SSH public key authentication. Now अभी जो मैंने putty application लिया था, right, मैं उसमें username password डालता हूँ, right, तो without doing that I can do with help of public authentication key. Alright, so we will use this. तो हम क्या करेंगे, पुट्टी वेबसाइट उसमें डाउनलोड करेंगे, पुट्टी जैन एप्लीकेशन होगा, ये तो डाउनलोड करना है. वंस यू क्लिक ऑन जनरेट, यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करोगे तो ये आपको एक की मिलेगी. ओके, ये की आपको कॉपी करना है, कॉपी करके फायरवॉल पे पब्लिक की जनरेशन है. ओके, वहाँ पे जाके आपको पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट करना है और ऐड करना है. ओके, इसको एनेबल करके आपको पेस्ट करके जस्ट क्लिक ऑन प्लस साइन एंड इट विल गेट एडेड. ओके, उसके बाद आपको पब्लिक की सेव करनी है और प्राइवेट की, इन दोनों पे क्लिक करना है 1 by 1, तो वो सेव हो जाएगा. पास फ्रेज देना तो दे सकते हैं जिनको पता है, ये सपोज जिनको पता है वो आप यहाँ पे पास फ्रेज देना दे सकते हो, बट इट्स फाइन, हम अभी पास फ्रेज नहीं देंगे, वी विल डू इट लेटर. सो दिस ये किस लिए होगा, कंसोल जो SSH एक्सेस है सिक्योरली, तो आपके जिसके पास प्राइवेट की होगा वही फायरवॉल को एक्सेस कर पाएगा. ओके, रेस्ट विल नॉट एबल टू डू इट. सो विल यूज दिस फीचर ऑल्सो, ये सारी फायरवॉल्स में होता है. सो यस, यू कैन यूज एनीवेयर. अगर आपको यहाँ पे टेस्ट कर लो, आप कहीं पे भी कर सकते हो, कोई से भी डिवाइस जो सपोर्ट करेगा पब्लिक की ऑथेंटिकेशन फीचर. Okay, so yes, it is used for SSH, authentication for SSH. It supports algorithms जो support करेगा वो RSA, DSA, ACH. You can go through these algorithms. The key length it's supported 4690 तक तो support करेगा. Alright, so it is secure. And okay, you don't have to worry about it. just हम use करेंगे इसको, alright. But to know this technology, you can search in the Wikipedia and you will get the details. Logs कैसे देखेंगे, यहाँ पे फाइल पे आके /log/ssd.log करेंगे, तो जब हम ऑथेंटिकेट करते हैं, जब हम ये पुटीजन ये एप्लीकेशन से ऑथेंटिकेट करेंगे SSH, तो आपको लॉग्स मिलेंगे इस पे. ओके, तो नेगोशिएशन क्या हो रहा है होगा वो आपको यहाँ पे पता चलेगा. ओके, so admin user can authenticate using public key authentication for SSH. So this provides a mechanism that provides to provide access without needing to share the admin password. आपको admin password जो होता है पासवर्ड, ठीक है, वो आपको शेयर करने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ क्या शेयर करना है, लेट्स से आपके पास L1 L2 इंजीनियर है, ठीक है, उनको या फिर कोई ऐसा इंजीनियर जिसको फर्स्ट टाइम SSH देना है, तो उनको आप सिर्फ पासवर्ड देने ना, इंस्टेड आपको पब्लिक प्राइवेट की देनी. ओके, और उसके में सेटअप हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक विदाउट पासवर्ड वो लॉगिन करेगा SSH में. राइट, इट इज सिक्योर बिकॉज हम उस पर्टिकुलर पर्सन को ही प्राइवेट की शेयर कर रहे हैं. ओके, सो दैट इज द रीजन इट इज सिक्योर, बट हमारा पासवर्ड भी सिक्योर है, हम उसको शेयर नहीं कर रहे. वी आर शेयरिंग द की. ओके, यहाँ पे जो जनरेट हुआ है वो दे रहे हैं हम. ओके, सो वी विल सी दैट इन एक्शन. हम उसको प्रैक्टिकल सब करेंगे, एक एक चीज़ है, तो आइडियाज ज़्यादा आएगा.
ओके, जिन्होंने ये यूज नहीं किया अभी तक उसके लिए, जिन्होंने किया है उनको पता होगा ये कैसे वर्क करता है. सो दिस प्रोवाइड अ मैकेनिज्म दैट कैन प्रोवाइड यू द एक्सेस विदाउट शेयरिंग द पासवर्ड, एडमिन पासवर्ड, एंड इट कैन प्रोवाइड यू एक्सेस टू द मल्टीपल यूजर्स बाय अपलोडिंग द public key. So Sophos Firewall support all RSA, DSA, EC, DSA key for length about 1024 till 4096 bit in length. तो ये सारे ports जितने भी ये support करेगा. Okay, so you can see this application supports this algorithms. Same चीजें firewall भी support करेगा. All right, so you don't have to worry about the algorithms and the working, but directly you have to use the public key authentication. Directly हम use करेंगे इसको, and then we might discuss end of the module about the जो टेक्नोलॉजी ऐसी है जो कोर्स से रिलेटेड नहीं है. yes of course वो प्री रिक्विजिट है, तो वो हम लास्ट में रखेंगे, डिस्कस कर लेंगे. So key can be created using the tool called putty key gen. Okay, so we'll use the public putty key generation download करके on Windows and SSH key gen on the Linux. अगर आप Linux पे ट्राई करो तो आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा. So here you can see a key that can be generated using putty key. The public key displays here is uploaded on the Sophos Firewall. जो की आपने जनरेट की है आपको Sophos Firewall में ऐड कर देना है. The private key is saved for the users connecting to communicate themselves. When SSH connection is authenticated using the keys, the thumbprint of the key is logged with the public IP address, and the connection was initiated from. So example for the logs is this. Okay, so जो logs अभी दिया था, तो आपको यहाँ पे वो negotiation दिखेगा वहाँ पे. So these are the logs. Okay, you will get the IP address, कहाँ से उसने login किया and so on the firewall. If you have given to some users, 2-3 users को आपने शेयर किया हुआ है, तो कौन कौन से यूजर कौन कौन से पीसी पे SSH ले रहे हैं, you will get the IP address in the logs and the negotiation also. Now last topic is certificate. So certificate, we will see what are default appliance certificate. Okay, so don't worry, default appliance certificate ये सब क्या है, we are directly using it. We will not go in much detail because it will not require. हम जो directly इसको use करेंगे और ये use भी हो जाएगा और work भी करेगा. Alright, so we will not face any issue. डायरेक्टली उसको हम यूज ही कर रहे हैं और यूज भी होगा, कहीं पे भी इशू नहीं आएगा. अगर इशू आता भी है तो भी फिक्स कर देंगे और वो भी चलने लगेगा. ओके, सो एक होगा डिफॉल्ट अप्लायंस सर्टिफिकेट, एक खुद का ये सर्टिफिकेट. अगर आप सर्टिफिकेट में जाओगे सोफोस पे तो वहाँ पे एक लिखा होगा डिफॉल्ट अप्लायंस सर्टिफिकेट. उसमें अप्लायंस का डिटेल होगा उसके अंदर. सर्टिफिकेट में जनरली क्या होता है, वही तो होता है राइट. डिटेल्स होती है, डिटेल्स लाइक नेम, कंट्री, स्टेट्स एंड सो ऑन. बहुत सारी डिटेल्स होगी. सो वो डिटेल होती है सर्टिफिकेट में. सो दैट कैन बी यूज. कहाँ पे वो यूज होगा, आपका एडमिन पोर्टल होगा, वहाँ पे यूज होगा. एडमिन पोर्टल आपका जो फायरवॉल एक्सेस करते हैं, आप HTTPS पे क्लिक करना, वहाँ पे सर्टिफिकेट में जाएगा, क्लिक करो आपको सर्टिफिकेट दिखेगा. ओके, देन यू हैव यूजर पोर्टल पे, वहाँ पे यूज होगा. एंड SSL में SSL VPN होगा, उस पे भी यूज होगा अप्लायंस सर्टिफिकेट. ओके, सो सोफोस का खुद का तो सर्टिफिकेट होगा, बट थर्ड पार्टी भी आप अपलोड कर सकते हो. यू कैन ऐड द सर्टिफिकेट द सोफोस फायरवॉल. अगर आपने कहीं से साइन करके लाए हो. ओके, जिनको नहीं पता है सर्टिफिकेट अथॉरिटी के बारे में, आप यहाँ पे सीख जाओगे. ओके, जिनको पता है इट्स फाइन, बट जिनको नहीं पता है सर्टिफिकेट कैसे साइन करते हैं, ये कैसे रिक्वेस्ट लेते हैं, कैसे जनरेट करना है, कैसे पुश करना है, ये सब है क्या, लैब पे देखोगे तो स्टेप्स 2 ही हैं. ओके, 2-3 स्टेप्स ही है ज्यादा से ज्यादा. एंड you will see in the working, but backend में if you click on F12 तो आपको पता चलेगा क्या हो रहा है. ठीक है, but steps are 3, वही हमको फॉलो करना है as a Sophos administrator, and rest is fine. So you can add certificate to Sophos Firewall. You can upload certificate that is signed by your trusted CA. ठीक है, तो GoDaddy तो सुना होगा राइट. So you can see Setigo. कितने बहुत सारे सर्टिफिकेट अथॉरिटीज हैं जहाँ पे आप सर्टिफिकेट साइन करवा सकते हो. ओके, सो यू कैन लेट्स से आपको सोफोस एक ट्रस्ट सबके ब्राउजर में ट्रस्ट करवाने के, सोफोस का जो IP होता है या फिर नेम से एक्सेस करते हो, आपको सारे ब्राउजर पे उसको ट्रस्ट करना है कि हाँ ये ट्रस्टेड
वेबसाइट है, ओके, या फिर होस्ट है, तो आपको उसको साइन करा के, अथॉरिटी को साइन करा के उस वो जो ब्राउजर है उस पर उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आपको एरर नहीं आएगा नॉट सिक्योर वाला, ठीक है। नहीं तो आप देखोगे कि अगर फायरवॉल एक्सेस करो कोई भी तो आपको नॉट सिक्योर का आएगा, जैसे कि HTTPS नॉट सिक्योर, बट फायरवॉल तो एक्सेस होगा बट नॉट सिक्योर, ओके, दैट कनेक्शन इज नॉट सिक्योर। तो उसको सिक्योर कैसे करेंगे, लैब पे अभी हम करेंगे, ठीक है। हमें तो यहाँ पे सोफोस में तो इजी रहेगा, सब कुछ बहुत इजी है मैनेज करना, 2 स्टेप्स है सिक्योर करना है उसको, तो वील सी दैट विद हेल्प ऑफ डिफॉल्ट अप्लायंस सर्टिफिकेट। और एक दूसरा है सेल्फ जनरेट सेल्फ साइन सर्टिफिकेट। अगर आपको खुद का सर्टिफिकेट जनरेट करके साइन करवाना है, ट्रस्ट करवाना है, देन यू कैन वी विल सी व्हाट इज वी विल क्रिएट वन सर्टिफिकेट। लेट्स से आप आईपी एड्रेस से फाइल को एक्सेस करो और आपको नोट सिक्योर आ रहा है, ठीक है, तो हम सोफोस को ही सीए यूज करेंगे, सर्टिफिकेट अथॉरिटी यूज करेंगे कि भाई तू ही सबको ट्रस्ट करवा देने का, सो हम ट्रस्ट करवाएंगे। और जो हम फाइल को एक्सेस लेते हैं, राइट, HTTPS://172.16.16.16, उसमें नॉट सिक्योर आएगा तो उसमें वो आइकन आ जाएगा जो लॉक का आइकन होता है ग्रीन कलर वाला, राइट, सो विल गेट दैट सिक्योर कनेक्शन ऑन द एड्रेस बार ऑफ द ब्राउजर। सो दिस वे वी हम जितनी भी अनसिक्योर वेबसाइट होगी वो सोफोस से सिक्योर करवाएंगे कि हाँ भाई ये ट्रस्टवर्दी, अगर ट्रस्टवर्दी है तो करवाएंगे, इट्स फाइन, अगर नहीं है तो। सो नेक्स्ट वुड बी जनरेट CSR। अगर आपको थर्ड पार्टी आप सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, यानी सोफोस एज सीए नहीं है, थर्ड पार्टी आपने परचेस किया हुआ है, तो आप CSR जनरेट करके उससे सर्टिफिकेट साइन करवा के आप ट्रस्ट करवा सकते हो, ओके। So Sophos Firewall comes with the default certificate called appliance certificate, उसके पास default certificate होगा, okay, वो हम लैब पे देखेंगे उसको, so you don't have to worry about, but yes of course those who know what is certificate and certificate authority, those who doesn't know, भले यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे 2 steps ही हैं and it is working, but you should know this technology how it works, that we will discuss, not as again it will take much more time to discuss, एक अगर आप टेक्नोलॉजी लेंगे तो 2-3 घंटे तो आराम से ही चाहिए उसको डिस्कस करने में, so we'll see that। सो यहाँ पे आपको पता चला कि नेक्स्ट पॉइंट में क्या कवर करना है। सो सोफोस फायरवॉल कम्स विद द डिफॉल्ट सर्टिफिकेट कॉल्ड अप्लायंस सर्टिफिकेट, ये नाम होगा उस सर्टिफिकेट का, ओके। सो दिस कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड HTTPS फॉर एडमिन पोर्टल, जो एडमिन पोर्टल के लिए सिक्योर कनेक्शन के लिए उसके लिए यूज होगा, यूजर पोर्टल के लिए NSSL VPN के लिए यूज होगा वो सर्टिफिकेट कम्युनिकेशन करवाने के लिए, ओके। सो द कॉमन नेम ऑन दिस सर्टिफिकेट इज सीरियल नंबर, ओके। तो जैसे मैंने बताया सर्टिफिकेट में क्या होता है, नाम होता है, राइट, डिटेल्स होती है, जैसे कि नाम है, सिटी है, स्टेट्स है, कॉमन नेम है, ओके। मोस्टली कॉमन नेम वो भी ज़्यादा यूज होता है, कॉमन नेम, पास फ्रेज, पासवर्ड होता है, देन वी हैव लेंथ, सिक्योरिटी लेंथ की क्या है उसकी, एंड सो ऑन। सो कॉमन नेम ऑन दिस सर्टिफिकेट इज सीरियल नंबर ऑफ द अप्लायंस। जो कॉमन नेम होते हैं, ठीक है, वो जनरली बाय डिफॉल्ट अप्लायंस का जो की मैंने आपको जो बताया था डैशबोर्ड में वो होता है, which means you can almost certainly getting a certificate error। तो आपको सर्टिफिकेट एरर क्यों आता है, इसलिए आता है क्योंकि उसका जो कॉमन नेम है, ठीक है, वो ट्रस्टेड नहीं है, ओके। अगर कोई भी फाइल आई थिंक एक्सेस करोगे तो आपको वो एरर तो मिलेगा ही, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, आपको उसको साइन कराना पड़ेगा आपके सर्टिफिकेट अथॉरिटी का। अगर आपका फायरवॉल ही सर्टिफिकेट अथॉरिटी है तो उसी से ही साइन करवा लो, अगर थर्ड पार्टी तो थर्ड पार्टी से साइन करवा लो, फिर उसके बाद वो सर्टिफिकेट आएगा, उसको इंपोर्ट करना है, फिर सारे जितने भी सिस्टम है उसमें पुश करना पड़ता है, ओके। एक एक अगर आपके पास कोई कॉमन टूल है कि सारे सिस्टम में अब ऑटोमेटिक वो सर्टिफिकेट अपलोड हो जाए, इट इज़ गुड, नहीं तो मैनुअली करना पड़ेगा। जैसे कि एडी एनवायरमेंट होता है, उस पर क्या होता है, अगर एडी सर्वर है आपके पास और आपके पास 5000 पीसीज है, तो एक एक में जाके तो सर्टिफिकेट फिर इंस्टॉल नहीं करोगे, उसमें क्या करना है, एडी सर्वर से पुश करवा दो, सारे सर्टिफिकेट उस पर आ जाएंगे, ओके। सो ऐसे हम पुश करवाएंगे सर्टिफिकेट, पहले हम उसको साइन करेंगे, अपलोड करेंगे और फिर पुश करेंगे, एक एक सिस्टम में जाके फिर करने की जरूरत नहीं, फिर आपका जो कनेक्शन जहाँ पे नोट सिक्योर है वहाँ पे सिक्योर हो जाएगा, ओके, साइन करवाने के बाद और पुश करवाने के बाद। पुश करवाना भी इम्पोर्टेंट है कि ऐसे भी इश्यूज आते हैं, जैसे कि कोई 2-3 सिस्टम में रह गया, ओके, तो मैनुअली जाके कर दो, या फिर देखो टेक्निकली देखना है तो देखो क्या इशू था, एंड मैनुअली कर सकते हो, यू कैन पुश द सर्टिफिकेट मैनुअली, ओके। तो मैनुअली
मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, और पुश भी कैसे करना है वो भी देखूंगा, सर्टिफिकेट कैसे साइन करना है, कौन कौन से इश्यूज है, एरर्स कहाँ पे, एरर कैसे रिजोल्व करना है, एंड सो ऑन विद दिस Sophos Firewall. So serial number होता है इसलिए उसमें एरर है. Okay, so certificate can be added to the firewall and can be selected to use in place of default appliance certificate. So these are the three options for doing this. Uploading a certificate that can be signed by your external trusted certificate authority. Okay, Google में जाके certificate authority search करने आज. And this could be third-party companies such as Global Sign, okay, or GoDaddy, for so on the internal enterprise certificate, और आपका खुद का भी AD server भी as a certificate authority काम कर सकता है. Anyone has worked with AD as a certificate authority? Just raise your hand as of now. I will just, it's fine. You can just raise your hand. Anyone has used, किसी ने use किया AD as a certificate authority? Okay, yeah, good. So no worries. In some batch, we will share some knowledge. Okay, how we can use, how you can create the third-party certificate or AD server as a certificate. Okay, so next, this could be again third-party or your enterprise is अगर आपके पास AD server as a certificate authority है. To upload a certificate, you need to provide the certificate and private keys and paraphrase for decryption in the public key. Okay, तो ये सब उस पे टेक्नोलॉजी है जो काम करती है, सेम वे काम करेगा. अगर किसी को अभी तक लेट से नहीं पता था, they will or might they will not able to understand how this certificate negotiations कैसे होते हैं. So certificate का भी negotiation होएगा, right, सर्वर और क्लाइंट के बीच में. तो Sophos से पता चलेगा कि कैसे वो हो रहा है, राइट. जैसे हमने पैकेट कैप्चर देखा था 3-वे हैंडशेक, तो जैसे 3-वे हैंडशेक है, DNS रिक्वेस्ट है, डोरा प्रोसेस है. एक्चुअली आप सब कुछ उसी में ही देख सकते हो कि कैसे लाइव में आप देख सकते हो कैसे नेगोशिएशन होता है. ये काम आता है जब आपको ट्रबल शूट करना है. ओके, इन केस देयर इज अ इशू तो बहुत रेयर होंगे, या फिर कॉन्फ़िगरेशन है वो ठीक से चल नहीं रही होगी, तब आपको वो चीज़ देखना है. अदरवाइज तो टेक्नोलॉजी जो सोफोस में है वो कोई भी राउटर फायरवॉल पे आपको मिल ही जाएगा. बट यस, you should know how to see those traffic packet captures and so on. At least you should know how to take it. Okay, right way से कैसे लेना है, तो the rest of the things would be very easy for you. So generate a self-sign certificate. This will generate the self-sign certificate by Sophos on default signing. तो Sophos में और एक certificate होगा उसके ऊपर, default certificate. ओके, तो डिफॉल्ट सर्टिफिकेट होगा, उसके बाद अप्लायंस सर्टिफिकेट होगा. 2 सर्टिफिकेट सोफोस में डिफॉल्ट सर्टिफिकेट होंगे. जैसे मैंने आपको डिफॉल्ट सेटिंग्स बताता हूँ, अभी सर्टिफिकेट में भी 2 डिफॉल्ट सर्टिफिकेट्स. ओके, सो और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं उसमें. जैसे अपने आप कंप्यूटर में आपके जो लैपटॉप है उस पर डिफॉल्ट सर्टिफिकेट ऑलरेडी होंगे, राइट. मैं बताऊंगा, नो वरीज, सबको पता होगा ऑलमोस्ट, बट we'll see that के कौन कौन से डिफॉल्ट सर्टिफिकेट्स हैं. वैसे ही सोफोस में भी डिफॉल्ट सर्टिफिकेट्स होते हैं सारे, जैसे कोई नॉर्मल पीसी में होते हैं वैसे ही सारे सर्टिफिकेट्स होंगे. उसमें डिफॉल्ट सर्टिफिकेट होगा. जब हम सेल्फ साइन सर्टिफिकेट, यानी हम खुद से जब सर्टिफिकेट, जब सोफोस एज ए सर्टिफिकेट यूज करते हैं, तब डिफॉल्ट जो सर्टिफिकेट है वहां से वो साइन होता है. ओके, तो थर्ड ऑप्शन इज टू जनरेट दी CSR, एंड फिर उसको हम डाउनलोड करते हैं और थर्ड पार्टी को हम साइन करवाने के लिए देते हैं, या फिर सोफोस खुद है तो उससे ही साइन करवा लेते हैं. ऑलराइट, तो इजी है. सिर्फ आपको अपलोड इंपोर्ट करना है. यहाँ पे स्टेप में तो 2 ही चीजें हैं. आपने CSR यानी सर्टिफिकेट जनरेट किया, जनरेट करने में आपको डिटेल्स डालना है. डिटेल्स डाला, डिटेल्स डालने के बाद आपने इंपोर्ट किया और अपलोड किया, आपका सर्टिफिकेट साइन हो गया. ओके, और वो जो सर्टिफिकेट आपका जो साइन हो गया, जो आपने अपलोड किया वापस से इंपोर्ट किया, ओके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया, जो इंपोर्ट किया वो आपको वापस दूसरी जगह पे जितने भी ब्राउजर्स हैं वहाँ पे होना चाहिए. ओके, अब कैसे होना चाहिए, मैनुअली होना चाहिए या फिर पुश करो. ओके, दैट इज योर टास्क. कि पुश करो तो सबसे बेटर है, राइट. अगर 500,000 पीसी है तो एक में तो नहीं करेंगे, बट फॉर टेस्टिंग पर्पस मैनुअली 2-3 में करके देखो, एंड देन यूज दी AD फीचर्स इफ यू हैव. ओके, सो दिस वे विल सी. हमारे पास AD सर्वर है और बहुत सारे पीसीज भी होंगे, तो एक पीसी में मैनुअली करेंगे और दूसरा AD सर्वर से पुश करके देखेंगे. ऑलराइट, सो विल सी.
जस्ट वी हैव टू पुश द सर्टिफिकेट, यानी इंस्टॉल करना है सर्टिफिकेट, और आपका काम वहाँ पे हो गया. So this is the signing request for certificate that can be signed by either third-party company or your internal enterprise again. So once you have the certificate, you can upload it to the Sophos Firewall. So certificate authority, certification, verification CA and signing CA. Now, जो verification certificate authorities है, which includes all the certificate for common trusted internal root CA, सारे वहाँ पे trusted होंगे वहाँ पे for verification process. Also for the upload certificate for additional CAs. And signing CAs, 2 default signing CA would be there, जो Sophos में होंगे. Okay, if you are the signing, यानी आप सर्टिफिकेट अथॉरिटी हो, तो वहाँ पे एक डिफॉल्ट होगा यूज फॉर क्रिएटिंग सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट क्रिएट करेगा, ऑलराइट, एंड आपको साइन करके देगा. दूसरा है सिक्योरिटी अप्लायंस SSLCA. ओके, ये वाला ये जो सर्टिफिकेट होगा वो आपका HTTPS ट्रैफिक स्कैन करने के लिए होगा. ओके, तो आप जब HTTPS फायरवॉल रूल पे हम एनेबल करेंगे तो आपको एरर आएगा. जितनी भी वेबसाइट एक्सेस करोगे, गूगल एक्सेस करोगे, ओके, तो आपको एरर आएगा. तो वो एरर क्यों आ रहा है? सर्टिफिकेट का एरर आता है. क्यों? क्योंकि जब आप सर्टिफिकेट एनेबल करते हो तो सोफोस एज ए मीडिएटर काम करेगा. ओके, वो ही क्लाइंट और सर्वर का रोल वहाँ पे प्ले करेगा. तो उसको रिजोल्व करने के लिए जो सर्टिफिकेट है SSL, उसको डाउनलोड करना है PAM फॉर्मेट में. वो फाइल डाउनलोड करनी है और अपलोड करनी है ब्राउजर पे या फिर MMC पे या फिर AD से. दैट्स इट, आपका काम. फिर वो इश्यू रिजोल्व हो जाएगा. देन क्या होगा इससे? फिर हम पूरा ट्रैफिक जो है, जो लैन में है, वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं. वी कैन ब्लॉक इट, वी कैन अलाउ इट, पॉलिसी लगाओ. ठीक है, EXE ब्लॉक करना है तो ब्लॉक कर सकते हैं. कोई इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं, कोई ऐसे वर्ड्स हैं जो इनएप्रोप्रिएट है, वो हम ब्लॉक कर सकते हैं. उसके रिपोर्ट्स आ सकते हैं. यूजर कोई भी वर्ड यूज कर रहा है, ठीक है, गूगल सर्च में या फिर कोई भी सर्च इंजन में, तो वो कैसे आएगा? हम उसको एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करते हैं. उसकी वजह से जो कोई भी फिर कीवर्ड लगे, उसके रिपोर्ट्स आएंगे कि लेट्स से इस यूजर ने कौन कौन से वर्ड सर्च किए थे गूगल में. ऑलराइट, also we can block those unwanted words which are not required. Okay, images, Google inappropriate images, we can block with the help of the certificate. Okay, while we doing the scanning from the firewall. Okay, तो जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो एक्चुअली आपका जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, वो ब्रेक मीन्स डिक्रिप्ट कर देता है एंड अलग से कम्युनिकेशन बनाएगा और वहां से वो स्कैन करेगा ट्रैफिक. और जो हमने स्कैनिंग में पॉलिसी लगाई होगी, ठीक है, वो पॉलिसी वो उस हिसाब से लेगा. लेट्स से जैसे मैंने अभी बताया कि कीवर्ड्स का भी पता चलेगा. अगर आपने स्कैनिंग नहीं लगाई है तो फिर नहीं हो सकता ये सब चीजें. ओके, तो स्कैनिंग इज रिक्वायर्ड. तो स्कैनिंग करेंगे तो एरर तो आएगा. एरर रिमूव करने के लिए आपको सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना पड़ेगा. ठीक, तो हम वो सब एरर्स जनरेट करेंगे, उसको फिक्स करेंगे और in easy steps. So Sophos Firewalls comes with a predefined with certificates for common trusted internet root certificates. And these are used to verify certificate of the device of Sophos Firewall connected to. You can also upload additional CA certificate that you want to trust. You can also use enterprise certificate that signs the certificates for your internal servers. Sophos Firewall also acts as a certificate authority, so comes with the no signing CAs. The default signing CA is used for signing certificate, and the appliance security appliance SSL CA is used for creating certificate using HTTPS web scanning and securing TLS and SSL communication for web email connections. Also for the web voice and other protocols. You can also upload additional signing CAs by providing the private key with the CA certificate when you upload it. And this CA can be used selected to use web and email protection. So email CAs can be separately selected under general settings. You can go, and for the web you can go to general setting. That will see. अगर आपका थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट है, ठीक है, सोफोस नहीं है, अगर वहां से आपको सर्टिफिकेट मिला है साइन
करते हुए, तो आपको सब सर्टिफिकेट अपलोड करना है फाइल पे, और जो अपलोडेड सर्टिफिकेट है वो आपको, अगर आप वेब के लिए स्कैनिंग कर रहे हो तो वेब प्रोटेक्शन में जाके वो सर्टिफिकेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, and otherwise error आएगा if you don't select that certificate. Similarly with the email also, so email में भी अगर आपका खुद का थर्ड पार्टी ने आपको सर्टिफिकेट वो परचेज होगा, ठीक है, पेड होगा, तो उन्होंने आपको परचेज मीन्स दिया हुआ है, यू हैव टू अपलोड ऑन द firewall and you have to use for, if it is for the email traffic, then you have to select under email and general settings and just select the certificate. ओके, लैब पे प्रैक्टिकल पे सब जितना भी मैंने डिस्कस किया वो तो हम एक एक करके देखने वाले। नाउ this would be the end of the module 1. Now after completing this module, what you will able to do now, you will able to configure a Sophos firewall with the initial setup wizard. आप Sophos को deploy कर सकते हो, all right, in gateway mode and bridge mode, in mix mode. Gateway mode is the priority in our lab course. Then you know how to navigate on the web admin GUI में कैसे जाना है, कहाँ पे objects है, कहाँ पे policies है, you know everything. Where are networking, where are zone are configured, where are interface are configured, where is routing is configured, where you can configure Sophos as a DNS server, where you can configure as a Sophos as a DHCP server, okay, also Sophos as a CA server. And if it is not CA, how to manage the device access and all the certificate related issues from Sophos Firewall. All right, so this would be the end of this module. Tomorrow what we'll do, tomorrow we will do the lab, not today, sorry guys. So tomorrow what we'll do, we will go through each and everything on the lab, पूरा lab को time देंगे. All right, so anyone has any doubt? Okay, let me just go to the browser. Meanwhile, anyone has any doubt, just raise your hand first so that I can know that सबने हाथ ऊंचा किया. And another is let me know if you have any doubt, query, concern, or if you're working on anything. Okay. Now let me just try to कल क्लास begin चालू the है क्या? firewall if I can. We have 15 minutes, so let me share the screen then. So suppose we can do this SSL inbound proxy also, SSL inbound. Okay, so I have just reset the lab, so that's the reason we have to re-register the firewalls. So tomorrow we will do it, or we can start with the one if we can, it is possible. So let me try. Okay, let's register the firewall. We'll keep the firewall in register process, but मैं आपको थोड़ी सी जो भी थोड़ा पढ़ा है वो एक बार navigate कर लेते हैं, right? So let me try this demo device. Okay. अच्छा, किसी को डाउट ही नहीं है अभी? No one who is available? ओके, ऐसा लग रहा है जिनको कि मेरे को माइक नहीं, यू कैन जस्ट टाइप ऑन द मैसेज, जो भी डाउट है मैसेज में भी लिख दो, मैं यहाँ से आपको आंसर दे दूंगा. अगर किसी को अनम्यूट नहीं करना है, कुछ बोलना नहीं, इट्स फाइन, आई अंडरस्टैंड. आप चैट पे लिखो कि अगर आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है वापस से करवाना है, इट्स ओके, यू कैन लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन इट. ओके, अगर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है तो नो वरीज, मैं आपको अलग से लिंक दूंगा, जैसे TLS, राइट, वो तो फाइल का या फिर कोई भी फाइल का कोर्स का पार्ट नहीं होता. लेट्स से फॉर एग्जांपल दैट इज द टेक्नोलॉजी. ओके, यहाँ पे तो हम सीधा वर्क की देखेंगे, बट यू कैन जस्ट गो थ्रू ऑन विकिपीडिया वंस, एक बार पढ़ लो उसको तो शायद आइडिया आ जाएगा. ऑलराइट, जिनको नहीं पता है, जिनको पता है इट्स फाइन, यू कैन रिवाइज इट, इट्स कंप्लीटली ओके. सो आई हैव एक्सेस टू दिस फाइल, ये वाले फाइल पे ही करते हैं, बट इसमें एडमिन राइट्स नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इशू रहता है, राइट, कुछ कर नहीं सकते इसमें. ओके, तो अप्लायंस की राइट सर्टिफिकेट्स पे जाते हैं सबसे पहले. चलो सर्टिफिकेट्स यहाँ पे ये जो है, ठीक है, अप्लायंस सर्टिफिकेट जो भी मैंने बताया है, ये रहा अप्लायंस. ओके, सो आपका जो अप्लायंस है ये आपको यहाँ पे दिखेगा. तो जब से सोफोस फाइल पे आप
पहली बार काम कर रहे हो, ओके, या फिर कर भी रहे हो, सबसे पहले सर्टिफिकेट अथॉरिटी पे जाओ, ओके, सर्टिफिकेट अथॉरिटी, और वहां पे भी सर्टिफिकेट्स हैं ये दो, ये जो डिफॉल्ट ग्रे आउट, ओके, जो ग्रे आउट सर्टिफिकेट्स हैं, these are the default certificates on the firewall, ओके, क्लिक ऑन डिफॉल्ट, इस पे क्लिक करो, ओके, यहाँ पे एडिट पे भी पेंसिल साइन है, उसको भी क्लिक कर सकते हैं, एंड यू विल गेट दिस, ओके। तो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है ये, ओके, Sophos एज अ सर्टिफिकेट अथॉरिटी है। तो सर्टिफिकेट में है क्या, ओके, व्हाट वी हैव नेम, नेम क्या है डिफॉल्ट, इसको हम ना डिलीट कर सकते हैं ना इसको हम एडिट कर, हाँ एडिट कर सकते हैं, सॉरी एडिट ही करना है। व्हेन यू हैव दिस फायरवॉल फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आपके पास फायरवॉल का एक्सेस है, अगर ये इसमें कुछ फिल नहीं किया हुआ है, ओके, तुरंत ही फिल कर दो इसको, फर्स्ट थिंग, ऑलवेज फिल दिस सर्टिफिकेट, ओके। तो अनवांटेड एरर्स जितने भी आते हैं, ओके, वो चले जाएंगे। Then just fill it this and click on save, okay. You might have to give the password, ये passphrase, that means password, give the password, click on save, okay। मैं तो नहीं कर पाऊंगा इसमें, okay, it will give me the error, let's see, okay, so you don't have permission, okay, Sophos का है तो नहीं होगा, okay, so let's say go back, once you fill the certificate, this is your default certificate, ये certificate अगर दूसरा कोई certificate आपको साइन करवाना है, वो आपको वहाँ पे certificate, तब वो इसी से होगा, और इससे होता है, और इसमें डिटेल्स में क्या है, सब डिटेल्स है, लाइक नेम, एड्रेस, सिटीज एंड सो ऑन, ओके। कॉमन नेम इज जो अप्लायंस का की है वही दिया हुआ है कॉमन नेम है, सो यू व्हाट विद द कॉमन नेम यू कैन गिव द नेम ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशंस, ओके, you can give state name, city, organization name, unit कौन सा है, IT फॉर एग्जांपल, OU, व्हाटएवर कॉमन नेम आपका फायरवॉल का होस्ट नेम दे सकते हो, ओके। अगर आपका फायरवॉल का होस्ट नेम है तो हम लैब पे तो होस्ट नेम बना के देखेंगे, हमारे पास AD सर्वर है तो उसमें DNS सर्वर भी है, DHCP सर्वर भी है अपने पास, तो वो देखेंगे वहाँ पे कॉमन नेम डाल देंगे, इसको रिजोल्व करेंगे तो फिर नाम से एक्सेस करेंगे फायरवॉल को, नेम से, IP से नहीं करेंगे, नेम से करेंगे तो एक्सेस आ जाएगा। So this will help us for the communication, secure connections, और एक सारे पैरामीटर्स सब में देखेंगे, अभी तो मैं आपको सिर्फ नेविगेट, जो नेविगेशंस चल रहा है अभी तो फिलहाल, ओके, टेक्नोलॉजी पे भी आएंगे, ओके। सो वी हैव दिस ऑप्शंस, वी विल डिस्कस व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टू, बट ये डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट यूज करना है, अगर ये फिलअप नहीं है, NA लिखा हुआ है, फिलअप कर दो, दैट्स इट। यहाँ पे इंडिया होगा, ये तो US है, ओके, सो यू कैन नॉट मेक एनी चेंज। नाउ सर्टिफिकेट पे जाओ वापस एक बार, ओके, तो मैंने बताया था अप्लायंस सर्टिफिकेट होगा वहाँ पे डिफॉल्ट, तो ये फायरवॉल का अप्लायंस सर्टिफिकेट है डिफॉल्ट, इसमें ही हम साइन करेंगे। अगर आपको कोई सर्टिफिकेट अपलोड करना है, क्लिक ऑन ऐड, ओके, तो आप यहाँ पे देखो अपलोड कर सकते हो, तो ये जो नाम होगा वही नाम डालना है जो आपके सर्टिफिकेट अथॉरिटी वालों ने दिया हुआ है, ओके, थर्ड पार्टी होगा ये, आप अपने हिसाब से नहीं होगा, जो लोग लेट्स से L1 L2 इंजीनियर है तो आप request कर सकते हो, you can ask for the certificate if needed as per the requirement, okay, and you can ask in PAM format, DR format, Sierra format, okay, all these formats are available, okay। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से formats available है और ये क्यों है वो बाद में डिस्कस करते हैं, but these are the formats available, okay। देन जो सर्टिफिकेट दिया होगा वो आपको, जो फाइल है वो यहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर वो चूज करना है आपको, फाइल थर्ड पार्टी से कर रहे हो तो, ओके। प्राइवेट की चूज करना है, पास फ्रेज नहीं है तो उनको बोलो पास फ्रेज भी चाहिए, ओके, ये मैंडेटरी नहीं है, बट व्हेन यू आर डूइंग सम थर्ड पार्टी अपलोडिंग, थर्ड पार्टी से सर्टिफिकेट लेते हो, ओके, तो मेक श्योर यू आस्क फॉर द प्रीशेड की और पास फ्रेज कीज फॉर दैट सर्टिफिकेट, ओके। तो कोई इशू नहीं आएगा, नहीं तो इशू आ सकता है, सर्टिफिकेट आपका रेड में ऐसा क्रॉस मार्क होगा, नॉट वैलिड होगा, ओके, सर्टिफिकेट नॉट वैलिड ऐसा आ सकता है इशू। तो जनरली क्या होता है कि और एक इंजीनियर होता है वहाँ पे, थर्ड पार्टी सॉरी सर्टिफिकेट अथॉरिटी जो बंदा होता है, राइट, उसने गलती से अगर कोई गलत स्टेप्स लेके उसने गलत सर्टिफिकेट जनरेट किया हुआ है एंड यू आर ट्राइंग टू अपलोड दैट सर्टिफिकेट, ओके, तो वो तो इनवैलिड ही आएगा, ओके। अगर वो दूसरी जगह पे हो जाता है, अगर तो भी फाइल पे नहीं था तो हो सकता है फाइल का इशू, तो उसको फिर ट्रबल शूट करना है, वो देखेंगे, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर ही हम, अगर सर्टिफिकेट दिया है, ओके, हम वेरीफाई कर इनवैलिड आया, ओके, यानी सर्टिफिकेट इनवैलिड है, एरर आ रहा है, तो उसको हम पहले कैसे वेरीफाई करेंगे कि सर्टिफिकेट वैलिड है कि नहीं है, वो हम देखेंगे लॉग्स से बाद में, ओके। एज ऑफ नाउ फायरवॉल हम एज सी यूज करेंगे यहाँ पे फॉर
स्कैनिंग पर्पस आपको सेल्फ साइन सर्टिफिकेट जनरेट करना है, गिव द नेम। ओके, आप खुद का एक सर्टिफिकेट ऐसे बना सकते हो, नाम दो, ऑलराइट, यू कैन सिलेक्ट द डेट एंड टाइप, द की लेंथ, सिक्योरिटी एंड सब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स। वो क्या है यहाँ पे जो आपका डिटेल है सर्टिफिकेट का। सो गिव द नेम एंड एवरीथिंग, लेट्स से फायरवॉल का होस्ट नेम। ओके, तो यहाँ पे फायरवॉल का होस्ट नेम दे दो। ओके, अगर आपके पास डीएनएस सर्वर है, नहीं तो डीएनएस नहीं है तो आईपी एड्रेस डाल दो, इट्स फाइन। आईपी एड्रेस डाल दो सोफोस का 172.16.16.16, ईमेल चलेगा, ये कोई भी डालो चलेगा। ओके, और यू कैन लीव दिस एज इट इज। और अगर डीएनएस है तो नाम डालो। अगर अभी मैंने आईपी एड्रेस बोला ना, तो आईपी एड्रेस सिलेक्ट करना एंड ऐड आईपी एड्रेस, ऐसे एक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। अभी वो कल लैब में करेंगे, अभी तो ये डेमो है उसकी। ओके, सर्टिफिकेट अथॉरिटी पे वापस क्लिक करो। तो देखो यहाँ पे आपको दिखेंगे जैसे पीसी पे सर्टिफिकेट्स दिखते हैं, वैसे ही आपके सारे सर्टिफिकेट्स, जितने भी ट्रस्टेड सर्टिफिकेट होंगे, आई थिंक 16 पेजेस हैं यहाँ पे, तो 16 पेजेस है तो सर्टिफिकेट, राइट। एंड अगर कोई रिवोक किया है देन यू विल गेट रिवोक हियर एंड यू कैन यूज दिस। ओके, मोस्टली हम क्या करेंगे सर्टिफिकेट अथॉरिटी में, दोनों सर्टिफिकेट जो है, ठीक है, ये डाउनलोड करेंगे यहाँ से। विल डाउनलोड दिस सर्टिफिकेट, ये डाउनलोड नहीं होगा, बट वी विल डाउनलोड दिस सर्टिफिकेट, और ये हम यूजर के पीसी पे, ब्राउजर पे होने चाहिए सर्टिफिकेट, राइट। तो फिर हम क्या करेंगे, रूल्स पे स्कैनिंग कर सकते हैं। ओके, फॉर वायरसेस, एंटीवायरसेस एंड सो। हाँ, अगर आपने सर्टिफिकेट इंपोर्ट इंस्टॉल नहीं किया और आपने यहाँ पे एनेबल कर दिया फायरवॉल पे, तो फिर आपको क्या आएगा, सर्टिफिकेट का एरर आएगा, यानी अगर आप गूगल एक्सेस करोगे ना तो सर्टिफिकेट का एरर आएगा। सो लेट मी शो यू error, so you will get the idea, certificate error, Sophos XG। okay, so let me just click on image, तो देखो ऐसा एरर आएगा, ठीक है, this one, your connection is not private, your set error in certificate, जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी वो इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि हमने जो फायरवॉल रूल है, ठीक है, उस पे यहाँ पे सर्टिफिकेट, हाँ सर्टिफिकेट, ये मैंने ये एनेबल किया हुआ। अगर इसको मैं रिमूव कर दूंगा सर्टिफिकेट एरर चला जाएगा। ओके, अगर इसको एनेबल किया तो सर्टिफिकेट आएगा एरर। सो वी विल सी दैट एवरीथिंग इन एक्शन, अदर बिकॉज हमें वायरस स्कैन करना है, ईएक्सी ब्लॉक करना है, राइट। सो हमें वो स्कैन करना पड़ेगा, यानी वेबसाइट को स्कैन करना पड़ेगा। सो विल स्कैन दिस वेबसाइट एंड विल यूज दिस फीचर। ओके, और सिंक्रोनाइज सिक्योरिटी भी है नीचे, वो बाद में देखते हैं कैसे करेंगे। ऑलराइट, इजी है अभी। All right, so anyone has any doubt till now here? Raise your hands. हेलो Raise your हेलो question. सर, Yes, कल Vivek. क्लास है क्या? 1 minute. Hello. हेलो हेलो सर, कल क्लास है? हेलो 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 हाँ रितेश, कल हेलो, है क्लास, क्लास है। कल तो लैब कल है? लैब सिखाएंगे ना, कल तो लैब सिखाएंगे। ओके 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 ओके, ये मैं केतन बोल रहा हूँ, सर नहीं बोल रहा है, मैं केतन बोल रहा हूँ हाँ ओके ये। ओके ओके, केतन समझ गया। केतन, मेरा मेरा नंबर लिख लो केतन। अपन Hello. एक ग्रुप बनाएंगे ना, ग्रुप में सब हाँ, चैट मतलब करेंगे वही फिर। बोल रहा हूँ, भरत सर को मैं ये बोल रहा हूँ कि ग्रुप बना दो तो एक दूसरे के साथ चैट करके कम से कम कुछ क्वेरी हो तो एक दूसरे का समझ सके। सही बात है, सही बात है। भरत ठीक सर है। बना लेंगे। ठीक है, मैं ओके, आई गॉट योर पॉइंट, एक ग्रुप बना लेते हैं, राइट। ठीक है, आप ऐसा कीजिए, सारे ऐसा तो अभिषेक को आप नंबर, अभिषेक सर को नंबर दे दीजिए आपने चैट अपने। में डाल देते हैं सर, चैट में डाल देते हैं सर। ओके, ऑल राइट, हेलो, अभी डाल दो, हाँ डाल दीजिए, डाल दीजिए ग्रुप एक में। मैंने मिनट में डाल मेरा दिया, डाल देता हूँ। मैंने हाँ डाल दिया। हाँ, रितेश नाम के साथ डालना भाई। देखो आप चेक कर लो वो चैट के अंदर। यस, केतन, आई गॉट योर नंबर। मैंने डाल दिया। Okay, Ritesh, I got your number too. Okay, what about rest of the guys? सब दे दो number. Okay, anyone has any doubt? Ritesh, do you have any doubt till now? नो, नो, सर Okay, सब समझ में आ रहा है थोड़ा? सर, इसका ग्रुप बना दो सर, तो कोई भी क्वेरी होगी तो एटलीस्ट हम लोग एक दूसरे के साथ बात करके भी इसको क्लियर कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा फिर हम आपके पास आ सकते हैं सर। Okay, तो अभी तक तो जितना समझा रहा है उसमें कहीं पे कुछ ऐसा हो रहा है, डिफिकल्टी? नहीं नहीं नहीं।
ओके फाइन, अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, कल लैब पे प्रैक्टिकल पूरा लैब ही करेंगे। तो वैसे भी एक मॉड्यूल खत्म हो गया हमारा फर्स्ट, तो लैब करेंगे तो और आइडिया आ जाएगा कि अभी तक जो समझा था क्या था, राइट। Okay. So I think I believe I'm not able to hear anything. Ketan, do you have any doubt? I have doubt for regarding this SSL inbound regarding suppose behind my because in the Sophos we saw that the WAF is there also. So suppose in the WAF behind the WAF I have my web server. Okay. So how the certificate will work on that? Certificate, yes, there is a settings over there where certificate will work. The certificate अभी जो मैंने आपको बताया वो एक्चुअली जो इन हाउस स्कैनिंग के लिए था अभी तक तो, बट आप अगर आपको थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट यूज करना आपके वेफ के लिए, तो आपको वो वेफ का जो सर्टिफिकेट है वो आपको फायरवॉल पे अपलोड करना पड़ेगा और उसको फिर सिलेक्ट करना पड़ेगा। I think if I go to web server, okay, let me just go to the rule. मैं रूल पे बताता हूँ अगर दिख रहा है तो, जस्ट गिव मिनट। Click on add and add firewall rules. Okay, and just give a moment. I can select accept यहाँ पे protect web server, and here यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट सिलेक्ट करना है, बट ये आपको परचेज करना पड़ेगा सर्टिफिकेट। हेलो, हाँ जी, 1 minute, just okay, so just give a moment, मैं आपको, so if I enable here we have to select that certificate, okay, for WAF, Ketan। ओके सर, ओके ओके। वो हम आएंगे क्योंकि आप जो WAF बोल रहे थे कि वो आगे एक मॉड्यूल में पूरा मॉड्यूल है इसके में, ठीक है, सो ठीक है यूज सर। दिस, ओके, सो आपके डाउट्स सारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे फॉर ईमेल के भी सेम रहेगा, ऐसा ही रहेगा, ईमेल के लिए भी? ईमेल के लिए भी रहेगा और वेफ के लिए रहेगा, ईमेल वेफ और उसके थर्ड पार्टी के साथ रहेगा, ओके, फॉर स्कैनिंग, जैसे ये अभी वेफ में बताया वैसे ईमेल में भी रहेगा ये सब कोर्स, बट जो इंटरनल स्कैनिंग है वो हम सोफोस से करते हैं। ठीक है सर, ओके सर। और दोनों कर सकते हैं, यस, फॉर वेफ एंड ओके, बट सोफोस नहीं यूज कर सकते इसमें। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू। Okay, so we will drop the session for today. Tomorrow we will do the practical, and let me share you this PPT, what we have done till now. So you want email address, sir, our email address, or you can sending on WhatsApp? I'm sending you right away, and also in WhatsApp also I will send you. 1 minute. Okay. I'm sending you right away so that everyone gets now. Okay, I'm not getting the option, just give me a minute. If you want, we'll write down email address also, if you want. Yes, you can drop your email address. Ketan, Ritesh, where are others? You can drop your mail, message and numbers so that I can know. I believe you will get on the portal everything. Okay, so those who don't have email address, phone number, don't worry. You will everything would be available on the portal. आप वहाँ से download करके फिर उसको कर सकते हो. Okay. Okay, sir. Okay, everyone. Thank you for listening and have a nice day. Okay, same to you, sir. Thank you. See you. Bye bye.